ANUBHAV-III discussion. So already many of you have attempted ANUBHAV-1 and ANUBHAV-II. Your response was really very good, and we are believing that these exams, open exams, are helping you a lot to gauge your preparation. Like ANUBHAV-1 and 2 gave you idea that in which areas in starting of your prelims preparation you are lacking. Now this is almost midway of prelims preparation. Like most of the students start from January, so this is 15 March today. So this will give you again idea that after revising some subjects, most of you have revised some subjects. Now in those subjects how you are performing, and in last 70 days how you are going to recalibrate. In the context of that, I am Varun. I will discuss this economy portion of today's ANUBHAV paper. So in last ANUBHAV there were 2 questions where a lot of students gave us input related to the answers. We always appreciate this discussion. This is very important because sometimes we also learn. Like there was a question on Makhana board. So the question on Makhana was because there was no proper authentic source. Most of you, when you are writing to us, please also try to give the link of authentic source, and that source should be government. So for that, like Makhana largest producer is Bihar, but related to exporter there is no complete authentic source. So that's what was the issue related to that, but the debate settled it कि Bihar is not the largest exporter. Similarly, there was a question on VBG Gram G Act, that is MG Narega to VBG Gram G Act. In that there was a statement that it led to the shift of rural employment from central sector scheme to centrally sponsored. Most of students were saying that this is wrong. Actually, in the last slide I will show you, I have given the link of the PIB also. From PIB we have taken, when this act was passed in the parliament on PIB, the ministry itself has given, there is a statement completely that this act has led to shift from central sector scheme to centrally sponsored scheme. So we are trying to always give you actual facts which are from government authentic source. देखो ऐसा क्यों है, क्योंकि यूपीएससी हमेशा ऑथेंटिक सोर्सेज को लेगी. इट विल नेवर एग्री ऑन किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का किसी ने कुछ लिखा है या कोई प्राइवेट बॉडी लिखी हुई है, उनका वो जल्दी एग्री नहीं करेंगे, वहीं से वो क्वेश्चन बनाने वाले हैं. सो वी विल ट्राई, और आप लोग का इनपुट वी ऑलवेज टेक वेरी ग्रेशियसली, एंड दिस इज गुड. This is good sign that you are watching the discussion, you are thinking about the questions. If any issue is there, you are reaching out. तो प्लीज़ आप लोग रीच आउट करना. मैं लास्ट में अपना नंबर और मेल आईडी दूंगा, तो उस पर आप लोग मैसेज लिख सकते हो, मेल लिख सकते हो, और जैसे इस पीपीटी को अगर किसी बच्चे को चाहिए तो वो भी मुझे मैसेज वगैरह आप कर सकते हो. आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड. सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन. Now this question number 22 is of economy. आपके पेपर में 22 नंबर क्वेश्चन होगा. With reference to types of goods in economy, consider the following. Consider the following pairs. अब like last time 2 times से मैंने बता रखा है कि what should be our approach. पहला हम देखेंगे कि why this question has been asked. इसका context क्या है, क्यों पूछा गया है. What is the answer? What is the analysis of the question? We are always trying to focus on analysis aspect. और फिर what you need to build on such theme further for your civil services examination 2026. ठीक है, देखते हैं. Some toppers has also recommended कि आप लोग देख सकते हो. They have given a very honest and opinion about this अनुभव. It helps. आप लोग खुद दे रहे हो तो आप लोग को भी लगता होगा, तो इसको थोड़ा सा हम सीरियसली करते रहेंगे कोशिश. So with reference to types of goods. So this types of goods in economy, this is purely static. देखो इकोनॉमी में लास्ट टाइम वी हैव ऑल्सो डिस्कस लास्ट 2 टाइम्स, इकोनॉमी में सम क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू डायनेमिक एंड सम क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू स्टैटिक. दोनों पूछता है. अप्लाइड कॉन्सेप्ट्स भी पूछता है. 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर. कंप्लीटली प्योर स्टैटिक, सेकंड अप्लाइड कॉन्सेप्ट्स, एंड थर्ड डायनेमिक. अब डायनेमिक में इंस्पायर्ड भी रहता है या एज इट इज पूछ लेता है. बिसाइड इट टर्मिनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब दिस इज रिलेटेड टू स्टैटिक प्लस टर्मिनोलॉजी. टाइप्स ऑफ गुड्स इकोनॉमी में सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत क्यों होती है, बिकॉज द इशू इज रिलेटेड टू टर्म्स क्लियर नहीं है. तो मैं तुरंत द मोमेंट आई विल रीड दिस आई विल हाईलाइट कि टाइप्स ऑफ गुड्स इन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स. दीज आर द गुड्स इट इज टॉकिंग अबाउट. दिस इज द टाइप. Computer purchased by a company for office use, it is saying it is final good, capital good. We will see the answer. Answer कहीं नहीं जाएगा, वो हम कर लेंगे. Sugar purchased by bakery, final consumption good. Steel purchased by an automobile manufacturer, intermediate good. Car purchased by a family for personal use, final consumption good.
हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4 पेयर्स। ये ट्रेंड 2022 में उन्होंने स्टार्ट किया और 23 में तो एकदम इसको पॉपुलर बना दिया था। अब देखो आप लोगों को एक चीज मैं बोलूंगा कि कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन एग्जैक्टली आ जाए। अभी देखो वी आर गिविंग द मॉक टेस्ट। आप लोगों में से कुछ लोग बोलते हो कि ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ये चीज आएगा ही नहीं। बेटे बात ये नहीं कि आएगा कि नहीं, आपने इकोनॉमी रिवाइज करके आप आए थे, या आप ना कोई भी सब्जेक्ट अनुभव में पॉलिटी आप रिवाइज करके आए, ज्योग्राफी आप रिवाइज करके आए। अब हमने कुछ क्वेश्चंस दिए, आप उसमें से मान लो 15 क्वेश्चंस है, तो गौर करो कि 15 में से आपके कितने परसेंट सही हो रहे हैं, कितने अटेम्प्ट किए, उसका एक एनालिसिस करो कि किस एरियाज में अभी भी रह गया, क्या मेरा स्टैटिक वाले देखो कितने क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह से जब तक एनालिसिस आप नहीं कर रहे हो ना, सिर्फ टेस्ट दे दिया और आंसर देख लिया, नंबर देख लिया, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग दिस। इसीलिए कई बार आप सुनते हो कि मैंने 100 टेस्ट दिया फिर भी मेरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो एनालिसिस शायद नहीं कर रहे होंगे। एनालिसिस जरूर करो कि टेस्ट का पर्पस क्या है। टेस्ट का 3 पर्पस होता है। पहला कि भाई एक पर्टिकुलर सिलेबस में रिवाइज करके जाऊंगा, हर अनुभव के लिए अपने एक टारगेट करो, हर जो भी टेस्ट दे रहा हूँ। दूसरा आपका टेस्ट का पर्पस होता है कि मैं अपने आइडियाज़ को इंप्लीमेंट करूंगा, मुझे आइडियाज़ इंप्लीमेंट करने की भाई स्टैटिक क्वेश्चंस मेरे कैसे हो रहे हैं। थर्ड पोस्ट टेस्ट एनालिसिस, जो कि सबसे ज्यादा मेंसिंग है। पोस्ट टेस्ट एनालिसिस ही यहाँ पे हम करा रहे हैं। सिर्फ आंसर देना होता तो हम तो पीडीएफ आप लोगों को दे देते हैं, आंसर हो गया और मार्क्स हो गए। लेकिन यहाँ पे हमारा थोड़ा ये भी कोशिश रहता है कि आप लोगों को गाइड कर सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी चीज़ पे डिपेंडेंट हैं। वो देखते हैं, यूट्यूब का हेल्प लेते हैं और बहुत सारा उसका यूटिलाइजेशन करते हैं फॉर देयर ओन प्रिपरेशन। तो हमारा कोशिश ये रहता है कि आप लोगों को बताएं कि एनालाइज कैसे करना है। मुझे अगर इसको एनालाइज करना होता पेपर को, सबसे पहले मैं देखता कि कितने स्टैटिक क्वेश्चन है, कितने डायनेमिक है, कितने अप्लाइड हैं, मेरा किस में कितना मैंने अटेम्प्ट किया, कितनी गलतियां हो रही है क्या। अब उसमें फिर माइक्रो जाता कि भाई जहां गलतियां हो रही हैं कौन से टॉपिक्स में हो रही हैं, तो वो जरूर ध्यान दो आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। बाकी अब हम इसको करते हैं। अब कौन सा सही है, इससे पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं, कुछ अपने ब्रशअप कर लेते हैं हर बार की तरह। सो फाइनल गुड्स क्या होते हैं? 2 हैं, फाइनल और इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड्स क्या है? रीच द एंड ऑफ द प्रोडक्शन लाइन। सिंपल सी बात है, फाइनल मीन्स एंड ऑफ द प्रोडक्शन लाइन एंड रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर। और फाइनल यूजर के बेसिस पे 2 तरीके का हो सकता है, एक कंजम्पशन गुड हो सकता है, एक कैपिटल गुड हो सकता है। कंजम्पशन गुड मीन्स परचेज बाय हाउस होल्ड्स टू सेटिस्फाइड इमीडिएट वांट्स। अब जैसे हाउस होल्ड ने टेलीविजन खरीद लिया, ये मार्कर, बोर्ड मार्कर, आई एम यूजिंग दिस डिजिटल मार्कर, ये हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन की तरह यूज करेगा। अगर घर के लिए खरीदा है तो हाउस होल्ड। दूसरा कैपिटल गुड, परचेज बाय बिजनेसेस। अब जैसे नेक्स्ट आईएएस ने इसको खरीदा है, इट इज बिजनेस, कैपिटल गुड है ये। नेक्स्ट आईएएस के लिए कैपिटल है, लेकिन अगर यही सिर्फ मैं घर में इसको पढ़ाने के लिए यूज नहीं करूं, अपने पढ़ने के लिए एक डिजिटल बोर्ड लेके और यूज करो, देन इट विल बी ओनली कंजम्पशन गुड, बट बोथ इन बोथ कैटेगरी इट विल बी फाइनल। तो सिंपल सा ऐसे समझ गया। इंटरमीडिएट गुड, दीज आर गुड्स यूज्ड एज इनपुट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आप सब लोग जानते हो, जैसे स्टील यूज्ड टू मेक अ कार, सॉल्ट यूज्ड बाय अ रेस्टोरेंट, तो वो इंटरमीडिएट रॉ मटेरियल्स वगैरह जहां हम बोलते हैं उनकी बात हो गई। अब हम वापस जाते हैं अपने, अब हम अपने क्वेश्चंस को उसके बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश करें। कंप्यूटर परचेज बाय ए कंपनी फॉर ऑफिस यूज। कंप्यूटर क्या है? एक कैपिटल गुड है, और कौन यूज कर रहा है? कंपनी इज द एंड यूजर। तो भाई ये तो फाइनल कैपिटल गुड, सही बात है, ठीक है, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। सुगर परचेज बाय बेकरी, बेकरी ने खरीदा, बोल रहा है फाइनल कंजम्पशन गुड। बेकरी तो उसको यूज करने के लिए कर रहे हैं ना, बेकरी में यूज करने के लिए। यहीं पे हाउस होल्ड होता तो अलग केस होता, कंजम्पशन गुड नहीं है फाइनल। ये क्या है? इंटरमीडिएट गुड। सो दिस इज अगेन रॉन्ग, सेकेंड रॉन्ग। स्टील परचेज बाय एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, स्टील परचेज बाय, अब स्टील वो यूज करेंगे कहाँ? एज अ इंटरमीडिएट गुड फॉर समथिंग एल्स, इंटरमीडिएट गुड है, सही है। थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ, कार परचेज बाय ए फैमिली फॉर पर्सनल यूज। चौथा है कार परचेज बाय ए फैमिली फॉर पर्सनल यूज। अगर यहीं पे फैमिली की फाइनल कंजम्पशन गुड है, सही बात है, घर वाले ही उसको कंज्यूम कर रहे हैं। इसी की जगह ऑफिस होता या कैब कंपनी तो ये कैपिटल गुड में आ जाता, फाइनल कैपिटल गुड। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देखो 1 3 4 बहुत इजीली आ गया, ओनली 3 पेयर्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो कितनी सिंपली आ रहा है, ऐसे ही हम थोड़ा कोशिश करेंगे। देखो लॉजिक नहीं आ रहा है, ये बहुत इजी बेसिक क्वेश्चन था। क्यों हमने दिया? कई बार आप इजी और बेसिक चीजें नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हो, तो हम पूछ लेते हैं कि आपको ये भी याद रहेगा कि यार बेसिक और इजी भी रिवाइज करते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू कुकिंग कोल, इंपॉर्टेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अगेन। बोला है इट्स प्राइमरी, देखो वर्ड है प्राइमरी यूसेज
सिर्फ यूसेज बोलता अलग बात है, प्राइमरी यूसेज बोला है कि प्राइमरली वेयर इट इज यूसेज सिर्फ बोलता तो मैं एक्सेप्शंस की बात करता। अब ये प्राइमरी बोला है यानी कि मेजरली और जनरली इट इज यूज्ड इन इंडिया इन थर्मल पावर प्लांट्स बोला है फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। देखते हैं, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। क्या है? प्रोड्यूसर। यहाँ पे ध्यान रखना है, कभी कभी जल्दीबाजी में एग्जाम में प्रेशर होता है। राइट नाउ अभी आप लोग मॉक देते हो, चीजें देते हो, उतना प्रेशर नहीं रहता है, लेकिन एग्जामिनेशन में प्रेशर है। जल्दी जल्दी में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में हम जो देखना चाहते हैं ना एग्जाम में, कई बार वही बस दिखता है। ऑफ कुकिंग कोल इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कुकिंग कोल इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। देखते हैं, फैक्ट है। अब दिस इज फैक्ट, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड कुकिंग कोल एज अ क्रिटिकल मिनरल। अब देखो ये करंट अफेयर्स है, वो फैक्ट है, ये करंट अफेयर्स है, ब्लेंड किया हुआ है इसमें सब कुछ। प्राइमरी यूसेज ये इसका कॉन्सेप्ट है, कहाँ यूज होता है। दिस इज नॉट करंट अफेयर्स। कुकिंग कोल आज से नहीं यूज हो रहा है, 100 साल से यूज हो रहा है। तो ये करंट अफेयर्स नहीं है कि आज आप पढ़ रहे होगे तो इसलिए आपको लग रहा है करंट अफेयर्स। नहीं, ये कॉन्सेप्ट है, ये फैक्ट है, ये करंट अफेयर्स है। सो दिस इज करंट अफेयर्स इंस्पायर्ड एज वेल एज करंट का भी एक फैक्ट है। इस तरह से क्वेश्चन को ब्लेंड किया जाता है, वहां पे भी होता है। हम कोशिश वही कर रहे हैं कि उस तरह की चीजें आपको पूछें। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इज और आर करेक्ट? करेक्ट पूछा है, 1 only, 2 and 3, 3, 1 and 2 and 3। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। अब देखो ये क्यों आया है, कुकिंग कोल वाला क्वेश्चन क्यों आया है? बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड कुकिंग कोल एज अ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल। क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल अंडर द MMDR एक्ट, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हो सकता है यूपीएससी, जैसे हमने तो नहीं पूछा, यूपीएससी इसी MMDR एक्ट को बदल दे, यहाँ पे कर दे कोई भी XYZ एक्ट, उस एक्ट के तहत वो बोलते हैं इसेंशियल्स कमोडिटी एक्ट बोल दिया, कि उसके अंडर उन्होंने क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल बोल दिया। आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस एक्ट के लिए बोला है। द डिसीजन हैज बीन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, किसने रिकमेंड किया है? ये भी देखो एक अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये मैंने PIB से लिया है, ऑथेंटिक सोर्स है, तो इस इंफॉर्मेशन पे आप कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो। ऐसे ही लिखा है उन्होंने, हाई लेवल कमिटी ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विकसित भारत HLCVB एंड पॉलिसी इनपुट्स फ्रॉम नीति आयोग, recognizing the strategic role of cooking coal in ensuring mineral security and meeting the requirements of domestic steel sector। ओके, यानी कि स्टील से कुकिंग कोल कुछ रिलेटेड है। अभी देखते हैं, इंडिया हैज एस्टिमेटेड कितना, इतना टन्स ऑफ कुकिंग कोल। ये रिसोर्स रिजर्व है, इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ये रिजर्व है, मिनिस्ट्री बोल रही है। एंड लार्जली लोकेटेड इन वेयर, झारखंड। यानी झारखंड अगर पूछ लिया, हो सकता है कि उसमें ज्योग्राफी को भी ब्लेंड कर दे वो, और आपसे पूछ लें कि कुकिंग कोल किस स्टेट में सबसे ज्यादा होता है। सो माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी झारखंड विथ एडिशनल रिजर्व्स। और कहाँ कहाँ है? MP में है, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, डिस्पाइट दिस डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी, अब हमारे यहाँ है तो रिजर्व, लेकिन इंपोर्ट्स अभी भी हो रहा है। इंपोर्ट्स ऑफ कुकिंग कोल हैव इंक्रीज हुआ है 51.2 मिलियन टन से 57.58 मिलियन टन। ईयर इज FY21 टू FY25, मतलब पिछले 5 साल में बढ़ाई है। Currently around 95% of the coking coal requirement of the steel sector is met through imports। आप देख लो 95%, यानी कि हम मुश्किल से 5 मिलियन टन भी शायद नहीं प्रोड्यूस करते हैं कुकिंग कोल, इतना रिसोर्स होने के बावजूद। देख रहे हो? सो दैट्स द इशू लीडिंग टू सिग्निफिकेंट फॉरेन एक्सचेंज आउटगो। इसीलिए इसको इन्होंने क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल डिक्लेयर किया। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड अंडर दिस सेक्शन ऑफ MMDR एक्ट हैज अमेंडेड द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट। अब इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट, पहले टर्म था कोल, उसमें डिफाइन, अब कर दिया कोल इंक्लूडिंग कुकिंग कोल, एंड कुकिंग कोल हैज बीन इंक्लूडेड इन पार्ट डी विच लिस्ट क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल। सो क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स कहाँ हैं? MMDR एक्ट में है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसमें देखो काफी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट और वॉट एवर यू वॉन्ट, और इसको आप यूज करो। मैं बोर्ड से बाहर हो जाता हूँ, आप लोग इसको ले लो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं डिस्कस कर देता हूँ। कुकिंग कोल, अब कुकिंग कोल के बारे में भी देख लेते हैं भाई कि कुकिंग कोल होता क्या है। और देखो दिस ईयर आई बिलीव ड्यू टू व्हाट हैपनिंग इन वेस्ट एशिया,
एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, तो एनर्जी सेक्टर को थोड़ा प्रिपेयर करेंगे। एनर्जी सेक्टर का प्रिपेयर क्या करना है एनर्जी सेक्टर में, देखो वही 3 चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी। एक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, मतलब कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू, जैसे कोकिंग कोल है, LNG है, उनकी फीचर्स, यूसेज, फीचर्स और यूसेज आप कर लो। दूसरा, उनका ट्रेंड आप देख लो कि भाई ट्रेंड क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इंडिया का क्या है, और इंडिया की रैंकिंग वगैरह भी, ट्रेंड ऑफ इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट और रैंकिंग, और रिसेंटली गवर्नमेंट ने कोई मीजर लिया है तो वो प्रिपेयर कर लो। इन चीज़ों को जरूर एनर्जी सेक्टर में प्लीज़ प्रिपेयर कर लेना, हेल्प करेगा। हो सकता है आए, हो सकता है नहीं आए, लेकिन अगर आए तो हम एडवांटेज में रहें, ठीक है। वही 2-4 क्वेश्चन ही मैटर करता है। बहुत सारे अभी स्टूडेंट्स का स्कोर कार्ड आया है जिन्हों को मैंने गाइड किया था प्रीलिम्स के लिए, तो आई हैव सीन कि अगर किसी का रुका हुआ है तो 5 to 10 मार्क्स, 15 मार्क्स मैक्सिमम, वो खुद ही कहते हैं कि सर 6-7 क्वेश्चंस का है। ऐसे ही 6 क्वेश्चंस 7 क्वेश्चंस, थोड़ा एनालिसिस, थोड़ा प्रैक्टिस और थोड़ा अपना प्रिपरेशन एडवांस में कर लेते हैं, हो जाता है। इट इज़ अ नेचुरल अकरिंग, तो बेटे बोला है इट इज़ नेचुरली अकरिंग, सिंथेटिक नहीं है, नेचुरली अकरिंग है। कहाँ? सेडिमेंट्री रॉक। अब देखो यहाँ पे ट्रैप आ सकता है, सेडिमेंट्री की जगह वो इग्नियस या मेटामॉर्फिक बोल देंगे, दैट्स वाई इसको ज्योग्राफी से भी लिंक करते जाना है, क्योंकि ये क्या है आपका, ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का भी पार्ट है ना। फाउंड विद इन द अर्थ क्रस्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज मेटलर्जिकल कोल। अब अगली बार नाम आ गया कुकिंग कोल की जगह पेपर में आ गया मेटलर्जिकल कोल, हम कहेंगे हमने तो पढ़ा नहीं है, इसका दूसरा नाम है। बेटे कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, यही मैं कह रहा था कि फीचर्स आप प्रिपेयर कर लो ना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? टाइप ऑफ कोल दैट सॉफ्टन्स एंड स्वेल्स, फूल जाता है वो, स्वेल कर जाता है। व्हेन हीटेड, हीट जब करते हैं, फॉर्मिंग लाइट वेट पोरस कोक पार्टिकल्स एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्री स्वेलिंग इंडेक्स ऑफ 1 और ग्रेटर। ये थोड़ा टेक्निकल हो गया है, लेकिन बस आप ये समझ लो कि स्वेलिंग हो जाती है। क्या क्या कंटेंट करता है? कार्बन लेस एस, एस क्या है? एस कंटेंट इज लेस, ये ध्यान रखना है। लेस मॉइस्चर देन थर्मल कोल विच इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इसमें मॉइस्चर कम है। इसेंशियल इंग्रेडिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील, इसीलिए गवर्नमेंट बोली इसको, क्योंकि स्टील की सेक्टर में इसको डायरेक्टली यूज़ करते हैं और हम इसको इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। किसी दिन इंपोर्ट पे कुछ प्रॉब्लम आ गया, इशू आ गया, तो हमारे लिए दिक्कत होगा। दैट्स वाई इसको गवर्नमेंट ने क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल बोला है। मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड बिल्डिंग मटेरियल ऑन अर्थ। 70% ऑफ द स्टील प्रोडक्शन टुडे यूजेस कोल। 70% जो हमारा प्रोडक्शन है ऑफ स्टील, कोल यूज हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या ट्रैप आ सकता है, 100% कहीं पूछ लिया। दिस थिंग इज फ्रॉम मिनिस्ट्री। अराउंड 0.6 टन्स ऑफ कोक प्रोड्यूसेस 1 टन। अब ये देखो, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है। टेक्निकल का मतलब कि थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर इतना स्पेसिफिक नहीं पूछेगा, क्योंकि PIB में खुद दिया हुआ है तो वो शायद पूछ लें, इसलिए मैंने ये दे दिया आपको। विच मीन्स 770 kg ऑफ कोल आर यूज टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ स्टील। अच्छा खासा है। दूसरा, कुकिंग कोल से क्या होता है? आप देखो बेटे, यहाँ पे मैंने कोक लिखा है, COKE, अपना वो पीने वाला कोक नहीं, ठीक है, उस पर नहीं ध्यान देंगे। दिस कोक इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ द हाई टेम्परेचर कार्बनाइजेशन ऑफ कुकिंग कोल। जब हाई टेम्परेचर कार्बनाइजेशन होता है, हाई टेम्परेचर पे इसको हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? कोक इज फॉर्म्ड। यही मेन प्रोडक्ट है। अदर बाई प्रोडक्ट्स हैं कोक प्रोडक्शन के, टार, बेंजोल, अमोनिया सल्फेट एंड सल्फर। अब देखो साइंस एंड टेक में आप याद करो, आजकल ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं इन्वायरमेंट में, आप बोलते हो इसको कि वो कई बार पूछ देते हैं किसी प्रोडक्ट के कि रिफाइनरी प्रोसेस से जो मिलता है कहाँ यूज़ होता है, रोड कंस्ट्रक्शन में या क्या। 19, 20, 21, 22, 23 में काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस आने शुरू हुए थे, तो ये वहाँ पे आपको हेल्प करेगा सॉल्व करने में कुछ। उसके अलावा गवर्नमेंट ने कुकिंग कोल मिशन भी लाई थी। कोल मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था मिशन कुकिंग कोल टू एड्रेस द ग्रोइंग डोमेस्टिक डिमांड फॉर कुकिंग कोल एज प्रोजेक्टेड इन द नेशनल स्टील पॉलिसी 2017। अभी कोल प्रोडक्शन को इन्हेंस किया गया है 52, कुकिंग कोल प्रोडक्शन को 52 मिलियन से ये टारगेट है कि 140 मिलियन टन तक हमें लाना है। इन्हेंसिंग कोल वॉशिंग कैपेसिटी, कोल वॉशिंग कैपेसिटी भी लाना है, ये हमारा कुकिंग कोल मिशन बोल रहा है। 23 MT to 61। अब देखो ये क्यों मैंने दिया है बेटे, ये सारी चीज़ें आपको इसलिए दे रहा हूँ समझने के लिए कि कई बार वो क्या है ना, 4 स्टेटमेंट देते हैं, आप कहते हैं सर हमने तो 2 ही पढ़ा था। जनरली बच्चा ये कुकिंग कोल का यहाँ तक पढ़ के छोड़ देगा। अब ये है गवर्नमेंट इनिशिएटिव, मैंने बोला गवर्नमेंट ने कोई मीजर लिया है, अब ये पहले लिया था, अभी नहीं लिया है। कुकिंग कोल मिशन अभी तुरंत नहीं आया, ये पुराना है। उसके 2 फीचर्स जो इंपॉर्टेंट है उसी में से एक पूछ लिया, तो इस तरह से हमें प्रिपेयर करना है।
लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, प्रोडक्शन ऑफ कुकिंग कोल। तो ये 2020 तक वाला ही डेटा है जो मुझे ऑथेंटिक मिला है। कहाँ से? IEA, अपना इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, वहाँ से मिला है, उन्होंने दिया है। अब उन्होंने दिखाया कि वर्ल्ड का देखो प्रोडक्शन क्या है, ये है वर्ल्ड, दिस वन। सेकेंड नंबर, ये तो वर्ल्ड हो गया। फर्स्ट नंबर पर कौन है? चाइना। आप चाइना देखो 500 मिलियन टन के आसपास है, 500। इंडिया ग्रीन वाला, अपना ग्रीन वाला देखो ये है इंडिया माय डियर स्टूडेंट्स, ये इंडिया है। 1 2 3 4 ऑलमोस्ट। यूनाइटेड स्टेट्स, सॉरी इंडिया अपना ग्रीन वाला तो वो तो नीचे है, और नीचे हम सॉरी, ये इंडिया अपना एकदम नीचे है, ये यूनाइटेड स्टेट्स है। तो इंडिया का तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल प्रोडक्शन है, 5 to 10 हमने देखा ही था। यूनाइटेड स्टेट्स के पास है, रशिया का है, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, रशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड नंबर ऑस्ट्रेलिया। सो व्हाट इज ऑर्डर? फर्स्ट चाइना, सेकेंड ऑस्ट्रेलिया, थर्ड यूएस नहीं, थर्ड रशिया, देन यूएस, थर्ड इज रशिया, फोर्थ इज यूएस। तो ये अपना ट्रेंड है, आपको बस टॉप 3-4 पता होना चाहिए। इंडिया तो नेग्लेजिबल ही है, ऑलमोस्ट प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं है इंडिया का। तो वी आर टू मच डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आपका, जिसमें आपको आंसर में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। इट्स प्राइमरी यूसेज इन इंडिया इज इन थर्मल पावर प्लांट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो मैंने आपको उतना ऑलमोस्ट वो उस चीज़ में दे दिया कि जिससे आपका सिर्फ आंसर नहीं, जिससे आपका आगे का भी काम हो जाए। दैट्स व्हाट माय पर्पस इज। अब देखो प्राइमरी यूसेज थर्मल पावर प्लांट नहीं, स्टील सेक्टर में यूज़ करते हैं। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं बाबा, चाइना है, इंडिया नहीं है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। हमने अभी देखा ट्रेंड, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली डिक्लेयर एज ए क्रिटिकल मिनरल। हाँ सही बात है, क्रिटिकल मिनरल बोला है। अब आप इस पे बस मत दुखी होकर बैठ जाना कि नहीं सर क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल दोनों बोला है। बेटे एक वर्ड है, इतना ज़्यादा अगर आप इमोशनल होकर पेपर करने लगोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो थर्ड इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट। 1 इज प्राइमरी यूसेज गलत है अपना, बस थर्ड सही है। सी स्टेटमेंट सी, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। फर्स्ट एंड सेकेंड आर रॉन्ग, थर्ड इज करेक्ट। आगे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट। बच्चों अच्छे से इसको करते हैं थोड़ा। विथ रेफरेंस टू RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटर है, RBI, SEBI, PFRDAI, IRDAI, दीज आर इंपॉर्टेंट, SIDBI, नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बोर्ड। तो इन बॉडीज को भी प्रिपेयर कर लो आप थोड़ा सा देख के। तो RBI इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी हम देखेंगे ये क्यों आ रहा है आपको कि सर ये तो काफ़ी पुराना है। देखो कई बार अगर न्यूज़ नहीं फॉलो करो तो आपको पता भी नहीं चलता है। ये बहुत ही रिसेंटली न्यूज़ में था। क्या बोल रहे हैं? इट प्रोवाइड्स कॉस्ट फ्री रेड्रेसल ऑफ कस्टमर कंप्लाइंट्स इन्वॉल्विंग डेफिशिएंसी इन सर्विसेज बाय कॉमर्शियल बैंक एंड NBFCs रजिस्टर्ड विद द RBI। देखते हैं क्या है, कॉमर्शियल बैंक भी है और NBFCs को भी बोल रहे हैं। देखते हैं। RBI सीनियर ऑफिशियल ऑफ द RBI अपॉइंटेड बाई, कौन? RBI ही कर रहा है, बोल रहे हैं। देखते हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन इज आर करेक्ट। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 and 2। देखते हैं, थोड़ा सा पहले हम इंफॉर्मेशन ले लें। देखो ये है हेडलाइन न्यूज़पेपर की, 17 जनवरी की न्यूज़पेपर की हेडलाइन है हिंदू की। RBI इशूज रिवाइज्ड इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम टू हियर कंप्लेंट्स अगेंस्ट बैंक्स NBFCs। यहाँ ये एक लिंक मैंने आपको दे रहा हूँ, यहाँ से इसके बारे में और पढ़ सकते हो। देखो FAQs हैं इसमें, ये बेसिकली FAQs हैं RBI प्रोवाइड की है। ये आपको जरूर जाके पढ़ो प्लीज़ इस पे, इस स्कीम के रिलेटेड, क्योंकि इस साल हो सकता है ये पूछ लें इकोनॉमी में। और इसमें जैसे 2020 या 21 में अपना एक क्वेश्चन आया था रिलेटेड टू MP लैड्स। उसमें FAQs जो उसका दिया हुआ है ना मिनिस्ट्री की साइट पे, वहाँ से ही उठा के पूछा था। इस FAQs में आप जनरली देख लो कि कौन इंक्लूड है, क्या एक्सक्लूडेड है, वो लिखा हुआ है। एक स्क्रॉल कर लो, एक बार स्क्रॉल कर लोगे तो आपको ध्यान रहेगा, चीजें आएंगी तो इजिली कर लोगे। RBI इंटीग्रेट्स इट्स 3 erstwhile ऑम्बड्समैन स्कीम। 2006 में उन्होंने बैंकिंग के लिए लाया था, फिर NBFCs के लिए लाया था, फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन, तीनों को मिला के RBI इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम 2021, जिसको RBIOS 2021 बोलते हैं। नवंबर 12, 2021, काफ़ी पुराना है। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं वो, हमारी हेडलाइन है टू हियर कंप्लेंट्स अगेन
उन्होंने इशू किया रिवाइज इंटीग्रेटेड, इसको रिवाइज किया है। सो दैट्स वाई क्या इस्टेब्लिश भी करेंगे लाइक सेंट्रल रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर। तो ये क्या है, CRPC इसको बोलें अगर हम, तो CRPC क्या है सेंटर, उसके क्या फंक्शंस है, फीचर्स हैं, उस FAQs में दिया हुआ है इसमें, आप प्लीज इसको जरूर पढ़ लो माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है बेटे, तो उसके बाद आगे चलते हैं। घबराना परेशान नहीं होना, इजी हो जाएगा। RBI में प्रोवाइड्स फॉर कॉस्ट फ्री रिड्रेस ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स इन्वॉल्विंग डेफिशिएंसी इन सर्विसेज rendered by entities regulated by RBI if not resolved to the satisfaction of the customer or not replied to within a period of 30 days। 30 days में अगर regulated entity कौन है, for example banks, NBFCs, those are regulated entities, अगर वो 30 days में नहीं रिप्लाई कर रहे हैं तो आप उनके पास जा सकते हो और ये कॉस्ट फ्री होता है। Scheme simplifies the grievance redress process at RBI by enabling the customers of regulated entities, banks, NBFCs, payment system participants, PSPs, payment system participants like फोन पे, भीम, उनको भी ये इसके अंडर आते हैं वो, एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, CICs, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज भी आ सकती हैं। उन एक जगह सबको कर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, रिजॉल्व द कस्टमर ग्रीवांस इन्वॉल्विंग डेफिशिएंसी इन सर्विस। देखो एक ये टर्म है डेफिशिएंसी इन सर्विस, ये डिफाइन किया है किस लिए, स्पीडी, कॉस्ट इफेक्टिव एंड सेटिस्फैक्टरी मैनर में। इसमें अगर देखा जाए और कौन कौन आ रहे हैं, स्कीम ऑल्सो इंक्लूड्स एडिशनल रेगुलेटरी एंटिटीज, नॉन स्केड्यूल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स विद अ डिपॉजिट साइज ऑफ 50 करोड़। अब देखो ये है, उन्होंने बोला नॉन स्केड्यूल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव, अगर सिर्फ प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ऑप्शन में है, स्टेटमेंट में है, तो वो गलत होगा। इसीलिए इस तरह से हमें प्रिपेयर करना है, थोड़ा सा ध्यान देके, और वो भी 50 करोड़ डिपॉजिट साइज होना चाहिए मिनिमम। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज भी, वो तो हम देख ही लिए थे। वन नेशन वन ऑम्बड्समैन अप्रोच है। RBI ऑम्बड्समैन कौन होता है, सीनियर ऑफिशियल ऑफ RBI ही होता है, और अपॉइंट कौन करता है, RBI, टू रिड्रेस द कंप्लेंट्स। डेफिशिएंसी इन सर्विस डिफाइन किया गया है क्लॉज में, तो अगर यही पूछ ले कि डेफिशिएंसी इन सर्विस इज डिफाइंड इन दिस और नॉट। ए डेप्यूटी ऑम्बड्समैन इज अ सीनियर ऑफिसर, ये भी इसमें दिया है कि डेप्यूटी ऑम्बड्समैन वो भी होगा, अपॉइंट कौन करेगा, RBI, असिस्ट द RBI ऑम्बड्समैन, असिस्ट करेगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन अब इसमें नहीं है। इसके अलावा एक बार जरूर आप इस पे जाके थोड़ा सा पढ़ लेना, आपको हेल्प करेगा। नाउ इट प्रोवाइड्स कॉस्ट फ्री, यस कॉस्ट फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। रिड्रेस ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स इन्वॉल्विंग डेफिशिएंसी इन सर्विसेज बाई कॉमर्शियल बैंक, यस कॉमर्शियल बैंक्स हैं एंड NBFCs हैं, दोनों हैं रजिस्टर्ड विद द RBI। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन है रजिस्टर्ड। RBI ऑम्बड्समैन इज अ सीनियर ऑफिशियल ऑफ RBI अपॉइंटेड बाय RBI, यस दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है माय डियर स्टूडेंट्स, सी बोथ 1 and 2। हम लोगों ने बहुत डिफिकल्ट इस पे क्वेश्चन नहीं बनाया था, क्यों कई बार ऐसा होता है ना कि ओवर डिफिकल्ट बना दो तो बच्चे का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। अब ये थोड़ा ईजी लगा, आपको समझ में आया कि क्या किस तरह से ये भी चीज, कई बार UPSC एग्जाम ऐसे बेसिक फैक्ट्स पूछ लेगी। ठीक है, let us see next question. Our next question is question number 25. Consider the following statement. Statement 1, Statement 2, Statement 3. My dear students, जिसमें 3 स्टेटमेंट आता है, एक चीज़ मैं पहले जो ऑब्जर्व किया हूँ वो बता दूँ, उनका ये देखना उसमें कभी भी स्टेटमेंट 1 अभी रॉन्ग नहीं दे रहे हैं, तो यही बस मतलब स्टेटमेंट 1 सही ही होगा, उस कहीं लिखा ही नहीं होगा कि स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, सिर्फ ये बोलेगा कि ये दोनों रॉन्ग हैं, स्टेटमेंट 2 और 3 इनकरेक्ट हो सकते हैं, या ये दोनों करेक्ट होके एक्सप्लेन कर रहे हैं, या इनमें से एक है। तो ये ध्यान रखो, हो सकता है UPSC इस चीज को चेंज कर दे, इसलिए ध्यान रखना इस बार व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग पेपर बी वेरी केयरफुल। हो सकता है सिर्फ इस स्टेटमेंट को भी वो इस बार रॉन्ग कर दें, स्टेटमेंट 1, 2, 3 भी रॉन्ग है, और हम तो आदत पड़ चुकी है क्योंकि ये तो हमेशा सही होता है, तो हम देखेंगे। अब अगेन देखो, ये है अपना फाइनेंशियल मार्केट का क्वेश्चन। फाइनेंशियल मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहा है धीरे धीरे प्रीलिम्स में, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज है और थोड़ा सा हम उससे फेमिलियर कम रहते हैं। हम हमेशा बेसिक इकोनॉमी पढ़े हैं, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से को थोड़ा नेग्लेक्ट रहता है कई बार। सो माय सजेशन इज कि इसके टर्मिनोलॉजीज पढ़ लो, रिवाइज कर लो, आजकल आ जा रहे हैं 3-4 क्वेश्चन भी आ जा रहे हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट एरिया अगेन, इसीलिए हम हर बार हम ये अगेन आई विल से कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन ही आएगा, हो सकता है ये थीम आ जाए, हो सकता है ये क्वेश्चन भी आ जाए, हो सकता है कि कुछ और भी आ जाए रिलेटेड टू फाइनेंशियल मार्केट। तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि आपका फाइनेंशियल मार्केट का प्रिपरेशन हुआ है कि नहीं। ठीक है, लेट अस सी। फ्यूचर डेरिवेटिव्स आर वाइडली यूज्ड टू मैनेज रिस्क अराइजिंग फ्रॉम प्राइस वोलेटिलिटी इन फाइनेंशियल एंड कमोडिटी मार्केट। देखते हैं,
इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, अब किसका बात किया, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट इज एग्रीड अपॉन टुडे फॉर सेटलमेंट एट अ स्पेसिफाइड डेट इन द फ्यूचर. Statement 3, a future contract allows the buyer to decide later whether or not to execute the transaction. Which one of the following is correct in respect of the above statements? Both 2 and 3 are correct. इसको बोल रहा है इन दोनों को सही है. And both of them explain statement 1. ये दोनों सही इसको explain कर रहे हैं. इसको तो वो मान ही चुका है कि सही है, अभी के हिसाब से यही आ रहा है, ये जो आ रहा है. लेकिन ये भी आप जब इस साल यूपीएससी पेपर देने जाओ, प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले साल वाले पे सिर्फ मत डिपेंड करो कि इसी तरह का इंस्ट्रक्शन होगा. हो सकता है कि इस बार ये दिया है, इस बार आ जाए ऑल 3 आर करेक्ट, या स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट करेक्ट, ये भी कर दे. बोथ स्टेटमेंट 2 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स. दोनों सही है लेकिन एक एक्सप्लेन कर रहा है. ओनली वन ऑफ द 2 and 3 इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन्स. नाइदर 2 nor 3 इज करेक्ट. ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा हम डेरिवेटिव्स वगैरह के बारे में एक हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि इन सारी चीज़ों को कैसे करना है. क्योंकि टर्मिनोलॉजीज हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाता है, बच्चे याद नहीं रहता है. टर्म्स बार बार रिवाइज करोगे, एक शॉर्ट नोट्स बना लो अपना टर्मिनोलॉजीज का. ठीक है, आरबीआई का भी अगर गूगल पे आप सर्च करोगे आरबीआई टर्मिनोलॉजीज तो आ जाएगा लिस्ट, उसमें बहुत सारे टर्म्स उन्होंने दे रखे हैं. तो लेकिन उसका अपना शॉर्ट नोट्स बनाओगे तब याद रहेगा. तो जैसे जैसे टर्म्स मिलते जाए, कभी कभी टेस्ट पेपर्स में आप लोगों को नए नए टर्म्स मिलते हैं तो उनको एड ऑन किया करो. डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स. क्या है, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है. कॉन्ट्रैक्ट मींस इट इज बीइंग विद इन 2 बॉडीज, 2 लोगों के बीच में. हो सकता है 2 इंस्टीट्यूशंस हो, 2 इंडिविजुअल हो, कुछ भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल एक इंस्टीट्यूशन. एंड हुज वैल्यू इज डिराइव्ड, उसकी वैल्यू मनी वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट. अब डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स का मतलब डिराइव्ड हुआ किसी चीज से. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, तो उनके डेरिवेटिव्स होते हैं कि राइस का है, राइस इज द अंडरलाइंग एसेट, और उसके बेसिस पे आप एक डेरिवेटिव बना दिए हो और उसी डेरिवेटिव को आप किसी के साथ खरीद बेच रहे हो, सेल एंड बाई कर रहे हो, दैट इज नोन एज डेरिवेटिव. लाइक स्टॉक्स भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, कमोडिटीज. स्टॉक्स लाइक आपका ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को मिला के उसके बेसिस पे एक डेरिवेटिव बना दिए. की फीचर्स इंक्लूड सेटलमेंट ऑन अ फ्यूचर डेट. इसमें सेटलमेंट फ्यूचर डेट में होता है. लिटिल टू नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, थोड़ा बहुत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. वैल्यू चेंजेस टाइड टू अंडरलाइंग मार्केट फ्लक्चुएशंस. दे आर प्राइमरली यूज्ड फॉर हेजिंग रिस्क. किसके लिए प्राइमरली यूज हो रहे हैं, हेजिंग रिस्क के लिए. अब जैसे फार्मर है, फार्मर इंडिया में ये इशू होता है ना, आप कई बार देखते हो कि टोमेटो वेस्ट हो रहा है, प्राइस क्रैश हो गया एंड नाउ दे हैव टू थ्रो एट रोड और समवेयर एल्स. सिमिलरली अनियन प्राइसेस कभी कभी क्रैश कर देते हैं, कभी कभी बहुत हाई हो जाता है. सो दैट्स द इशू. तो उस चीज के लिए डेरिवेटिव्स लाए गए. इसमें रिस्क है फार्मर के लिए, लाइक फार्मर इज सेलर हियर. बायर कोई हुआ, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे कि चल भाई इस प्राइस को ही फिक्स कर लेते हैं पहले, उसके बेसिस पे. तो प्री डिटरमिन्ड प्राइसेस मोस्टली होते हैं और वो फ्यूचर डेट पे सेटलमेंट होता है, क्योंकि प्रोडक्शन उस दिन होगा. प्रोडक्शन तो अभी हुआ नहीं, प्रोडक्शन जिस दिन होगा, सेटलमेंट फाइनल उस दिन होगा. अब उसी के बेसिस पे 4 टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव स्पेकुलेशन और आर्बिट्रेज के लिए भी यूज करते हैं. सो फ्यूचर्स क्या होता है, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ऑन एक्सचेंजेस. अब देखो ये एक्सचेंज पे ट्रेड होता है. टू बाई और सेल एन एसेट एट अ सेट प्राइस. अब ये सेट प्राइस इनिशियली हम सेट कर देते हैं. फ्यूचर्स, जब भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में आप जाते हो जो फ्यूचर है, तो उसमें सबसे बड़ा पहला कंडीशन क्या है, आज की ही प्राइस, या आज जो भी आज की ही प्राइस, या आज जो वो दोनों लोगों ने मिल के डिसाइड किया. जैसे मैं हूं और आप हैं, वी आर ट्राइंग टू सेल एंड परचेज राइस, व्हीट और एनीथिंग. ठीक है, यही मार्कर. अब हो सकता है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसका प्राइस फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ गया. फॉर एग्जाम्पल फार्मर एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई किसी को नहीं पता है कि व्हीट, राइस, क्रॉप्स, मोस्टली एग्रीकल्चर कमोडिटी में किसी को पता नहीं होता है कि प्राइस बढ़ेगा या घटेगा. एक जनरल अंदाजा लगा सकते हैं. जैसे अपना अभी क्रूड ऑयल के साथ हो रहा है, उसका भी डेरिवेटिव है. क्रूड ऑयल इज ऑल्सो अ कमोडिटी, उसका भी डेरिवेटिव है, उसका भी इंक्रीज डिक्रीज होता है, उसमें भी स्पेकुलेशन भी करते हैं. सो फॉर दैट ऑल्सो फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस वगैरह हम यूज करते हैं. अब मैं मान लो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 10-20 दिन बाद क्रूड ऑयल प्राइसेस क्रैश होने वाले हैं. ठीक है, और आप प्रोड्यूसर हो, सऊदी अरेबिया हो गए या कोई भी XYZ कंट्री हो गया, मान लो आप प्रोड्यूसर हो, आपको लग रहा है यार प्राइसेस क्रैश होने वाले हैं. अब मैं उस समय करूंगा क्या, मुझे बहुत घाटा होगा. आपने मुझसे डिस्कस किया
लेकिन आप कहोगे कि नहीं प्राइसेस नहीं क्रैश होंगे, किसी को पता नहीं, हो सकता है नहीं भी हो। फिर हम लोग एक मिडवे पॉइंट पे आएंगे। मैं तो कहूँगा कि आप कहोगे कि नहीं आज के प्राइस पे सेटल कर लेते हैं। आज मान लो क्रूड 100 टच कर रहा है, $100 पर बैरल, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो तो 10 तक पहुंच जाएगा। आप भी एक्सेप्ट 10 नहीं देने के लिए तैयार हो पे, और मैं 100 पे भी नहीं। तो हम धीरे धीरे एक मिड पॉइंट पे आएंगे। प्री डिटरमिन्ड होगा, वो आज ही हम डिसाइड कर लेंगे, अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख देंगे। मान लो हमने डिसाइड किया कि चलो 35 पे हम डिसाइड करते हैं। उस दिन हो सकता है कि प्राइस 100 का 100 रह जाए, उस दिन हो सकता है प्राइस 10 का, लेकिन हमें प्री डिटरमिन्ड प्राइस पे ही वो सेटल करना होगा। फाइनल सेटलमेंट उस दिन वही होगा, दैट इज फ्यूचर्स। फॉरवर्ड्स क्या होते हैं? कस्टमाइज प्राइवेट एग्रीमेंट। अब देखो ओटीसी का मतलब क्या है, कई बच्चों को नहीं पता होता है, ओवर द काउंटर, तो इसीलिए मैंने डाल दिया। रेफर्स टू ट्रेडिंग सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव्स और प्रोडक्ट्स डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टीज रादर देन थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। जब स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू होगा तो फ्यूचर्स होगा, फॉरवर्ड्स आपस में ही दो लोग कर रहे हैं। Between two parties, buy or sell an asset at a specified price on a future date, carrying higher counterparty risk than futures. Options क्या होते हैं? Contracts giving the buyer. अब देखो ऑप्शंस में क्या होता है, बायर को राइट होता है बट नॉट ऑब्लिगेशन। उसके इसमें क्या है कि अगर आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपको खरीदना ही खरीदना और मुझे बेचना ही बेचना है, आप भाग नहीं सकते, मैं भी नहीं भाग सकता। यहां पे क्या है कि बायर के पास राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है। यहाँ पे बायर जैसे मैं हूं, अगर हमने ऑप्शंस किया, ऑप्शंस वाला डेरिवेटिव चूज किया, तो मेरे पास चॉइस है, मैं खरीदूंगा, मेरा मन करेगा, मुझे लगेगा कि मुझे फायदा हो रहा है तो खरीदूंगा, नहीं तो नहीं। अब यहाँ पे और प्राइसेस हम कम लेके जाएंगे। मैं 10 बोल रहा था, आप कहोगे कि नहीं 100 है, तो आप हो सकता है इस वाले केस में $35 पे मान गए थे क्योंकि मजबूरी था, मुझे खरीदना ही खरीदना है, एसओटी तो है यहाँ पे। इसमें हो सकता है रिस्क ज़्यादा है, इसमें रिस्क ज़्यादा है सेलर के लिए, तो इसमें हो सकता है कि आप $50 या 60 पे आ जाओ। टू बाई वाले को क्या बोलते हैं? कॉल ऑप्शन, और सेल वाले को पुट ऑप्शन बोलते हैं। दो टर्म्स और हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। एंड एसेट एट अ प्री डिटरमिन्ड प्राइस, प्राइस प्री डिटरमिन्ड होगा, उसी को स्ट्राइक प्राइस भी बोलते हैं। देखो उसी को स्ट्राइक प्राइस भी बोलते हैं। अगेन एक टर्मिनोलॉजी, भर भर के टर्मिनोलॉजीज हैं। यही इशू होता है कि बच्चों को टर्मिनोलॉजी या तो क्लियर नहीं हुआ है या तो वो रिवाइज नहीं कर रहे हैं। अभी जैसे कंफ्यूजन हुआ, आप पढ़ लो, अगर इसमें कोई भी एक भी टर्म क्लियर नहीं है तो इमीडिएटली पढ़ लो। विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। स्वैप्स क्या है? कॉन्ट्रैक्ट्स टिपिकली बिटवीन इंस्टीट्यूशन, जैसे इंडिया जापान ने कर रखा है डॉलर स्वैप कि किसी पर्टिकुलर फिक्स एक्सचेंज रेट पे उन्होंने मान लिया इंडिया को जब जरूरत लगेगी तो जापान दे देगा और जापान को जब जरूरत लगेगी तो इंडिया दे देगा, वो स्वैप कर लेंगे, लेकिन रेट पहले से ही फिक्स कर लिया है। टू एक्सचेंज कैश फ्लोज बेसिकली बेस्ड ऑन अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट। फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या रिक्वायर करती है? बायर टू परचेज एंड सेलर टू सेल द अंडरलाइंग एसेट एट द सेट प्राइस रिगार्डलेस ऑफ द मार्केट प्राइस। उस दिन क्या प्राइस है उससे मतलब नहीं है, जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है उस दिन आपने जो पहले ही सेट कर रखा है वो, ये हमें ध्यान रखना है माय डियर स्टूडेंट्स। अगला हम देखते हैं, इसी का मैंने एक टेबुलर फॉर्मेट में बना दिया है कुछ कुछ फीचर्स के बेसिस पे, तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके जरूर पढ़ लेना, ये आपको और हेल्प करेगा डिफरेंशिएट करने में चारों के। अब माय डियर स्टूडेंट लेट अस सी। फ्यूचर डेरिवेटिव्स आर वाइडली यूज्ड टू मैनेज रिस्क। हाँ, रिस्क के लिए है। अराइजिंग फ्रॉम प्राइस वॉलेटिलिटी उसी के लिए है। इन फाइनेंशियल एंड कमोडिटी मार्केट दोनों में है। फाइनेंशियल मार्केट में हो सकता है स्टॉक्स वगैरह के लिए हो रहा हो, और कमोडिटी मार्केट में जैसे एग्रीकल्चर कमोडिटीज, क्रूड ऑयल, एनीथिंग। स्टेटमेंट 2, इन अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट इज एग्रीड अपॉन टुडे। हाँ, आज ही हो गया है। फॉर सेटलमेंट एट अ स्पेसिफाइड डेट इन द फ्यूचर। प्राइस फ्यूचर्स में आज ही सेट हो जाता है, यानी कि प्री डिटरमिन्ड प्राइस है। स्टेटमेंट तो सही है। पहले देखो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए ना, पहले ये मत ढूंढने लगो कि इसका ये रीजन है कि नहीं, तीनों को अलग अलग आप पढ़ो सेपरेटली। मैंने पहले इसको देखा, ये सही है, दूसरा इसको देखा, ये भी सही निकला, तीसरा देखते हैं। अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स अलाउज द बायर टू डिसाइड लेटर वेदर और नॉट टू एक्सिक्यूट द ट्रांजेक्शन। नहीं माय डियर, अभी हमने देखा कि फ्यूचर नहीं, ये तो ऑप्शंस में होता है। ऑप्शंस अभी हमने देखा है ये ऑप्शंस में होता है, इसलिए ये गलत है। बायर को तो फ्यूचर में बायर और सेलर दोनों को कंपलसरी है कि दे विल बाई एंड सेल। फ्यूचर में ये कंपलसरी है, ऑप्शंस में हमारे पास चॉइस है। तो स्टेटमेंट 3 तो गलत हो गया, इसीलिए मैं कह रहा हूं। अब स्टेटमेंट 3 गलत हो गया तो हमारे पास है बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स, दोनों नहीं सही है। ये तो गया, ये भी गया, ये बचे हैं। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये भी चला गया। वैसे ही मेरा हो जाएगा सी।
और अगर देखना है कि ये कर रहा है कि नहीं, बिकॉज लगा दो इसके आगे आप बिकॉज लिखो और देन रीड दिस। फ्यूचर डेरिवेटिव्स आर वाइडली यूज्ड टू मैनेज रिस्क अराइजिंग फ्रॉम प्राइस वॉलेटिलिटी इन फाइनेंशियल एंड कमोडिटी मार्केट बिकॉज इन अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट इज एग्रीड अपॉन टुडे फॉर सेटलमेंट एट स्पेसिफाइड डेट। यही तो प्राइस ही हम फिक्स कर दिया, वॉलेटिलिटी होती रहे, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वॉलेटिलिटी को मैंने कंसीडर कर लिया बस। सो आंसर इज, आप लोग को सबसे ज्यादा माय डियर स्टूडेंट आंसर्स में होता है सी इज द करेक्ट ऑप्शन of question number 25. Our next question my dear student, question number 26. अब देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया, टैक्सेशन इन इंडिया ये टॉपिक है, टैक्सेशन टॉपिक से का हमने एक कॉन्सेप्ट उठाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस वुड बी मोस्ट लाइकली, देखो बोला है मोस्ट लाइकली, ये भी ध्यान रखना है, हो सकता है लाइक ऐसे सब सही हो लेकिन मोस्ट लाइकली कौन है, capital gain for an individual, receiving dividend from shares held in a company, selling gold jewelry at a price higher than its purchase price, selling shares in the stock market at a price higher than their purchase price, receiving rent from a house property. Select the correct answer using the code given below. ये सारे आपके ऑप्शंस हैं। अब देखते हैं, थोड़ा सा इसका भी हम कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। देखो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से एक्चुअली उठाया गया टैक्सेशन में, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में क्लियरली ये लिखा हुआ है कि इनकम अर्न्ड बाय इंडिविजुअल इज क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स ऑफ इनकम फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन के लिए 5 तरीके का हेड है। क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, यही पूछा है हमसे ना, कैपिटल गेन्स वाला, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सैलरी बाय एन एम्प्लॉय, इनकम अर्न फ्रॉम ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज और प्रोफेशनल सर्विस, ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल, ट्रांसफर मीन्स सेल, प्रॉफिट अराइज हो रहा है, वो भी प्रॉफिट होना चाहिए तभी वो टैक्स होगा, लॉस है तो कैसे टैक्स कर सकते हैं, आप लॉस दिखा रहे हो तो। रेजिडुअल कैटेगरी फॉर इनकम नॉट कवर्ड अबव, जैसे इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड्स, लॉटरी विनिंग्स, इसमें सेल ऑफ शेयर्स, लैंड, ज्वेलरी, कैपिटल गेन्स वाले में आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा सा फिर से देख लेना, हेल्प करेगा। हम देखते हैं रिसीविंग डिविडेंड्स फ्रॉम शेयर्स हेल्ड इन ए कंपनी। देखो शेयर्स हेल्ड इन ए कंपनी, डिविडेंड क्या है? डिविडेंड, शेयर आप नहीं सेल कर रहे हो, यहाँ पे आपको डिविडेंड मिल रहा है। शेयर होल्ड करने पे क्या होता है, कंपनी को जो प्रॉफिट होता है आफ्टर ईच क्वार्टर और ईयरली, तो दे गिव डिविडेंड, 2 रुपए 3 रुपए पर शेयर, जितना भी उनको आएगा तो वो देंगे। वो डिविडेंड इज जस्ट लाइक क्या, आप जैसे अगर देखा जाए ऐसे तो वो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, और इंटरेस्ट इज नेवर कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? जब आप एसेट को सेल या बाई करते हो। एसेट इज शेयर, देख भी लेते हैं, कॉमन सेंस से भी हो जाएगा, यहां से भी हो जाएगा। देखो ये आ रहा है इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड्स किस में आते हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन्स में नहीं आते हैं। सेल ऑफ शेयर करोगे तो वो आएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, सेलिंग गोल्ड ज्वेलरी एट अ प्राइस हायर देन इट्स परचेज प्राइस। परचेज प्राइस से हायर क्यों होना चाहिए? ताकि प्रॉफिट हो, प्रॉफिट होगा तभी तो वो कैपिटल गेन होगा, नहीं तो कैपिटल लॉस हो जाएगा माय डियर, तो इसीलिए हायर होना चाहिए। ठीक है, गोल्ड ज्वेलरी आप बोल भी रहा, गोल्ड इज अ एसेट, उसको हम सेल कर रहे हैं, हमें मिलेगा पूरा का पूरा, उस पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो स्टेटमेंट 2 इज राइट, स्टेटमेंट 1 अभी गलत है। सेलिंग शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट एट अ प्राइस हायर देन देयर परचेज प्राइस। अब देखो जैसे शेयर को ही यहाँ पे सेल कर रहे हैं और उसका प्राइस हायर है जिस पे हम खरीदे थे। फॉर एग्जाम्पल आई परचेज अ शेयर एट 5 रुपीज बट आई एम सेलिंग इट एट 10 रुपीज। अगेन तीसरा भी सही। फोर्थ, रिसीविंग रेंट फ्रॉम ए हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी से रेंट ले रहे हैं, क्या है, क्या नेचर है? रेकरिंग नेचर है। रेकरिंग वाला अपना याद है, करंट अकाउंट में होता है, कैपिटल में नहीं होता है रेकरिंग नेचर कभी भी। तो अगेन ये भी गलत। हाउस को आप, हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे ना देके आप सेल कर दे रहे हो, देन इट विल बी कैपिटल गेन, और वो सेल कर रहे हो, ज्यादा पैसा आपको मिल रहा है तब। सो फर्स्ट एंड फोर्थ आर रॉन्ग। फर्स्ट फोर्थ हटा दो, फर्स्ट हटा दिया, फोर्थ हटा दिया, सी 2 and 3 इज करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज सी माय डियर स्टूडेंट्स। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना, थोड़ा सा अलग के हम हट के हमने एक क्वेश्चन दिया था, अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, WTA रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस फेवरेट रहते हैं, इस साल FTA वगैरह हुए हैं, हमने लास्ट पेपर में भी दिया था कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू FTA एंड अदर थिंग्स, जितने भी टाइप्स होते हैं तो उनमें डिफरेंसेस क्या है, एक टेबुलर फॉर्मेट में दिया था अनुभव 2 में, तो वो आप लोग जरूर रिवाइज करो। उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस टू अ कंट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू फॉलो।
इंडिया विल एक्सटेंड द सेम प्रेफरेंशियल टैरिफ रेट्स टू दैट कंट्री एज इट ऑफर्स इट्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर। ओ देखते हैं, गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम दैट कंट्री मस्ट बी ट्रीटेड द सेम एज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स इन इंडिया। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। देखते हैं कौन सा सही है। थोड़ा सा पहले हम ब्रशअप कर लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स। देखो W2E को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, एग्रीकल्चर के भी कॉन्टेक्स्ट में एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जो अपने मेन 3 है, क्या मेन 3 है, गैट्स और ट्रिप्स, इसको भी पढ़ लेना बेटे, बहुत जरूरी है क्योंकि वो पूछ सकते हैं कभी भी, और इस समय थोड़ा FTA वगैरह हो रहा है तो पूछ सकते हैं। अब देखते हैं MFN क्या है। उसके अलावा टैरिफ्स वगैरह भी डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी हम पढ़ लेंगे। मोस्ट फेवर्ड नेशन, ट्रीटिंग अदर पीपल इक्वली, ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इज द पर्पज ऑफ WTO। मैंने ये जो भी यहाँ पे डिस्कस किया है ये WTO से ही उठाया है। तो बेस्ट थिंग इज बेस्ट सोर्सेज ऑथेंटिक साइट से जाओ, WTO से ही UPSC भी अगर क्वेश्चन फ्रेम करना होगा तो वहीं से उठाएंगे। ट्रीटिंग अदर पीपल इक्वली, अंडर द WTO एग्रीमेंट कंट्रीज कैन नॉट नॉर्मली डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं लेकिन नॉर्मली नहीं, बिटवीन देयर ट्रेडिंग पार्टनर, ग्रांट समवन अ स्पेशल फेवर such as lower custom duty rate for one of their products, you have to do same for all other WTO members। एक को दोगे तो सबको करना है। Principle is known as most important that it is the first article of the GATT। पहला ही आर्टिकल GATT का फर्स्ट आर्टिकल ही मोस्ट फेवर्ड नेशन की बातें करता है। उसी तरह गैट्स में भी है, सर्विसेज में भी है और ट्रिप्स में भी है, यानी कि तीनों में मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात होती है। एक्सेप्शंस अलाउड हैं क्या, फॉर एग्जांपल कंट्रीज कैन सेट अप FTA एग्रीमेंट। ये तो कंफ्यूजन था, बच्चों को लगता है कि अरे FTA मोस्ट फेवर्ड नेशन देंगे तो फिर FTA कैसे करेंगे, वो एक्सेप्शन है। दैट अप्लाइज ओनली टू गुड्स ट्रेडेड विद इन द ग्रुप, आपस में एक ग्रुप बना लिए और उसमें बस रहेगा तब। सर्विसेज के लिए भी वो है, सर्विसेज कंट्रीज आर अलाउड इन लिमिटेड सर्कमस्टांसेस। एक बार ये पढ़ लेना। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, दैट इज नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट क्या होता है, अभी देखो वो क्या था, मोस्ट फेवर्ड नेशन, इट वाज बेसिकली एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब यहां पे डोमेस्टिकली प्रोडक्शन के लिए, डोमेस्टिकली आप प्रोड्यूस करो उसका क्या रेट रख रहे हो, उसके लिए नेशनल ट्रीटमेंट। ट्रीटिंग फॉरेनर्स एंड लोकल्स इक्वली, इंपोर्टेड एंड लोकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। वहां पे सिर्फ एक्सपोर्ट की बात चल रही थी FTA में, यहां पे इंपोर्टेड एंड लोकली प्रोड्यूस्ड गुड्स दोनों इक्वल होने चाहिए। एटलीस्ट आफ्टर द फॉरेन गुड्स हैव इंटर्ड द मार्केट, मार्केट में इंटर करने से पहले आप जो करना है कर लो, कस्टम ड्यूटी लगा लिए, चीजें लगा लिए, वही है ये एक्सेप्शन। अगर कस्टम ड्यूटी चार्ज कर रहे हैं ऑन इंपोर्ट इज नॉट अ वायलेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इवन इफ लोकली प्रोड्यूस्ड गुड्स आर नॉट चार्ज एन इक्विवेलेंट टैक्स, ये एक्सेप्शन है, इसको भी ध्यान रखना बेटे। Only applies once a product, service और item of intellectual has entered। intellectual property क्यों बोला है, ट्रिप्स में भी है, तो ये तीनों में है। ट्रिप्स इज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, गैट्स इज रिलेटेड टू सर्विस एंड GATT इज रिलेटेड टू अपना, कहाँ गया GATT, ये ट्रेड। तो नेशनल ट्रीटमेंट भी तीनों में आता है और MFN क्लॉज भी तीनों में आता है। देख लिए, अब हम चलते हैं, ये है यहाँ से, और आप इसके बारे में पढ़ सकते हो थोड़ा डिटेल में। इंडिया विल एक्सटेंड द सेम प्रेफरेंशियल टैरिफ रेट्स टू द कंट्रीज एज इट ऑफर्स इट FTA। नहीं, FTA इज एक्सेप्शन, मुझे नहीं जरूरत है देना। FTA मैं सिर्फ अपने कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ कर रहा हूं, एक कंट्री हो सकती है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज हो सकती है, डिपेंड्स। सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग माय डियर। गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम दैट कंट्री must be treated the same as domestically produced goods in India. Goods imported from that country must be treated the same as domestically produced goods in India. ये क्या है, MFN नहीं है, ये क्या है, नेशनल ट्रीटमेंट की बात, क्या डेफिनेशन है, यही तो नेशनल ट्रीटमेंट का डेफिनेशन है अपना। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, किसके कॉन्टेक्स्ट में, FMN के कॉन्टेक्स्ट में। ऐसे तो ये स्टेटमेंट सही है लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में गलत है, तुम्हारा दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। हाँ, ऑप्शन इज D, ये सारे गलत एंड ऑप्शन D। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को करना है। अगला माय डियर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 विथ रेफरेंस टू इंडिया US ट्रेड रिलेशन। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया US ट्रेड रिलेशन, UPSC हो सकता है इस पर जरूर क्वेश्चन पूछ ले जब भी ऐसा आता है। अब इसमें ट्रेंड पूछ सकते हैं, थोड़ा हिस्टोरिकल टाइमलाइन चीज़ें पूछ सकते हैं, क्या गुड एक्सपोर्ट करते हो ज़्यादा, क्या इंपोर्ट करते हो, वो हम देख सकते हैं, वही उसी पे
तो क्वेश्चन क्या है, इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ द यूएस। माय डियर स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट अगर मैं बोलूँ ना तो ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ज़्यादातर बच्चे पता है सिली मिस्टेक्स कहाँ करेंगे इसमें, इसी पहले स्टेटमेंट में। आप लोग सोच रहे हो क्या ये तो बहुत इजी स्टेटमेंट है। एग्जैक्टली, इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ यूएस बोला है, यूएस का, यूएस इज देयर, इसका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बोला है कि इंडिया है, इंडिया का नहीं बोला है, दिस इज इंडिया, इसका लार्जेस्ट पार्टनर यूएस है, ये नहीं बोला है। जल्दीबाजी में वहां पढ़ते हुए आप इसको समझ लोगे कि हाँ भाई इंडिया तो है ही, इंडिया का लार्जेस्ट पार्टनर कौन है, यूएस है, और फटाफट इसको सही मार भी सकते हो। तो इसलिए बी केयरफुल। इंडिया मेंटेन्स अ ट्रेड सरप्लस विथ यूएस, देखते हैं। इंजीनियरिंग गुड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्ट आइटम्स फ्रॉम इंडिया टू यूएस। मिनरल फ्यूल्स एंड ऑयल्स आर अमॉन्ग द लीडिंग कमोडिटीज इंपोर्टेड बाय इंडिया फ्रॉम द यूएस। देखते हैं कौन सा करेक्ट है, देख लेते हैं अगेन। सो देखो ये है सोर्सेज, आईएमएफ डायरेक्शन ऑफ ट्रेड स्टैटिस्टिकल, उसका सोर्स है, वो क्या कह रहे हैं, सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्या है। अब देखो इसको मुझे प्रिपेयर आगे कैसे करना है वो चीजें मैं आपको दे रहा हूं बेटे। 20 लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर्स ऑफ द यूएस, 20 दिया है, 5 तक ठीक है। सबसे बड़ा कौन है, दिस वन, दिस इज मैक्सिको। मैक्सिको इज द लार्जेस्ट। कई बार दिमाग में इतना चाइना चाइना रहता है ना कि लगता है कि चाइना इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ यूएस, मैक्सिको है। सेकंड लार्जेस्ट कनाडा, आपको आप में से कुछ को पता भी होगा, मैं ऐसा नहीं कहता हूं। 1 2 थर्ड इज हियर चाइना, ये है इंडिया, यहां पे है 120 बिलियन। टॉप 3 आपको इंपॉर्टेंट है, बाकी अगर देखा जाए तो ये है ईयू 4th नंबर पे, और 4th पे ईयू भी नहीं बोल सकते हैं, जापान भी है, यहाँ पे कोरिया भी है, तो इनके भी थोड़े ज़्यादा हैं। इनफैक्ट जर्मनी का अगर ईयू में भी देखा, इसमें देखा जाए तो जर्मनी का सबसे ज़्यादा है। तो हमें टॉप 3 पता चल गया, दैट्स इंपॉर्टेंट, इंडिया नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, अब इंडिया का भी देख लेते हैं कि भाई हमने यूएस का तो देख लिया कि लार्जेस्ट पार्टनर कौन है, इंडिया का। तो एक तो है 24 to 25 और दूसरा 23 to 24। दोनों ही मैंने डेटा दे दिया है, मिनिस्ट्री से उठाया है। बोलते हैं 25 के लिए, FY 25 के लिए क्या, यूनाइटेड स्टेट्स सबसे बड़ा है, कितना, $131। इसीलिए मैंने बोला कि वो स्टेटमेंट जल्दीबाजी में पढ़ेंगे, हमें लगेगा कि हाँ यूएस तो है। सेकेंड पार्टनर चाइना, थर्ड इज यूएई। 24 में चाइना वॉज 1 एंड यूएस वॉज 2। देखो बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, 1 है 18.4 और 1 है 18.3। इसलिए कई जगह आप लोग देखोगे तो इधर उधर भी हुआ है, क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर पे अपना मिनिस्ट्री जो बोला उसके अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं। यूएई इज थर्ड। अब इसके आगे, हाँ इसके आगे कुछ और है डेटा यहाँ से, और आप ऑथेंटिक सोर्स है IBEF, तो इंडियन ब्रांड इक्विटी फोरम, वहाँ से और आप अच्छे से कर सकते हो। उन्होंने बोला बायलैटरल ट्रेड कितना है यूएस में, 132, FY 25 में इतना था। इंडिया ट्रेड सरप्लस है। अब देखो यहाँ पे FY 24 का इन्होंने कुछ अलग दिया है, हम मिनिस्ट्री वाली मानेंगे। ट्रेड सरप्लस है इंडिया का यूएस से $40 बिलियन का अराउंड। इंडिया एक्सपोर्ट यूएस का इंक्रीज हो गया है 77 से 86 तक इंक्रीज हुआ है। एक्सपोर्ट इज इंक्रीजिंग टू यूएस। इंडिया एक्सपोर्टेड इतनी कमोडिटीज नहीं जरूरत है, बस एक जनरल ट्रेंड जानना है कि एक्सपोर्ट हम ज्यादा करते हैं। नंबर ऑफ कमोडिटीज, इट इज नंबर ऑफ कमोडिटीज, इट इज नॉट वैल्यू। तो नंबर ऑफ कमोडिटीज ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं एज कंपेयर टू इंपोर्ट्स। उसके बाद बच्चों मेजर एक्सपोर्टेड आइटम्स फ्रॉम इंडिया क्या है, इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट, उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है 15.89 बिलियन। फिर नेचुरल और कल्चर्ड पर्ल्स, प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स, प्री मेटल्स क्लैड विद प्री मेटल्स एंड आर्टिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स। तो ये एक ट्रेंड है, इनको याद नहीं करना, बस आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि 16 बिलियन तो यही है, यानी कि अगर 86 है और 16 है तो ऑलमोस्ट मोर देन 20% तो एक ही आइटम हम कर रहे हैं। तो याद ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, ये एक्सपोर्ट की बातें चल रही हैं। अब हम इंपोर्ट की बातें भी देख लेते हैं। मेजर इंपोर्ट्स बाय इंडिया फ्रॉम यूएस, क्या ट्रेंड है। तो इकोनॉमी में डेटा वगैरह रहता है तो हर चीज हमें याद नहीं रह सकता है, दैट्स वाई ट्रेंड याद करने की कोशिश करो। ट्रेंड ध्यान में रहेगा, हो जाएगा क्वेश्चन। यूपीएससी स्पेसिफिक डेटा बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट पूछता है, और वो भी पूछेगा तो आप बता दोगे। वो जनरली ट्रेंड बोलते हैं। इंपोर्ट्स फ्रॉम द यूएस टू इंडिया रोज इतना, फ्रॉम इतना। इंपोर्ट्स भी इंक्रीज हुआ है। अब देखो एक्सपोर्ट्स तो हमने देखा ही, इंपोर्ट भी इंक्रीज हो गया। इंपोर्ट हम 5,695 कमोडिटीज कर रहे हैं, वो 7,000 से ज़्यादा था।
हम मोस्टली क्या इंपोर्ट करते हैं, मिनरल फ्यूल्स, मिनरल ऑयल्स। देखो मिनरल फ्यूल्स, मिनरल ऑयल $14 बिलियन के आसपास। तो हो सकता है कि जनरली अगर किसी बच्चे को नहीं पता हो कि हम वहाँ से बहुत ज़्यादा फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का काफ़ी प्रेशर भी रहता है इसके रिलेटेड, तो वो हो गया नेचुरल और कल्चर्ड पल्स। अब ये नेचुरल इसमें इंपॉर्टेंट, प्रेसियस, सेमी प्रेसियस, फिर वही चीज़ें न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, मशीनरीज वगैरह भी कर रहे हैं। उसके अलावा एक और फैक्ट अच्छा मिल गया था तो मैंने डाल दिया यहाँ पे कि थर्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया कौन है, यूएस है। क्यूमुलेटिव एफडीआई कितना अब तक आया है, $70 बिलियन पिछले 25 साल में। ठीक है, एक साल का नहीं है, 25 साल का है एफडीआई का। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ यूएस, नहीं, यूएस इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट 1 गलत, स्टेटमेंट 1 गलत, हटाओ। देखते हैं अब मैं, अगर मुझे सॉल्व करना होगा मैं पहले 4 देख लूंगा। 4 अगर पता चल गया तो आधा काम वहीं पे हो गया। मिनरल फ्यूल्स एंड ऑयल्स आर अमॉन्ग द लीडिंग कमोडिटीज इंपोर्टेड बाय इंडिया फ्रॉम द यूएस। यस माय डियर, अभी हमने देखा 4 सही है। 4 सही होते ही मुझे तो ये देखने की भी जरूरत नहीं है 2 और 3। ए विल बी द ऑप्शन, ए ऑप्शन है। तो कई बार आप इसको भी प्रैक्टिस करो, हो सकता है एलिमिनेशन टेक्निक वर्क करे ना करे, हर चीज के लिए प्रिपेयर रहो। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 के लिए भी इस तरह एलिमिनेशन टेक्निक जहां लगे वहां पे लगाओ भी। कहीं होता है सिर्फ 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, बोथ 1 and 2 नाइदर 1, तो वहां पे कुछ एलिमिनेशन लगेगा नहीं ज्यादा, लेकिन यहाँ पे लग रहा है तो जरूर उसकी भी प्रैक्टिस करो। इंडिया मेंटेन्स ए ट्रेड सरप्लस विद द यूएस, यस हमने देखा। इंजीनियरिंग गुड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्ट आइटम्स, सही बात है। आगे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला है, दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 57 इन योर पेपर विथ रेफरेंस टू द डिमांड फॉर मनी एंड इंटरेस्ट रेट। डिमांड फॉर मनी एंड इंटरेस्ट रेट इन एन इकोनॉमी, कंसीडर द फॉलोइंग। ये थोड़ा सा अपना माइक्रो इकोनॉमी का जो डिमांड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है ना, उससे ही रिलेटेड है। अगर वो बेसिक आपका क्लियर है डिमांड सप्लाई का, तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा आपसे। डिमांड एंड सप्लाई क्या है, When interest rate rise, the demand for holding money tends to decline. प्लस इसके साथ कॉमन सेंस भी, बहुत ज़्यादा पीएचडी इसके लिए जरूरत नहीं है, बहुत कॉमन सेंस, उससे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। माइक्रो इकोनॉमी कॉमन सेंस आप लगाओगे तो उसके क्वेश्चन जो भी यूपीएससी दे रही है वो सॉल्व हो जाता है। When the demand for money increases, interest rate may rise if the money supply remains unchanged. Let us see which of the statement given above is or are correct. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1. हमें दोनों स्टेटमेंट देखना ही पड़ेगा। अब इन्होंने बोला कि when with reference to demand of money and interest rate, मुझे ये ध्यान रखना है किसमें, इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में। when interest rate rise, ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट राइज कर रहा है, जैसे मान लो कि रेपो रेट राइज कर रहा है। डिमांड फॉर होल्डिंग मनी, आपके पास पैसा है, मान लो आपके पास 5 करोड़ रुपीज हैं, आप खुश हो गए होगे 5 करोड़ सुन के, मैं समझ रहा हूँ। 5 करोड़ रुपीज मान लो आपके पास हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, आप उसको घर में रखोगे या कहोगे कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो बैंक में रखो। मान लो कि इंटरेस्ट रेट पहले बैंक में 5% था, अभी 10% हो गया है, आप रखना चाहोगे घर में, कहोगे कि वेस्ट हो रहा है यार, 10% बढ़िया मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 5 करोड़ का आराम से, 50 लाख पर ईयर, मैं क्यों घर पे रखूं। वो अगर इंटरेस्ट रेट 1% है और कहीं और इन्वेस्टमेंट करके आप ज़्यादा निकाल सकते हो, स्टॉक मार्केट या कहीं भी, तो आप पैसे रखोगे नहीं, क्या होगा, डिमांड फॉर होल्डिंग मनी टेंड्स टू डिक्लाइन। इंटरेस्ट रेट राइज होगा तो डिमांड फॉर होल्डिंग मनी टेंड्स टू डिक्लाइन, यस दैट इज द थिंग। हम उसको बैंक में ले जाके रखेंगे, अपने पास नहीं रखेंगे। व्हेन द डिमांड फॉर मनी इंक्रीजेस, अब देखो मनी का डिमांड इंक्रीज हो रहा है इस बार आपका मनी का डिमांड है, सब लोग पैसा मांग रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। जब इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में अच्छा हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज हो रहा है। इंटरेस्ट रेट में राइज, अब बोल रहा है कि इंटरेस्ट रेट राइज हो सकता है इफ द मनी सप्लाई रिमेन्स अनचेंज। अब क्या हुआ, डिमांड ऑफ मनी तो बढ़ रहा है लेकिन आरबीआई मनी रिलीज नहीं कर रही है। आरबीआई इज द बॉडी जो मनी सप्लाई इंक्रीज करती है, आरबीआई ने इसको नहीं इंक्रीज किया। सिर्फ देखो माइक्रो इकोनॉमी का जो डिमांड है सप्लाई कर्व है ना, उससे भी ये हो जाएगा, लेकिन उस पे जाने की हमें जरूरत नहीं है। एसडी उस पे जाने की हमें जरूरत ही नहीं है, कॉमन सेंस से हम करते हैं, क्यों कॉम्प्लेक्स करें चीज़ों को। व्हेन द डिमांड फॉर मनी इंक्रीजेस, पैसे की डिमांड बढ़ रही है, पैसा उतना ही है, अब क्या होगा, सब लोग पैसा मांगेंगे। तो मान लो कि जैसे जो मनी लेंडर्स हैं वो क्या करते हैं, मान लो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, खूब पैसा है, आ भी रहा है, डिमांड ही नहीं है,
अब कोई अचानक से एक आ गया, कहेंगे ठीक है ले जाओ यार, कम से कम घर में पड़ा है, कुछ तो इंटरेस्ट मिल जाए। अब ऐसा होगा कि 100 लोग आ गए मांगने, 1 ही लाख रुपए और 100 लोग आ गए मांगने आपसे, आप तब कहोगे ना कि भाई इतने लोग मांगने वाले हैं, डिमांड इतनी ज़्यादा है, तो मैं नेचुरली प्राइस इंक्रीज करूंगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाऊंगा। वही अपना कॉन्सेप्ट है ना डिमांड एंड सप्लाई का। डिमांड, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस पी है। अब क्वांटिटी डिमांडेड तो वही है, क्वांटिटी डिमांडेड वही है, डिमांड यहाँ पे चेंज हो रहा है, मनी का डिमांड चेंज हो गया, यहाँ से ये शिफ्ट हो गया, दिस इज न्यू डिमांड क्रिएटेड। तो देखो प्राइस ऊपर चला गया ना, प्राइस पहले यहाँ था P1, यहाँ पे P2, यानी कि इंटरेस्ट रेट पहले R1 था, अब R2 आ गया, इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज। ये तो सेम है ना, उतना ही क्वांटिटी है, मनी की क्वांटिटी उतनी ही है, इसको हम नहीं चेंज किए, ये डिमांड चेंज हो गया, ओवरऑल डिमांड, दिस डिमांड इज ओवरऑल डिमांड इन द इकोनॉमी, वो चेंज हो गया। इससे भी आप समझ सकते हो। तो व्हेन डिमांड फॉर मनी इंक्रीजेस इंटरेस्ट रेट में राइज, सही बात है, डिमांड अगर इकोनॉमी में इंक्रीज हो रही है, ऊपर शिफ्ट होगा, वी ऑलवेज कॉल इट राइट साइड शिफ्ट। जब इंक्रीज को बोलते हैं डिमांड सप्लाई कर्व में, राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पहले था इक्विलिब्रियम, अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया तो प्राइस पहले ये था या इंटरेस्ट रेट पहले ये था तो इंक्रीज हो गया, ऊपर चला गया। डिमांड सप्लाई कर्व आप याद करो माय डियर स्टूडेंट्स, डी दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड, और ये ओवरऑल डिमांड है डी किसी भी कमोडिटी की, ये क्वांटिटी डिमांडेड, यही मान लो मनी है, मनी की डिमांड हम देख रहे हैं, तो ये मनी इतने नोट्स हैं सर्कुलेशन में, लेकिन डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड बढ़ गई, ये तो इतनी ही है, ये ऊपर शिफ्ट करेगा ना माय डियर स्टूडेंट्स। पहले प्राइस P1 था, अब P2, यानी पहले इंटरेस्ट रेट 5% था, अब हो सकता है 10% हो। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन सी ऑफ दिस आंसर 57। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 58 विथ रेफरेंस टू 16 फाइनेंस कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है प्री में भी मेंस में भी। अभी प्रीलिम्स का प्रिपरेशन आप करो तो जरूर करो। टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल वगैरह भी प्रिपेयर कर लेना इसके साथ साथ आप। और क्या रिकमेंडेशन दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द शेयर ऑफ स्टेट्स इन द डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्सेस हैज बीन केप्ट द सेम एज दैट रिकमेंडेड बाय द 15th फाइनेंस कमीशन। दोनों का 15th और 16th का ऐसे टेबुलर फॉर्मेट में कंपैरिजन भी आपको देख लेना चाहिए। weight assigned to demographic performance, okay, in horizontal tax devolution has been increased compared to the 15th। horizontal की जगह vertical भी हो सकता है, vertical distribution क्या होता है अभी देख लेते हैं। contribution to GDP has been introduced as a new parameters देते हैं ना horizontal tax devolution के लिए, 5 से 6-7 parameters हैं, वो अभी हम देख लेंगे। which of the following above is are correct। फिर अभी देखते हैं थोड़ा सा फटाक से, देखो ये है, मैंने उठाया PRS से रिपोर्ट्स जो हैं उसके बेसिस पे उन्होंने दिया है। शेयर ऑफ स्टेट्स इन द डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्सेस हैज बीन रिकमेंडेड एट 41%, दिस इज सेम एज द शेयर रिकमेंडेड बाय द 15th। इसी को बोलते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन। सेंटर और स्टेट के बीच में जो शेयरिंग है, सेंटर और स्टेट के, उसको वर्टिकल, और स्टेट को उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। आप लोगों को पता ही होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। डिविजिबल पूल कैसे होता है, अराइव्ड आफ्टर एक्सक्लूडिंग, देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है माय डियर स्टूडेंट, इसको प्लीज ध्यान रखना इस टर्म को, कि डिविजिबल पूल ही पूछ लेगा कि क्या होता है। आफ्टर एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड सेसेस एंड सरचार्जेस फ्रॉम द गवर्नमेंट टैक्स रिवेन्यू कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है डिविजिबल पूल में। क्राइटेरिया क्या है, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टेट के बीच में क्राइटेरिया ये है, इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, एरिया, फॉरेस्ट, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब टोटल 7 इस बार है, लेकिन ये वाला आप देखो हटा दिया है। आप देखो माय डियर स्टूडेंट, 16 फाइनेंस कमीशन और 15 फाइनेंस कमीशन और 16 में कुछ चेंज है, ये अब नहीं है, तो अभी भी 6 है, पहले भी 6 ही थे अगर देखा जाए तो। नया इंट्रोड्यूस क्या कर दिया है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, दिस इज न्यू, और 10% है। ये देखो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस पहले 12.5% था, 10% हो गया। एरिया 15% था, 10%, ये उतना ही रहा। इनकम डिस्टेंस भी डिक्रीज कर दिया है, तो डिक्रीज वाले 1, 2, 3 डिक्रीजिंग हो गए, ये इंक्रीज हो गया है। पॉपुलेशन सिर्फ
क्राइटेरिया इंक्रीज किया है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना है कि एक ही इंक्रीज है, ये उतना ही है, इसको एलिमिनेट कर दिया है, ये नया लाया है, ठीक है। तो 3 हैज बीन डिक्रीज्ड, 1 इंक्रीज, इंक्रीज में पॉपुलेशन वाले बेसिस क्राइटेरिया को इंक्रीज किया है, 17.5% कर दिया है, ये हो गया। अब हम वापस अपने जाते हैं, क्वेश्चन फटाफट देखते हैं, सॉल्व करते हैं। द शेयर ऑफ स्टेट्स इन द डिविजिबल पूल ऑफ हैज बीन केप्ट द सेम एज दैट, यस, अभी हमने देखा 15 कम, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 1 करेक्ट हो गया, ये यानी ये तो नहीं होगा। देखते हैं भाई 2 है कि नहीं, अगर 2 नहीं होगा तब तो तुरंत हमारा ये हो सकता है, नहीं 3 भी देखना पड़ेगा हमें। द वेट असाइंड टू डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस इन हॉरिजॉन्टल टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन हैज बीन इंक्रीज्ड कंपेयर टू 15, इंक्रीज नहीं, इसका डिक्रीज हुआ है, अभी हमने देखा है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5 से 10% हो गया है, डिक्रीज हो गया माय डियर, यानी कि स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 तो गया भाई, ये भी गलत हो गया। अब हमें देखना है 1 और 3, ये अगर 3 सही हुआ तो ये, अदरवाइज ये। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी हैज बीन अ न्यू पैरामीटर, यस माय डियर स्टूडेंट्स, नया है, सही है, 1 और 3, स्टेटमेंट बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 59। विथ रेफरेंस टू इंडियाज बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारा पहले भी क्वेश्चन हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट पे आपको दिया था, करेंट अकाउंट और कैपिटल, उसी को हम चेक कर ले रहे हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा हमने इसको टेबल में बनाने की कोशिश की है ताकि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो। अब ट्रांजैक्शन अकाउंट एंट्री, पहले तो हम फटाक से आपको एक ये दिखा देते हैं, बीओपी में क्या होता है, एक करेंट अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है। करेंट अकाउंट में क्या क्या आते हैं, मर्चेंडाइज एंड इनविजिबल, मर्चेंडाइज मीन्स गुड्स का ट्रेड, और इनविजिबल मीन्स मोस्टली सर्विसेज, फैक्टर इनकम जो आपको रेंट मिला या सैलरी मिली, वो सारी चीजें, ट्रांसफर्स लाइक गिफ्ट एंड रेमिटेंसेस, ये सब आ जाता है इधर। इंटरेस्ट भी इसी में आता है, फैक्टर इनकम में इंटरेस्ट, लैंड लेबर कैपिटल होता है ना, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट ही तो मिलता है, तो वो फैक्टर इनकम में ही इनविजिबल में आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफपीआई वगैरह, लोन, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, या तो यहां से हम कर रहे हैं या किसी को लोन दे रहे हैं, दोनों, एंड बोरोइंग, इसके अलावा एनआरआई डिपॉजिट्स भी इसी में आ जाते हैं। अब देखो एक चीज और, कैपिटल का मतलब होता है आइदर क्रिएशन ऑफ एसेट और लाइबिलिटी, जैसे एफडीआई आया वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, हमने कहीं खरीदा वो हमारे लिए एसेट है। करेंट अकाउंट इज रिकरिंग इन नेचर। क्विक रिवीजन हो गया, कई बार बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि रिवाइज नहीं करते हैं इस टॉपिक को। अब हम देखते हैं, इंडियन कंपनी रिसीविंग पेमेंट फॉर प्रोवाइडिंग आईटी सर्विसेज टू अ क्लाइंट अब्रॉड, इंडियन कंपनी रिसीविंग पेमेंट, क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, उसके लिए पैसा मिल रहा है, किस में आएगा, करेंट अकाउंट में आएगा, इनविजिबल्स में, सही है। करेंट अकाउंट, इनफ्लो, हाँ हम दे रहे हैं सर्विस, उसके वजह पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफआईआई, यानी ये तो कैपिटल की बात हो गई भाई, कैपिटल अकाउंट में था हमारा इन्वेस्टमेंट। परचेजिंग शेयर्स इन एन इंडियन कंपनी, कैपिटल अकाउंट में, लेकिन आउटफ्लो क्यों हो रहा है, वो शेयर खरीदेगा इंडियन कंपनी में तो पैसा हमें देगा ना, तो इनफ्लो होगा। माय डियर स्टूडेंट, दिस स्टेटमेंट इज 2 इज रॉन्ग। अब ये तो ओनली 1 2 3 4 है, सब देखना पड़ेगा। एन इंडियन कंपनी एक्वायरिंग अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन अनदर कंट्री, फिर हम एसेट क्रिएट कर रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं एफडीआई आ रहा है, हम खरीद रहे हैं उनके यहाँ। कैपिटल अकाउंट, आउटफ्लो, सही बात है, हम पैसा देंगे, आउटफ्लो हो रहा है, मनी इज आउटफ्लो, सही है। इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज्ड बाय एनआरआई, एनआरआईज को दे रहे हैं, वो हमें, उनको हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, पैसा आउटफ्लो होगा, कैपिटल अकाउंट में एनआरआईज का जाता है। अब यहीं पे दिक्कत हुआ, ये इंटरेस्ट पेमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट इज रिकरिंग, कैपिटल नहीं होता है, क्या होता है, करेंट होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर इज, आफ्टर एलिमिनेटिंग दिस, ओनली 1 and 3 इज करेक्ट, तो ओनली 2, ऑप्शन बी अपना क्या सही है, बी, 59 का बी, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल नहीं, करेंट अकाउंट होगा, तो इसमें ये आपका गड़बड़ रहा, इसमें यहाँ पे ये गड़बड़ था, इस वजह से ये दोनों 2 and 4 वॉज रॉन्ग। अगला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, द टर्म मदर ऑफ ऑल डील्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज रिफर्स टू एफटीए साइन बिटवीन, सभी बच्चे मुस्कुरा रहे होंगे, हैप्पी होंगे इस क्वेश्चन को देखते ही, ये तो आ ही रहा है,
बहुत इजी क्वेश्चन था, कई बार पूछ भी लेते हैं ऐसे ही। जब 2020 में अपना ये कोविड था उस समय ब्रेंट क्रूड का ही इंडेक्स पूछ लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। और कई बार होता है ना बहुत ज़्यादा ट्रिवियल न्यूज़ में होता है, हम ध्यान भी नहीं देते, हमें लगता है अरे पता नहीं क्या है। तो मदर ऑफ ऑल डील्स इंडिया एंड EU फाइनलाइज FTA, इसका ऑप्शन डी करेक्ट, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। जल्दीबाजी में ऐसे क्वेश्चन भी गलती कर देते हो, सिली मिस्टेक वो नहीं करना है। ये अगर सिली मिस्टेक किया तो आप रेस से वैसे ही बाहर हो रहे हो। 61 with reference to lead bank scheme in India consider the following statement। लीड बैंक स्कीम पे ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन बहुत पहले पूछ चुका है। अब ये क्यों आया है क्वेश्चन, अभी हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट में। आप लोगों को लग रहा होगा क्यों पूछ दिया है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई RBI ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरीमन कमेटी। पता नहीं, बहुत फैक्ट है, देखो यहाँ पे फैक्ट है स्टैटिक। अंडर द स्कीम अ लीड बैंक इज डेजिग्नेटेड फॉर अ स्पेसिफिक एरिया टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑपरेटिंग देयर। देखते हैं इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, टू चैनल गवर्नमेंट सब्सिडीज टू बेनिफिशरीज थ्रू डेजिग्नेटेड लीड बैंक। देखते हैं क्या सही है गलत है, थोड़ा सा लीड बैंक के बारे में देख लेते हैं। तो ये है अपना न्यूज जिस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन हमने पूछा है। RBI टू रिवाइज लीड बैंक स्कीम टू इंप्रूव क्रेडिट फ्लो टू प्रायोरिटी सेक्टर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। 13 Feb को ये न्यूज में था, अभी पिछले महीने, ऑलमोस्ट 1 मंथ बैक। थोड़ा सा और इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। लीड बैंक, यहाँ से आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हो, RBI का ऑथेंटिक सोर्स है, वहां से पढ़ लेना उसके फैक्ट्स, अच्छा रहेगा। उन्होंने बोला जेनेसिस का कब हुआ था, स्टडी ग्रुप हेडेड बाय प्रोफेसर DR गार्डगिल। देखो दो ग्रुप है, श्री FKF नरीमन कमेटी और एक है DR गार्डगिल। अब DR गार्डगिल ने इनिशियली उन्होंने इसको स्टडी किया था और उन्होंने एक फैक्ट पे आया कि कॉमर्शियल बैंक डिड नॉट हैव एडिक्वेट प्रेजेंस इन रूरल एरियाज, इसीलिए उन्होंने बोला, और रूरल ओरिएंटेशन है भी नहीं तो क्या कर सकते हैं, एडॉप्शन ऑफ एन एरिया अप्रोच का सजेशन दिया था। उन्होंने बोला कि ये करना चाहिए। अगेन एक कमेटी बनाई गई, कमेटी ऑफ बैंकर्स ऑन ब्रांच एक्सपेंशन प्रोग्राम, अपॉइंटेड बाय RBI, चेयरमैनशिप ऑफ FKF नरीमन, उसी को बोलते हैं नरीमन कमेटी। इन्होंने इंडोर्स किया था आइडिया, एरिया अप्रोच को इंडोर्स किया था, एरिया अप्रोच को इस कमेटी ने दिया था और इसको इंडोर्स किया, एक रिपोर्ट दी, रिकमेंड किया कि इनेबल द पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू डिस्चार्ज देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सभी सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स पे कंसंट्रेट करें। दैट इज द आइडिया ऑफ लीड बैंक। एबव रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही लीड बैंक स्कीम बना, इसके रिकमेंडेशन पे, नरीमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। कब, दिसंबर 1969। उसका एम क्या है, कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स एंड अदर डेवलपमेंट एजेंसीज थ्रू वेरियस फोरा इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनहेंसिंग द ब्लॉक फ्लो ऑफ बैंक फाइनेंस टू प्रायोरिटी सेक्टर एंड अदर सेक्टर एंड टू प्रमोट बैंक्स रोल इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रूरल सेक्टर। इसके कोऑर्डिनेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट को फोकस करते हैं। पर्टिकुलर बैंक इज असाइंड द लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट मीन्स एरिया, दैट इज द एरिया अप्रोच। अब बेटे हम आगे जाते हैं, इसको देखते हैं। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई RBI ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी। यस, अब गार्डगिल कमेटी का अगर स्टडी ग्रुप का नाम होता, नहीं, उन्होंने इसको नहीं बोला था, रिकमेंड किया गया था एरिया अप्रोच को। लीड बैंक को किसने बोला था, ये 1 इज करेक्ट। भाई मेरा 1 तो करेक्ट हो गया, ये तो गया, ऑप्शन C नहीं हो सकता। Under the scheme, a lead bank is designated for a specific area to coordinate the activities of banks and finance operating there. बात सही है, 2 is correct. अब देखते हैं, 1 is correct, 2 is correct till now. 1 is correct, 2 is correct. अब तो ये हो गया, ये अगर अब 3 पे डिपेंड कर रहा है, ये भी गया क्योंकि 2 भी सही हो गया। अब इन दोनों ऑप्शंस में से देखते हैं। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू चैनल गवर्नमेंट सब्सिडीज टू बेनिफिशरीज थ्रू द डेजिग्नेटेड लीड बैंक। यस, ये गलत है हमारा, इसका ये काम नहीं है, गवर्नमेंट सब्सिडीज के लिए नहीं रखा गया है। किसके लिए रखा गया है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, ये थ्रू वेरियस फ्लोरा, उनका कोऑर्डिनेशन करने के लिए है, एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स एंड अदर डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशंस। सो स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग, 3 रॉन्ग हो गया, ये स्टेटमेंट गया अपना 1 and 2 इज करेक्ट, ऑप्शन बी 61 बी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, बहुत बेसिक चैप्टर है और इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, क्योंकि बेस ईयर चेंज हुआ है तो इसलिए इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। बेस ईयर पे आ सकते हैं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग पे आ सकते हैं, GDP न्यू जो अपना बेस ईयर है उसके बेसिस पे भी GDP प्रेडिक्ट किया है ग्रोथ रेट, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखना है। द बेस ईयर इज द रेफरेंस ईयर हुज प्राइसेस आर यूज्ड टू कैलकुलेट रियल GDP। देखते हैं
अ चेंज इन द बेस ईयर इज लाइकली टू चेंज जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस बट नॉट जीवीए एट बेसिक प्राइसेस. ओके. अ चेंज इन द बेस ईयर इज लाइकली टू चेंज द रिलेटिव वेटेज ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स इन जीडीपी. देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है. नाउ लेट अस सी, थोड़ा सा फैक्ट्स देख लेते हैं. तो होता क्या है, रियल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए स्पेसिफिक बेस ईयर यूज करते हैं टू फ्रीज प्राइसेस. किसके लिए? रियल जीडीपी, नॉमिनल नहीं. नॉमिनल के लिए तो आपको जो पता है सारे ऐड कर दो, नॉमिनल आ जाएगा. रियल के लिए आपको क्या चाहिए? कंपेयर करना है ना. रियल क्यों हम यूज करते हैं? रियल इज फॉर ग्रोथ. रियल जीडीपी इज यूज्ड फॉर ग्रोथ रेट. आपको जब आइडेंटिफाई करना है कि इंडिया 5%, 7%, 10% कितने से है और किसी कंट्री से कंपेयर करना है, देन यू गो फॉर रियल जीडीपी. और उसके लिए एक बेस तो पता होना चाहिए, उसी से तो कंपेयर करोगे. वो है जीवीए मेजर्स द वैल्यू एडेड बाय डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज. जीडीपी क्या होता है? जीवीए इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन मेथड. प्रोडक्शन मेथड में हम ऐड कर देते हैं ना सारी चीजें. 3 मेथड्स आर देयर, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्शन. उसी का पार्ट हो गया. जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए प्लस टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स माइनस सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट्स. ए चेंज इन द बेस ईयर अफेक्ट्स बोथ जीडीपी एंड जीवीए. क्यों? क्योंकि बेस ईयर जब अपडेट होगा तो मेथोलॉजी भी अपडेट होगा, डेटा सोर्सेज जो यूज कर रहे हैं उनको भी अपडेट करेंगे. और जीडीपी किससे डिराइव कर रहे हैं? जीवीए से ही तो कर रहे हैं. एनी शिफ्ट अंडरलाइनिंग इन जीवीए डेटा विल बी रिफ्लेक्टेड इन जीडीपी. अगर ये चेंज हो रहा है तो ये चेंज होगा, ये होगा तो ये होगा. दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ना यहाँ पे. बाई अपडेटिंग द बेस ईयर वी कैप्चर दीज स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स. कौन से? न्यू गुड्स आर एडेड. इकोनॉमी चेंज हो रही है ना. 2012 में मोबाइल फोन्स कितने कम थे अपनी इकोनॉमी में. आज की डेट में मोबाइल फोन इज इसेंशियल, वो बेसिक नीड हो गया है. 2012 में वो लग्जरी गुड था. तो वो सारी चीजें बास्केट में और उनका रिलेटिव वेटेज जितना जितना इंपॉर्टेंस हर सेक्टर का है वो भी रिकैलकुलेट करते हैं. 3 कंडीशंस हैं बच्चों बेस ईयर को चूज करने के लिए. यही शायद 3 स्टेटमेंट आ जाए कि बेस ईयर इज चूजन ऑन द बेसिस ऑफ वो नॉर्मल ईयर होना चाहिए, रिसेंट ईयर होना चाहिए एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल डेटा. ये जरूर एक बार पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है. अगला हमें जो, अगर आप कहोगे तो थोड़ा सा मैं समझा दूंगा आपको कि अभी जैसे उन्होंने 2022 टू 23 को डिक्लेयर किया, अब वो रिसेंट भी होना चाहिए, नॉर्मल भी होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल डेटा. आप कहोगे सर 21 टू 22 क्यों नहीं हुआ, 23 टू 24 क्यों नहीं हुआ? ये तीनों कंडीशंस नहीं पूरी कर रही थी. मिनिस्ट्री ने अपने पीआईबी पे, अगर आप जाके पढ़ोगे तो मिनिस्ट्री ने यहाँ पे ये सारे एक्सप्लेनेशंस दिए हैं कि क्यों और क्या लिया. उन्होंने बताया कि रिफ्लेक्ट स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स के लिए हम करते हैं. इंडियन इकोनॉमी इवॉल्व हुई है, पैटर्न्स ऑफ कंजम्पशन भी चेंज हुआ है और इन्वेस्टमेंट बिहेवियर भी चेंज हुआ है. तो इसलिए हम रीबेस कर रहे हैं जीडीपी को टू बेटर कैप्चर द कंट्रीब्यूशन ऑफ इमर्जिंग सेक्टर्स. रैपिड डिजिटाइजेशन हो रहे हैं तो अवेलेबिलिटी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी डेटा भी हैं, उनको भी हम यूज कर रहे हैं प्रिसीजन ऑफ नेशनल अकाउंट्स के लिए. रियल टाइम सिस्टम्स यूज कर रहे हैं, जीएसटी नेटवर्क वगैरह यूज कर रहे हैं. पीरियोडिक रिवीजन और क्या सपोर्ट करता है? अलाइनमेंट विद इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस. तो इसी में से 4 फीचर्स पूछ देंगे कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बेस ईयर. वो भी पूछ सकते हैं प्री में या मेंस में, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेरे बेटे. अब देखो बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं. बेस ईयर इज द रेफरेंस ईयर हुज प्राइसेस आर यूज्ड टू कैलकुलेट रियल जीडीपी. यस, यही तो डेफिनेशन है बेस ईयर की. A change in the base year is likely to change GDP at market prices but not GVA at basic prices. नहीं भाई, GDP अगर GVA देखा जाए तो माइनस अपना क्या था, हाँ, प्रोडक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज को हटा देते हैं. ये इंटरलिंक्ड है. आप ये नहीं कह सकते कि एक चेंज होगा एक दूसरा नहीं होगा. ठीक है. A change in the base year is likely to change the relative weightage of the primary, secondary and tertiary sectors. हाँ, इसी को तो कैप्चर करने के लिए बेस ईयर हम चेंज कर रहे हैं. प्राइमरी हो सकता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पहले परसेंटेज ज़्यादा रहा हो कंट्रीब्यूशन. अगर 1990s की बात करें, 1947 में आप देख लो, तो उस ट्रेंड को जो चेंज हो रहा है ट्रेंड, अगर हम पुराना वाला ही अभी भी देखते रहेंगे तो हमें रियल में जो एक्चुअल ग्राउंड पे अभी चेंज हो रहा है उसको हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे. इसीलिए फ्रॉम टाइम टू टाइम रीबेसिंग करते हैं. तो ये भी अपना सही है. चेंज इन लाइक, ये स्टेटमेंट 2 गलत है. अब देख लो, 2 गलत, ये गया, 2 गलत, ये गया, दोनों सही है. ऑप्शन बी 62 बी. ठीक है बच्चों, तो 62 का आंसर बी है. अगला हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इकोनॉमी
डिस्कशन। ये थोड़ा सा आप और देख लो, जैसे ये मिनिस्ट्री ने ही पब्लिश किया था जीडीपी, 3 चीज़ों का बेस ईयर उन्होंने चेंज किया है, सीपीआई, आईआईपी एंड जीडीपी। जीडीपी का क्या है 2022 टू 23, सीपीआई का न्यू बेस ईयर 2024, आईआईपी का 22-23। ध्यान रखना इसमें कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, ओल्ड वाला भी याद रखना, ये 2012 था, ठीक है। इन्होंने बोला इकोनॉमिक चेंज, न्यू सेक्टर्स एंड कंजम्पशन पैटर्न्स, यही तो हमारा स्टेटमेंट था, मॉस्पी का है ये, ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच करने के लिए और बेटर डेटा के लिए। ये 3 रीजन है क्यों रिबेसिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से। ये देख सकते हो सीपीआई में उन्होंने कैसे चेंज किया है। पहले फूड एंड बेवरेजेस, अभी देखो 36.75 है, पहले फूड एंड बेवरेजेस 45.86% था। तो ये सब थोड़े देख लेना कि मेजॉरिटी क्या चेंज हुआ है, इसी पे हो सकता है स्टेटमेंट बना ले। इस तरह से प्रिपेयर कर रहा है। एन इकोनॉमी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग इन अ गोल्डीलॉक्स फेज is most likely associated with which of the following macroeconomic condition। मैक्रोइकोनॉमिक गोल्डीलॉक जोन आप बार बार पढ़ते रहते हो साइंस एंड टेक में या ज्योग्राफी में, एक बहुत ही कंडीशन है जो स्टेबल कंडीशन है। जैसे अगर बात करूं, मान लो ये सन है, ये अर्थ है, या कोई बहुत बड़ी बॉडीज, इनके बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ग्रेविटी का असर नहीं है दोनों के बीच में। थोड़ा सा ऐसे समझा रहा हूँ जो आप लोगों ने पढ़ा है, यानी यहाँ पे अगर कुछ भी रख दोगे तो वो स्टेबल रहेगा, इसका भी ज़्यादा असर नहीं है, इसका भी ज़्यादा असर नहीं है। बहुत रेयर अक्रेंस होता है, इसी को लैग्रेंज पॉइंट वगैरह हम यूज़ करते हैं ना। अब देखो, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ accompanied by हाई इन्फ्लेशन, मॉडरेट इकोनॉमिक ग्रोथ विथ स्टेबल इन्फ्लेशन, डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी हाई इकोनॉमिक ग्रोथ ड्रिवन बाय एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। बार बार गोल्डीलॉक जोन्स पढ़ते हो कि उसी में ह्यूमन सिविलाइजेशन होने की या ह्यूमन और एनिमल लाइफ या लाइफ की प्रोबेबिलिटी कहाँ है, जहाँ पे स्टेबिलिटी है, हर तरह का इन्वायरमेंट प्रोड्यूस है, वैसा प्लेनेट साइंटिस्ट ढूंढते रहते हैं एस्ट्रोनॉमी वाले। तो वही है गोल्डीलॉक जोन्स और अपना देखते हैं। अ गोल्डीलॉक इकोनॉमी रिप्रेजेंट्स एन आइडियल इकोनॉमिक कंडीशंस वेयर देयर इज बैलेंस ग्रोथ। क्या है, बैलेंस ग्रोथ है, लो इन्फ्लेशन है एंड फुल एम्प्लॉयमेंट विदाउट ओवरहीटिंग और स्लिपिंग इनटू अ रिसेशन, कैरेक्टराइज्ड बाय स्टेबल इंटरेस्ट रेट्स एंड मॉडेस्ट इंफ्लेशन। क्या है, इंटरेस्ट रेट स्टेबल है, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट भी नहीं है, बहुत लो भी नहीं है, स्टेबल है, और मॉडेस्ट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इज स्टिल नॉट हायर नॉट लॉन्गर, लाइक 2 to 4% के आसपास है, अगर एक ठीक ठाक माना जाए तो। प्रोवाइड्स एन ऑप्टिमल इन्वायरमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, उसी तरह जैसे गोल्डीलॉक जोन में अर्थ आता है तो ऑप्टिमल इन्वायरमेंट फॉर लाइफ सस्टेनेंस। Companies experiencing positive growth. Although desirable, a Goldilocks economy is generally temporarily due to inevitable business cycle and maintaining it require careful monetary and fiscal policy। बहुत difficult होता है इसको बैलेंस रखना, क्योंकि हमेशा बिजनेस साइकिल वगैरह की वजह से ये मिलता नहीं है। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, नहीं भाई रैपिड नहीं हो रहा है। मॉडरेट इकोनॉमिक ग्रोथ विद स्टेबल इन्फ्लेशन, हाँ ये लग रहा है। पढ़ जरूर लेना आप, जैसे ही मिल जाए आंसर, तो ये नहीं कि इन दोनों को छोड़ देना प्लीज, ऐसे में पूरा चारों स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, नहीं भाई डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, ये भी गलत। वेरी हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, अगेन गलत, तो अपना स्टेटमेंट बी, 63 का बी। अब माय डियर स्टूडेंट्स ये देख लो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025। ये लास्ट अनुभव का क्वेश्चन है, इसका नहीं है, ये आपके पुराने वाले अनुभव 2 का है। उसमें ये वाला स्टेटमेंट था, इट शिफ्ट्स रूरल एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम टू ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड फ्रेमवर्क। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि नहीं सर ये भी नहीं करेक्ट है। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों ने कमेंट भी किया था, मैसेज भी किया था, मुझे मेल भी किया था, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। वो सेंट्रल सेक्टर ही स्कीम खुद मिनिस्ट्री बोलती है, हम नहीं बोल रहे हैं। देखो वहीं से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है। द शिफ्ट फ्रॉम अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम टू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड फ्रेमवर्क रिफ्लेक्ट्स द इनहेरेंटली लोकल नेचर ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड एसेट क्रिएशन। आप ये लिंक है, इस पे जाके पढ़ भी सकते हो माय डियर स्टूडेंट, इसको वहां से एक बार जरूर पढ़ लेना, अच्छा रहेगा। ऐसे डिस्कशन डिबेट हेल्प करते हैं, हमें भी हेल्प करते हैं, आपको भी करते हैं। मैं अपना मेल आईडी लिख देता हूं, आप इस पे मुझे मैसेज भी कर सकते, मेल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। आई एम गिविंग माई नंबर, लेकिन बेटे सिर्फ 9 to 10 PM के बीच में ही आप मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, आई विल रिप्लाई। इस पे आप कर दो, या ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप मुझे कोई भी डाउट हो तो बताओ, मैसेज करो, व्हाट्सएप करो प्लीज़। ओके, माय नेम इज़ वरुण,
तो ये हमारा डिस्कशन बेसिकली एनालिसिस ओरिएंटेड भी था, हमें क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है. पेपर वॉज आई विल से कि मॉडरेट लेवल का ही था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था. कॉन्सेप्ट्स हम थोड़े पूछे थे, कुछ टर्म्स भी पूछे थे, कुछ करंट अफेयर्स को भी इन्वॉल्व किया था. हम चाहते थे कि आपको हर चीज़ पे आपका थोड़ा ध्यान रहे और अपना गॉज करो. अगर कोई वीक एरियाज लग रहा है उसको रिवाइज करो और प्रिपेयर करो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. अगर आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो, एंड we will see you again in the next Anubhav. Thank you. So welcome to the Anubhav. Hope you people are doing good. Let us try to solve the questions of Anubhav. We'll scan through question number 9. So what is the question? Question says, with reference to the contempt of court in India, consider the following statement. This question is asking about the contempt of the court procedure. So let us try to understand what is contempt of the court. I know you people are knowing. Those who are having confusion in it, let us try to understand. So contempt of court is mentioned for Supreme Court as well as High Court. Exclusively it is mentioned, and for the lower courts other than the Supreme Court and High Court, there is a different procedures. Let us try to understand. So Supreme Court has inherent power under Article 1 to 9 to basically deal with the contempt, because they are court of the record. Similar powers is given to the High Court under Article 215, in which the High Court are the court of record. Along with that, they can also charge the contempt. Now the lower courts other than the Supreme Court and High Court can also basically have the contempt, but they don't have the contempt power. There can be contempt of the court, but they don't have the contempt of contempt power. It lies with the High Court, respective High Courts. So that is the procedure. Now what else? So contempt can be initiated either the suo motu by the court itself, in which there is a basically infringement of the contempt, or it can be initiated by a third party, including a private person as well, like me or otherwise. But if a third party or private party is initiating or informing the respective courts about the contempt, then it need to be approved from the Attorney General, that is the Attorney General of the basically Supreme Court, or the Solicitor General or the Advocate General, whatever the case it is, so that the frivolous basically charges can be filtered out. This is also provision. So Constitution provides only the contempt thing, that is the contempt of court is provided. Rest of the procedures are mentioned in basically Contempt of Court Act 1971. This is very important, and most of the provisions are handled in basically 1971 Contempt of Court Act, in which they have decided that there will be two type of the contempt. One we call civil contempt under article basically section 2b they call civil, and under section 2c there is a criminal contempt. So civil contempt is basically willful disobedience or anything like that, it will come under the civil contempt. And for the criminal contempt, it is like prejudice with the basically scandalizing the report of the High Court or the Supreme Court, or obstructing the justice, it will come into the basically criminal contempt. Now this is about the contempt. Now let us suppose we have the three layer of the courts, that is the basically Supreme Court at the apex, High Court at the lower level, and the lower courts are also there. So if there is a lower court and if there is a contempt, then it will lie again High Court, we have already discussed. In High Court generally it is handled by the single bench judge. So if someone is not satisfied with the orders of the single bench judge, they can move to the basically double bench judge for the contempt. And if someone is not happy with the double bench judge as well, then the basically appeal lies with the Supreme Court of India as well. Where it is written? It is written in Contempt of Court Act basically 1971 under the section 19, that yes, there is a process for the appeal. If it is not available for any reason, then we know that Supreme Court can basically handle any case, decree or anything else under Article 136, that is the special leave petition. So the appeal lies with the Supreme Court, that is the ultimate authority, that is why we call it Supreme Court. Now having said that, let us try to understand the question, and we will discuss what is the correct answer to it. So let us try to solve. Question says, being court of record, High Court have the inherent power to punish for the contempt themselves. Yes, it is correct that since they are basically court of record under Article 215, we have already discussed, they have the inherent power,
and they are basically all the powers vested with them. So this statement is correct. What is statement number 2? The Constitution recognizes contempt of court as a ground for imposing reasonable restriction on the freedom of speech and expression under Article 19. Yes. So under Article 19 subsection B, it is clearly mentioned that contempt is one of the reasonable restrictions on the freedom of expression. For example, if there is a clash between the freedom of expression and contempt of court, contempt of the court, so who will be given priority? It is the contempt of the court. Where it is written? It is written in Article 19B itself, and they are exclusively mentioned in the Constitution. This is also correct. Now statement number 3, a private individual can initiate contempt proceeding before the Supreme Court only with the consent of the Attorney General or the Solicitor General. It is also correct, just to basically filter out basically non-serious kind of the charges against any person. Also, willful disobedience of a judgment of the Supreme Court amounts to the criminal contempt. No, we have already discussed, it is not the criminal contempt, but it is the civil contempt, and under the civil contempt this can be charged if there is a willful disobedience of a judgment. Criminal contempt only deals with the prejudice or the willful obstruction of the basically court proceedings. For example, आप कोर्ट जज साहब ने कुछ कहा और आपने कुछ और कर दिया उसके ऊपर, तो ऐसा मतलब आपने जज साहब को रोक लिया ऑर्डर पास करने के लिए, आपने कुछ शैतानी कर ली, तो वो होगा क्रिमिनल कंटेम्प्ट में. नाउ व्हाई इट इज इन न्यूज? बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली एनसीईआरटी फियास्को, सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. सो व्हिच स्टेटमेंट इज बेसिकली इनकरेक्ट? So statement number 4 is incorrect. Rest of the statement seems correct to me. So what will the correct answer to you? That it will C, 1, 2 and 3 only. The answer will be C. Now let us move to the next question. Now let us move to the question number 10, that is with reference to the part 3 of the Constitution of India. So what is part 3? So part 3 is related to the basically fundamental right of the Constitution. So what is the statement number 1? So one says the right to freely profess, practice and propagate religion is available only to the citizens. So we'll have to understand there are basically two classification of the fundamental right. However, it is not constitutionally basically classified. It is the inherent understanding that there are two basically sets of the fundamental rights. Fundamental rights which is only available to the citizens, and fundamental rights which is available to the all ordinary residents. Now let us try to understand. Fundamental right which is available only to the citizens are Article 15, 16, 15, 16, 19, 29, 30. तो याद करने के लिए मैं ऐसे करता था 15, 16, 19, 29 and 30 are available only to the citizens of India. Now rest of the fundamental rights are available rest of the citizens or rest of the basically residents as well. So right to freely profess, practice and propagate will under Article 25, which is available to citizens as well as the non-citizens. So this statement appears incorrect to me. Now let us move to the statement number 2. It says that the right to own and acquire immovable property is available only to the minority religious domination. Nothing like that. We have already know that right to property has been moved to Article 301. Now it is a constitutional right, not a fundamental right. Otherwise these kind of the rights are universally applicable. It is not restricted to the only one communities or two communities. It is available to every community. So if you are filtering out with the open eye, the only statement appears quite extreme, hence you can also weed out this statement. Now let us try to move to the basically article number basically statement number 3. It says that Constitution empowers the state to regulate economic activities associated with the religious practices. So in which we will have to understand basically concept of the religious practices. As per the basically Honorable Supreme Court, there are two sets of the religious practices that is there in the India. One we call essential religious practices, which is core to any religion, and second is the basically non-essential economic basically non-essential religious practices, which is not core to the basically religion. For example, core to the any religion, for the Sikh it is like kripan rakhna, kada rakhna. These are the, for the Jains there are other things, that the Muslims there are other things. These are come a part of the essential religious practices.
Now for the basically rest of the thing, there are non basically essential religious practices. For example, in which we can have the economic activities, we can have the financial activities, we can have the political activities, we can have other activities. These are the part of the non basically essential religious practices, in which a state is empowered to regulate the things. So economic activities will come under the basically non essential religious practices, hence state is empowered to basically deal with it. So this statement appears correct to me. So out of all three statements, only state number 3 is correct. So what will the correct answer of it? That is A. Only one statement will be correct. Hope it is clear to you. Now let us move to the question number 11. It says that consider the following statement regarding the demands of the grant, and the appropriation bill in the Indian Parliament. Now let us try to understand what is demand for grants. Article 113 deals with the demand for the grant, which means any withdrawal from the Consolidated Fund of India, it needs to be scrutinized by the Lok Sabha, very specific Lok Sabha, and there will be basically voting on it as well, and in which basically the government, that is the executive branch of the basically Parliament, can raise demand of the withdrawal, and for this there will be voting, and there is a cut motion and the economy motion and other motion in it as well. So there is a demand from grant. Second is the appropriation bill. Appropriation means the actual withdrawal of the basically fund from the Consolidated Fund of India. So once demand of grants are made, then appropriation bill is passed, which is also subject to the Lok Sabha only. Now in which article it is mentioned? In article 114 it is mentioned that there will be appropriation bill, and it is one of the part of it. And basically third is the finance bill. Finance bill is part of basically union budget, in which there is a provision for the taxation and other things. Let us try to understand this as well. Now what is the statement says? Statement number 1 says demand for grant contains the estimate of expenditure from the Consolidated Fund of India, whereas the appropriation bill includes provision related to taxation. No, appropriation bill doesn't deals with the provision related to the taxation. It is the finance bill, not to be confused with the article 117 financial bill. It is the finance bill which is part of the union budget and is basically introduced every year. It deals with the provision related to the taxation. So hope it is clear to you. So ये statement तो गलत हो जाएगा, तो यदि ये गलत हो गया तो ये गलत हो गया, तो A and C तो हम लोग खत्म कर देते हैं. Now second statement says appropriation bill is introduced in the parliament only after the demand of the grant has been voted by the Lok Sabha. Yes, it is correct, क्योंकि जब डिमांड ऑफ ग्रांट्स मीट हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी वोटेड, तभी आप क्या करेंगे, आपका विड्रॉल होगा फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. इट इज द ड्यू प्रोसेस. सो दैट्स व्हाई the only statement B appears correct to me. So answer will be B, that is the 2 only. Hope it is clear to you. थोड़ा सा आप आर्टिकल भी देखें कि पहले आर्टिकल कौन सा आ रहा है, बाद में कौन सा आर्टिकल है, तब भी आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था. Now let us try to go through the question number 12. It deals with the basically consider the following bodies in India. First is the interstate council, second is the zonal council, third is the North Eastern council, fourth is the GST council, and fifth is the governing council of the Niti Aayog. Means you will have to understand the multiple bodies, and it's very good question, interlinking various bodies. So in how many of the above bodies, both the prime minister, that is the head of the government at the union level, and the chief minister, that is the head of the government at the state level, included as a member. So let us try to understand it. So basically interstate council is basically formed by the president of India. Very important, it is formed by the president, not the parliament, under article 263 of the Constitution of India. And almost for the 40 years after the basically incorporation of the constitution, this was not functional. It came into picture only into 1990s after the Sarkaria Commission recommended that we need to have a council in which the union government as well as the state government can take and can participate for the grievance redressal mechanism. That is the basically fact on the ground. So in which basically the prime minister is the basically chairperson, and they are supported by CMs as well, CM of the basically different states, and there are 5. They are basically interstate council, which is basically to deal with the basically skewed basically relation between the Union of India and the states concerned. Second is the zonal council. So basically zonal council came into picture after
formation of our first linguistic state, that is in 1956 there was the formation of linguistic state, and that is the Andhra Pradesh, and after that it was felt that due to the creation of such kind of the state, there can be discontent among the others states and the regions as well. That's why we have the formation of the Zonal Council, which is headed by the Ministry of Home Affairs, and the members of it include the CMs, and CMs are basically appointed on the rotation basis, and there are basically 5 zonal councils in India which is present as of now, and it is a statutory body because it is basically created by the act of the parliament. It is not a constitutional body. That is add-on information. Next is the North Eastern Council. So for the mainland of India, if we say, there is a zonal council. For the North Eastern state, because there is special status in constitutional provision or otherwise as well, in our heart as well. So North Eastern Council was a special body created under North Eastern Council Act 1971, and its headquarters is in Shillong. It's very important information, and there are 7 sister states initially which was member of this North Eastern Council. Later on in 2002, the brother, that is the Sikkim, was added as a member. So how many members are there? As of now there are 8 North Eastern states who are the member of this body, that is the North Eastern Council, and it is again headed by whom? It is headed by the Ministry of Home Affairs, whomsoever is minister, plus State Minister of the Home Affairs, plus the CMs and the governors of the respective 8 northeastern state. It came into picture only into 1971 only. Next is the GST Council. The question also already came into the GST Council when I was giving the exam. Article 270 9(1)(a) deal with the GST councils. It is headed by the Finance Minister of India. The Finance Minister is supported by the state ministers, state के जो भी ministers होते हैं, finance ministers, and 1 union ministers also there. Decision of GST Council में क्या होता है? Voting are divided. For example, 1/3 vote is given to the union government and 2/3 voting right is given to the state representatives, so that there is no empowering of the union government, or they cannot override the decision of the states, and the decisions came only with the consensus. If 75% members agree, only after that decisions came into the picture. That is about the GST Council. So इसमें भी PM और CM नहीं होते हैं. यहाँ पे कौन होता है? Finance Minister of the Union. एक उनके ministers होते हैं union के भी, and the state finance ministers होते हैं, other members that is appointed from the time to time. Now about the governing council of the Niti Aayog. So Niti Aayog again is a body which replaces the planning commission. So it is a advisory body. It is advisory body in which prime ministers as well as the CMs are members. So यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे हो जाएंगे prime ministers and the CM. So there are only 2 bodies in which both prime minister and chief ministers are member. Hence the answer will be only 2, that is the B. Hope it is clear to you. Next question is question number 13. It says that with reference to the protection of children from the sexual offences, very sensitive legislation which came into the picture to protect children from any kind of the offences. So state number 1 says it defines a child as any person below 18 years of the age. Yes, this act is gender neutral, in which a child is not segregated as a female child or the male child, because since they are vulnerable to the any kind of the offences, there is a gender neutral law. So this statement appears correct to me, and it defines any children below 18 years as a child only. Second, it imposes a legal obligation on any person having knowledge of an offence to report to the authorities. So we call it in legal parlance bystander effect. Bystander effect. हिंदी में बोलते हैं मूक दर्शक नहीं होना है. For example, if you know some child is subject to they are exploited by anyone, it is your legal duty to report it to the concerned authority. There are courts, there are special thanas for it, and it is your legal duty. Means it is not only that if you possess any information, you must be informing. That we call a bystander effect. Third is, under this act, any sexual activity involving a person below 18 years age is treated as an offence irrespective of the consent.
कंसेंट की वहां जरूरत होती है जहां पे आदमी कंसेंट देने के लायक होता है, यानी बच्चा कंसेंट देने के लायक होता है। सो यहां पे कोई कंसेंट देने लायक ही नहीं है तो कैसे यहां पे दिक्कतें होंगी? तो क्या होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंसेंट अंडर दिस एक्ट एनी सेक्सुअल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग पर्सन बिलो 18 ईयर एज ट्रीटेड एज ए ऑफेंस इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंसेंट। यहां पे क्या सही हो जाएगा? तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑल थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट, सी विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज ये तीनों ऑप्शन सही हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, India follows an adversarial legal system. It implies that. So let us try to go through the background of this system. So we have adopted many things from the basically British Parliament. For example, we have adopted the basically parliamentary system of the government. We have adopted the cricket, and we have also adopted the legal system of India. So जैसे cricket में क्या होता है, we have just won the cricket match, cricket World Cup. So cricket में क्या होता है, there is a basically India which is playing, there is a New Zealand which is also playing, and इनको basically handle कौन करता है? तो एक एम्पायर करता है। अंपायर का काम क्या होता है? ऑब्जर्व करना होता है। दे डोंट पार्टिसिपेट इनटू इट, दैट इज द क्रिकेट सिस्टम। तो क्या करता है, जो भी टीम जीती है, कोई अपील होता है तो डिसीजन देती है बेस्ड ऑन देयर ऑन बेसिकली अंडरस्टैंडिंग एंड ऑब्वियसली लुकिंग टू द रूल्स एंड ऑल। सो इसको यदि मैं कहूं, इट इज सिमिलर टू द एडवर्सरियल सिस्टम, लीगल सिस्टम, जहां पे जज इज ए न्यूट्रल एम्पायर which basically sees both the parties which is involved in any case, and depending on the basically nature of the basically debate, they decide the merit of the case. So इसको क्या कहते हैं? adversarial system. इसमें क्या होता है? the judge act as a neutral arbitrator between the parties as a dispute. ये क्या होते हैं? ये सुनते हैं चीजों को। एक होते हैं प्लेंटिफ और एक होता है डिफेंस। तो प्लेंटिफ डिफेंस दोनों के आर्गुमेंट को सुनते हैं, जिसका आर्गुमेंट बेस्ड ऑन द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है, उनके फेवर में डिसीजन दिया जाता है। इसको कहते हैं क्या? एडवर्सरियल सिस्टम। दूसरा क्या होता है, जहां पे बेसिकली एम्पायर देमसेल्फ बिकम द इन्वेस्टिगेटर। तो वहां पे क्या होता है कि एम्पायर ही इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो इंडिया में नहीं फॉलो होता है। इट इज फॉलोड इन जर्मनी, अदर कंट्रीज। सेकंड इज दैट द कोर्ट इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट द फैक्ट्स ऑफ द केस टू डिटरमिन द ट्रूथ। इन इंडिया इट इज डन बाय द पुलिस, नॉट द कोर्ट। यहां पे क्या होता है, यहां पे अंपायर जो कहते हैं न्यूट्रल आर्बिट्रेटर होता है। इट इज नॉट फॉलोड इन इंडिया। सो व्हाट विल द आंसर, which of the statement given above is correct? So only one, because what we follow the adversarial legal system. If you go through the polity notes, आपके यहाँ पे आपको मिल भी जाएगा शायद। चलिए, now let us go through question number 15. With reference to the speaker of the Lok Sabha, consider the following statement. Statement 1 says the speaker nominates the member of the panel of the chairperson who presides over the house in the absence of the speaker and the deputy speaker. So there are two conditions attached to it. Condition number 1, which is the newly elected Lok Sabha, and second is the existing Lok Sabha. So in newly elected Lok Sabha, it is the president under Article 95. They appoint a person as a pro tem speaker. Who preside the meeting, but they are temporary in nature. What is the function of the pro tem speaker? They are basically entitled to the basically provide the oath to the members of the basically Lok Sabha. Once oath is administered, then the member of the Lok Sabha will choose a person as a deputy as a speaker, and can choose a person as a deputy speaker. So it is clearly mentioned in India in the constitution. Now second is during the process of the basically Lok Sabha, if the speaker as well as the deputy speaker is absent, then it is the duty of the speaker. Who appoints? It is the speaker, not the president, to nominate members of the panel of the chairperson who will preside, so that there is no vacuum in case of the basically proceedings of the house. So this statement is correct. Second, the salary of the speaker is charged upon the Consulate Fund of India. It is also correct that the salary of the speaker is charged expenditure, because they are basically having very key note position in the Constitution of India, and since they are quite neutral in orientation, that's why the salary is drawn from the Consulate Fund of India. Third is the Constitution of India does not specify the grounds for the removal of the speaker. It is also correct, because the procedure of the removal is mentioned in the Constitution of India. What it says that a 14-day notice will be given to the basically speaker, and after that basically removal motion will be introduced, which needs to be passed by the effective majority of the basically member of the basically Lok Sabha to remove a person. So it is the basically procedure which is mentioned, not the grounds. So it is very correct. Ground is mentioned in the procedure of the Lok Sabha handbook. It is very important handbook as well. You can go through it. Fourth is no speaker of the Lok Sabha has been even removed from the office. It is also correct that none of the speaker so far has been removed.
Also, none of the precedent has been removed so far. There are charges on the speaker in the past, there are charges on the president in the past, but none of the though has been removed from the office. So all these 4 statements are correct, hence answer will be D, that is the 1, 2, 3 and 4. That is all. Hope you enjoyed it. Okay students, so let us proceed with the next question in the polity segment. So we are going to discuss question number 64. So question number 64, it says that with reference to the constitutional provisions relating to the cooperative societies in India, consider the following statement. So we have been given 3 statements. The first statement is Constitution 97th Amendment Act accorded constitutional status to cooperative societies, right? So the statement is trying to test our knowledge on 97th constitutional amendment, very important amendment. So we have many times said that important constitutional amendments you should be very thorough with. 97th constitutional amendment is a very significant amendment. The second statement is the constitution recognizes the right to form cooperative societies as a fundamental right, okay. And the third statement is cooperative societies whose objects are not confined to one state fall under the concurrent list, right, of the 7th schedule. So this question in essence is trying to test 3 constitutional dimensions. First is the constitutional status of cooperative societies in the statement 1. The second is the fundamental rights dimension, and in the third statement it is trying to understand whether you are understanding the legislative competence in the 7th schedule, whether states or union will have the legislative competence over the cooperative societies. So these are the 3 aspects that it is trying to understand, and the first 2 statements can be solved with just your knowledge on 97th Constitutional Amendment Act. So 97th Constitutional Amendment Act, a very significant amendment, it introduced some changes. So let us just discuss those changes. The first change was it expanded Article 19(1)(c), right? Article 19 clause 1 clause C was further expanded. So originally Article 19 clause 1 clause C accorded with the right to form association or unions. It was expanded, and after unions the term cooperative societies were also included. So if you look at the statement 2, that the constitution recognizes the right to form cooperative societies as a fundamental right. So this is absolutely correct, right? Very simple, right? Expansion of Article 19(1)(c), it accords right to form cooperative societies as a fundamental right. Now coming to the second significant change, it added part 4 DPSP, although not asked in the question but important. 43B was inserted, right? So a new directive principle was inserted as Article 43B, which basically pertains to that the state shall promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative societies. So that is the substance of Article 43B. And the third important aspect was it inserted Part 9B, right? Part 9B, Articles 243ZH to 243ZT, which basically this part pertains to management, board structure, audit, etc. of cooperative societies. So this part 9B, it accords constitutional status to cooperative societies, right? So coming to statement 1, constitutional status to cooperative societies, absolutely correct, right? Now coming to statement 3, right? Statement 3, something that we need to discuss. Now if you look at statement 3, cooperative societies whose objects are not confined to one state fall under the concurrent list. So it is talking about those cooperative societies whose objects are not confined to one state, right? So not confined to just one state, whether they fall under the concurrent list also or not, right? Now this statement, it is basically referring to the multi-state cooperative societies. Now if you look at the 7th schedule, you will see that entry 32 state list, it deals with cooperative societies. So under state list there is entry 32, it deals with
cooperative societies that are located within that state. Now, if there is a cooperative society whose operations are on in more than one state, it is basically governed by the Multi-State Cooperative Societies Act. It has nothing to do with the concurrent list. Rather, it is regulated under entry 44 of the union list, right? So, under union list, entry 44, multi-state cooperative societies are regulated, and it deals with incorporation, regulation, winding up of corporations operating in more than one state. That is the substance of entry 44. So, this statement is incorrect, right? Statement 1 and 2 are correct. So, here A is the correct answer. Let us move to the next question. Okay, so question number 65. Which of the following statements are correct? So, we have to find out the correct statement out of the two statements that are given regarding the governor's address to the State Legislative Assembly as per the Constitution of India. The governor is constitutionally mandated to address the state legislature at the commencement of the first session of each year. The text of the governor's address is prepared by the state cabinet. So, these are the two statements. Now, first of all, why is this question asked and how relevant this question is from the current affairs perspective? So, you must be knowing that the governor of Tamil Nadu, he is continuously declining to read out the customary address of the governor, citing many flaws in that, and there is a confrontation happening with the governor in the state of Tamil Nadu, between the governor and the council of ministers there, because he is declining to read this customary address. Now, statement 1, the governor is constitutionally mandated to address the state legislature at the commencement of the first session of each year. This requires your knowledge of article 176, right? So, if we talk of article 176, what does it provide? So, article 176, it provides that the governor shall address the state legislature. So, article 176, the governor shall address the state legislature. When he shall address, so it further goes on to say, article 176 further goes on to say that at the commencement of the first session after each general election to the legislative assembly, and also at the commencement of the first session each year, that is the preceding budget session every year, right? Now, there is an important clarification here that you should note. In the case of a bicameral legislature, he will address both the houses combined. In the case of a unicameral legislature, the address is just delivered to the legislative assembly, right? Now, if you look at the text and substance of article 176, so here you can see, at the commencement of the first session after each general election to the legislative assembly and at the commencement of the first session of each year, the governor shall address. So, the word used is shall. So, it is a mandatory address, it is not an optional address for the governor. That is something that you should remember from this, right? Now, let us move to the second statement. So, the second statement that we are discussing here, the text of the governor's address is prepared by the state cabinet. So, that requires your understanding of article 163. Now, although the governor delivers this speech, the content that is there in this speech, it is not his personal views, right? So, if you look at the text and substance of article 163 of the Constitution, so the governor has to act on the aid and advice of the council of ministers headed by the chief minister. So, that is very clear in the Constitution. So, therefore, the speech that he is going to deliver, it is prepared by the state government, right? It is prepared by the cabinet of the state, right? And the address, basically it outlines the government's policies, the legislative agenda for the year. So, it is a very important address which will set the tone of the government for the preceding year, right? Now, the important question is
Now, very it is very clear that it is constitutionally mandated. So, this statement is correct. The text is also prepared by the state cabinet. So, this is also correct. So, here correct answer is C. Now, you should further enhance your knowledge on this particular topic given the controversy related to Governor R.N. Ravi. So, the only seminal judgment, a very important judgment on this matter by the Calcutta High Court is Syed Abdul Mansur Habibullah versus, I will just write the judgment, Mansur Habibullah versus the Speaker, West Bengal Legislative Assembly, right. So, this is a 1966 judgment of the Calcutta High Court which clarified many positions on the constitutional necessity of Article 176. So, what happened in 1965 was that Srimati Padmaja Naidu, she was the governor of West Bengal. She came to deliver the governor's address, but the opposition did not provide her the ambient environment to deliver this address, and as a result, she placed the speech on the table of the house and she left. After that, this particular gentleman, he moved to the Calcutta High Court saying that since the governor has not read the speech, no legislative business can be transacted. The session has not legally met, right. So, the Calcutta High Court here noted several aspects of Article 176. So, the judgment of the High Court says that the governor's speech is mandatory, right. So, it is not a ceremonial address, you have to understand that. So, the court here said that the governor's speech under Article 176, it is mandatory, it is not an ideal ceremonial formality, it is the constitutional duty of the governor. The second aspect is the court developed the deemed delivery doctrine. Deemed delivery doctrine. Now, you must be knowing that under Article 212, the court cannot inquire into the procedure of the house. So, there is a limitation on the court into going into the procedural aspects of the house, and therefore, the court cannot take into questions if there is an irregularity of procedure. Unless the constitution is clearly violated, they cannot inquire into the question, right. So, the court came up with the deemed delivery doctrine. So, here the principle was established that if the governor is physically present and the speech is placed on the record of the house, the constitutional requirement of informing the members of the assembly has been met, right. Now, the second important question, does the constitution permit the governor to skip lines? So, as the controversy has been brewing. So, if you look at the text of Article 176, so there is no mention of this, right. The governor may in his own personal view skip some lines, but it is not advised, right. So, there are some things called constitutional conventions, it goes against the constitutional conventions, right. So, that is the only aspect that you need to know. So, nothing in Article 176 is mentioned about whether a governor can skip some lines in the customary address. So, it is not there. So, as per constitutional convention, he should not. He should adhere to the decency morality of the chair, right. So, here that is some extra information that you should be knowing, and the correct answer is both 1 and 2. Let us move to the next question here. Okay, so let us move to the next question, question number 66. With reference to Article 20 of the Constitution of India, consider the following statement. It prohibits retrospective operation of all type of laws. So, this is something that we will be stressing on. The protection against self-incrimination does not extend to compulsion to give specimen signatures or fingerprints. Right. So, the two statements pertain to Article 20 of the Constitution, which relates to protection against certain offences. Now, the substance of Article 20 clause 1, clause 2, clause 3 is basically clause 1 deals with protection against ex post facto criminal laws.
Article 20 clause 2, it deals with protection against double jeopardy, that is no one should be punished for the same crime more than once, right. And Article 20 clause 3, it deals with protection against self incrimination. So here the two provisions that you should know is 20 clause 1 and 20 clause 3. The question is essentially testing your knowledge of 20 clause 1 and 20 clause 3. Now coming to Article 20 clause 1, so what is the statement saying? It prohibits retrospective operation of all types of laws. Now what is 20 clause 1? What does it say? That no person shall be convicted for an offence except for violation of a law that was in force at the time of the act, right. So criminal liability, it is only for an act which was crime at the time of commission, right. And no person can be subjected to penalty greater than what was prescribed for the offence when it was committed. So this is the substance of Article 20 clause 1. It only deals with criminal ex post facto laws, right. So not all types of laws, only laws dealing with criminal matters. So if we are talking about civil laws or tax laws, they don't have protection of Article 20 clause 1, right. The second statement, the protection against self incrimination does not extend to compulsion to give specimen signatures or fingerprints. Now this is something very important. So 20 clause 3, it provides right against self incrimination, that no person who is accused of an offence shall be compelled to be a witness against himself, right. So no one can be compelled to be a witness against himself. That is the text and substance of that is the text and substance of Article 20 clause 3. Now here the Supreme Court has clarified the distinction between testimonial compulsion and physical evidence in many important seminal judgments. So we will just go with two important judgments here. The first one is State of Bombay versus Kathi Kalu Ogad, that is a 1961 judgment. State of Bombay versus Kathi Kalu Ogad, 1961 judgment. So here the Supreme Court, it drew the comparison between testimonial compulsion. So testimonial compulsion, the protection here only applies to testimonial evidence. Under 20 clause 3, the protection only applies to testimonial evidence, that is any oral or written statement that may convey the accused's personal knowledge. So that is something that you need to remember. Speaking of physical evidence such as specimen signatures, fingerprints, blood samples, collecting them does not violate Article 20 clause 3. These are considered physical material evidence, right. Now coming into the forensic analysis, with the advent of time we have gone into forensic analysis. So there is a very important judgment, Selvi versus State of Karnataka. Versus State of Karnataka, a 2010 Supreme Court judgment. It further clarified the thin line between physical evidence like fingerprints and mental privacy. So here in this particular judgment, the Supreme Court ruled that involuntary admission of narco analysis, polygraph test like lie detector test or brain electrical activation profile, it violates right to self incrimination under Article 20 clause 3, because here the extraction of information is done through a test, right. Although the person is not speaking, but you are extracting information from his mind, so you are violating his mental privacy, right. So that
comes under testimonial evidence, right? So no person can be forced to undergo a brain mapping test or a polygraph test or a narco analysis test. But when it comes to blood samples, DNA, etc., these are to be treated as physical material evidence in any matter, right? And they do not violate Article 20 Clause 3. So our second statement, the protection against self-injury, does not extend to compulsion to give specimen, signature or fingerprints, etc. So these are considered physical material evidence. It has nothing to do with the personal knowledge of the person. So they do not violate Article 20 Clause 3, right? So this statement is clearly incorrect. This statement is correct. So the correct answer is 2 only, right? Okay, so next question, question number 67. With reference to the procedure for changing the name of a state in India, consider the following statements. So procedure for changing name, where does it come in the constitution? Article 3. So Article 3, you should be knowing the text and substance of Article 3, right? Very important. Now, what are the statements that are given to us? A bill for altering the name of the state can be introduced only wherever there is statements like only and etc. So just mark it, only in the Rajya Sabha, right? That is statement 1. The prior recommendation of the president is required for the introduction of such a bill in the parliament, right? So a prior recommendation of the president is required for introductions of such a bill in the parliament, right? The bill must be referred to the concerned state legislature for expressing its views before its introduction in parliament. A law enacted for this purpose shall not be deemed to be an amendment of the constitution for the purposes of Article 368. Now, very simply, you can start with eliminating the obvious incorrect, statements here. Now, what does Article 3 deal with? Article 3 deals with increasing, diminishing, areas of the state, altering boundaries of the state, changing name of the state, and the article starts with Parliament may by law. Even if you don't know, just focus on the other statements here. The prior recommendation of the president is required for the introduction of such a bill in the parliament. You should be knowing this is correct. And the word they have used the word parliament here in the second statement. So obviously a bill for altering the name of the state can be introduced only in Rajya Sabha. This becomes incorrect. So there is no bar that such a bill will only be introduced in Rajya Sabha. It can originate in both the houses, right, as per Article 3. So statement 1 is incorrect. Now coming to statement 2, obviously that is the text and substance of Article 3. The prior recommendation of the president is required for the introduction of such a bill in the parliament. So whenever such a bill is introduced in the parliament, the president has to recommend. That is absolutely correct. The third statement here, the bill must be referred to the concerned state legislature for expressing its views before introduction in the parliament. This is also a correct statement, right? But we will just like to clarify. Now before statement 3, before recommending such a bill, the president has to, the president must refer it to the legislature of the state concerned for expressing its views, but that has to be done within a certain period. Why I am stressing on this fact? Because it was not in the original text of the constitution. It was this provision within a certain period, it was added by the 5th Constitutional Amendment Act, right? So the parliament feared that in future what the states may do, they may try to stall by not giving such a view to the parliament, right? So therefore 5th Constitutional Amendment Act, it made it very clear that this view has to be given within a certain period, right? Now the second important question is that what about the view of the state legislature? If the state legislature, its view is that okay, there should be no bifurcation of the state, is parliament bound by such a view? No, the parliament is not bound. So parliament is not bound by views
of the state legislature. This you should very clearly remember. Second, if the state legislature fails to provide its view within that specific time period, the parliament may go ahead, right? The parliament can go ahead and place a bill for state reorganization, right? So statement 3 is also correct. Now coming to statement 4, a law enacted for this purpose shall not be deemed to be an amendment of the constitution for the purposes of article 368. Now even if you don't remember the text and substance, this basically is the text and substance of article 4. You should look at the text and substance of article 2 and 3. These start with parliament may by law, right? Both the statements start with parliament may by law, right? And if what is the necessity for article 3? Very conceptually we think. What was the necessity? Post reorganization India, there was a need to draw the boundaries of the state reorganization was supposed to be done. Why would the parliament go for a rigid process under article 368, which makes it very difficult, right? So you can think logically here also. If you know article 4, a law enacted for the purpose shall not be deemed to be an amendment of the constitution for the purpose of article 368. This is the text and substance of article 4. So this is also correct. So here 2, 3, 4, that is statement C is the correct answer. Let us proceed with the next question. Okay, so let us move to the next question, question number 68. Consider the following types of bills in Indian Parliament. Ordinary bill, that is the first. Second, constitutional amendment bill. Then we have financial bill under article 117 clause 3. Now the question is saying, how many of the above bills can be introduced by a member of Rajya Sabha who is not a minister, right? So in Indian parliamentary system, any member of parliament who is not a minister, he is called a private member. So the question is basically talking about private members. Right. Now private members can be both in Lok Sabha, they can be in Rajya Sabha also. Now the question is specifically talking about Rajya Sabha here, right? So that you have to notice, not just any private member, but private member from Rajya Sabha. Now coming to first statement, ordinary bill. Now speaking of ordinary bill, these bills do not deal with any financial matters, right? And if you look at the rules and procedure of both the houses, any member of the Lok Sabha, Rajya Sabha can introduce a private member bill. Ordinary bill can be introduced by a private member bill. So this is correct. This is absolutely correct. So both members of Lok Sabha, they can bring ordinary bill. We are talking about private members, right? Coming to Constitution Amendment Bill. With respect to Constitution Amendment Bill, we have Article 368. Article 368 gives the power and procedure to amend the Constitution. It does not discriminate or anyway say who can bring such a bill, right? So clearly, there is no bar under Article 368 that a private member cannot bring a constitutional amendment bill. So here this statement is also correct. Constitutional amendment bill can be introduced both in Lok Sabha and Rajya Sabha and can be introduced by private members. Now coming to money bills. Now there is a very important clarification that people need to have. People think that money bills cannot be introduced by private members. Now that is a myth. Money bills can be introduced by private members, and in fact if you go to the Digital Sansad website, you will find that many money bills have been introduced by private members, right? In Lok Sabha in particular, I am talking about money bills under Article 109. So I'll just show you a screenshot there.
So just look at, this is a screenshot from Digital Sansad. You can see the Supreme Court of India establishment of permanent bench at Hyderabad Bill 2023. It's a private member bill, right? Look at this private member bill. It's a money bill, right? Introduced by a private member, Mr. Gaddam Ranjit Reddy. The Code of Criminal Procedure Amendment Bill 2023, amendment of section 2, etc. It's a private member bill, money bill. You just have to add filters here and you will get all the bills that have been introduced by private members. Even money bills can be introduced by private members, right? In fact, in 2023, we have had 5 such instances where private members have moved money bills. So what is the process? The constitution is silent on these matters, and wherever the constitution is silent, there is no bar. The process is that the private member has to move through the parliamentary secretariat if, you know, speaking of article 117, the question here is talking about article 117, right? Financial bills under article 117 clause 3. So if the private member is, wanting to move a money bill, he has to move through the concerned ministry. Right, he has to give a notice. In ordinary circumstances, that time period is 1 month, but if allowed for a shorter notice by the speaker or chairman, he can be allowed to present such a bill at a shorter notice. Right. Now, if you look at the substance of article 117 clause 3, here you will see a bill which if enacted and brought into operation would involve expenditure from the Consolidated Fund of India shall not be passed by either house of the parliament unless the president has recommended. So the only bar is recommendation of president is required for, at the consideration stage of the bill, right? Under article 117 clause 1, I'll just make this distinction. Article 117 clause 1, these bills, they deal with the matters mentioned in article 110, right? So they cannot be introduced in Rajya Sabha itself, right? Cannot be introduced in Rajya Sabha, but a private member of Lok Sabha can introduce this in Lok Sabha. Here, that is why they have carefully chosen the option 117 clause 3. So 117 clause 3, these pertain to expenditure from the Consolidated Fund of India, do not include matters mentioned in article 110, right? Can be introduced in either house of the parliament, so Rajya Sabha is not barred from introducing, right? Therefore, this is also a correct option. Understand that there is no bar on any private member to introduce any type of bill. There is a process in the rules of procedure through which he has to go. If you go on the website on Digital Sansad and if you just apply filters, you will see all the money bills that private members have brought so far, right? So here all 3 is the correct answer. Let us move to the next question. Okay, so let us move to the next question, question number 69. With reference to the constitutional provisions, with respect to the constitutional provisions relating to the State Council of Ministers, consider the following statements. The Constitution of India prescribes both the minimum and the maximum strength of the Council of Ministers in a state, right? That is the first statement. So basically testing your knowledge of article 164 and whether you have the knowledge of the 91st Constitutional Amendment Act that was passed in the year 2003. Another important important amendment act, the 91st Constitutional Amendment Act of 2003, very important. You should be knowing for exam purpose. Also article 164, right? Now, the second statement is in all states having areas under the 5th schedule. So it is talking about 5th schedule here. There shall be a minister in charge of tribal welfare in the Council of Ministers. Now again here the question is based on article 164, right? So where do we see this condition that there should be a minister in charge of tribal welfare in the Council of Ministers? We see that provision again in article 164. So it has nothing to do with 5th schedule.
It's a generalization here. So you can easily eliminate, because it is talking about fifth schedule. Just knowing the bare text of the constitution can help you eliminate this option, right? But we will just look at the text and substance of article 164 here before proceeding. So the 91st Constitutional Amendment Act, what changes it did? So the 91st Constitutional Amendment Act inserted into article 164 this particular clause, that is clause 1A, right? So it says the total number of ministers, including the chief minister, in the Council of Ministers in a state shall not exceed 15% of the total number of members of the Legislative Assembly. So it put an upper limit of 15% of the total number of members of the State Assembly, including the Chief Minister. The objective was to avoid jumbo size cabinets for purely political appeasement, right? The second clause, just read below it, provided that the number of ministers, including the chief minister in state, shall not be less than 12, right? So if you look at this statement, going to the first statement here, the Constitution of India prescribes both the minimum and maximum strength of the Council of Ministers in a state. So this is absolutely correct, right? Now, in all states having areas under fifth schedule, I told you that this is a broad generalization. Fifth schedule has nothing to do with article 164. Right, it's a broad generalization. There are states which are under fifth schedule, for example Gujarat, Rajasthan, etc. But they are not. If you look at, I'll just show you what the constitution here says. So the chief minister shall be appointed by the governor, etc., etc. Provided that in the states of Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, etc., there shall be a minister in charge of tribal welfare. Article 164 clause 1 is saying, it is naming only 4 states: Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha. Before Jharkhand, Bihar used to be here. It was removed by the 94th Constitutional Amendment Act after the state of Jharkhand was bifurcated, right? So the second clause, it has nothing to do with fifth schedule. A state may appoint, who other than these 4 states, may appoint a Minister for Tribal Welfare for administrative reasons, but it is not constitutionally mandated to do so, right? So coming back to our second statement here, in all states, so here the word all states having areas under the fifth schedule. So this part is suspicious. You should stress on it. If you have bare knowledge of article 164, you will be able to eliminate that this is incorrect, right? So here only 1 is the correct answer. So here A, 1 only is the correct answer. Moving on to the next question. Okay, so next question, question number 70. With reference to President's rule under Article 356 of the Constitution of India, consider the following statements. So Article 356 of the Constitution, very important article. 3 statements are given. During the President's rule, the powers of the state legislature are exercisable by or under the authority of the President. Now here you need to note, it is talking about state legislature. Don't rush through the statements, right? It's not talking about the executive powers, it is talking about the legislative assembly's power to legislate on a particular matter, right? Second statement, a law made by parliament on a state list subject during President's rule may be repealed by state legislature after the proclamation ceases to operate, right? So that is the second statement, a law made by parliament on a state list subject during a President's rule may be repealed by the state legislature after the proclamation ceases to operate. The third statement, during the President's rule, the President may assume to himself all the powers vested in the governor of the state, right? So these are the 3 statements. Now coming to the second provision here first. This is a statement of fact that you should be knowing, that a law that is made by the parliament on a state list. Now here there are 2 contradictory provisions. First is, during the President's rule, the powers of the state legislature are exercisable or under the authority of the President. So this and these are conflicting, because here it is talking about a law made by parliament on a state list. During the President's rule may be repealed by the state legislature after, right? So the parliament has legislative competence to make laws on matters under state list, right? Then how can the governor take up the
role of the state legislature. So these are two conflicting statements, so either one of them should be correct, right? Now this is a statement of fact that you should be knowing. A law made by parliament on a state legislature, state list subject during president's rule, it can be repealed, amended, etc. by the state legislature, right? It can be altered, amended, repealed by the legislature, right? Once such a legislature has been restored after the president's rule is over, right? So statement 2 is correct, right? Statement 1 and 3, these are two statements which you can easily answer by reading the bare text of article 356. Just knowing what the text of article 356 say. I have always said that important articles in the constitution you should be thorough with, you should be going again and again into the text of the constitution. So look at article 356. If the president on receipt of a report of the governor of a state or otherwise is satisfied that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried in accordance with the provisions of the constitution, the president may by proclamation, there is clause 1a and there is clause 1b, declare the powers of the legislature of the state shall be exercisable by or under the authority of parliament. So parliament is the competent authority, not the president, right? So the role of the state legislature, it will be the powers of the legislature of the state, it shall be exercisable under the authority of the parliament. So statement 1 is incorrect. But coming to statement 3, that is in clause 1a, that here the president may assume himself all or any of the functions of the government of the state and all or any of the powers vested or exercisable by the governor or any body or authority in the state other than the legislatures. Other than the legislative functions of the state, the president will assume unto all powers of the state that are exercisable by any authority in the state, right? The executive functions of the government or that are exercisable by the governor. Although the practically the governor basically delegates all these powers to the governor of the state who acts as his agent during the president's rule. So that is a practical consideration, but these powers are basically vested in the president when the state is under president's rule. So coming back to the question here, right? So we can see that during the president's rule, the power, this statement is, right, incorrect. Here it will be parliament. Parliament is a competent authority, right? The second statement, a law made by the parliament on state list, etc. This is a correct statement we just discussed. And during president's rule, the president may assume to himself all the powers vested in the governor of the state. So this is again a correct statement, right? So how many of the above statements are correct? So here B, only 2 is the correct answer, right? Let us move to the last question of polity, right? So question number 71, consider the following in the context of Indian polity. First is abolition of the legislative council in a state, right? So we are talking about abolition of legislative council of the state, that is article 169. Inclusion of a law in the 9th schedule of the constitution, right? So 9th schedule of the constitution, right, inserted by the First Amendment Act. You should be knowing First Amendment Act is another important amendment that you should be very thorough with. It has made significant changes in the constitution other than 42nd Amendment Act, right? So inclusion of a law in the 9th schedule of the constitution. The third, amendment of any provisions of the 6th schedule and increasing the number of judges of a high court. The statement is very specific, high court. How many of the above changes requires a bill to be passed in the parliament by a simple majority of the members present and voting, right? So now let us analyze all the statements one by one. So abolition of the legislative council in a state. What is the process under article 169? So here the parliament can abolish or create a legislative council if the legislative assembly of the concerned state has passed a resolution to that effect by a special majority. So here legislative assembly of that state has to pass a resolution
for abolition or creation, and that will be special majority, through special majority, right. But once that resolution has been passed, the parliament may bring a subsequent bill, and the subsequent act is passed in the parliament to give effect to this resolution. It will be treated as an ordinary law and is done through simple majority. So abolition of legislative council can be done through an ordinary law and through a simple majority in the parliament, right. The resolution requires a special majority, but the to give effect to that resolution, a law that is brought, that is passed through a simple majority. Just remember that. Inclusion of a law in the 9th schedule of the constitution. So that inclusion of any law in the 9th schedule of the constitution, it basically means amending the constitution. So any amendment to the any amendment to the constitution will call into question article 368, right. So any matter under article 368 has to be dealt with special majority, that you should know, right. Majority of the members of the house, 2/3 present and voting, right. The third statement, amendment of any of the provisions of the 6th schedule, right. Now this is for people who don't know, this might appear little tricky. So you should be knowing that the text of 6th schedule, which deals with the tribal areas of Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram, so it has a specific provision where paragraph 21. If you read the substance of paragraph 21 of the 6th schedule, so here it states that parliament may from time to time amend the provisions of the 6th schedule by addition, variation, repeal, etc., and such amendment shall not be deemed to be amendment for the purpose of article 368, right. So if it is not deemed to be amendment for the purpose of article 368, this can be done through simple majority, an ordinary law, simple majority. Now increasing the number of judges of High Court, right. So what does the constitution say? Article 216, the president may from time to time decide on the question of number of judges in the High Court. Now for Supreme Court, we know subsequent legislations have been passed, bills have been brought and passed in the parliament to increase the number of judges, right. The last such act was passed in the year 2019. Now under article 216, it is president who decides. Now this is a tricky one. For high courts, there is no requirement to bring any bill in the parliament to increase the number of judges, right. So this will be done through an executive order, right. This will be done only by an executive order, right. So how many of the above require a bill to be passed in the parliament by simple majority? For this we don't require a bill. To amend the 9th schedule of the constitution, it is done through special majority, so this is also not there. Abolition of the legislative council, it requires simple majority and a bill, and amendment of any provisions of the 6th schedule, it requires simple majority and a bill, right. So only 2, that is the correct answer. So this is all in the polity section, right. So thank you for watching. Hello students, welcome to our discussion of art and culture questions of Anubhav test 3. Okay, hope you attempted most of them. A few of them were easy. Okay, we will discuss them. First, let me tell you the structure of today's discussion. What we will be doing is that we will be going through the questions. First, we will be going to the right answer, which one is the correct answer. Then we will be discussing the other options that the question has, and then we will also discuss some important concepts if needed, which are needed to solve the particular questions. Okay, so let's dive straight into today's discussion. First question is, he was a 9th century ruler who assumed the title Nripatunga, okay, peak of kings. He is sometimes described as a Jain king
So means this particular king had patronized Jains. Owing to his strong association with Jainism, he is also credited with authoring the works Kaviraj Marg and Prashnottar Malika. Okay, which of the following king described above? The answer here is A. Okay, so here you could have the biggest hint is the sources. Like UPSC has been asking important resources, important books and authors. So you already might have compiled a list of important books from ancient, medieval and modern India. Okay, so if you have that list, you could have easily arrived at the answer from this particular list, from these, because these books are quite popular. Okay, these were first and the most prominent books of Kannada literature, developments in the Kannada literature. Okay, so the answer is Amogh. Let's also see the other options. What were they doing? Okay, the first answer is Amogh. What was he? The 9th century ruler of Rashtrakuta dynasty. Okay, he was from Rashtrakuta dynasty. He was held the title Nripatunga, means king of kings, biggest king. Okay, strong patron of Jainism and associated with the monk Jinasena. Jinasena was a popular monk and his name comes with Amogh. Okay, next we have credited with authoring Kaviraj Marg, the earliest known work of Kannada literature, Kannada poem, and Prashnottar Malika, Prashnottar Ratna Malika. Okay, next options we had Mihir Bhoj. Let's see who was he. He was a Gurjar Pratihar, a king of Gurjar Pratihar dynasty. His time period was between 836 to 885 in the 9th century. He was one of the greatest Pratihar rulers, like the tripartite struggle. Okay, who was they? Gurjar, Pratihar, Rashtrakutas and Palas. So these three were engaged in tripartite struggle, okay, around 8th to 12th century. Okay, that struggle was happening 8th to 10th century mostly. Okay, he took the title, Mihir Bhoj took the title of Adi Varaha. Adi Varaha, the worshipper of the Varaha form of Vishnu. Okay, he controlled Kannauj and much of northern India. Okay, in this tripartite struggle, it was Gurjar Pratihar dynasty who controlled the Kannauj. Like tripartite struggle was happening for the fertile area of Kannauj. It was a capital. Okay, so whoever won kept Kannauj, controlled Kannauj. So in this tripartite struggle, okay, it is called tripartite because three parties were involved. They were fighting one another, but it was Gurjar Pratihar who held it for the longest period. Okay, major figure in the tripartite struggle. Okay, and he was known for strong cavalry and defense against Arab incursions, as he was ruling Kannauj, okay, the central India. So it and the Palas were in the east and Rashtrakutas were in the south. So it was his responsibility to defend India from the incursions, Arab incursions happening from northwest. So he did that. Okay, till the Rashtrakutas, Gurjar Pratihar were powerful. Okay, next we have Narasimhavarman. He was from Pallava dynasty. He was a predecessor. Okay, he was from Pallava dynasty. His reign was 630 to 668. Famous Pallava ruler was Mamalla. Like Mamalla is a term for wrestler, Paper-1. Okay, he defeated Pulkesin II of Chalukyas. Okay, and Pulkesin II was the one who had defeated Harshvardhan when he tried to cross the Krishna river. Okay, so there is Harsha. Harsha got defeated by Pulkesin II. And he got defeated by Narasimhavarman. So in the history we call Harshvardhan as the great Hindu ruler. Okay, last great Hindu ruler. Okay, but there were people greater than him even in his lifetime, because Harshvardhan was defeated by Pulkesin and Pulkesin was defeated by Narasimhavarman. Okay, so that was the order. He had captured the Chalukya capital of Vatapi.
Okay, these Chalukyas and Pallavas were always in a battles. Okay, were always engaged in struggle against each other. Okay, so he was a patron of rock cut architecture, temple architecture, and he was a patron of Mahabalipuram. Okay, Mamallapuram. Okay. Next we have Dantidurga. What's Dantidurga? He was the founder of Rashtrakuta dynasty. Okay, he overthrew the Badami Chalukyas. Like Chalukyas were 3 empires. Okay, Chalukyas of Badami, Chalukyas of Kalyani, and Chalukyas of Vengi. Okay, so Rashtrakutas overthrew the Badami Chalukyas. Okay, so these were the 4 important persons of the early medieval period. Like UPSC has been asking these questions lately regularly, because in the last 3 years, every year there has been a question on the early medieval empires. Okay, even in our prelims crash course, I have been covering it in great detail, because a question is expected from this theme, from this timeline, early medieval empires. Okay, so you also make a list of important rulers of that period after Harsha. Okay, after Harsha, between 8th century and 12th century, before the Delhi Sultanate comes in. Okay, make a list of important rulers of that time and their contributions towards art and culture, because there is where UPSC has been going into. UPSC has stopped asking questions directly from the political developments. Okay, like there might be greater kings, but UPSC is asking questions of the kings who had contributed towards literature, towards art and culture, towards architecture. Okay, so those are prominent areas. You put some time. Okay, put some time into it and make a list of the important empires, dynasties and rulers who had contributed to art and culture. Okay, there can be definitely a question from there. Arrange the following industrial civilization sites from in north to south order. Okay, so there are many Indus Valley sites. Okay. We need to have a idea of which site was where. Okay, the option here is C. Okay, we have to see it through a map. This is the map. Okay, so what are the options here? They are asking Mohenjo-daro, Surkodda, Shotugai, Harappa. Mohenjo-daro, Shotugai and Harappa, and Shotugai, Mohenjo-daro, Harappa. चौथा कौन सा था? सुरकोटडा. अच्छा, Surkodda. Okay, so they were asking which sites come from north to south. So we have Shotugai first, then we have Harappa, then we have Mohenjo-daro, then we have Surkodda. This is a sequence, but we need to have the idea of 4 important sites, like which serve as pivot points. Okay, so which is the northernmost? It was Shotugai. This one is the northernmost. What was it? It was a trading outpost near lapis lazuli mines. Okay, next we have southernmost. Southernmost was Daimabad. यहाँ होगा Daimabad. Okay, so Daimabad was the southernmost site. As we know from the evolution of Indus Valley civilization, things moved from east to west and later from north to south. So Daimabad is from the later declining phase of IVC. Okay. Next we have easternmost is Alamgirpur. Okay, it comes near Haryana. Alamgirpur. Okay, it was the easternmost, and westernmost is Sutka Gendor. Here you can see. Okay, it was coastal terrain settlement linked with Persian Gulf trade routes. Okay, so we have the 4 extremes. Shotugai, northmost, easternmost is Alamgirpur here, southernmost is Daimabad, westernmost is Sukat Gendor. Okay, memorize, just have a look at these map.
Okay, and what also is needed, I guess, is your matching these sites with the rivers, like because all the IBC sites were based near or on the banks of some river. So you need to map the important sites with the rivers, because UPSC can ask any day, and this information will help you, not even if it does not help you to arrive at the answer, but it will help you in eliminating the wrong options. Okay, so make a map, make a list or table of important sites and the rivers they are located at. Let's come to the next question. With reference to Anubhav Mandapa in the medieval Indian history, the following was established by Basavanna in the 12th century CE. Yes, this statement is correct. It functioned as a royal council advising the rulers. No, it was not a royal council of the Chalukyas, but it was a philosophical discussion debate, a center of philosophical discussion debates led by Basavanna. Okay, a parallel what we can derive is the Ibadat Khana. Ibadat Khana, what was it? It was the palace made by Akbar for philosophical discussions. Okay, so it has parallels with that, but Ibadat Khana was led by king. It had political patronage. It was like a official court of that time, but this was a initiative led by Basavanna himself. The state, the king, was not directly involved, so it was not a royal council. Okay, so option answer here is A. Let's take a look at Basavanna. Okay, so who was Basavanna? He was 12th century social reformer from Karnataka and leading figure of Lingayat Virashaiva tradition. Okay, he was seen as a most important leader or founder of Lingayat tradition. Okay, served as a minister under Bijjala II. Okay, what was it? Of Chalukyas. Like I said, there were 3 Chalukyas, so he was under the Chalukyas of Kalyani. Okay, next established the Anubhav Mandapa, a spiritual philosophical assembly where saints called Sharanas discussed religious and social ideas. Okay, so he composed vachans. Vachans were short Kannada devotional poems which became major body of Kannada bhakti literature. Like bhakti movement has been credited with developing and helping with a lot of the development of regional languages. Okay, like Kannada, Telugu, Tamil all got a boost with bhakti literature, and Marathi, even Marathi got a boost because of bhakti literature. He promoted Lingayatism, okay, emphasis on personal devotion to Shiva through Ishtalinga. Okay, so one important thing about Lingayats is that they worship Shiva and they have Ishtalinga, like their personal Shiva. So they wear a necklace kind of thing with a personal Shiva. Okay. So they opposed caste hierarchy, Brahmanical ritualism and social inequality. Okay, advocated equality. Okay, so they propounded 2 important ethical principles. Okay, these terms also can drop in any time in the exam. Okay, that is Kayaka, which is dignity of labor, work as worship. Okay, like do your own work, do your own karma. Next we have Dasoha, sharing of wealth and food with the community. Okay, his movement contributed to the bhakti tradition in the India and led to the formation of Lingayat religious community. Consider following pairs regarding the various names used for the Indian subcontinent historical sources. So this question asks about the important the names which was India was referred with in historical context. So Sapt Sindhu, yes, in Rig Veda India is mentioned as Sapt Sindhu. Okay, Sapt Sindhu is land of 7 rivers. Jambudvip, Mahabharata and Ramayana mention India as Jambudvip. Okay, so this also shows the geographical idea. It's telling that Jambudvip, it's an island. Okay, it's a big island. It was recognized that India, our land was surrounded by water with almost all sides in the by the 3 sides. So it was called a Dweep, Jambudvip. Okay, so it was in Ramayana
and Mahabharata and Ramayana. Indoi and Hind. Okay, this has been mixed up. Persian records mention India as Hind and Greek records mention it as Indoi, and from Indoi came India and from Hind came Hindustan. Okay, so 1 and 2 are correct, 3 and 4 have been mixed up. Indoi was called by Greeks, Hind was a term by Persians. 19. With respect to sacred scriptures, Hinduism, which of the following? Shruti. Okay, see, Shruti, there are two kinds of literatures. Okay, Vedic literature, Shruti and Smriti. So Shruti is something which have been revealed texts. Okay, like most important texts. Okay, so it is said that it is so important that humans might or might not have composed it. It might have been given to us by the gods. Okay, and then there is a Smriti text, which is the commentaries on these Shrutis that was made by sages. Okay, so this is a distinction. So Hindu sacred religion, Shruti, they are considered divinely revealed and highest authority in Hindu tradition. So what are the Shrutis? Vedas, Brahmanas, Upanishads and Aranyaks. So the primary texts of Hinduism, Vedas, are called Shrutis because it is assumed that they are so important and so wise that it might not have come through humans, it might have been given by gods, divinely revealed. Okay, and then there is Smriti. What is Smriti? These are the written by later sages, like the commentaries and stories, like Puranas. What are Puranas? Are kind of extension on stories about the Vedic gods. Okay, then we have epics like Mahabharata, Ramayana, and then we have commentaries on the society of that time, social orders like Manusmriti, Dharma Shastra. So here Vedas, Upanishads, Brahmanas are Shruti, Puranas are Smriti. So answer will be A. Okay. If some text is very important, most important, it is Smriti. If it's the commentary of that particular text, it might be Smriti. So that is the distinction you can create, or otherwise just remember these four: Vedas, Brahmanas, Upanishad and Aranyak. These are Smriti. Other texts are these are Shruti, other are Smriti. Okay, next. There is a question on the philosophy. Okay, the philosophical ideas like the 5th, 6th century BC was a very fertile time for philosophical discussions. A lot of philosophies came up, okay, with different ideas about life, death, okay, and life after death. Okay, so here Anekantavad. What is Anekantavad? Anekantavad is reality can be viewed from multiple perspectives. Okay, like what you see is not the only truth. Okay, the truth can be different from some other's point of view as well. It was a basic idea of Jainism. Okay, it says the central Jain doctrine saying that truth can be completely and fully understood from a single perspective. It says that truth is very complex and just knowing a little part of the thing, a small part of the, just seeing a thing from one side, one angle cannot reveal everything about it. There might be someone else who can say different things about it because he is having a different view of it. It was a Jain philosophy. Okay, yes, we have Shanikvad. Okay, all phenomena exist only for the Shanikvad, like momentariness. So it says all phenomena exist only for a moment and are constantly changing. So it is idea of Buddhism. Buddhism had this idea that whatever we are seeing is not permanent and things can change. Okay, it says momentariness, which states that everything in the universe is transient and exists only for a brief moment before changing. So we cannot assume that we know everything about something or we know everything about a person. Next we have Dvaitavad. Okay, the individual soul and supreme beings are eternally distinct. So we have there was an idea that the soul, individual soul can merge
with the supreme being, with right karma, right ideas, right worship, right philosophy, one can merge with the supreme being. And then came the idea of Dvaitavad. It says no, the individual is very different from the supreme, okay, and though these two are individual entities, they can never merge, okay. So this was the idea of Vedanta, a dualistic philosophy developed by Madhavacharya, which holds that the soul, Atman, and God, Vishnu, Brahma, are fundamentally separate, are never identical, and cannot merge, okay. So it was a different kind of philosophy, okay. So as I said, 5th 6th century was a very fertile ground for these new kinds of philosophies to come up. So there were a lot of ideological debates, discussions in that period, and a lot of sects ideas came up. Consider following administration division under the imperial Cholas: Nadu, Mandalam, and Valanadu. See here, okay. Okay, Anaikantavad is Jainism, Shanikvad is Buddhism, Dvaitavad is Vedanta. So here Dvaitavad is Vedanta, C1. Okay, so here the option is C. 73 option is C. Next, Nadu, Mandapam, Velanadu. Like UPSC has been asking the administrative divisions, like it asked for the Mughal period, okay, like Sarkar and Pargana, it had asked in 2020, I guess, okay, they have asked. So we need to memorize, we need to see what kind of provincial divisions, okay, federal divisions the empires had, okay, because this is important. I have also been covering it in my classes, okay, like what were the federal divisions in the modern period, what was in the Gupta period, what were the Cholas doing, how was the Delhi Sultanate doing it, how were the Mughals doing it, okay. So these were important, and these keywords often come up in the exam, and UPSC has been asking it, and it can ask any other time as well. So when you make a list of important keywords, also include like what was the division of federal division of an empire, and what was that officer called, okay, for Gupta Maurya period, for Gupta period, okay, for Delhi Sultanate, for Mughals, for Cholas, okay. That all we have been doing it in our crash course as well, okay. So largest was Mandalam, okay, major provincial division of the empire, often based on conquered regions or large state. A large territory was called Mandalam, okay, usually governed by royal prince or high ranking governor appointed by the king. Like in the modern period, the larger provinces were ruled by very senior officers or by the royal family itself, because we know from the records that Ashoka was the governor of Takshila before taking the throne, okay. So the rule, so it was also to ensure that the rule was kept within the imperial family and the control was centralized, okay. Next, after Mandalam, we have Valanadu. Valanadu is intermediate subdivision of a Mandalam consisting of several nadus important for revenue administration, okay, administered by Valanadu officials or royal representatives, okay. Next we have Nadu. Nadu is like a village, small regional unit, cluster of villages, okay. So this is governed by Nattar or local chief. So in the Chola time, it was the democracy, okay, the elected officers that we know about in from the Chola office, Chola administration, Chola rule were the ones governing the Nadu. What used to happen is that people used to put their names. It was not exactly an election, okay, but kind of lottery system. You will put your name on a chit, drop in a pot, 6 names will be pulled out, and these 6 people will be in charge of governing that particular area, like in this case a Nadu, okay. And not everyone can participate here. For participation, you need educational qualification or property qualifications. You need to have particular parcel of land or educational qualification, okay. So here Mandalam, Velanadu, then Nadu, means 2, 3, 1.
D will be option here. Which of the following Ashokan edicts does the Emperor Ashoka use his personal name Ashoka instead of title Devam Piyadasi? Like in most of the edicts, okay, we have seen Ashoka being mentioned as Devanam Piyadasi, okay, but only in Maski edict his name Ashoka has been revealed, okay. So let's see the other options. Girnar Rock Edict, where is this? Girnar in Junagadh, Gujarat. It is type of major rock edict. It has all the 14 edicts. Like Girnar is the only place which we have found all the 14 rock edicts. Yeah. What is a rock edict? What is a pillar edict? Okay, I get this question often. So edicts are state regulations. States wants people to know if something. It's like a notice board. Okay, so what they do is they inscribe the directions that they want to say, and on a rock tablet, like on a rock tablet, they inscribe it and put it on a public place for display. Okay, like a notice board. Okay, so Girnar is a site which has 14 of these edicts, like all of these edicts. Okay, what is a pillar edict? Is that the message is etched on a pillar, like Allahabad pillar. Allahabad pillar, you have inscriptions of Mauryans, then you have Samudragupta's inscription, then you have Jahangir's inscription, and then British also put something there. Okay, so in that pillar we have 4 edicts. Okay, so Maski Rock Edict, it has major rock edict, it has all the rock edicts are found there. Then one of the best preserved rock inscriptions, because all of the sites are there, like there are probably all the 14 edicts were placed in all the places. Girnar, Dholi, Jauguda, सब जगह होने का they were placed, but it got lost with time. Okay, and Girnar is the only place where we found 14 rock edicts. Okay, one of the best preserved Ashokan inscriptions discusses Dhamma, welfare measures and moral governance. Okay, we have the Maski Rock Edict in Raichur district, Karnataka. Minor Rock Edict. Okay, it's the Minor Rock Edict. First inscription where Emperor's personal name Ashoka appears. Otherwise, everywhere he is called Devanam Priyadashi, means a favorite of the gods. Dholi Rock Edict near Bhubaneswar. Dholi is near Odisha. There is also a train called Dholi Express. It goes to Bhubaneswar. Separate Kalinga edicts issued after Kalinga War. So Kalinga War is Rock Edict number 13. Okay, it talks about the Kalinga War and how after Kalinga War Ashoka converted to Buddhism, okay, and stopped violence and warfare. Next, Jauguda Rock Edict. It is in Ganjam district of Odisha. It has separate Kalinga edicts, similar message as Dholi edicts addressed to officials governing Kalinga province. Okay, so that's about edicts, rock edicts. Make a list of the 14 rock edicts. We were just discussing in yesterday's class of the prelims crash course that we need to cover that, because these things can come up anytime. UPSC has been asking rock edicts, question on rock edicts, like in 2022 they were asking like which king has said this, and on which edict it was written. So UPSC has been asking. So take some time out and make a list of the 14 rock edicts, what it was saying. Okay, 13th will be saying this story of Kalinga War, but apart from that there are also other things, like one said we should be tolerant, one should say pay respect to Brahmins and elders. Then one was saying that the state should take care of, should take some welfare measures. Okay, so make a list of those rock edicts. 14 rock edicts, make a list. So here is a temple and patrons and dynasty. So Konark Sun Temple, it was patronized by Anantavarman. Okay, it was Anantavarman, not sorry. Achha, the temple was built by Narasimha-Deva I, not Anantavarman of Eastern Ganga dynasty. Modhera Sun Temple, it was patronized by Bhimdev of Gujarat Pratihar dynasty, built by Bhima I of Chalukya Solanki dynasty,
and not the Gurjar Patihar. Okay. So first option is not right, second option is not correct, only the third one is correct. Martand Sun Temple, it was patronized by Lalitaditya Muktapida, okay, of Karakota dynasty. Okay, this option is correct. So here 3 only. Okay. So that will be end of today's discussion. Okay. So ensure that you cover all these questions and make a detailed analysis of all the questions you get wrong in today's test. Okay, because the idea of the giving tests is that it reveals your knowledge gaps, it reveals the areas you are weak in, and from there just knowing that you are weak in some area will not help you cover it. You need to spend some time in covering it. For example, if you got the first question wrong, the Amoghavasha one, so make a list of all the important resources, important books and authors of ancient and medieval India, to ensure that if there is a question in the UPSC, you can solve it. If you got the Ashokan inscription question wrong, make a list of all the important edicts of Ashoka, to ensure that in the next test you improve, you are able to get that question right. Okay, just solving tests will not help you improve marks. Doing analysis and covering the knowledge gaps will slowly increase your marks. This is how this process works. Okay, so that's the process. Ensure that you give as many tests as you can, do analysis and make notes of, and then revise the notes. Okay, so with this I would like to end, and best of luck for your exam, and hopefully next Anubhav as well. We'll meet again in the next Anubhav discussion. Thank you. हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयंक सिंह और आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दैट वी हैव रिसेंटली कंडक्टेड इनटू द अनुभव, एंड दिस इज द थर्ड सीरीज ऑफ द अनुभव फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर. So before even starting the modern history part, इससे पहले वाले discussion में I have already discussed that what should be your approach, right, with respect to the solving of the questions with respect to the modern history. जैसे modern history में भी recently 4 से 5 तरह के questions majorly पूछे जाते हैं UPSC सिविल सर्विसेज के prelims examination में. तो मैंने इससे पहले के 2 वीडियोस में आपसे ये भी डिस्कस किया है कि modern history पढ़ते टाइम आपको किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए. So if you have not watched those particular videos, you can watch my section with respect to modern history, so you will get an idea. And I hope in the last leg of this particular preparation, because 24th of May is going to be your prelims examination, I hope your preparation is going smooth and you all have attempted the Anubhav quite well, right? So let's start the discussion of the modern history question. You have already seen the discussion with respect to art and culture. So the first major question that is going to talk about a particular personality. Consider the following statement regarding C. Rajgopalachari, right? So this is a question that is going to be based on a personality. So I have already spoken that if any personality is going to be in news with respect to his particular achievement, to commemorate his achievement, or he or she is going to complete 100 years, 150 years, or government is going to recognize his or her work, so that personality becomes important with respect to a question. So जैसे ये personality हैं, तो इन personality का भी आपको जैसे पता है कि president has unveiled his statue, right? So that's why this personality was in very much news. Or with respect to the modern history part, a very important contribution that is going to be the Rajaji formula which you read, right? So that is going to be given by this personality only, right? So अगर मैं थोड़े से इनके biographic aspects में बात करूँ या historical aspect में बात करूँ, so he is going to be born in Asalim district of Madras province at that particular time, जो अब तमिलनाडु का हिस्सा है या तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है state. And lately he is also going to become the commissioner of the municipality of Salem only, right? Then with respect to the national movement journey of C. Rajgopalachari ji is going to start in 1905-1906 during the time period of partition of Bengal, and he is going to start his national movement journey with respect to the Swadeshi movement, and he is going to come in contact with the Bal Gangadhar Tilak, so he is also going to play a crucial role. With respect to his
contributions with respect to national movement or his ideological approach. Lately he is also going to come in contact with the Gandhiji, or major contribution with respect to national movement is going to be in the year of 1930, when the salt satyagraha or civil disobedient movement is going to be starting. So he is going to be a very prominent personality जिन्होंने salt satyagraha को या civil disobedient movement को south में, right, in the his own hometown, that is going to be in the Madras province, he is going to lead a particular movement with respect to the breakage of the salt law, right. He is very closely associated with Gandhi ji in terms of personal respect. तो आप देख सकते हैं कि गांधी जी के बेटे की शादी इनकी बेटी से हुई है, right. Apart from that, lately he is also going to become the first Indian that is going to replace the Lord Mountbatten. So after the Lord Mountbatten term is going to be over in 1947, he is going to be the first Indian who is going to become the first Governor General of India, right. So he is going to be the first Governor General of India, and secondly, after that, he is also going to become the Home Minister of India, replacing Sardar Vallabhbhai Patel. So after the unfortunate death of Sardar Vallabhbhai Patel, then he is also going to become the Home Minister, and after that he is also going to be awarded Bharat Ratna, right. So in 1954 he is also going to be awarded as Bharat Ratna. कांग्रेस के साथ में उनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आना शुरू हो गए थे 1950 के बाद, एंड देन ही इज आल्सो गोइंग टू लॉन्च अ पर्टिकुलर पार्टी दैट इज मेंशन्ड एक्चुअली इनटू दिस क्वेश्चन, दैट इज Swatantra Party. So that party is going to be talking about talking or not happy with the socialistic policies or economic policies with respect to the Congress. So he is not happy with respect to the socio-economic principles that are going to be promoted by the Congress party. That is why that particular party is going to promote the liberal, or you can say, free trade values, right. So now if we get into this particular question, so the first question is going to talk about he served as the first Indian and the first Governor General of India, that is of independent India actually, right. So this question or this statement is going to be the correct one, जैसा कि अभी हमने discuss किया है. And secondly, he is going to found Swatantra Party, right. Don't get confused with respect to the Swaraj Party, because Swatantra Party is going to be formed after independence. Swaraj Party is going to be formed after non-cooperation movement, if you remember, right, which advocated free market economy. Because if you are going to have a background that he is not happy with respect to the socio-economic policies or socialistic principle policies of the Congress, that is why he is going to advocate the free economic policies. That is why this party, the statement is going to become the correct one, right. So first and second statements are correct. Third statement is going to talk about he served as the first president of Indian National Congress after independence. So this statement is actually the incorrect one, because in 1946 the president is going to be JB Kripalani, और फिर 1946 के बाद एक ट्रांजिशनल फेज है जो इंडिपेंडेंस का, और इंडिपेंडेंस के बाद दैट इज गोइंग टू बी द सेशन दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड इनटू जयपुर इन 1948 is going to be chaired by Pattabhi Sitaramayya, right, a very famous personality. आप इंडियन पॉलिटी में भी उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. So that personality is going to be the president. So that third statement is going to be incorrect. Whenever you read about this statements, or whenever you go through first Indian or he is the only person, so please always mark that keyword, because that keyword also become as an important thing, right. So जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट में इस तरीके से पढ़ें, जैसे अगर आप साइंस एंड टेक में पढ़ रहे हैं या इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं, तो कभी भी इस तरीके का फर्स्ट, ओनली, ऑल, इस तरीके के कीवर्ड्स को आप हमेशा मार्क कर सकते हैं, क्योंकि कई बार आप इस तरीके के कीवर्ड्स अगर छोड़ देते हैं तो हो सकता है वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो और आपने उस कीवर्ड को नहीं पढ़ा हो, इसलिए आपने उस स्टेटमेंट को करेक्ट कर दिया, राइट. सो हियर आंसर इज गोइंग टू बी 1 and 2. So this is a personality based question. This is a very important area where UPSC has started asking questions. So please read about the important personalities. So moving to the next question, that is going to be the question that is going to talk about the Dayanand Saraswati and Arya Samaj, right. So a very important topic that is going to be related with socio-religious reform movements. Again, a very important area where UPSC is going to ask. Whenever you talk about socio-religious reform movement, peasant revolt, tribal revolt, I have already spoken that you should definitely know about geographical area, you should know about the personalities involved, you should know about the reason, you should know about the outcome, and if there is going to be any important associated feature with respect to that, with respect to a particular movement or contribution, right. So it is a very famous movement, and whenever you talk about socio-religious reform movement, you generally categorize into two. Firstly is going to be reformist, and secondly is going to be revivalist. Reformist movement, who are going to talk about the reform that has to be done,
right? And revivalist movement are going to talk about ki whatever is going to be done in the past was already very beautiful and was already very progressive, है ना? जैसे आप नाम कह रहे हैं कि revivalist, तो revival of the past values, revival of the values that were existing into the past over a period of time, वो वैल्यूज का पासिंग ठीक से नहीं हुआ सोसाइटी में. जैसे किसी रिले रेस में आप समझ सकते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज इज गोइंग टू बी द पासिंग ऑफ द बैटन, right? तो one person should pass the baton to the second person properly so that that baton can be continued in a particular race. तो वो पासिंग ऑफ बैटन शायद सोसाइटी में ठीक से नहीं हुआ उन वैल्यूज का, इसलिए वो रिवाइवल ऑफ द पास्ट करने की जरूरत है क्योंकि पास्ट में चीजें ठीक थी, राइट? तो दैट इज गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड एस्पेक्ट, दैट इज गोइंग टू बी मोर लाइक अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट दैट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड बाय दयानंद सरस्वती, एंड ही इज गोइंग टू स्टार्ट दैट मूवमेंट इन 1875 बाय फाउंडिंग द आर्य समाज. And the first headquarter is going to be at Bombay, and lately that is going to be shifted in 1877 to Lahore, right? So it is going to establish its first unit of Arya Samaj that is going to be established by Dayanand Saraswati. It is going to be into Bombay. So first statement is definitely correct, right? Second, they gave the message, or Arya Samaj gave the message, a very important message as you have read, that is back to Vedas. Why he is going to talking about back to Vedas? Because it is going like a revivalist movement. तो जो वेद में लिखा है, जो पहले होता था, जो values वेद की हैं, that are going to be very much true, and we should learn from those values. That is why he is giving the message of back to Vedas, right? So it is more like a revivalist movement. So Vedas की values को ही promote करेंगे, right? So this Arya Samaj is going to criticize the caste system because caste is not going to exist into the Vedas, right? तो ancient history में जब आप पढ़ेंगे the story of the evolution of the Varna, and lately how it is going to come the debate of the Jati, and lately very much the caste that is not even the Indian term that is going to be introduced. So it is going to revival all those values so that the Indian society can become again very progressive and rational. तो ये जो social evils हैं, ये जो social evils हैं, तो सारे social religious reform movements are going to talk about the purification of these social evils. So when you talk about the social evils such as sati, when you talk about social evils widow remarriage or widow aspect, then aspects related to the woman in terms of the education, in terms of the rights, in terms of the untouchability. So these type of whatever social evils are going to be persisting in the society have to be reformed, right? So it is going to advocate the policy of intercaste marriages and women education. So these two things are going to be the correct one, right? So second statement is going to be correct because it is going to criticize the caste system, and it is going to promote very much intercaste marriages and women's education, right? Third, Dayanand Saraswati founded the Dayanand Anglo-Vedic colleges to promote education based on Indian values. Now whatever I always say ki you should always make sure that whatever keywords are going to be there, you should always mark. Actually DAV schools are found by the ideology of the Arya Samaj, that is perfectly fine, but it is not going to be found by the Dayanand Saraswati because he is going to be die in 1883. It is going to be found in 1886, and as the name suggests, Dayanand Anglo-Vedic school, Anglo का मतलब ये है because it is going to coming from the same term of Anglo. जैसे आप पढ़ते हैं Anglo Carnatic War, Anglo Mysore War. So Anglo is a term which is going to be representing of Anglo-Saxon race, है ना, जो ब्रिटिशर्स जिस रेस को बिलोंग करते हैं. तो इसका मतलब दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स में दो तरीके का मिक्सचर की पढ़ाई हो रही होगी. फर्स्टली दैट इज गोइंग टू बी वैल्यूज जो हमारे यहाँ की हैं, जो हमारे यहाँ का कल्चर है, जो यहाँ हमारे यहाँ के वेद्स हैं, या जो हमारे यहाँ की इंडियन टीचिंग है, या जो हमारे यहाँ के इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफीज हैं, दैट इज द वन. एंड सेकेंड इज गोइंग टू बी द English education. That is why the Anglo term is going to be mentioned, right? So yes, they are going to talk about based on the Indian values plus the English medium or some of the English part of the education. But when you see, it is not going to be founded by Dayanand Saraswati, it is going to be founded by Hansraj, right? So that is why it is going to be founded in 1886. That is why this statement becomes incorrect. So third statement is incorrect. Lately, the Arya Samaj is going to later split into the two groups over the issues such as dietary, that is veg and non-veg, and second with respect to medium of education, that is English, vernacular or Sanskrit, right? So when you are going to talk about, you are going to see that there are two factions that are going to come into Arya Samaj based on firstly medium of education, that it is going to be English. So English plus Indian that are going to establish the DAVs, and second that are going to promote the
Vedic education only, and that is going to be the Sanskrit education or written into the Sanskrit only, that are going to establish the Gurukuls, right. So that is going to be the correct statement, because lately it is going to have faction with respect to the dietary pattern, that is veg and non-veg, and secondly that is going to be English and vernacular or Sanskrit, right. So 1, 2 and 3, 3 statements are going to be correct, third is going to be incorrect. So answer is going to be only 3, right. So that is an important question. दयानंद सरस्वती, इससे पहले वाले हमने अनुभव में we have also discussed a question on social religious reform movements that is going to be based on Young Bengal, right. So next question is going to be in the context of the colonial India, the chamber of the princes. So those who have read the Montagu-Chelmsford reform properly, so they might be familiar with this particular term of chamber of princes, because it is going to be mentioned into the Montagu-Chelmsford reforms, and lately that became an act in 1919, right. So as you know कि अंग्रेज जब यहाँ से गए तो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स इन 2 पार्ट्स में इंडिया इज गोइंग टू बी डिवाइडेड, दैट इज व्हाट वी रीड एज एन इंटीग्रेशन of India, right. So the story of integration of India, we are going to talk about the story of British India province, and second is going to be the story of princely state. That's what we have to integrate to form the India, and the Iron Man Sardar Vallabhbhai Patel played a very crucial role. So British India province, the area where the Britishers have the direct control, and princely states where they having the indirect control, right. So Chamber of Princes is going to be in news also, because in the month of January, speakers of the Commonwealth nations are going to meet at the same Chamber of Princes, that is going to be located into the old Parliament building, right. And it also was a place जहाँ पे काफ़ी टाइम तक सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी Chamber of Princes में फंक्शन किया, अपने जो करंट बिल्डिंग है उसमें शिफ्ट होने से पहले. और Chamber of Princes में पब्लिक लाइब्रेरी, बेटर टू पुट the Parliament library, right. The Parliament library is going to be there into the Chamber of Princes, right. So this was also in news in the month of the January. So if we talk about the Chamber of Princes, it is going to come into the existence by Montagu-Chelmsford reforms and the Act of 1919. So you can see the picture where the princely state rulers are going to sit, right, and they are going to talk. Then they had an advisory and consultative role with respect to the ultimate power that has to be given, on what kind of role they want or what kind of grievances they can present to the viceroy, right. So it is more like an advisory and consultative body. So if we see the most important option or the most close option that is going to be provided by C, provide a consultative forum for princely state to discuss the matter of common interest with the British government. So whatever kind of common agenda, common grievances are going to be there, that can be discussed with the British government, and viceroy is going to be the head of this particular body, right. So the answer is going to be C. This question I keep in a bit of the tough category, because most of us might not be aware of this, and secondly it became important because it was in news in the month of the January. Okay. Now moving to the next question, let's see. Now the question number 21, with reference to the measures adopted by the Britishers after the revolt of 1857. So as you know, it is going to be an important event that is going to demarcate a very important development into the modern history, because 1757, that is going to be the year of Plassey till 1857, it is the rule of the company, and from 1858 till 1947 it is the rule of the crown, right. So this particular event is going to demarcate that it is going to be the end of the rule of the East India Company, because now from now onwards British government is going to directly rule in the name of the crown. So it all started that revolt of 1857 के बाद में there is going to be the Queen Proclamation that is going to come into existence in November 1858. If you ever go to if you ever visit a very famous monument into the Calcutta, that is Victoria Memorial, उसमें Queen Proclamation की एक कॉपी सेंटर हॉल में लिखी हुई है, या आपको दीवार पे दिख जाएगी, राइट. So in 1858 the Queen Proclamation is going to be passed in the month of the November, and according to that there are some changes in terms of the ideology or in terms of the approach to rule the India is going to come. So revolt of 1857 के aftermath में two important changes that you should remember, that is going to be the changes with respect to the military and changes with respect to the attitude towards the princely states, right. So just giving you a brief,
before 1857 the policy of annexation that is going to be started by Dalhousie, right. So, in terms of direct or indirect control over the territories of India, you read one policy that is going to be the subsidiary lines that is going to be started by Wellesley, and secondly the policy of annexation by Dalhousie. So, that policy of annexation is going to be abolished, because from now onwards the attitude towards the princely states as a policy of a bit of the appeasement, so that they can become more loyal to them. This policy of annexation is going to be abolished, and they can also adopt their adopt any particular heir to their throne, है ना. उससे पहले policy of annexation में था कि अगर किसी का कोई royal blood continuation में नहीं है तो that particular ruler cannot adopt any other person, right. So, this is going to be abolished, so that they can maintain or they can adopt anyone if they do not have the real blood, royal blood to the succession of the throne, right. So, that is going to promote the dignity of the Indian princes or the princely state. So, that is one policy. And with respect to the military, those people who did not participate into the revolt and played a crucial role in curbing the revolt are going to be known as the martial races, and the people, the persons, the sepoys, the regiments, the people who have participated into the revolt are going to be known as non-martial races. Martial races are going to be promoted and non-martial races are going to be denoted, right. So, that is why they are going to divide, and secondly they are making sure that the people of India who are going to be the sepoys, because sepoy is more like a peasant in uniform at that particular time. So, they should be divided, so that Britishers are going to be easy to rule, right. So, based on their caste, based on their religion, based on their class, based on their culture, they should be divided, so that it is going to be easy for Britishers to rule, because if they are going to be united and all the people are going to get into the feeling of the nationalism, it is going to become tricky for the Britishers, right. So, they do not want to repeat the mistake, that is why they are going to be these two policies that are going to be implemented, right. So, if you see that Indian soldiers were promoted to the higher officer rank to ensure their loyalty to the Britishers, this is an incorrect statement. That is why you see the Congress demand after 1885, when you are going to talk about the demands of Congress at the initial phase, the moderates which are demanding, तो उसमें आप देखेंगे कि constitutional demands हैं, फिर military को लेकर के demands हैं कि Indians should get promoted because they are going to joining at the sepoys, never getting into the commissioned rank. So, that is the incorrect statement, because that is why they are demanding, है ना. 1885 के बाद moderates ये demand रख ही रहे हैं, तो इसका मतलब they are not getting promoted. So, first statement is incorrect. Second, the colonial government discouraged communal and caste identities in the army. They actually encouraged the caste and communal identity, so that the divide and rule policy is going to be there. British government or East India Company की policy में you are always going to read two important policies. Firstly is going to be the divide and rule, and second is the policy of carrot and stick, है ना, जो आप पढ़ते हैं कि पहले there is going to be the policy of punishment and then there is going to be a policy of appeasement, right. Revolt of 1857 में भी princely states के लिए it is going to be the policy of appeasement, right. And third, the Britishers assured that Indian rulers that their right of succession through adoption is going to be recognized. So, it is going to be the taking one step back by abolishing the policy of annexation that is going to be started by Dalhousie, right. So, this is going to be there. So, जो doctrine of lapse आपने पढ़ी थी, that is going to be abolished by Dalhousie. So, if you see the first statement is incorrect, second statement is incorrect, the only statement that is correct is third. So, option is going to be A. Moving to the next question, with reference to the Paika rebellion of 1817. As I told you before also कि जब आप tribal revolts पढ़ें, peasant revolts पढ़ें, so you should remember 3-4 important parameters whenever you are reading. Firstly, you should always remember the geographical area, where it started, where it spread. Second is going to be the personalities involved. Third, what is going to be the method of fight. Fourth, what is going to be the cause, and fifth, what is going to be the outcome, right. These 5 parameters you should definitely remember. And in terms of social religious reform movements, you should also read, is there any major newspaper or major journal that is going to be published by a particular personality, or that personality over a period of time is that particular organization or that particular reform movement is going to split in any further avenues, right. So, that is one thing which you should remember. Now, let us see
The first statement is going to talk about the Paika rebellion occurred in the which region of present day Odisha district. So you can easily relate, it is going to talk about the geographical area. Paika is going to be a term which is going to talk about the, or literal meaning is foot soldiers. They were actually recruited by the rulers of Odisha very long back. Lately, for their military services, they were given some rent free or tax free grants, right, or land, so that their services can be recognized. तो वैसे वो लोग पीस के टाइम पीरियड पे अपना काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, बाकी एक्टिविटीज कर रहे हैं, और वॉर के टाइम पीरियड में दे आर गोइंग टू फाइट. सो द लिटरल मीनिंग इज फुट सोल्जर्स दैट आर गोइंग टू बी रिक्रूटेड very long back by the rulers of the Odisha, and they were given land free or tax free grants for their military services. Over a period of time, when Britishers are going to enter in their territory, they are going to impose the tax system first of all. So that means that whatever tax free or rent free grants that were given to those particular paikas is going to be or this step is going to be a step of aggression in terms of the economic exploitation. Secondly, there is going to be issues with respect to the salt, है ना. तो salt को बनाना और salt को trade करना, उसको लेकर के काफी टसल है ब्रिटिशर्स और लोगों के बीच में. So these are going to be the two major regions that are going to initiate the revolt, that is going to be the Paika rebellion. Next, the Paikas is going to be led by, so which personality is there? So Bakshi Jagbandhu, who was going to be associated with the Paikas, the traditional militia services or serving under the rules of which particular area, right? So अगर आप देखेंगे तो मैंने जैसा बताया कि they are going to be recruited by the rulers, so that is why the second statement is also correct. If you know the name of the personality, that is Bakshi Jagbandhu, so that is going to be the person. So first and second is going to be the correct because it started into the Odisha district. And last, the rebellion is going to be primarily triggered by the doctrine of lapse, है ना. तो ये तो मैंने जैसा आपको बताया कि it is going to be initially with respect to the economic exploitation by tax policies, because those land free grants जागीर्स, है ना, वो अब नहीं रही हैं और ब्रिटिशर्स ने अपना टैक्स इम्पोज कर दिया. और दूसरा with respect to the issue on the salt, right. So that is going to be there, and annexation of the princely states. So third statement becomes incorrect. So reason here is going to be incorrect, right. So first and second statement is going to be correct. So first statement is geographical, second is going to be the personality, and third is going to be the reason, right, or cause. So that is why I always said कि whenever you are going to read this type of questions, please remember these 3-4 things. So when you read the modern history, you remember 3-4 pointers that for prelims, first question can be on personality based, as we have discussed. Second question can be on socio-religious reform, tribal revolts or peasant revolts. So please remember these 3, 4, 5 parameters that you have to remember. Next can be a question that is going to be on important national events, right. Swadeshi movement, non-cooperation movement, civil disobedient movement. So apart from this, you should also know what kind of पार्टिसिपेशन यू आर गोइंग टू सी, दैट इज देयर एनी स्पेसिफिक फीचर एसोसिएटेड. जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट में आपको पता है कि पैरेलल गवर्नमेंट्स, राइट. सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट और सॉल्ट सत्याग्रह, हाउ इट इज गोइंग टू लेड टू द साउथ, वहाँ पे कौन मेजर पर्सनैलिटीज हैं. सिमिलरली कोई सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है तो उसके साथ में कई बार आप देखेंगे कि देयर इज गोइंग टू बी अनदर मूवमेंट दैट इज गोइंग टू बी टेम्पल एंट्री मूवमेंट, राइट, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ सोशल इवल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क्रिमिनेशन फॉर अ वन पर्टिकुलर कम्युनिटी. So these type of things you should remember. Next is going to be a miscellaneous factual information that can be newspaper, general और press कैसे कैसे इंडिया में लाइसेंसिंग रेगुलेशंस आए या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, उसी के साथ में डेवलपमेंट ऑफ द प्रेस के अलावा डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन, कांग्रेस सेशन. जैसे you should always remember which are the most prominent Congress session. We have also seen with respect to one Congress session that is going to be with respect to C Rajgopalachari, है ना. तो C Rajgopalachari के बारे में जैसे अभी हमने डिस्कस किया, तो which is going to be the Congress session. So these type of things you should definitely remember. So I hope we have discussed the modern history part in a very crystal crisp manner. I hope this discussion was useful. You still have 60 days of prox for your preparation. What I can say कि don't panic, be rational, strategize your preparation. सब सारी चीज़ों को एक साथ मत करो. Structure your preparation in a better way and revise and then you should also do the practice of the test, so you can actually relate whatever you are reading and what kind of mistakes you are making. My wishes for the next Anubhav and for your UPSC Prelims examination. Thank you and have a nice day.
Hello everyone, myself Ajay Singh Ahlawat and I am going to discuss the geography part of Anubhav test paper 3. So let's see the first question. The first question that we are having is question number 42. It is about tropopause. So it says that tropopause is characterized by near constant temperature which is colder over the equator compared to the poles. The reasoning is that tropopause occurs at higher altitude over the equator than over the poles. So what it means to say is that this is our earth and this is equator. This is north pole and this is south pole. Now as we know, the tropopause is more broader at the equator as compared to the poles. Equator के ऊपर इसकी जो height है that is around 18 kilometers. The height of troposphere, and tropopause is the boundary layer between troposphere and the stratosphere. So ये तो हमारी है troposphere. इसके बाद जो बाउंड्री आएगी that is stratosphere. The height of this troposphere at poles is 8 kilometers, right? Now it wants to say that the temperature at point A is more than the temperature at point B. तो अगर हम अर्थ सरफेस की बात करेंगे तो the equator is having an average temperature that is more than that of the poles. इस पे अगर माने तो एवरेज टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस एंड एट पोल्स द एवरेज टेम्परेचर इज अराउंड -10 डिग्री सेल्सियस -15 डिग्री सेल्सियस. बट अगर हम हाइट में ऊपर की तरफ जाएंगे तो द ट्रोपोस्फियर ओवर द इक्वेटर इज हैविंग लेसर टेम्परेचर. दैट्स द क्वेश्चन वांट टू आस्क अस. अब लेट्स कैलकुलेट इट. अब इसके कैलकुलेशन में वन थिंग दैट वी नीड टू नो इज नॉर्मल लैप्स रेट. नॉर्मल लैप्स रेट का मतलब क्या है? एज वी मूव अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ the temperature decreases for the atmosphere. तो अगर मान लो यहाँ पे टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है and if we move 1 kilometer away from the earth then the temperature will be 6.5 degree Celsius less than that of the surface. यानी यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा 23.5 डिग्री सेल्सियस. 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ जाता है. दैट इज नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट. Now for this equator the normal if we apply the normal lapse rate तो temperature B पे क्या होगा? It will be 30 degree Celsius minus 18 into 6.5 that is 30 minus 117 तो that is around minus 87 degree Celsius. तो temperature of B is minus 87 degree Celsius. अगर यहाँ की बात करें तो the temperature of A is equal to -10 minus 8 into 6.5. So it is -10 minus 52 that is minus 62 degree Celsius. So the temperature of A is minus 62 degree Celsius. The point here is that again I am repeating it. The troposphere over the equator is having lesser temperature than the troposphere over the poles. So this was the assertion. The reason is because the height of troposphere is more over the equator, that's why the temperature is less. So both these statements are right. Assertion is also right, reason is also right, and reason is actually explaining the assertion. So the answer here is option A. Both A and B are correct, and A is reason is the correct explanation for the assertion. And this is a conceptual question. This should not be wrong. Now next we move to question number 43. It says it is about soil. Soils formed in the humid regions are characterized by intense leaching and low lime content. Now when we talk about humid regions, it simply means that the rainfall is heavy in that region. So these are the regions of heavy rainfall. Now as we know, when the rainfall is heavy, so the water soluble minerals will be taken away by it. So with this heavy rainfall, the water soluble minerals like lime will be washed away. So the first statement is right. In the humid regions which are having higher or heavy rainfall, due to intense leaching, the lime content decreases. Lime is basically CaO and CaCO3.
तो कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम ऑक्साइड आर द लाइम्स, they can dissolve in water, so they are being carried away by the heavy rainfall. So first statement becomes right. Second is accumulation of calcium carbonate is a common feature of soils developed in the arid and the semi-arid region. Now in the arid and semi-arid region, the rainfall is very, very less, and this region, if you talk about the arid region, we are talking about is this region. This is the arid region. So in this arid region, what we see is that there is accumulation of calcium carbonate, and this calcium carbonate accumulates to form concord. The accumulation of this calcium carbonate leads to formation of concords. So that's why the second statement also becomes right. There is accumulation of calcium carbonate in the semi-arid and arid region, which mainly affects Rajasthan, Punjab, Gujarat, Haryana, and even the western part of the UP is also affected by this. Third is soil rich in iron and aluminium are commonly associated with forested regions. Now this basic third statement basically links with the laterite soils. In the laterite soils, what happens is that due to heavy rainfall in high temperature regions, the silica and lime are leached away. They are being washed away. इनकी लीचिंग की वजह से जो बचता है वो बचता है आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स. तो जहां पे भी लेटराइट सॉइल्स मिलेंगी हमें, वहां पे देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ सिलिका एंड लाइम, एंड देयर विल बी एक्सेस और इट विल बी रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम. So these regions which are having heavy rainfall की वजह से there is more vegetation in these regions. So they are associated with the forested regions. So this third statement is also right. Now with this laterite soil, when the silica is being removed, that process is known as laterization. Laterization. अगर हम सिलिका को रिमूव करेंगे किसी भी सॉइल से, दैट प्रोसेस इज नोन एज लेटराइजेशन, एंड सिलिका इज बीइंग रिमूव्ड ड्यू टू दिस हैवी रेनफॉल. एंड माइंड दिस, हैवी रेनफॉल के साथ देयर शुड बी हाई टेम्परेचर ऑल्सो, एंड देयर शुड बी अल्टरनेट wet and dry seasons. Now try to understand why laterite soil is being formed. When the temperature is high and there is dry season, उस time पे weathering will be very high. तो alternate dry and wet season से क्या होगा, weathering will increase. Weathering जब increase होगी तो there will be more weathered material. जब weathered material ज्यादा है, एकदम से बारिश बहुत ज्यादा हुई, the more amount of rainfall is there, that rainfall is going to carry away the weathered material. So first of all weathering should be high. Weathering के साथ साथ there should be washing of that weathered material. यानी जो पत्थर को टूट के जो छोटे छोटे टुकड़े बने, those should be washed away also. So that's how this laterite soil is being formed. Now if we see the distribution of laterite and arid soil, so laterite soil is accumulated in those regions which are having higher temperature and which are having high amount of rainfall also. So for example, Meghalaya we are having heavy amount of rainfall. Western Ghats we are having, the western slopes of the Western Ghats, there is heavy amount of rainfall, and the region is in the tropical region. तो उसके से temperature भी high रहता है. Then we talk about the eastern coast of the तमिलनाडु, वहाँ भी ये चीज़ होगी. सेंट्रल पार्ट में दिस उदयपुर रीजन या द लोअर जो मालवा रीजन है, वहां पे भी हमें ये चीज देखने को मिलेगी. सो इन ऑल दीज रीजन्स वी आर हैविंग लेटराइट सॉइल्स. नाउ लेटराइट सॉइल के साथ कोरेस्पॉन्ड करती है हमारी रेड सॉइल. तो रेड एंड लेटराइट सॉइल में डिफरेंस ये है कि रेड सॉइल्स विल बी फॉर्म्ड इन द रीजन्स विच आर हैविंग हाई टेम्परेचर. यहां पे टेम्परेचर हाई है जिसकी वजह से वेदरिंग ज्यादा होगी, एंड वो वेदर मटेरियल वही रखा रहेगा, तो बन जाएगी हमारी रेड सॉइल. सो यू विल फाइंड द रेड सॉइल एंड द लेटराइट सॉइल, ये दोनों आसपास मिलती हैं. जैसे दिस इज रेड सॉइल एंड ये जो ब्लैक पोर्शन है ये कौन सा है, दिस इज लेटराइट सॉइल.
So these are portions of the laterite soils which I am marking as black portion. So they are corresponding to each other. So in the red soils there is the rainfall is less, they are drier regions, but they are having high temperature. So the crystalline and metamorphic rocks they actually go under weathering process, they undergo weathering process, as a result of which the red soils are being formed. Now next is the answer is option D, that is 1, 2 and 3. So for question number 43 the answer is option D. Now next we move to question number, this is red soil, you can see on the in the photograph. So red soil के अंदर क्या this is laterite soil. In the laterite soil होता क्या है कि it gets compacted also, and by being compacted it becomes an efficient material to be used in building and construction. So building and construction works के लिए the laterite soil is very much useful. Now next is question number 44. The question number 44 is about the La Nina. So La Nina is one phenomena and another phenomena is El Nino. पहले एल नीनो देखते हैं, उसका ऑपोजिट रहेगा हमारा ला नीना. सो एल नीनो क्या है? इट इज द वार्मिंग ऑफ, और यू कैन से अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन. उसकी वजह से द वेदर ऑफ द होल वर्ल्ड इज बीइंग अफेक्टेड. ला नीना क्या है? It is the unusual cooling of Eastern Pacific Ocean. So इन दोनों में difference क्या है? There is one is warming, one is cooling. Now let's see how these two affect the Indian monsoon and the other related phenomena. इसके साथ it is also talking about the Walker circulation, तो वो भी हम देखेंगे, and what will be the impact on the other things. So let's go to the map first of all. Now on the world map we see this is the west wind drift and it is carrying cold water. जब ये cold water this South American coast की तरफ आएगा तो इसे हम बोलेंगे पेरू करंट, पेरू और हम्बोल्ट करंट, and this is basically a cold current. Now this cold current converts into a warm current and it flows as the equatorial current. Now this equatorial current and this cold current, अगर हम इसको देखें तो we find one thing, इस वाले region में there will be a lesser temperature and here it will be a higher temperature. So we take 2 points, one is known as Tahiti and one is known as Darwin. One is known as Darwin. So ये हो जाएगा हमारा डार्विन पॉइंट. Now what happens is that the temperature here is less and the temperature here is more as compared to the when we are comparing these 2 points. जब temperature less है तो there will be higher pressure here. So the pressure at this Tahiti will be more as compared to the pressure at this Darwin point. जब low pressure तो what is going to happen? From this high pressure, the wind is going to flow along the surface towards this low pressure region at Darwin. तो तहीती से कहाँ फ्लो करेगा एयर, कहाँ फ्लो करेगी? Towards the Darwin. अब Darwin पे क्या होगा? The air is going to accumulate and it will start rising up. तो एयर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगी. जब एयर ऊपर की तरफ मूव करेगी तो more low pressure will be created and more air will be coming from the Tahiti. तो हाई प्रेशर तहीती से कहां आएगी एयर? टुवर्ड्स द लो प्रेशर डार्विन. नाउ इन द अपर एटमॉस्फेयर, ऊपर की तरफ, इट विल बी अगेन मूविंग टुवर्ड्स द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, या तहीती की तरफ जाएगी एंड देयर इट इज गोइंग टू फॉल डाउन एट तहीती. तो दिस सर्कुलेशन ऑफ एयर इज नोन एज वॉकर सेल. इसे हम क्या बोलेंगे? वॉकर सेल.
and the temperature and the pressure fluctuation between Tahiti and Darwin is known as southern oscillation. So we are having three phenomena here. एक हमारे पास है पेरू करंट, दैट इज अ कोल्ड करंट. सेकेंड इज तहीती एंड डार्विन, एंड उनके ऊपर जो प्रेशर है. तो जो प्रेशर फ्लक्चुएशंस होंगे तहीती एंड डार्विन के ऊपर, उसे हम बोलेंगे सदर्न ऑसिलेशन. इस सदर्न ऑसिलेशन की वजह से एक क्रिएट होगा सेल जिसका नाम है वॉकर सेल. तो वॉकर सेल में बेसिकली क्या है, इट इज अबाउट द एयर सर्कुलेशन. सो वॉकर सेल इज अबाउट एयर सर्कुलेशन. तो इससे होगी एयर सर्कुलेशन हमारी. नाउ when the temperature of this Peru current starts increasing, अगर ये टेम्परेचर करेगा इंक्रीज तो उसकी वजह से क्या होगा, तहीती का टेम्परेचर भी होगा इंक्रीज. जब तहीती का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, इट इज गोइंग टू फॉल डाउन. देखो एट द पोल्स देयर इज कोल्ड टेम्परेचर, दैट्स व्हाई देयर इज हाई प्रेशर. इक्वेटर पे द टेम्परेचर इज हाई, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग लो प्रेशर. सो व्हेन द प्रेशर इज डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज. और जब ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो दिस तहीती एंड डार्विन, इन दोनों के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है वो हो जाएगा कम. व्हेन दैट प्रेशर डिफरेंस इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड, दैट मींस द एयर दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम तहीती टुवर्ड्स दिस डार्विन पॉइंट, दैट इज आल्सो गोइंग टू स्लो डाउन. तो उसकी सर्कुलेशन भी कैसे हो जाएगी, वीकन हो जाएगी. सो ड्यू टू दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द पेरू करंट, what is happening is that the pressure difference between Tahiti and between Darwin is reducing. That in the technical terms we say that the pressure gradient force is decreasing. जब ये pressure gradient force decrease होगा जिसकी वजह से wind की movement भी हो जाएगी weak या slow हो जाएगी, जिसकी वजह से वॉकर सेल क्या हो जाएगा, it will be weakened. तो जब ये वॉकर सेल वीक होगा उसकी वजह से देयर विल बी अ नेगेटिव इंपैक्ट अपॉन द मॉनसून दैट इज कमिंग टू इंडिया. बिकॉज वॉकर सेल जितना स्ट्रांग होगा उतना ही इंडियन मॉनसून भी स्ट्रांग होगा. तो इन द फिनोमिना ऑफ एल नीनो, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ पेरू करंट इज इंक्रीजिंग, द वॉकर सेल वीकन्स एंड दैट्स व्हाई इट इज हैविंग नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द इंडियन मॉनसून. इसका उल्टा होगा लानीना के टाइम पे. लानीना में क्या होगा, पेरू करंट विल बी मोर कोल्ड, ये और ज्यादा ठंडा हो जाएगा, यानी इसका टेम्परेचर और ज्यादा डिक्रीज करेगा. व्हेन द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग तो तहीती के ऊपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा. सो इन टर्म्स ऑफ लानीना, टेम्परेचर एट दिस पॉइंट इज डिक्रीजिंग, दैट मीन्स द प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज. जब यहां प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉकर सर्कुलेशन इज गोइंग टू बी स्ट्रेंथन्ड, जिसकी वजह से व्हाट विल हैपन इज दैट इंडियन मॉनसून विल ऑल्सो बी स्ट्रॉन्ग. Clear है ये relation? Now coming back to the question. The question says, consider the following regarding La Nina. It weakens the Walker circulation over the equatorial Pacific. This is wrong. It is actually going to increase the Walker circulation when we are having La Nina. Second, it strengthens the trade winds. Yes, trade winds को strengthen करेगा. I have told you already कि जिसकी वजह से Indian monsoon is increasing. And simple सी बात है, what is Indian monsoon basically? Indian monsoon is basically these southeast trade winds. These southeast trade winds, when they cross the equator, they move towards Indian subcontinent. So these trade winds are getting strengthened. So when La Nina is happening, the trade winds are getting strengthened, जिसकी वजह से Indian monsoon भी होता है strengthened. Now next is, it causes cooling of the eastern Pacific and warming in the western Pacific. This statement is also right. We have seen that. यहां पे जब कूलिंग होगी लानीना के टाइम पे तभी वॉकर सेल होगा स्ट्रांग, और स्ट्रांग होगा तो देयर विल बी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द इंडियन मॉनसून. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट. तो आंसर शुड बी ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली. नेक्स्ट वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 45. क्वेश्चन नंबर 45 says, on December 22, which of the following latitudes receive daylight equal to more than 12 hours? So यहां पे 12 hours से ज्यादा पूछा है, equal to or more than. तो what we have to see is that कहां पे ये वाली कंडीशन होगी, कहां पे दिन बड़ा होगा. तो let's see, and the date given is 22nd December.
सो इफ वी सी 22 दिसंबर का सिंपल सा मतलब क्या है, वी आर हैविंग विंटर सोलिस्टिस. विंटर सोलिस्टिस के टाइम पे क्या है, द सन्स रेज आर डायरेक्टली फॉलिंग ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. कहां फॉल करती हैं ये, ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. सिमिलरली वी आर हैविंग समर सोलिस्टिस. समर सोलिस्टिस के टाइम पे द रेडिएशंस आर डायरेक्टली फॉलिंग ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. उसके अलावा वी आर हैविंग इक्विनॉक्स. On the equinoxes we are having two dates. One is March 21st, second is 23rd September. इस टाइम पे the sun's rays are directly falling over equator. तो सिंपल सा बात ये है कि when the sun's rays are falling over tropic of Capricorn, what is going to happen? The thing that is going to happen is that the southern hemisphere is going to receive more amount of solar radiation. यहां पे सोलर रेडिएशन कहां पे ज्यादा होंगी, दे विल बी मोर एट द सदर्न हेमिस्फीयर. तो सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर वी आर गोइंग टू हैव समर सीजन ड्यूरिंग दिस टाइम. पहली चीज, देयर विल बी मैक्सिमम डे लेंथ इन होल ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर. तो सदर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन कब होगा, ऑन 22nd December, that is winter solstice. Now at the time of winter solstice, if we see one thing, first of all the southern hemisphere is receiving more amount of energy. ये जो पूरा रीजन मैंने येलो मार्क किया है, ये सारा का सारा क्या है, सनलाइट के अंडर होगा. जब ये सनलाइट के अंडर होगा तो मोर एनर्जी इज टू द सदर्न हेमिस्फीयर, लेस एनर्जी इज टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इसके बाद वन मोर थिंग यू सी, यहां से इफ वी ड्रॉ दिस लाइन, अगर हम ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, सो यू आर गोइंग टू सी दिस थिंग कि ये जो पूरा का पूरा रीजन है, ये उस पूरे दिन के लिए कभी लाइट में नहीं आता. सो दैट्स व्हाई दिस रीजन इज गोइंग टू हैव 24 आवर नाइट और यू कैन से डार्कनेस ऑन द इवेंट ऑफ समर, ऑन द इवेंट ऑफ विंटर सोलिस्टिस. इसी को हम बोलते हैं आर्टिक सर्कल. इसी को क्या बोलेंगे, आर्टिक सर्कल. दैट इज 66.5 डिग्री नॉर्थ. इसका उल्टा होगा नीचे की तरफ. इफ वी सी, ये जो पूरा रीजन है यहां से लेके यहां तक, दिस रीजन इज गोइंग टू बी परमानेंटली अंडर सनलाइट. सो ऑन द इवेंट ऑफ 22nd December, दैट इज विंटर सोलिस्टिस, देयर विल बी 24 आवर डे बिलो द अंटार्कटिक सर्कल. ठीक है. वन मोर थिंग इज देयर, एट इक्वेटर फॉर द होल ईयर देयर इज 12 आवर डे एंड 12 आवर नाइट. सो जैसे हम लोग इक्वेटर से नीचे की तरफ जाएंगे, द लेंथ ऑफ द डे इज गोइंग टू इंक्रीज, यानी द लेंथ ऑफ द डे इज गोइंग टू बी मोर देन 12 आवर्स. तो जितना भी रीजन सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, दैट होल रीजन विल बी हैविंग अ डे लेंथ मोर देन 12 आवर्स. जितना भी रीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, दैट विल बी हैविंग अ डे लेंथ लेस देन 12 आवर्स. राइट. इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. देयर विल बी विंटर, इट विल बी द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो इस दिन वी आर गोइंग टू हैव शॉर्टेस्ट डे एंड इसी का कॉलररी है लॉन्गेस्ट नाइट. तो दैट इज गोइंग टू बी देयर. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन इटसेल्फ. The question was, which of the following regions are going to have more than, equal to or more than 12 hours of day? So इसमें देख लेते हैं, इक्वेटर 12 आवर्स होगा यहाँ पे, 15 डिग्री साउथ लैटिट्यूड सदर्न हेमिस्फीयर में, तो ये भी ठीक है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज रॉन्ग बिकॉज ऑन दिस डे द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गोइंग टू हैव द शॉर्टेस्ट डे. सो दिस बिकम्स रॉन्ग. लास्ट वन इज एंटार्क्टिक सर्कल, यहां तो 24 आवर डे होगा हमारे पास. सो द आंसर इज 1, 2 and 4. सो आंसर इज ऑप्शन ए 1, 2 and 4. नाउ नेक्स्ट वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 46. जस्ट ओपन इट अप. नाउ क्वेश्चन नंबर 46 says, consider the following statement regarding the Aravallis range. अभी Aravallis were in news also. So the first thing is, the Aravallis range is devoid of non-ferrous mineral deposits. This statement is absolutely wrong because the major non-ferrous minerals are found in the Aravalli range itself. Aravalli range जो पूरी है वो आती है हमारी वेस्टर्न
मिनरल बेल्ट के अंदर. तो वी आर बेसिकली हैविंग 5-6 मेजर मिनरल बेल्ट्स. One is western belt, one is central belt, one is northeastern belt, one is southern belt, one is southwestern belt, and then we are having the Himalayan belt. तो now we are talking about this belt. इस बेल्ट की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे. So we are talking about this belt. So इसके अंदर अरावलीज भी एक पार्ट है. Now अरावलीज के अंदर what we are having is copper, lead, zinc. These are the maximum reserves. The maximum reserves are found in Rajasthan itself, and basically along the Aravali's. जैसे कॉपर खेतरी माइंस है यहाँ पे. So the first statement becomes wrong here, and you can relate also. The Harappan civilization was in this Rajasthan area only, and that was a Chalcolithic. That was the Chalcolithic period. तो सिंपल सी बात है, the copper was available in this region. That's why this was the Harappan civilization was based upon the copper and bronze. The dancing figure of the bronze dancing figure that we have got, that was from the Harappan civilization only. So the copper is available in excess. उसके साथ साथ we are having lead, zinc, silver is also found. सिल्वर हमें लेड और जिंक के अलॉय में ही मिल जाएगा. एंड लेड का जो अलॉय है दैट इज गैलीना. तो दैट इज एन इंपॉर्टेंट अलॉय है, एंड लेड वाज इंपॉर्टेंट, सिल्वर अभी इंपॉर्टेंट है भी. तो इंडिया के अंदर सिल्वर, लेड एंड सिल्वर कहाँ मिलता है? लेड एंड जिंक के साथ. उसके अलावा आंध्र प्रदेश वगैरह में भी हमें सिल्वर मिलेगा. उसके अलावा वी आर हैविंग यूरेनियम, माइका, सॉल्ट, मैग्नीज, एस्बेस्टॉस, प्रीशियस स्टोन्स, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैसेस. सो ऑल दीज आर फाउंड इन दिस वेस्टर्न बेल्ट. And to be specific for Aravallis, these 3 non-ferrous minerals are found in this region. So the first statement becomes wrong. It is rich in, the statement should be, it is rich in the non-ferrous minerals. Second is, the Aravalli Green Wall project aims to develop a 5-kilometer wide green corridor buffer to combat desertification. This statement is right. This project was launched in 2023, and we are creating a 1400-kilometer long and 5-kilometer wide green belt zone along the Aravallis. Third statement, Mangarbani forest in the Aravalli hills is considered one of the last surviving sacred groves preserving native Aravalli vegetation. So sacred groves का मतलब क्या है कि we actually worship them, they are sacred and they are being preserved naturally. So this Mangarbani forest is in Faridabad, Haryana, and that is actually one of the surviving reserves in this Aravalli vegetation. उसके अलावा what we have is that these are the other sacred groves of India जो जिनके different name है. तो what commonality you will find in these names is a देव आपको मिलेगा वहां पे. तो जैसे देव बनी है, तो देव का मतलब क्या है कि किसी डाइटी को ये this particular forest has been dedicated to a deity. तो देव बनी हुआ या ओरन्स हुए, तो ओरन भी होते हैं. ओरन जो होते हैं हमें मिलते हैं ऑन दी वेस्टर्न राजस्थान. ओरन्स आर फाउंड ऑन दी वेस्टर्न राजस्थान. तो ओरन वहां मिलेंगे. देव बनी जो है वो हमें अरावलीज में मिल जाएगा. देन देव राय महाराष्ट्र में बोलते हैं इसको. देन उसके बाद आता है देवराकुडू, ये है हमारा कर्नाटका का. कावू जो है टर्म वो हमारी रिलेट करती है केरला के साथ. उसके बाद कोविल काडू है, दैट इज फॉर तमिलनाडु. देन अनदर इंपॉर्टेंट नेम इज सरना, दैट इज बिहार एंड झारखंड रीजन में उसको सरना बोलते हैं. उसके अलावा व्हाट वी आर हैविंग इज देववन, ये हमारा हिमालयन रीजन में है, हिमाचल प्रदेश एंड दिस उत्तराखंड. थान बोलेंगे हम लोग असम के अंदर. उमंगलाई बोलेंगे हम लोग इन द मणिपुर, एंड मेघालय में लो कितांग या लो लिंग डो. तो दीज आर द नेम्स ऑफ द सेक्रेड ग्रुप्स in various regions of country. These sacred groups actually depict the humanity towards the forest and the sustainable use of them. So we do not touch these. There is no cutting of the plants in these sacred groups. The next is question number 47. It says again assertion reason. The Earth's magnetic field has reversed many times in geological history. This is correct. The movement of molten iron in the Earth's outer core generates the
geomagnetic field. So this statement is also correct. So let's analyze the statement first, then we are going to move towards what this question actually relates with. The first statement, that is about this earth magnetism. So earth is having a magnetic field, and that magnetic field is basically generated by the outer core. So this is our inner core, this is outer core, and this outer core, it is made up of nickel and iron or knife layer, and this is liquid in nature. Because this is liquid in nature, so there is development of convective currents. उस कन्वेक्टिव करंट्स की वजह से प्लस अर्थ की रोटेशन की वजह से there is movement in this outer core. When the nickel and iron are moving, so they are generating electricity, or you can say a kind of magnetic field is generated by them. So this magnetic field is generated by this movement in the outer core. Now this magnetic field preserves us from or prevents us from the solar radiations. तो जो भी सोलर रेडिएशन आएंगी, जो सोलर विंड्स आएंगी, उनको ये मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्ट कर देगा अवे फ्रॉम द अर्थ. नाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज एक्चुअली इंक्लाइंड इन दिस मैनर. अगर ये नॉर्थ पोल है हमारा, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इंक्लाइंड एट अ डिफरेंट एंगल. देयर इज अ डिफरेंस इन द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल. तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल का मतलब क्या है? जहां पे हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां से पास करती है, दैट इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल. मैग्नेटिक नॉर्थ पोल का मतलब क्या है? जो अर्थ का एक इमेजिनरी मैग्नेट जो अलाइंड है जिस डायरेक्शन में, वो बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ पोल. इन दोनों के बीच में देयर इज अ गैप ऑफ 11.5 डिग्री. कितना गैप है इन दोनों के बीच में? देयर इज अ गैप ऑफ 11.5 डिग्रीज. नाउ दिस 11.5 डिग्रीज का जो गैप है, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक, इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. So magnetic declination is the angle between the geographical north pole and the magnetic north pole. इसके साथ होता क्या है कि दिस मैग्नेटिक जो हमारी दिस मैग्नेटिक फील्ड इज देयर, इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि व्हेन द सन इज एमिटिंग इट्स सोलर रेडिएशन, तो ये सोलर रेडिएशन इस तरह से डाइवर्ट हो जाती है दोनों तरफ. बट व्हेन द पॉइंट वेयर दिस मैग्नेटिक लाइंस आर एक्चुअली कन्वर्जिंग, वहां पे वी सी दैट देयर इज अ इंटरेक्शन ऑफ दिस सोलर विंड्स विद द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. जब वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो वी फाइंड द फिनोमेना ऑफ ऑरोरास. तो ऑरोरा बोरियलिस and australis, they are being observed. These are nothing but the lightning, the beautiful light that is being observed at the north pole and the south pole. So these kind of lights are being observed. These are known as aurora borealis and aurora australis. Now coming back to the topic, ये होती क्यों है? Because जो सोलर विंड्स है वो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की तरफ वजह से अंदर की तरफ आ जाती है अर्थ एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से वो इंटरेक्शन होती है. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ दिस ब्यूटीफुल लाइट्स. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन इज सेइंग द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स्ड मेनी टाइम्स इन जियोलॉजिकल हिस्ट्री. सो दैट इज अ फिनोमेना दैट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड. वो इसलिए हो रहा है बिकॉज द सर्कुलेशन ऑफ दिस inner iron and nickel, which is in molten state, is getting reversed, and this phenomena is observed when we study the sea floors. तो sea floor spreading के time पे we have observed this thing that along the mid oceanic ridges, जहाँ से lava is coming out, when it settle down, it cools, and it cools down in a manner जो magnetic field की lines में है. तो what we have observed is that अभी तो the lava is depositing in this manner. जो आयरन द लावा दैट हैज कम आउट, वो इन लेयर्स की फॉर्म में डिपॉजिट हुआ है. इससे पहले अगर हम देखते हैं तो द डिपोजिशन वाज इन दिस मैनर. तो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड फ्रॉम देयर इज दैट द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स्ड मेनी टाइम्स इन ज्योग्राफिकल हिस्ट्री, और इट हैज बीन चेंजिंग विथ टाइम.
So first statement is right. Second is the movement of molten iron in the Earth's outer core generates a geomagnetic field. So this statement is right, but the statement is not explaining why Earth's magnetic field is changing. So both statements are right, but second statement is not explaining the first one. That's why our answer should be option B. Now next we are having is question number 48. Now question number 48 is about limestone weathers faster than granite in tropical humid climate. अभी हमने humid words से क्या समझा था? There is going to be good amount of rainfall. तो heavy rainfall और good rainfall will be there. And tropical का मतलब क्या है? It is between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. तो पहली चीज तो क्या है? ये कहां पे आ रहा है? ये ट्रॉपिकल रीजन के अंदर है. उसके साथ साथ देयर इज रेनफॉल, तो देयर इज हाई टेम्परेचर प्लस द रेनफॉल इज ऑल्सो हाई, जिसकी वजह से हुआ क्या? देयर विल बी मोर वेदरिंग. सो द लाइमस्टोन एज वी नो इज ससेप्टेबल टू द केमिकल वेदरिंग. ये केमिकल वेदरिंग के लिए ससेप्टेबल है. दिस इज वीक. तो केमिकल वेदरिंग थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन when the water is dissolving it, or carbonation, the limestone is weathered easily, whereas granite वो harder है, soluble भी नहीं है water के अंदर, that's why उसकी weathering थोड़ी slow होगी. So the first statement is right. Second is limestone is susceptible to chemical weathering due to its calcium carbonate composition. Obviously right. Calcium carbonate या limestone, और another one is dolomite. तो जहां पे भी लाइमस्टोन या डोलोमाइट मिलेगा, देयर द वेदरिंग प्रोसेस विल बी वेरी हाई. इवन द रीजन्स वेयर दिस लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट आर इन एक्सेस, देयर वी आर हैविंग कास्ट टोपोग्राफी. देयर वी आर हैविंग कास्ट टोपोग्राफी. So cast topography is related with the availability of limestone and dolomite, और वहां पे weathering is very very high. So both the statements are right, and the second statement is explaining the first statement. So answer is going to be option A. Next we move to question number 49. Now this question number 49 is basically relating with the ports that have been in news. So इनके context में हम लोग देख लेते हैं हाइफा पोर्ट, दुरम पोर्ट, then Anjali port and Rotterdam port. So let's see the location of these ports first, then we are going to come back to the question. So the first is Haifa port. So Haifa port is basically in Israel, and Israel दो तरफ से water bodies से connected है. On the one side there is Mediterranean Ocean, ये Mediterranean Ocean है, दूसरी तरफ हमारा Red Sea है. तो Israel is connected majorly from the Mediterranean, और इजराइल की तरफ बहुत ही छोटे से पोर्शन से वो कनेक्टेड है. हाइफा पोर्ट इज कनेक्टिंग, और हाइफा पोर्ट ओपन्स टुवर्ड्स मेडिटेरेनियन ओशन. तो ये कहां होगा? मेडिटेरेनियन सी के अंदर ये ओपन होगा. तो हाइफा पोर्ट इज रिलेटेड विद मेडिटेरेनियन सी. देन वी आर हैविंग अंजलि पोर्ट. अंजलि पोर्ट इट इज रिलेटेड विद कैस्पियन सी. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ ईरान. ये नॉर्दर्न पोर्ट है ईरान का, और इनलैंड पोर्ट है क्योंकि कैस्पियन सी इज अ इनलैंड लेक. एंड दिस अंजलि पोर्ट, this is actually related with the north-south international north-south transit corridor. तो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के साथ भी ये रिलेटेड है. तो द ट्रेड इजराइल डू विद रशिया, दैट इज थ्रू दिस अंजलि पोर्ट. नाउ यू हैव टू टेल मी देन कैस्पियन सी, which are the countries which surround this Caspian Sea. तो ये आपको मुझे बताना है. लास्ट में आई विल गिव यू द एक्रोनिम ऑफ दैट. उसके अलावा देन द नेक्स्ट पोर्ट दैट वी आर हैविंग वाज दुकम पोर्ट. नाउ दुकम पोर्ट न्यूज में क्यों है? बिकॉज हेयर वी आर हैविंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नाउ इट इज ब्लॉक्ड. वहां पे द सप्लाई ऑफ ऑयल हैज बीन रिड्यूस्ड. नाउ इन दिस केस दुकम पोर्ट ये आउटसाइड है टू दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसकी वजह से द क्रिटिकल सप्लाई ऑफ मिनरल्स कैन बी डन थ्रू दिस पोर्ट, एंड इट इज ऑल्सो वेरी नियर टू इंडिया. This Duqm port is basically in Oman, and it is opening as you can see in the Arabian Sea.
तो अरेबियन सी में ये ओपन करेगा। द नेक्स्ट वी आर हैविंग इज रोटरडैम पोर्ट। रोटरडैम पोर्ट इज बेसिकली इन द रोटरडैम पोर्ट इज इन द नॉर्थ सी। तो यहां पे नॉर्थ सी है, ये यहां पे ये करेगा। इस तरफ वी आर हैविंग नॉर्वेजियन सी, ये याद रखिएगा, यहां पे है नॉर्वेजियन सी, यहां पे है बाल्टिक सी, ठीक है। ये है गल्फ ऑफ बोथनिया। तो mark these things in your atlas also. Now coming back to the question says Hafia port is related with Mediterranean Sea. Then second we are having Duqm port is related with the Arabian Sea, Anjali port with the Caspian Sea, and lastly Rotterdam port with the North Sea. So the answer we are having is 2, Duqm port is 3, then Anjali port is 1, and last is 4. 2, 3, 1, 4. The option should be 2, 3, 1, 4, that is option A. So A is the correct answer. Now इसके अलावा we are having other major ports. इनको आप चाहे तो you can take a screenshot of this also. Just take a screenshot. Now coming back, these ports are also in news because ये अभी conflict area में है। इजराइल ने अटैक किया है कई सारे ports को, जैसे we are having खर्ग आइलैंड ऑयल टर्मिनल, ये important area है for ईरान। यहां से there is a lot of इस रीजन से, दिस खर्ग आइलैंड से इट इज एक्सपोर्ट के लिए भी यूज होता है, उसके साथ साथ देयर इज मिनरल एक्सप्लोरेशन ऑल्सो, तो ये ईरान के अंडर आएगा। देन वी आर हैविंग बंदर अब्बास पोर्ट, ये ऑन स्टेट ऑफ हॉर्मूज है बिल्कुल, तो शहीद राजाजे पोर्ट भी इसको बोलते हैं, राजे पोर्ट भी इसको बोलेंगे। देन वी आर हैविंग चाबहार पोर्ट, ये हमें पता ही है ऑलरेडी, इंडिया का इन्वेस्टमेंट है इसमें, तो इंडियन इन्वेस्टमेंट है, दैट्स व्हाई वी हैव मेंशन्ड इट। Then we are having Ras Isa, Salif and Hodia port. Now all these ports are in Yemen basically and they have been attacked by Israel, right? उसके बाद we are having other important port, कुवैत के अंदर port of सुआइबा है, then Jebel Ali port है UAE के अंदर, and port of Manama है बहरीन के अंदर. These have also been attacked by, or these are in conflict by the Iran. So इसका screenshot आप ले सकते हो. Next we move to this Persian Gulf. Now Persian Gulf के अंदर you should be knowing which are the countries that are surrounding this Persian Gulf. So you should be knowing Iran is there, then we are having Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Dubai is there and Oman is also there. Oman का ऊपर वाला छोटा सा पार्ट है जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज से कनेक्ट करता है और कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ से भी. देन इस तरफ भी आए अगर हम आए तो वी हैव कुवैत एंड इराक इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द पर्शियन गल्फ. तो ये सारी चीज ये है पर्शियन गल्फ से कनेक्टेड रीजन्स. नाउ नेक्स्ट इज वी हैव डिस्कस दिस. हाँ, ईरान के अंदर वन मोर थिंग यू शुड बी नोइंग, नीचे की तरफ वी आर हैविंग जागरोस माउंटेन एंड जो कैस्पियन सी के जो नीचे वाला रीजन है देयर वी आर हैविंग एल्ब्रूज माउंटेन्स. तो यहां मेंशन नहीं है. यस, लेट्स कम. तो ये होगा ऊपर की तरफ होगा हमारे पास एल्ब्रूज माउंटेन्स. एंड हेयर इफ यू सी Iraq is very well connected with the Persian Gulf, so there should be no confusion regarding that. There we are having Kuwait, Qatar है यहाँ पे, Saudi Arabia we have already discussed. हाँ, now this part, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये पार्ट है ओमान का. तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज इज बिटवीन ओमान एंड ईरान, उन दोनों के बीच में है. और इस स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे ये बंदर अब्बास पोर्ट, तो ये इंपॉर्टेंट पोर्ट है ऑफ द ईरान. Then next we move to is we have discussed this part, so no need to again dwell into that. Now Iran and Iraq, ईरान के लिए I have told you यहां से हमारी टिग्रिस एंड यूफ्रेट रिवर, ये डेल्टा है टिग्रिस एंड यूफ्रेट रिवर का. तेहरान इज टूवर्ड्स दिस कैस्पियन सी, ये कैस्पियन सी की तरफ है, ऊपर की तरफ है, नॉर्दर्न पार्ट में है तेहरान यहाँ पे. Then next is question number 94. Consider the following countries, which are the following countries above are associated with the mineral extraction in the Persian Gulf region. So obviously we know कि Israel Persian Gulf से connected नहीं है, it is connected only with the Mediterranean Sea और थोड़ा बहुत ये Red Sea से भी connected है. Second है Jordan. Jordan again Israel के ही पास है, it is also not connected with the this Persian Gulf. तो ये दोनों तो हो जाएंगे eliminate. Then Iran, that is a obvious choice, we know this thing.
नाउ इराक के लिए ऑलरेडी टोल्ड यू कि इराक का जो कुछ रीजन है वो कहां पे आता है, दैट इज हैविंग अ कोस्ट लाइन विद द पर्शियन गल्फ. नाउ व्हेन वी आर हैविंग कोस्ट लाइन विद द पर्शियन गल्फ, व्हाट हैपेंस इज दैट कि ईरान की कुछ ऑयल फील्ड्स दे आर इन द पर्शियन गल्फ इटसेल्फ. तो ये जो रीजन है, ये वाला, दिस रीजन, ये वाला जो रीजन है, यहां पे इराक की काफी इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स हैं. जैसे यहां पे रुमालिया भी मिलेगी, जुबैर ऑयल फील्ड भी मिलेगी, कुरना ऑयल फील्ड भी मिलेगी. तो ये सारी ऑयल फील्ड्स आपको यहीं पे मिलेंगी. नाउ द पॉइंट इज दैट क्या पर्शियन गल्फ से ये वाटर है? नहीं, पर्शियन गल्फ इंक्लूड्स द एरिया जो सेडिमेंट्री फॉर्मेशन से बना है. सो ऑल दिस एरिया जो जागरोस माउंटेन के नीचे की तरफ है, ये सारा का सारा एरिया पर्शियन गल्फ के अंदर आएगा. सो दैट्स व्हाई इराक इज ऑल्सो गोइंग टू हैव मिनरल एक्सप्लोरेशन इन द पर्शियन गल्फ रीजन. क्योंकि जो भी ऑयल फील्ड्स बनेंगी वो कैसे बनेंगी? दे विल बी फॉर्म्ड थ्रू द सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स. तो सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स जब हुए तभी ऑयल फील्ड बनी. तो दिस रीजन कम्स अंडर दिस रीजन कम्स अंडर पर्शियन गल्फ. तो ज्योग्राफिकली ये रीजन पर्शियन गल्फ के अंदर है. Now another important is these are the important oil fields. इसका if you want to you can take a screenshot of that. This is important. इसका एक ले लीजिए. Then screenshot of this also. These are the important oil fields and which are bold. ये और important है आपके लिए, तो at least इनके नाम आपको पता होने चाहिए. Then these are also important ones. I hope you have taken the screenshot. Coming back to the question. Question says, which of the following are associated with mineral extraction in the Gulf region? तो Gulf region के अंदर the answer should be 3 and 4. Answer is option C, 3 and 4. Iran and Iraq. इनके नाम आपको पता होने चाहिए. Next question we are having is question number 95. It says the summer drought, not frost, the challenge to this vegetation. तो द समर ड्रॉट इज द चैलेंजिंग पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि समर के अंदर जो ड्रॉट आता है दैट इज अ चैलेंज फॉर दिस वेजिटेशन. सेकंड, नेचुरल वेजिटेशन रिफ्लेक्ट्स वेट ड्राई सीजनल पैटर्न ऑफ द क्लाइमेट. तो देयर इज अ वेट सीजन, देयर इज अ ड्राई सीजन, तो यानी यहां पे बारिश होती है. सो दिस गिव्स अस दैट इज रेनफॉल. दिस रीजन टेल्स अस दैट दिस रीजन इज इन नॉट इन वेरी हाई लैटिट्यूड्स, ये मिड या लोअर लैटिट्यूड्स में मिलेगा. Then third statement is during the rainy season, तो we have discussed ये rainy season यहाँ पे होगा, तो desert नहीं है ये region. The land is covered with lush green grasses that turn golden and then brown under the summer drought. तो summer drought is a challenging. Natural vegetation is mainly hard leaved, drought resistant, thick shiny leaves and deep roots to minimize moisture loss. So first of all, xerophytic vegetation. जीरोफिटिक वेजिटेशन जो है वो ड्रॉट या डेजर्ट के साथ रिलेट करती है. एंड इफ द जीरोफिटिक वेजिटेशन इज बीइंग मेंशन्ड देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट इट इज गोइंग टू हैव स्पाइक्स या कांटे होंगे उसके ऊपर. सो इट हैज टू बी थॉर्नी वेजिटेशन, थॉर्न्स बन जाएंगे. सो देयर शुड बी थॉर्न्स दैट शुड बी मेंशन्ड विद रिस्पेक्ट टू द जीरोफिटिक वेजिटेशन. तो दिस कैन नॉट बी प्रोबेबल आंसर टू दिस. सेकेंड इज एपिफाइट्स. एपिफाइट्स में क्या होता है? एपिफाइट्स आर समथिंग लाइक दिस. दे ग्रो ओवर द प्लांट्स, क्योंकि नीचे की तरफ दे डू नॉट गेट सनलाइट, तो दे जस्ट टेक स्पेस फ्रॉम द प्लांट. बाकी सारी चीजें वो खुद से मैनेज करता है. तो द न्यूट्रिएंट्स, द ऑक्सीजन, द फोटोसिंथेसिस दैट इज डन बाय इटसेल्फ, दे ओनली ऑक्यूपाई द स्पेस ओवर अ प्लांट. तो दीज आर नोन एज एपिफाइट्स. एंड एपिफाइट्स जो हैं दे आर फाउंड मोस्टली इन द ट्रॉपिकल रीजन्स. ये हमें ट्रॉपिकल रीजन्स में और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे. उसके अलावा मॉसेस, लाइकेंस एंड फर्न्स आर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ दिस एपिफाइट्स. सो एपिफाइट्स बेसिकली ऑक्यूपाई द स्पेस. देन दिस इज द जीरोफिटिक. जीरोफिटिक के अंदर यू कैन क्लियरली सी देयर आर गोइंग टू बी स्पाइक्स, देयर इज मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव्स. सो दिस इज टाइप ऑफ जीरोफिटिक वेजिटेशन. नाउ थर्ड वेजिटेशन वी आर हैविंग इज स्क्लेरोफाइलस vegetation. Now this is sclerophyllous vegetation. In this vegetation the leaves are thick ताकि water loss ना हो, and this particular vegetation is found in the Mediterranean region. The Mediterranean climate that we study, it is famous for this sclerophyllous vegetation. Examples include olive, cork oak, eucalyptus, Mediterranean
shrubs. So what happens in the Mediterranean region is that during the winters, ये आप याद रखिएगा, during winters it is under influence of onshore westerlies. तो रेनफॉल विंटर्स में होगी बिकॉज द वेस्टर्लीज आर ऑन शोर. ड्यूरिंग समर्स इट इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ऑफ शोर नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स. सो समर्स के टाइम पे ऑफ शोर है यानी बारिश नहीं होगी, विंटर के टाइम पे ऑन शोर है तो बारिश होगी. सो दैट्स व्हाई द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज स्केलेरोफाइलस वेजिटेशन. बोरियल वेजिटेशन हमें मिलेगी टाइगा फॉरेस्ट में, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. दिस इज बोरियल वेजिटेशन. यहां पे द एग्जांपल्स इंक्लूड पाइन, स्प्रूस, फिर लार्च. दीज रीजन्स आर कवर्ड विथ स्नो. तो एसिडिक सॉइल भी होती है, पोर्ट सॉइल भी यहां पे मिलेगी हमें, तो एसिडिक भी होती है वो नेचर में. सो दिस इज बोरियल वेजिटेशन. नाउ आंसर हियर इज ऑप्शन सी, that is sclerophyllous vegetation, or you can say Mediterranean type of vegetation. Next we move to question number 96. It says consider the following statement with reference to the ocean currents in the Indian Ocean. Now Indian Ocean के अंदर if we see the current actually changes their direction, and वो change इसलिए करते हैं because there is change in the direction of the winds. That happens during the summer season, basically during the monsoon season. The first statement is there is no counter current during summer season in the northern Indian Ocean. We are going to see that. Second, during summer season the northern hemisphere, the northeast trade winds intensify over the northern Ocean. So let's see what happens during this time. So what we are having here is that अगर हम बात करें, so here we take the winter season and here we take the summer season. We know that during the winter season the ITCZ or intertropical convergence zone is in the southern hemisphere. तो अगर अब if we are assuming कि the intertropical convergence zone यहाँ पर है, it is somewhere here. So what is going to happen? There are going to be northeast trade winds that will be flowing in this region होंगी, और यहां पे हमारे पास होंगे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स. इसी तरह से ड्यूरिंग द समर सीजन व्हाट वी आर हैविंग इज दैट द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो उसकी वजह से द एंड दे आर गोइंग टू बी हैविंग अ लिटिल टर्न आल्सो लाइक दिस. यहां पे वी आर गोइंग टू हैव द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, और नीचे की तरफ वी आर गोइंग टू हैव साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स विच अप्रोच इंडिया एज साउथ वेस्ट मॉनसून. तो ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं जब ये इक्वेटर को क्रॉस करेंगे तो दे आर गोइंग टू बिकम साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स फॉर द इंडिया और द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. नाउ अब जैसे से विंड फ्लो करेगी वैसे वैसे द वाटर सर्कुलेशन इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज. सो विंटर्स के टाइम पे व्हाट वी फाइंड इज दैट क्योंकि द विंड्स आर फ्लोइंग इन दिस मैनर, सो द ओशन करंट फ्लोज इन दिस मैनर. तो ये विंड्स ओशन करंट को ऐसे लेंगे और देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ अ काउंटर इक्वेटोरियल करंट. तो काउंटर इक्वेटोरियल करंट विल बी सीन ड्यूरिंग द विंटर सीजन. वहीं समर सीजन में इफ यू टॉक अबाउट, तो इन द समर सीजन these south west trade winds they are going to change the direction of the ocean current in the northern Indian Ocean. तो इसमें क्या करेंगी? If you see closely, now the direction of this ocean current has actually changed. पहले ये ऊपर से नीचे आ रहा था, now it is moving from south to north, जिसकी वजह से the counter equatorial current is absent in the summer season. So the reason for the absence of the counter equatorial current during the summer season is basically due to the southwest trade or southwest monsoon or the southeast trade winds. So let's come back to the question. The question says there is no counter current during the summer season.
The statement is absolutely right. During summer season in the northern hemisphere, the northeast trade winds intensify over the northern Indian Ocean. This statement is wrong. It is basically due to the southwest monsoon winds, or you can say weakening of the northeast trade winds. So this statement is wrong. Answer here becomes option C. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Let's go to question number 497. Now it is talking about the coconut productivity. So पहले देख लेते हैं कोकोनट के लिए क्या conditions and कहाँ वो we are going to find it. So for the cotton, what we need is that it is first of all is a tropical crop. Almost above 80% of the production, you can say conservatively 84% of coconut production comes from 3 countries. First is Indonesia, then we are having Philippines, and at the third number there is India. So they account for more than 80% of the coconut production. Coconut is a tropical crop and basically a tropical coastal crop, and it needs heavy amount of rainfall. The temperature requirement is also high and the rainfall requirement is also high. So it is a tropical coastal crop. The temperature requirement is 25 degrees to 33 degrees Celsius, and on an average 27 degrees Celsius annual temperature isko chahiye. Then rainfall amount should be high. Diurnal temperature range, as we know, along the equator or along the tropics is very low. तो यहाँ पे diurnal यानी दिन की जो temperature range है वो कम होगी. So it does not need frost. इसको frost नहीं चाहिए, यानी सर्दियों में survive नहीं करेगा. The rainfall should be well distributed throughout the year and soil should be well drained. Sandy भी हो सकती है, laterite soil भी हो सकती है, alluvial soil भी हो सकती है. So the soil should be well drained soil. Now if you talk about India, so India के अंदर where we are having this coconut production, तो one is Karnataka, then we are having Goa, then Kerala, then we are having Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Odisha. These are the major producing states for coconut. Now let's go back. The question here is, consider the following factors. High diurnal temperature variation, that is wrong. हमने अभी भी discuss किया था. The diurnal temperature range should be low, and as we know it is a tropical crop. So being a tropical crop along the equator and along the coast की वजह से क्या होता है, water जब पास में होगा तो क्या होगा, the temperature will be moderated. So as this is a tropical crop and it grows along the coast, so obviously the temperature will be moderated, land and sea breeze की वजह से. That's why the temperature range cannot be high. So this statement is wrong. Second, high relative humidity, obviously high amount of rainfall it needs. 150 से 250 के बीच में इसको rainfall चाहिए, and it should be well distributed, यानी साल भर बारिश हो, daily बारिश होनी चाहिए. So अगर daily बारिश होगी तो humidity is going to be high. So this is again right. Then abundant sunshine, this statement again is right. क्यों? क्योंकि this is a tropical crop, tropical region में sunshine is there, so this is an obvious requirement. Then persistent water stagnation, this statement is again wrong. क्योंकि persistent water stagnation अगर होगा इसके अंदर, तो what is going to happen is that we are going to have we will not be able to grow the coconut crop. हमने already पढ़ा भी था that it needs well drained sandy soils or well drained soils it need, sandy हो या laterite हो. So this statement again is wrong. So answer here becomes option C, 2 and 3 only. Now next we move to question number 98. Question number 98 is about the various these things. What we are having here is these regions have been mentioned. Now in this what we are having is, first of all is Varkala Cliff, Kerala. Second is Tirumala Hills, Tamil Nadu, St. Mary's Island Cluster, Karnataka and Eramatti W in Andhra Pradesh. तो देख लेते हैं क्यों ये न्यूज में है. फर्स्ट ऑफ all these are national geographical monuments. इनका नाम इसलिए आया है because these are national geological monuments, and they have been identified by Geological Survey of India. तो Geological Survey of India ने नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट का इनको
इनको अवार्ड किया, दे हैव बीन टाइटल्ड एज दिस. तो वर्कला क्लिफ, सेंट मैरीज आइलैंड क्लस्टर एंड एरामट्टी डिबालू, they have been said to be, or they have been awarded as a national geological monument status. Now if we see the location of these regions, first of all first is having Varkala cliff. So this Varkala cliff is in Kerala, ये केरला के नीचे की तरफ है. So this is again a national geological monument as we have discussed. Second we are having is Tirumala hills. So Tirumala hills या तिरुमला टेम्पल जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है, एंड इन आंध्र प्रदेश वन इज नोन एज शेषाचलम हिल्स. शेषाचलम हिल्स दैट इज बेसिकली फेमस फॉर रेड सैंडर्स या रेड सैंडलवुड जो होती है वो वहां से मिलती है. सो इन दिस तिरुमला हिल्स इज सिचुएटेड. सो इट इज पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट. थर्ड वी आर हैविंग इज सेंट मैरीज आइलैंड क्लस्टर. This is in Karnataka. This is in Karnataka. नीचे की तरफ है. Now this Saint Mary's Island, these are actually volcanic in nature, and ये islands, if you see, there's a peculiar arrangement of these volcanic rocks, and these rocks were formed when Indian plate was separating from the Mozambique. तो मोजाम्बिक से जब इंडिया सेपरेट हो रहा था तो these St. Mary's Island cluster was formed at that time. Again this has been given the National Geological tag, monument tag. Last we are having is Eramatti Dibalu. These are basically red hills, छोटे छोटे मिट्टी के, लाल मिट्टी के हिल है, and they are near this विशाखापट्टनम. तो ये विशाखापट्टनम के पास है. Again the status has been given to them. So the answer here is, so the answer here is this one is right, second one is wrong, it is in Andhra Pradesh, third one again is right, and fourth one is also right. So we are having only 3 pairs are right here. So you should be knowing all the 3 pairs. Tirumala Hills is a easy one. The next question that we are going to have is question number 99. Now question number 99 says following statement regarding the water vapor and the atmospheric process. So first is water vapor is the principal agent responsible for scattering of the solar radiation. Scattering of the solar radiation is done by the particulate matter and the dust particles. So this statement is wrong. Water vapor क्या करेगा? It is going to absorb the solar energy. तो ये greenhouse gas effect जरूर produce करेगा, but it is not going to scatter the solar radiation. So first statement is wrong here. Second, water vapor absorbs, re-emits terrestrial long wave radiation. Yes, ये जो water vapor absorb भी करेगा terrestrial long wave radiation को और उसके बाद उसको emit भी कर देगा. So the sun's short wave radiations are going to come and they are going to be converted into terrestrial long wave radiation, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर दोनों ही एब्जॉर्ब करेंगे. आफ्टर बीइंग एब्जॉर्ब्ड and after water vapor reaches to a greater height, ऊपर की तरफ जाएगा तो it is going to condense and form the clouds. When it is going to condense and form the clouds, then it is going to re-emit these long wave radiations. So this statement is right. Third, water vapor contributes the release of latent heat in the atmosphere. We have already discussed. जब water vapor ऊपर की तरफ जाएगा तो it is going to re-emit these radiations in the form of latent heat. So the third statement is right. I hope you know what is latent heat. Latent heat का मतलब ये होता है कि when water is converting into water vapor, then the change of the form needs heat that is known as latent heat. तो जब भी कोई material it is going to change its form, it needs latent heat. There is one more heat, that is specific heat. Specific heat relates with increase of the temperature. तो latent heat किसके साथ relate करेगा? Change of the form of the material. Liquid से solid, solid से liquid या liquid से vapor, तो it needs latent heat. जब liquid से vapor बनेगा तो latent heat absorb करेगा, जब vapor से liquid बनेगा तो latent heat को release करेगा. So when it is converting from water vapor to water, it is going to release latent heat, right? So answer should be option B, 2 and
3 only. Last question is about at equator the winds move parallel to the isobars. Yes or no? बताओ मुझे कि do the winds move parallel to isobars? Let's see that also. So what we are having is earth is there, this is our equator. Now intertropical convergence zone के ऊपर IT CZ, अगर सन हमारा इक्वेटर पे है यानी इक्विनॉक्स पोजीशन है तो IT CZ will be formed here. So this is north east trade wind and this is south east trade wind. तो ये यहाँ पे कन्वर्ज करती हैं. क्यों कन्वर्ज करती हैं? बिकॉज यहाँ पे एक लो प्रेशर डेवलप होता है. एंड व्हाई द लो प्रेशर इज डेवलपिंग हियर? दिस इज बिकॉज व्हेन द सन इज हीटिंग द इक्वेटर, हीटिंग होने की वजह से द एयर इज राइजिंग अप. तो जब एयर राइज अप करेगी तो इस वाले रीजन में देयर विल बी अ डेवलपमेंट ऑफ अ लो प्रेशर. उस लो प्रेशर को फिल करने के लिए फ्रॉम द हायर रीजन्स द एयर इज गोइंग टू मूव टूवर्ड्स इट. राइट? तो द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑब्वियसली इज रॉन्ग. The winds are not parallel to isobars here. So this statement becomes wrong here. Wind blows parallel to isobar when the Coriolis force balances the pressure gradient force in absence of friction. Now what we are talking about in this statement is about the geostrophic winds. एक wind के लिए there are three forces that are going to act. The first force is pressure gradient force. The second force that we are going to have is the फ्रिक्शनल फोर्स एंड द थर्ड फोर्स इज कोरियोलिस फोर्स. अब ये तीनों अलग अलग नेचर के फोर्स हैं. प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एक्चुअली इंक्रीजेस और यू कैन से रिस्पॉन्सिबल फॉर विंड फॉर्मेशन. इट इज द फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव द एयर टू फॉर्म इट अ विंड. तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का मतलब ये है कि जब हाई प्रेशर होगा, मान लो ये हाई प्रेशर रीजन है एंड द प्रेशर इज let's assume 1013 bar millibar. Then now यहाँ प्रेशर है, it is 900 millibars. So the wind is going to move from high pressure towards the low pressure. तो this high pressure से low pressure जो जाएगी वो किसकी वजह से जाएगी? Due to the pressure gradient force. तो pressure gradient force को हम जब कैलकुलेट करते हैं, that is calculated like this. द प्रेशर डिफरेंस, जैसे यहां पे कितना है 1013 माइनस 900 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम. सो जो डिस्टेंस होगा इनके बीच में उससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स. तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स दो चीजों पर डिपेंड करेगा. उन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना है, सेकेंडली उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है. अगर ये पास में है तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, अगर ये दोनों पॉइंट्स दूर है तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स डिक्रीज हो जाएगा. तो फर्स्ट थिंग इज दैट जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा उतना ही ज्यादा द स्पीड ऑफ द विंड विल बी देयर. सो इफ आई ड्रॉ टू प्रेशर लाइंस, इसकी मैंने मान लो ये आइसोबार ड्रॉ किया, इसका मैंने ये आइसोबार ड्रॉ किया. सो दिस इज 1113 आइसोबार, दिस इज 900 मिलीबार आइसोबार. तो विंड इज गोइंग टू मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टूवर्ड्स द लोअर प्रेशर. राइट? तो एक चीज और क्लियर है कि विंड जो है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के अलोंग मूव करेगी. That you should know. Wind moves along the pressure gradient force. Secondly, wind moves perpendicular to the isobar. Isobar के perpendicular होगी wind. So wind is going to move perpendicular to isobar, parallel to pressure gradient force. तीसरा है frictional force. Frictional force का एक ही काम है, उसको रोकना. तो it will be acting against the wind. तो against wind act करेगा तो it will be 180 degree to the frictional force. So frictional force is acting against it. Then last is Coriolis force. Coriolis force as we know नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ मूव करवाएगा. तो अगर विंड ऊपर ऐसे जा रही है तो उसको ऐसे टर्न करवाएगा, अगर ऐसे जा रही है तो उसको ऐसे टर्न करवाएगा इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो नॉर्थ में राइट की तरफ, सदर्न में लेफ्ट की तरफ. इन द सदर्न हेमिस्फीयर इट इज गोइंग टू टर्न लाइक दिस, सॉरी इट इज गोइंग टू टर्न लाइक दिस. एंड अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो इट इज गोइंग टू बी टर्न लाइक इट इज गोइंग टू बी टर्न इन द ऑपोजिट डायरेक्शन.
it is going to be turn in the opposite direction. इस तरह से ये ऐसे मूव करेगा. So this is the role of the Coriolis force, and this particular figure is known as Farrell's law. तो Coriolis force हमेशा 90 डिग्री टू द विंड स्पीड एक्ट करेगा या विंड डायरेक्शन एक्ट करेगा. तो उसका एक ही काम है, कोई भी चीज सीधी जाए तो उसको मोड़ दो. तो इट ऑलवेज ट्राई टू टर्न इट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ. तो नाउ द सिचुएशन कम्स इज दैट जब ये तीनों है तो तीनों होंगे तो द विंड इज गोइंग टू मूव. नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट द कोरियोलिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स. एक तो है लैटिट्यूड, इट विल बी 0 एट द इक्वेटर एंड इट विल बी मैक्सिमम एट द पोल्स. तो जितनी ज्यादा लैटिट्यूड होगी उतना ज्यादा हमारा कोरियोलिस फोर्स भी होगा. सेकेंड इज द विंड स्पीड, जितनी ज्यादा विंड की स्पीड होगी उतना ही ज्यादा हमारा कोरियोलिस फोर्स भी होगा. तो अ सिचुएशन कम्स व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है. व्हेन द फ्रिक्शनल फोर्स बिकम्स जीरो, तो देयर आर ओनली टू फोर्सेस दैट आर एक्टिंग. वन इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, द सेकंड वन इज कोरियोलिस फोर्स. तो जैसे ही हम लोग अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हैं ऐसे, और यहां पे जाके ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तो here what happens is that first of all, due to latitude the Coriolis force has increased. Secondly, frictional force has also become zero here. So here the frictional force is zero and the Coriolis force has increased. तो उस increase की वजह से क्या होता है कि the wind is so much diverted that it becomes, wind इतनी ज्यादा डाइवर्ट हो जाती है कि वो पैरेलल हो जाती है आइसोबार्स की. When the wind becomes parallel to isobars, then that particular wind is known as geostrophic winds. उसे हम क्या बोलेंगे? Geostrophic winds. So the second statement it is talking about, it is about the geostrophic winds. ये geostrophic winds के बारे में है. So the first statement is wrong, second is right, and it is explaining the geostrophic winds. So answer here becomes option D, that is first statement is not correct and second is correct. One more thing, one example of geostrophic winds is jet streams. The westerly jet stream and the polar jet streams, the subtropical westerly jet stream and the polar jet streams, they are examples of geostrophic winds. So this was a part of the geography that we have discussed. I hope it would have been helpful. If you have any doubts, please connect with us. Thank you very much. Hello friends, I welcome you all to this particular edition of say Anubhav discussions. I am going to discuss the environment section of the Anubhav test. I hope your Anubhav went well. With the recent release of UPSC CSE 25 results, the race for the prelims 2026 has much more intensified. So from the perspective of say prelims 2026, practicing as many questions as possible is important, including the PYQ practice. So don't ignore the PYQ practice, and the Anubhav practice in that regard will help you a lot in understanding and analyzing your own preparation level. And apart from that, it will also give you the areas from which you have to revise more as well. It will help you to understand what are your strong points and what are your weak points. So from the perspective of say overall preparation for prelims 2026, Anubhav will help you a lot in overall analyzing your own performance until now, until this point. So let's start the discussions. So the first question is about say CCUS. So what it says, it is the basic, it actually it tries to test your basic understanding of carbon capture, utilization and storage. The basic concept, see CCUS, this particular method of capturing the carbon is oftentimes in news nowadays. In recent budget 2026 also, our finance minister particularly has announced that particular scheme for say CCUS. So we are focusing on say carbon capture, utilization and storage. Why so? Because in our our goal, Panchamrit goal in particular, is to be net zero country by 2070. So if you want to become a net zero, you have to actually sequester carbon from your source, from the large point sources essentially, and you need to store it somewhere else, so that carbon is getting removed from the atmosphere.
particularly carbon dioxide I am talking about, and CCUS is one such method, carbon capture, utilization and storage. So, let us see the first statement. It involves capturing carbon dioxide from large point sources before it is released into the atmosphere. Very easy statement to understand, that is the whole purpose of having CCUS in the first place. So, statement 1 is correct statement. Statement 2, it can facilitate the development of hydrogen economy through the production of blue hydrogen. So, in this particular statement there is little bit difficulty for you to understand the meaning of blue hydrogen. You must have seen we have a national green hydrogen mission which talks about the production of green hydrogen, and if you remember the finance minister's speech properly while announcing this particular scheme, what she also pointed out, with the national green hydrogen mission, this CCUS will help us to decarbonize our energy sector. It will help us to actually achieve that goal of net zero by 2070. So, how so? That is the question. And what the CCUS does is, it will facilitate the development of hydrogen economy, that is for sure. It will facilitate the development of hydrogen economy. Why? Because it will help us to actually sequester hydrogen from, say, the stored carbon dioxide. So, in that regard, it will promote the hydrogen economy. But what is the next catch is through the production of blue hydrogen. So, you must know what is the meaning of blue hydrogen. So, blue hydrogen, the meaning of blue hydrogen is clearly mentioned in this particular slide here, you can see. So, this is the types of hydrogen, for the basic understanding of the types of hydrogen. I have chosen this particular image here. You can clearly see the blue hydrogen here. So, what is the blue hydrogen? It is the process of formation of hydrogen from steam reforming with carbon capture. Okay. So, that is the basic idea, basic concept here. If the carbon that is released in the process is captured, that particular hydrogen production process is called a blue hydrogen production process. Source, it is made from natural gas. So, natural gas if you make hydrogen from natural gas, and if that particular, in the process of making of that hydrogen, if the CO2 that is released or carbon that is released is captured, then that is called blue hydrogen. You must see here, what do you mean by grey hydrogen, what do you mean by green hydrogen, what do you mean by black hydrogen? There is a pink hydrogen as well, there is a turquoise hydrogen, and then there is yellow hydrogen as well. So, these are the types of hydrogen. You must know the meaning of each of them. I am not going to discuss the types here that much. So, let us focus on the current question. So, currently the question asks us about the production of blue hydrogen and it is CCUS promoting the hydrogen economy. So, this particular statement is also correct. So, number 1, the first statement is correct, second statement is correct. Let us look at statement number 3. It is more relevant for sectors that can easily electrified and is generally not applicable to hard to abate sectors. So, this is very controversial sort of statement here. So, what the statement says is CCUS is very easily applicable to electrified sectors that are easily electrified, and we cannot use it for hard to abate sectors. Hard to abate in the sense, for example, cement industry, for that matter. Cement industry is hard to abate sector. Why? Because cement industry, in the production of cement, produces lot of carbon dioxide in the process. So, from the perspective of say overall reduction in the CO2 CO2 being produced in the process of cement production, it is very hard to abate sectors. It is very hard to actually abate CO2 from that particular sector, and for such sectors we have CCUS. That is why CCUS is needed. Do you know in which particular section or which particular industry is investing heavily on CCUS? It is the mining industry, it is the petroleum industry that is heavily investing in the CCUS process. Why they are investing? Because they know that these sectors are hard to abate CO2 releasing sectors. So, they are releasing the CO2 and they do not know how to actually
get rid of say the carbon and CO2 that is being produced in the process. That is why they are actually focusing on this geoengineering techniques, so that the overall burden on them of say means sort of net zero gets reduced, and it is one of the method. Every industry nowadays has a net zero goal. Our own country has net zero goal by 2070, that is our Panchamrit goal, by the way, and for that also we are actually focusing on the CCUS. In recent times our finance minister has announced the mission for CCUS in the budget, and apart from that we have the National Green Hydrogen Mission as well. So along with the National Green Hydrogen Mission and this hydrogen economy being promoted through CCUS, it will actually help the whole economy, the whole Indian economy, to get to that goal of net zero by 2070. That is why second statement is correct, but third statement is clearly incorrect, because that is the whole purpose of having the CCUS, that the heavy cement industry or that say heavy mining industry for that matter, or the petroleum industry in general, they do not know how to get rid of the carbon that is being released into the atmosphere by the production of their these materials. So the third statement is incorrect. It is applicable mostly to hard to abate sectors. Hard to abate, the meaning of it is just the trick here, nothing else. The question number 4, statement number 4, sorry. Ocean fertilization is a commonly used technique under CCUS. See, you must first know what do we mean by ocean fertilization. Okay. See, ocean fertilization is also the method of say carbon sequestration. It is emerging as one of the methods by which you can actually remove the excess CO2 from the oceans. See, with the growing sort of CO2 in the atmosphere, it is getting absorbed in the oceans also, and in a way it is promoting acidification of the oceans, and that is why it is assumed or it is proposed that this particular geoengineering method, which geoengineering method by the way, that is ocean fertilization, will help us to promote microorganisms, that is essentially phytoplanktons, that will help us to actually increase the number of say phytoplanktons, and in a way they will produce more oxygen, and it will abate the overall more acidification that is happening in the ocean. So ocean fertilizer, how do you fertilize the ocean? By adding the nutrients in the seawater. For example, iron sulfate, you can clearly see the iron sulfate here. Okay, so that is the case. So iron sulfate is being added to the ocean. That is, see, this is a proposed method. So it is not particularly means it hasn't been applied on a large scale yet, because there are many downsides to this particular method. Why? Because it may have the negative impact on the overall biodiversity in the region. It may actually have the negative impact on overall ecology of the ocean as well, and there are concerns regarding ocean fertilization. Many sources sort of consider CCUS, consider ocean fertilization as a part of biological carbon capture, utilization and storage, but it is not a commonly used method of CCUS. Remember that CCUS is an industrial method. So these are geoengineering methods, CCUS, in which you capture the carbon, you use it and you store it, sort of. That is the basic concept, and that is why there are many common methods of say CCUS, but ocean fertilization is not one of the common methods of CCUS currently under consideration. So that is very, very true. So you can clearly see the question number 29, option 4, the statement 4, that ocean fertilizer is a commonly used technique under CCUS is incorrect. It is not a commonly used technique under CCUS. It is under consideration, but overall ocean fertilization does not particularly directly gets
associated with CCUS as of now. Okay. Although I will just, there is a catch, many many scientists consider CCUS, ocean fertilization as a part of say marine carbon dioxide removal technique, particularly in the larger umbrella of, it can be counted under the larger umbrella of CCUS, carbon capture, utilization and storage, but it is not a common method specifically under CCUS for sure. So, statement number 4 is incorrect here. So, what is the correct option? Option A is the correct answer here. Option 1 and 2 only is correct. That is option number, statement number 3 and 4 are incorrect. So, let us move forward. Question number 30 now. You can clearly see some of the methods or some of the slides that I have included. So, question number 30, the global fire management hub, which aims to strengthen the capacity of countries to tackle wildfires, has been established by which of the following organizations? So, this is very easy questions from the current affairs part of say the environment, that the global fire management hub, that is that was recently seen in news, was actually formed by which organizations? Very easy questions. So, what exactly is this global fire management hub? So, global fire management hub is a FAO, the Food and Agriculture Organization, the Food and Agricultural Organization with UNEP has established this particular program, that is Global Fire Management Hub, Fire Hub, to enhance international cooperation in managing the wildfires. See, wildfire threat in the era of say changing climate and temperatures is an increasing threat, and to some sort of, there needs to be some sort of international response to it, and for that purpose FAO and UNEP has started this particular fire hub to enhance the international cooperation. And what has happened now, India's proposed to strengthen global wildfire management gained overwhelming support at the 7th session of the United Nations Environment Assembly recently held in Nairobi, Kenya. India drew the attention to UNEP's global report Spreading Like Wildfire. This particular data, by the way, is important here, spreading like a wildfire, which warns that wildfire incidents could rise by 14% by 2030, 30% by 2050. So, there is a threat of growing wildfires and 50% by 2100 if current trends continue. Therefore, India urged immediate international action and stressed the need to shift from reactive responses to proactive one. So, the assembly that has recently happened, in which India is also a part of this particular hub, which has been established by Food and Agricultural Organization FAO in collaboration with UNEP. So, what is the correct answer for this particular question? Question number 30, that is Food and Agricultural Organization and UNEP has formed that particular hub to tackle wildfires at a global level, so that there will be some sort of international response to the wildfire threat. That is the case. So, question number 30, you have the correct answer, that is option A. So, let us see question number 31, what the statements say here. Consider the following statements. Statement 1, biodiversity generally decreases from the equator towards higher latitudes. So, this is general sort of general understanding, basic understanding of the environment. Biodiversity does decrease from the equator towards the higher latitudes. That is the case, means say this is the earth, you have the equator here, and biodiversity, it decreases as you go from say equator towards the pole, that is from lower latitude to higher latitude. Lower latitude equator is at 0 degree and obviously the pole is at 90. So, as you go from 0 degree latitude to 90 degree, the biodiversity tend to decrease. That is a general understanding. You must have seen at the equator the biodiversity being highest. For example, you must know about say the Amazon rainforest or the Congo rainforest, which essentially fall on the equator, the equatorial belt. So, an equator essentially has higher biodiversity. As you go up, that is with higher latitudes,
the biodiversity gets reduced. That is general understanding. Statement 1 is correct. Let us see statement 2. Statement 2, greater solar energy is available in lower latitudes. That is also correct. At lower latitudes, you have the greater solar energy. Okay, you must have seen, greater solar energy. Solar energy gets reduced. Solar energy overall, the amount of solar energy that is available at the equatorial belt is more, say, compared to the poles, because of the rotation of the earth around the sun. You have the direct sunlight exposure at the equator, while at the 90-degree poles the sunlight gets means at an angle, and it gets expanded, and means overall intensity gets reduced. But overall the solar energy is available in lower latitudes, more solar energy is available in lower latitudes. That is a correct statement. Let us look at statement 3. Temperate regions experienced frequent past glaciations, while tropical regions remained relatively undisturbed for millions of years. So, this is also the statement that is correct. Why? In the past, temperate regions have faced frequent glaciations. Glaciations are the events that are triggered by the low temperatures, essentially for the prolonged period of time, and the temperate regions particularly have experienced frequent glaciations. Tropical regions, due to the abundance of, say, solar energy or overall productivity in the tropical regions, haven't experienced that many glaciations. Tropical regions have remained relatively undisturbed for millions of years. So, this particular statement is also correct statement. Now, which of the following is correct in respect of the above statements? What is the correct? Option A, both statement 2 and statement 3 are correct, and both of them explain statement 1. So, let us look at this particular option. Both statement 2 and 3 are correct. Yes, they are correct, and both of them explain statement 1. That is also correct. Why? Look at the statement 2 and 3 combined. What it indicates is, this is the requirement, or this is the reason for the equatorial regions to be high in biodiversity, because they have, say, the constant energy source, that is solar energy is available at a greater quantity, while they are undisturbed for millions of years. Why why these two regions is the reason for biodiversity generally being decreasing from equator to poles, is because what greater solar energy does is it promotes more photosynthesis. More photosynthesis means more productivity in the particular region. So, essentially more means energy flow in the system. So, that way it will promote more biodiversity in a way. And see statement 3, because this is an undisturbed region, biodiversity has there is much more scope for, say, the development of more resilient or more more diverse species, because of the undisturbed nature of the whole region. While due to frequent glaciations in the temperate region, the species there need to survive those glaciation period, and how they survive these glaciations is by adapting to the these glaciation events. But these glaciation events, getting adapted to them is a difficult process. So, only few species will be able to adapt to the glaciations, and in a way only few species will survive such frequent changes, while that is not the question, or that is not the scene in the tropical regions. So, statement 2 and 3 combined actually explains statement 1. So, here option A is correct, that is both statement 2 and 3 are correct, and both of them explain statement 1. Very basic, very easy understanding of, say, the biodiversity and its distribution from, say, equator towards poles will give us this particular answer here. So, very good question, by the way. Let us move out to our next question. This is just the gradient of biodiversity, means that is what I have explained here. Let us look at the next question, that is question number 32. Consider the following statements regarding United Nations Water Convention. So, in recent times, why this particular question is asked? Why the question on UN Water Convention? In recent times, you must have seen that Bangladesh has gained entry, or rather accepted into UN Water Convention. It is the first South Asian country
to accept United Nations Water Convention. So, important news. Let us look at the first statements. It requires parties to use transboundary waters equitably and ensure sustainable management. That is the purpose of having the United Nations Water Convention, so that you can have sort of the cross border or transboundary water dispute getting resolved on easier terms with equitable and sustainable management of the water resource. See, many times this particular UN Water Convention is more adaptable or more apt for EU or European countries, because there are lot of rivers that are transboundary, and obviously the water utilization and use would create many transboundary dispute as well over the water, and that is why many countries from the European region have accepted this particular water convention. It is a legally binding convention, by the way. It is a legally binding international agreement. It is true, it is a legally binding international agreement, and so statement 1 is correct, statement 2 is also correct. India is one of the founding parties of the convention. This is incorrect. This is not a correct statement. India hasn't signed UN Water Convention. That is why you must have seen India, for the transboundary, resolution, transboundary river resolution, we have with Pakistan the Indus Waters Treaty, which has been kept in abeyance now after the recent, recent terror incident, and essentially with China we have our own disputes, and on the bilateral front we have actually evolved the bilateral sort of discussions in this regard without having to be acceded to the UN Water Convention. So, here option B is the correct answer, that is UN Water Convention. India is not party to the convention, although Bangladesh has become the first country to sign UN Water Convention, and it may create problem for India, because India and Bangladesh does have the dispute over which river. Just comment in the comment section on which river particularly India and Bangladesh has a transboundary water dispute. That is a very famous dispute, you must be knowing it. So, India prefers to resolve this particular transboundary issue through say bilateral dialogue, not through say international convention, which is essentially legally binding convention. So, India, it will create an issue going forward. Let us see what happens in that regard. So, essentially this particular UN Water Convention is created in 1996, you can clearly see it seeks to promote cooperation and sustainable management of transboundary river disputes. 2016 it became available to all UN members, only in 2016 it became available, or earlier it was for European and Central Asian countries where the water disputes are frequently there. Let us look at question number 33 now. Question number 33 says that they are consider the following statements regarding diatoms. Diatoms, very basic concept about diatoms, you must be knowing it. They are photosynthetic organisms found in both marine and freshwater ecosystems. See, what exactly are these diatoms? These are algae or protista. If you talk about say the earlier classification of these particular species, these are just microorganisms, essentially algae in the marine and freshwater ecosystems that you will find. That is correct statement. Statement number 2, they contribute significantly to global oxygen production. That is also correct. Means diatoms is the one of the earliest or basic of say the microorganisms in the marine or freshwater ecosystems, which promote say which promote photosynthesis, and through the photosynthesis they create oxygen, hai na? That is the case. So, number 2 is correct, and significant. I am going to tell you how much sort of oxygen is created from say diatoms. Now, let us look at statement number 3, sorry, statement. They thrive more in polluted waters than in clean waters. Although diatoms you will find in polluted waters as well, but it is not like they thrive in polluted waters. Rather, diatoms are often considered as a pollution indicator, means they will not that much survive
in the polluted waters. So to certain extent, you know, this statement that they will thrive in the polluted waters than in clean waters is incorrect. So for question number 33, what is the correct answer? It is option A, that is 1 and 2 only are correct. Are correct is asked, it is the correct. So let's look at the means, you know, beautiful explanation that, you know, I have actually for the diatoms. Diatoms are single celled algae. First and foremost, these are algae, they are single celled algae. They are that live in houses made of glass. That is some euphemism here. They are only organism on the planet with cell walls composed of transparent opaline silica. That's why they are often considered made of glass, which forms intricate and striking patterns. Diatoms turn energy from the sun into sugar. That is essentially photosynthesis process. Diatoms produce 20 to 30% of the air we breathe. Almost 20 to 30% of CO2 or O2 is released of the global O2 is released by the diatoms. So 20 to 30% of global oxygen production is from diatoms. So it is a huge proportion. You can see the diatoms here. They are one of the most, you know, diverse of the protists on earth, and diatoms feed the oceans, lakes and rivers. Even in lakes and rivers also they are found. Okay. So diatoms tell us about the health of the aquatic systems. As I said, it is not like they will thrive more in the polluted waters. Okay. Let's look at question number 34. Which one of the following rivers is associated with Bhitarkanika mangroves and is known for its saltwater crocodile habitat? So why this particular question? In recent times, there are, you know, particularly in the Odisha district, particularly the Kendrapara district and surrounding regions of Bhitarkanika mangroves and the national parks, there are a lot of crocodile attacks, and the statistic in this regard is a shocking statistic that many people have died in the crocodile attacks. So from the perspective of, say, prelims, this particular national park and the crocodile that lives there is important. So what the question here is, which river passes through Bhitarkanika mangroves? Whether it is Subarnarekha, Tel, Rushikulya or Dhamra. Okay. So through Bhitarkanika mangroves, Dhamra river passes. So option D is the correct answer. Okay. See, most of the time you may get confused between Subarnarekha and Rushikulya because, you know, both particular Rushikulya river is famous for what the nesting site of which particular species is famous in Rushikulya. Just comment your answer in the comment section. Interesting and important question here. Now let's look at this explanation. These are some of the headlines, by the way. Just look at it. When the river turns hostile, the rising crocodile threat in Kendrapada, that is Bhitarkanika forest, 24 deaths in 6 years. That is shocking statistic. In Odisha's Bhitarkanika National Park, crocodile conservation is a success, but it has come at a human cost as well. Kendrapada during monsoons, when the river swells, so does the danger rise of people straying into the crocodile habitats. Dhamra is a river mouth or estuary formed where Brahmani and Baitarni rivers meet the Bay of Bengal. So which rivers are associated with the Bhitarkanika National Park? Brahmani, Baitarni and Dhamra. Remember that. Remember this particular, you know, these particular rivers names, important. Let's look at question number 35 now. So question number 35 says that consider the following statements regarding big cats. Very interesting and basic understanding of the big cats, you know, a sort of behavior, animal behavior, particularly about big cats. So let's look at the statements. Lions are the only solitary animals among the big cats. So even with the basic understanding of, say, lion habitat or lion ecology, you must know that this particular statement is incorrect. Lions are not the solitary animals. They form the pride. You must have seen the lion prides. There are very famous lion prides in the African region, Africa's Serengeti national parks and all those things. You must have seen. So statement number 1 is incorrect. On the other hand, you have the tigers that prefer solitude. They are solitary animals. So statement 1 is incorrect. Let's look at statement number 2. Snow leopards are generally the largest among the big cats. Have you seen the snow leopard, by the way? Snow leopard is mid-sized cat. Okay, so it is not the largest among the big cats. Which is the largest big cat? It is essentially tiger, our own, you know, tiger.
particularly say our Bengal tiger also gets huge, okay, but there are reportedly there is reported means reportedly there is a Siberian tiger that is much more heavier, but relatively Bengal tiger is also means comparable, but Siberian tiger is the largest among the big cats. So, statement 2 is also incorrect. Let us look at statement 3. Cheetah is the fastest land animal. This is the one of the easiest one. So, you can correct it altogether. Cheetah is the fastest animal, land animal particularly. Let us look at statement number 4. Unlike small cats, all the big cats have the ability to roar actually. So, the ability to roar is not there with certain big cats like snow leopard. The fascinating things about snow leopard is they can't roar, means they just purr to certain extent. So, this particular statement is also incorrect. Not all big cats can roar like lion. Okay. So, statement 3 only is correct. So, which option is the correct option here? Option A, 3 only is the correct answer. So, question number 35, option A is the correct answer. Let us move forward to question number 77 now, the next half of our environment discussion. So, question number 77 says, consider the following statements regarding biostimulants in the agriculture. In recent times, we have seen the whole debates around surrounding biostimulant. What happens is many times farmer gets duped in the name of biostimulant a lot, and that is why government has come up with the regulations, and they have put in the curbs on the practice of misusing this particular biostimulant products. The first statement, they are substances or microorganisms that stimulate natural processes in plants. So, that is the basic purpose of using biostimulant in the plant. What is biostimulants? Essentially, this is these are the substances or microorganisms. Sometimes there can be some bacteria, there can be some algae that is being used in the soils, or there can be some substances like humic acid or amino acids as well that can enhance the natural processes or stimulate the natural processes in the plants. So, this is the statement is correct. That is the basic purpose of having or applying the biostimulants in the agriculture. They function primarily by directly supplying essential nutrients to crops. So, this particular statement is incorrect. They are not like chemical fertilizers where you just apply directly to the roots and it will get absorbed, essential nutrients gets absorbed by the roots. It is not like that. Biostimulants, it stimulate the natural processes. It does not actually supply essential nutrients directly to the crops. It is misconception. So, statement 2 is incorrect. It is just a stimulant, okay, which promotes growth. Now, statement 3, the government of India has brought biostimulant products under the Fertilization Control Order FCO 1985. That is the regulation I am talking about. Earlier under FCO 1985, the biostimulants were not there, but now with the Central Agricultural Ministry's dictate, it has come under the FCO order of 1985. So, options the statements 1 and 3 are correct. Option B is the correct answer. Statement 1 and 3 are correct answer. So, option B. So, Union Agriculture Minister holds key meeting on biostimulant sales, takes a firm stance on biostimulants, directs official to work transparently. That is what I said. Okay. So, let us move forward. Question number 78, very easy question, very easy understanding of say photochemical smog. Which of the following pollutants are typically considered secondary pollutants in photochemical smog? So, secondary pollutants and primary pollutants, you must be knowing this, very basic understanding of say pollution and how it works, point sources from which they are released. In photochemical smog, which are the secondary pollutants? That is the basic question. Number 1, ozone. Number 2, peroxyacetyl nitrate, PAN, and aldehydes. So, all these 3 are secondary pollutants. See, ozone is one of the most harmful secondary pollutant associated with photochemical smog. Okay. Photochemical smog, in the presence of the sunlight, the secondary pollutants are further activated. Ozone O3 is one of the foremost produced when it comes to
the photochemical smog. Peroxides, pan also and aldehydes also. So, all three are correct here. So, all three are secondary pollutants in photochemical smog. So, let us see photochemical smog. Primary pollutants like CO2 or CO or SO2 and all those things, and secondary pollutants O3 it forms. Photochemical smog is a mixture of pollutants that are formed when nitrogen oxides and volatile organic compounds react to sunlight. In the presence of sunlight, the reaction happens, creating a brown haze above cities. So, you must have seen the photochemical smog, the examples of which are immense, or it tends to occur more often in summer because that is when we have the most sunlight. There are some issues in that regard also. Let us look at question number 79 now. Very important and interesting question from the current affairs itself. Consider the following biosphere reserves in India. First is Great Run of Kutch Biosphere Reserve. Statement 2, Nokrek Biosphere Reserve. Statement number 3, Dibru-Saikhowa Biosphere Reserve. And number 4, Seshachalam Hills Biosphere Reserve. And what it asks, how many of the above are recognized under UNESCO's World Network of Biosphere Reserves? So, why this particular statement, by the way, why this particular question on UNESCO's World Network of Biosphere Reserves? Because in recent times we have the news about what? About say the new entry from India into the Biosphere Reserve, particularly UNESCO's Biosphere Reserve network. So, India's Cold Desert Biosphere Reserve designated by UNESCO. With the latest addition, India has 13 biosphere reserves listed in the World Network of Biosphere Reserves. Okay. Particularly in this slide, other countries and their biosphere reserves, from which particular countries for the first time the biosphere reserve has been designated by UNESCO is also important, and just know their names and know their location as well. For example, 6 countries saw the designation of their first biosphere reserve. Which are those 6 countries? Angola, which are those 6 countries? Angola, Djibouti, Equatorial Guinea, Iceland, Oman, Tajikistan. Okay, that's very important. It is an additional stuff apart from say the question that I am going to address. Now, let us look at the biosphere reserves in India. This is the slide from say the Indian Express. So, you have all the biosphere reserves that are declared in India by the Indian government or by or recognized by UNESCO as well. So, here you can see star marked biosphere reserves are also recognized by UNESCO World Network of Biosphere Reserve. For example, Agasthyamala, Nilgiri, Achanakmar, Amarkantak, Panchmadi. Kutch, Gujarat is biosphere reserve recognized by the Indian government, but it is not part of UNESCO's World Network of Biosphere Reserve. Okay, so that is not a case. Nanda Devi is recognized by both. Kanchenjunga, Manas, Dibru-Saikhowa, these are also both national biosphere reserves that are recognized by Indian government, but not by UNESCO. Dehang Dibang in Arunachal Pradesh recognized by say the Indian government, but not UNESCO yet. Nokrek, although recognized by both. Sundarbans, Simlipal, again both recognized by say UNESCO as well as Indian government. Seshachalam only by Indian government, not by biosphere UNESCO. And Gulf of Mannar is and Gulf of Nicobar is recognized by both Indian government as well as Indian government along with UNESCO. So, which is the correct answer here? How many of them are recognized under UNESCO's World Network of Biosphere Reserve? Only one is recognized. Which one is that? Nokrek Biosphere Reserve is recognized as is also recognized under UNESCO's World Network of Biosphere Reserves. Other 3, Great Run of Kutch, Dibru-Saikhowa or Seshachalam Hills are not recognized by UNESCO yet. Okay. So, only one is the correct option here for question number 79. Let us move forward, question number 80 now. Consider the following statements regarding United Nations Convention on the Law of the Sea. UN clause statement here, UN clause. Particularly, this particular question is important because in recent times, the BBNJ, that is Biodiversity Beyond National Jurisdiction, this particular agreement has come into force. So, the BBNJ agreement is a treaty adopted under the framework of the UN clause. Very easy question, very easy statement here, that BBNJ is part of or it is adopted under the overall framework of the UN clause. UN clause is such an important
sort of convention. It is one of the first conventions which addressed the overall ocean governance in a holistic manner, but there are some drawbacks which have been fulfilled by the BBNJ, the biodiversity beyond national jurisdiction. So, it is often also called a high seas treaty. So, high seas treaty, it obviously it connects or it regulates the movement, or it tries to create marine protected areas in high seas. So, it is going into force from January 26. It has gone into force from January 26. So, statement 1 is correct. UN clause established the International Tribunal for the Law of the Sea to adjudicate disputes relating to the interpretation and application of the convention. So, this particular statement is also correct. You have the International Tribunal under the UN clause that will adjudicate the disputes under the UN clause. India is not a party to the convention. This statement is incorrect. India has signed the convention in 1995 itself. It has also it also came into force officially in India, but it has signed the convention way back in 1980s itself. Statement 4, all state parties to the UN clause are automatically members of the International Seabed Authority. So, this is the ipso facto sort of provision in UN clause. If somebody or any country signs the UN clause convention, it automatically becomes member of International Seabed Authority, ISA. International Seabed Authority, this is the authority that regulates mining on the sea floor. Important authority. In recent times we have seen India being allotted the region in the central Indian Ocean region by the International Seabed Authority for mining the polymetallic nodules and all. So, statement 4 is also correct. 1 to 4 are correct statements. So, option B is the correct answer for question number 80. So, let us move forward. So, you can see the BBNJ coming into force, and you can clearly see the convention, which is what is called high seas. High seas is the area beyond exclusive economic zone. So, just go through it again, very important. Question number 81 now, which of the following birds are undertake long distance migration and visit India during winter season? Very interesting and important question here. Which of the following birds migrate and visit India during winters? That is the basic question. Number 1, bar-headed goose. Number 2, Amur falcon. Number 3, Siberian crane, and number 4, rosy starling. So, you must be knowing these three. Okay, these are very famous species. Many times the sighting of the Siberian crane becomes a news, local news, or even sometimes a national news as well. Amur falcon also, oftentimes the in the winter months, to escape the cold of say the European region, they actually migrate to India. Okay. So, rosy starling also, it is the species of the bird that migrates to India in winters. So, all the 4 statements, all the 4 birds are correct here, which have the long distance migration to India and visit India during winters. So, option 4 here is the correct answer. Option D is the correct answer. So, you can clearly see some of the Asian flyways or pathways of the birds that they take. Let us look at the question number 82 now. Consider the following statements. PAT scheme creates tradable certificates linked to reduction in specific energy consumption. See, it is the comparison between PAT and CCTS scheme. PAT perform achieve trade scheme, okay, and its transition itself is CCTS. We are going to transition to CCTS methods now in recent times, and PAT scheme will create the tradable certificate linked to reduction in specific energy consumption. This is correct. The basics of the PAT scheme is given here. Number 2, CCTS proposes tradable instruments directly linked to verified greenhouse gas emission reductions. So, under CCTS the scheme, the government will give the certificates to the companies who after verification can prove that they have reduced the greenhouse gas emissions, and they will be given tradable instruments and certificates, and they can utilize it in the markets. So, this statement 2 is also correct. Both PAT and CCTS operate on the principle of cap and trade for absolute emission limits.
So this particular statement is incorrect. It is partially correct rather. CCTS has cap and trade sort of limits, cap and trade absolute emission limits, but not PAT. PAT is directly linked to reduction in specific energy consumption, and it particularly doesn't have cap and trade system. So statement 3 is incorrect. Okay. So here for question number 82 you have option A, that is correct, 1 and 2 only. So let's move forward. Question number 83. Consider the following statements regarding dioxins and furans. So what are these dioxins and furans? See, dioxins and furans are essentially pollutants. So that is first and foremost. Let's look at number one statement. They are a group of persistent organic pollutants. That is absolutely correct. They are the POPs, persistent organic pollutants. And number 2, they are commercially produced for use as pesticides in agriculture. No, they are not commercially produced for use as a pesticide in agriculture. It is not so. It rather, you know, in the production of the pesticides, dioxins and furans are the byproducts. So sort of it is a byproduct rather than the production of the main pesticide. So number 2 is incorrect. Number 3, they are also released by volcanic eruptions and forest fires. See, most of the time, many times, the major source of dioxins and furans is industrial processes. Industrial pollution is the major source. Number 3, but minorly, they are also released naturally by volcanic eruptions and forest fires as well. So number 3 is correct. So for question number 83, option B is the correct answer. 1 and 3 are only correct. Number 2 is incorrect statement. Let's look at question number 84 now. India has recently signed an agreement on the joint credit mechanism under Article 6 of the Paris Climate Agreement with which of the following countries? Under Article 6 of the Paris Climate Agreement, India has signed JCM with which country? Very easy question. If you have followed the current affairs properly, it is with Japan that we have signed this particular JCM in recent times particularly. So question number 84, the option is option D. So India-Japan joint credit mechanism clears way for Paris goals amid North-South climate gridlock. So essentially with the Trump's presidency and the backtracking of US from say the climate goals, this particular joint mechanism between India and Japan is important because both countries are climate conscious countries, and particularly Article 6 provides the framework for voluntary international cooperation in climate action, including the use of carbon markets to help countries meet their NDCs. So this mechanism can unlock vital climate finance for developing nations. So sort of Japan having the large source of finance with it, it can actually finance the green projects in India, and that Article 6 sort of collaboration in this regard is important and vital. So that's it from my side, and all the best for say the upcoming prelims. Thank you. Hello everyone, I am Navneet Chabra. I'll discuss the Science and Technology section of ANUBHAV-III with all of you. I hope आपका exam अच्छा रहा है. There were around 13 questions from the Science and Technology section in this paper. So we'll treat them like 13 themes. Whatever is important from the point of view of your next prelims with respect to that theme, we'll cover everything. जो क्वेश्चन में है वो तो ऑब्वियसली करेंगे, बट रिलेटेड जो इश्यूज है उसको भी क्विकली हम रिवाइज कर लेंगे, राइट? चलिए तो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. अच्छा, सबसे पहले मैं आपको आंसर की दिखा देता हूं आपके जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन के क्वेश्चंस हैं, सो दैट अगर आप आंसर की चाहते हैं तो ये रहा, और अगर आप डिटेल डिस्कशन चाहते हैं सो वी कैन मूव ऑन. फॉर एवरी क्वेश्चन I'll just tell you the final answer, statement wise accuracy, फिर उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे डिटेल डिस्कशन पे. चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल ट्विन. द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट इट्स अ वर्चुअल रेप्लिका ऑफ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट और सिस्टम. ये ठीक है. द सेकंड स्टेटमेंट सेज चेंजेस इन द फिजिकल ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड इन द डिजिटल मॉडल इन रियल टाइम. ये भी ठीक है. द डिजिटल मॉडल कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट. ये भी ठीक है. So the answer is option D. चलिए एक एक करके बात करते हैं. First of all, digital twin is all over the news. In fact, Government of India is trying to take multiple initiatives with respect to digital twin technology. अब आपको अगर imagine करना है digital twin क्या है, तो for a second imagine that you have a digital
model replica of yourself right now, and that model is exact model sitting in your exact room and watching this अनुभव discussion right now. ये exact replica जो है आपका, ये digital twin कहलाएगा. And remember, this is a real time replica. What does that mean? आपकी बॉडी में जो भी चेंज होगा immediately उस replica में ये चेंज हो जाएगा. Now this digital replica can be of anything. It can be of an object. एक एरोप्लेन का रेप्लिका हो सकता है. It can be of building. It can be of a process. मान लीजिए कोई एक ट्रैफिक सिस्टम है, आप उसको एग्जैक्ट उसका वर्चुअल रेप्लिका बना सकते हैं. या फॉर दैट मैटर आप किसी भी प्रोसेस सिस्टम, कुछ भी आप जो इमेजिन कर सकते हैं, हर किसी का डिजिटल रेप्लिका इज डिजिटल ट्विन. नाउ दिस is the word of digital twins which is going to be the future. अभी भी digital twins exist कर रहे हैं, बहुत सी industries use कर रही हैं, but not exactly as sophisticated as we just talked about. अब आप imagine करो उसका benefit क्या है. Let's say you have to take a decision in the real life. Now obviously because of the fear of uncertainty, you may have some inhibition कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. But what if you can test that decision in your digital replica? आप पहले उस डिजिटल मॉडल में वो डिसीजन लो एंड देन बेस्ड ऑन द आउटकम यू कैन फाइनली डिसाइड कि आपको रियल लाइफ में वो करना है कि नहीं करना. ऑब्वियसली इट विल मेक योर डिसीजन मेकिंग मोर इफेक्टिव. एग्जैक्टली द सेम थिंग यू कैन डू फॉर एनीथिंग दैट यू आर सीइंग. ये है कॉन्सेप्ट, ये है कोर आइडिया डिजिटल ट्विंस का. अब डिजिटल ट्विंस को थोड़ा फॉर्मली डिफाइन करते हैं. फर्स्टली, एज आई सेड, इट्स अ वर्चुअल रेप्लिका ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सिस्टम और पर्सन्स. सेकेंड फीचर ये है, इट्स अ रियल टाइम रेप्लिका. मतलब होता ये है दैट इन द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स विल हैव लॉट ऑफ सेंसर्स, थाउजेंड्स ऑफ सेंसर्स, और हर सेंसर एक टाइप का डेटा भेज रहा है फिजिकल ऑब्जेक्ट के एनवायरमेंट के बारे में. नाउ दैट डेटा इज बीइंग फेड टू दिस डिजिटल मॉडल, और डिजिटल मॉडल जैसे ही कोई डेटा में चेंज डिटेक्ट करेगा, इट विल इमीडिएटली चेंज इटसेल्फ. दैट इज व्हाई इट चेंजेस इटसेल्फ रियल टाइम, जो आपका सेकंड स्टेटमेंट था क्वेश्चन का, राइट. बट ये जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, दिस इज बाई डायरेक्शनल. दैट इज द ब्यूटी ऑफ डिजिटल ट्विन. What do we mean by it? There are many digital twins which are advanced form. What do they do is this: the virtual replica can also send the signals to the physical object. Let's say virtual replica data को analyze करता है और उसको लगता है कि there is some command that needs to be sent to the physical object. वो सिग्नल भेजेगा, फिजिकल ऑब्जेक्ट में लगे हुए सेंसर उस सिग्नल को डिटेक्ट करेंगे और फिजिकल ऑब्जेक्ट विल परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन. सो ये बोथ वेज एक्सचेंज हो रहा है. इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक स्मार्ट विंड टरबाइन है, राइट. अब विंड टरबाइन है, विंड टरबाइन में कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं विच आर सेंडिंग कंटिन्यूअसली डेटा टू इट्स डिजिटल मॉडल. मान लीजिए कि विंड टरबाइन हैज बीन फेसिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म. एक विंड स्टॉर्म आया है. अब ये विंड स्टॉर्म जैसे विंड टरबाइन को हिट करेगा, इमीडिएटली द सेंसर्स विल टेल द डिजिटल मॉडल एंड डिजिटल मॉडल विल फील दैट स्टॉर्म. ये हो गया वन वे इंफॉर्मेशन. नाउ इमेजिन दैट डिजिटल मॉडल फील्स कि ये विंड की स्पीड इतनी ज्यादा है दैट टरबाइन में स्नैप. सो व्हाट इट विल डू इज इट विल सेंड अ सिग्नल बैक टू द विंड टरबाइन कि ब्लेड का एंगल थोड़ा सा चेंज कर दो सो दैट टरबाइन डज नॉट गेट स्नैप्ड. सो ये बोथ वेज इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होगा एंड दैट इज द होल आइडिया ऑफ डिजिटल ट्विन. ये सब हम कर क्यों रहे हैं? बिकॉज इसके जितने भी यूज केसेस हैं वो प्राइमरली 3 डायमेंशन से आएंगे. फर्स्टली, रियल टाइम मॉनिटरिंग. आपका जो भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है आप उसको रियल टाइम कहीं से भी किसी समय पूरा मॉनिटर कर सकते हो. द सेकेंड थिंग इज द प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स पार्ट. व्हाट डू आई मीन? क्योंकि उस फिजिकल ऑब्जेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन इज विद द डिजिटल मॉडल. Now the digital model will also use artificial intelligence to predict what can happen if this happens. So it will analyze the data and it will also help in predicting the uncertainties. The third thing is this: जब भी आपको कोई भी डिसीजन लेना है, let's say आप एक स्मार्ट सिटी मैनेज कर रहे हो, आपने उसके ट्रैफिक का एक डिजिटल मॉडल बना दिया. Now you have to take a decision with respect to a new infrastructure project. अब न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा है. व्हाट इफ दैट डिसीजन गोज रॉन्ग? तो व्हाट यू विल डू इज अपने डिजिटल मॉडल में, जो स्मार्ट सिटी का डिजिटल मॉडल है, यू विल क्रिएट अ न्यू रोड, न्यू प्रोजेक्ट, एंड फिर आप एनालाइज करोगे कि इसका इंपैक्ट क्या हुआ.
और जब आपको लगे दैट इट इज एज पर योर डिजायर्ड आउटकम, देन यू विल फाइनली बिल्ड दैट रोड. सो आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हो दैट कैन बी डेटा ड्रिवन. These are the 3 primary use cases of digital twin. अब इसको जहां यूज करना चाहते हो आप इसे, ऑब्वियसली हमने स्मार्ट सिटी का एग्जांपल देखा, वहां यूज कर सकते हो. इसे स्पेस एजेंसीज जो है फ्यूचर मिशंस के सिमुलेशन बनाने के लिए यूज कर रही है. इनफैक्ट डिजिटल ट्विन का जो होल आइडिया है, इट स्टार्टेड विद द नासा's प्रोजेक्ट इटसेल्फ. फिर ह्यूमन बॉडीज के लिए डॉक्टर्स आर ट्राइंग टू यूज इट. फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए ह्यूमन हार्ट का एक रेप्लिका बना के रख दो. नाउ लेट्स से यू हैव टू गिव दैट पेशेंट सर्टेन मेडिसिन्स एंड नाउ यू वांट टू एनालाइज कि ये मेडिसिन बिहेव कैसे करेगी इस हार्ट पे, इस पर्टिकुलर पेशेंट के हार्ट पे. You can directly see the impact in the digital twin, and if you feel that it is as per your desired outcome, you can go on and administer that medicine to the patient. Right? So ये use cases आते हैं digital twin के. अच्छा, by the way एक information जो आप guess कर लिए होंगे, digital twin actually कोई isolated technology नहीं है. Digital twin is the combination of all the technologies that you have already heard of. For example, Internet of Things. यूपीएससी ने सवाल भी पूछा हुआ है. इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? बेसिकली इट्स अ नेटवर्क ऑफ ऑल द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स विच आर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट, और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, सारे फिजिकल डिवाइसेस थ्रू इंटरनेट. दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स. ये भी यूज होगा इसमें. फिर ऑब्वियसली आपको बहुत हाई स्पीड डेटा चाहिए सो दैट यू कैन ट्रांसफर द रियल टाइम डेटा बिटवीन द फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड डिजिटल ट्विन. इसलिए 5G तो आपको लगेगा ही लगेगा. इनफैक्ट वी थिंक दैट टू मेक वेरी प्रिसाइज डिजिटल ट्विन्स वी मे नीड 6G. राइट? फिर इसके अलावा आपका AI, जैसे मैंने बोला, बिकॉज द डिजिटल मॉडल इज नॉट ओनली सपोज टू रिसीव द डेटा, इट इज ऑल्सो सपोज टू एनालाइज इट, एंड फॉर एनालाइजिंग वी विल नीड AI. सो इट्स अ ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज जो अल्टीमेटली रिजल्ट कर रही हैं इस डिजिटल ट्विन में. ठीक, ये तो हो गई आपके स्टेटमेंट से रिलेटेड बातें. अगर आप देखें तो सारी बात हमारी हो चुकी है. फर्स्ट स्टेटमेंट ऑब्वियस है, डेफिनेशन है. सेकंड भी हमने देख लिया, थर्ड भी देख लिया. कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली, देयर इज अ पोर्ट, वीओ चिदम्बरम पोर्ट, a major port in Tamil Nadu. That port became the first major port to have a digital replica, a digital twin of itself for the port management. This was all over the news. PIB में भी खुद कवर किया गया था. तो एक वन लाइनर मिसलेनियस इंफॉर्मेशन अगर पूछी जा सकती है as one of the statement, you should know. Other than that, Government of India, especially the Department of Telecommunication, it started a digital twin initiative जिसका नाम दिया गया था संगम डिजिटल ट्विन. बेसिकली एक तरीके का डिस्कशन फोरम था जहां पे दे इनवाइटेड द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री पार्टनर्स हु वांट टू इन्वेस्ट इन दिस टेक्नोलॉजी. अभी बहुत आगे नहीं बढ़ा है, 2024 के एंड या 2025 के स्टार्ट में ही आया था, बट यू शुड कीप ट्रैकिंग, ये इंपॉर्टेंट है. चलिए, तो ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन से रिलेटेड सारी बातें. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर. पिछले 2 साल से कंटिन्यूअसली न्यूज में है. द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट दे हैव अ पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ अप टू 300 मेगावाट पर यूनिट. सीम्स अ फैक्चुअल स्टेटमेंट, बट बिकॉज डेफिनेशन है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है. द सेकंड स्टेटमेंट सेज दैट दे कैन बी डिप्लॉयड इन रिमोट और ऑफ ग्रिड एरिया फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. ये भी ठीक है. थर्ड स्टेटमेंट सेज दे आर एक्सपेक्टेड टू इनकॉर्पोरेट enhanced safety features including passive safety system. ये भी ठीक है. The fourth statement says India's third stage of the nuclear power program is planned to use small modular reactor. Absolutely wrong. हमारा जो थर्ड स्टेज है वो थोरियम बेस्ड रिएक्टर पे बेस्ड है. तो आपका 1, 2 and 3 दैट मींस ऑप्शन बी. चलो इसकी डिटेल देखते हैं. First of all of you may be aware that Government of India has come up with the plan to design the small modular reactors. Last to last budget में announcement हुई थी that we are going to make small modular reactors. Last budget में around 20,000 करोड़ का budget allocation declare किया गया था. And recent news is कि we have almost finished the designing part. अभी commercially production चालू नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है. It's only the design part of some of the small nuclear reactors that have been finished. अब देखते हैं इसकी सारी डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का मतलब क्या है? स्मॉल प्लस मॉड्यूलर. स्मॉल मींस इसकी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है दैट इज अप टू अराउंड 1/3 ऑफ द कन्वेंशनल
न्यूक्लियर पावर प्लांट, जनरली हम जो लिमिट डिफाइन करते हैं दैट इज 300 मेगावाट तक की। ठीक, मॉड्यूलर का क्या मतलब होता है? मॉड्यूलर का मतलब ये होता है नॉर्मली योर न्यूक्लियर पावर प्लांट आर बिल्ट ऑन साइट। आप साइट में जाते हो, स्क्रैच से एवरीथिंग आप वहां कंस्ट्रक्ट करते हो। बट मॉड्यूलर रिएक्टर का मतलब ये है दे आर फैक्ट्री, दे आर कंस्ट्रक्टेड इन द फैक्ट्री। और आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स फैक्ट्री में जब कंस्ट्रक्ट कर लोगे, यू विल टेक इट टू दी साइट और वहां पे सिर्फ जाके असेंबल करोगे। तो डिफरेंट मॉड्यूल्स, डिफरेंट पार्ट्स में बना रहे हो फैक्ट्री में और साइट में जाके सिर्फ असेंबल करो, दैट्स इट। जबकि कन्वेंशनल में एवरीथिंग इज बिल्ट ऑन साइट। ठीक, अब ये मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बिकॉज ऑन साइट रेस्ट्रिक्शंस आर देयर, क्योंकि आपको हर कुछ वहीं पे करना है। बट फैक्ट्री में यू हैव ऑल द फैसिलिटीज, यू कैन बिल्ड देम क्विकली, सो यू हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, क्वेश्चन यहां से पॉसिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर आइडिया ये है, देखो बाई 2070 इंडिया इज टारगेटिंग नेट जीरो। ठीक, मतलब हमारे जो नेट एमिशंस हैं, कार्बन एमिशंस, दे शुड बी जीरो। अब इसका एक बड़ा चंक तो रिन्यूएबल से आएगा, बट द न्यूक्लियर एनर्जी ऑल्सो हैज टू प्ले अ रोल इन इट। ठीक, अब न्यूक्लियर एनर्जी अभी जो हम कन्वेंशनल पावर प्लांट रन करते हैं उसको बनने में 10 to 15 ईयर्स लग जाते हैं। इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। सो इफ यू वांट to build your nuclear reactors faster, you have to go to a newer concept, और वो concept है small modular reactor। ये relatively faster to construct है और initial cost is also lower। और इस वजह से second advantage इसका आता है because they have lower power capacity, because they are having low initial cost, we can use them in the remote places जहां पे एनर्जी की डिमांड हो सकता है बहुत ज्यादा डायरेक्टली नहीं है। अब अगर आप वहां पे कन्वेंशनल पावर प्लांट लगा दोगे तो वहां पे तो डिमांड है नहीं, आपको फिर उसे मेन ग्रिड से कनेक्ट करना पड़ेगा और मेन एनर्जी डिमांड की तरफ सेंड करना पड़ेगा। तो यहां पे छोटे पावर प्लांट स्टैब्लिश किए जा सकते हैं फर्स्टली। सेकंड, इनफैक्ट हम क्या कर सकते हैं, उसे ऑफ ग्रिड भी बना सकते हैं। ऑफ ग्रिड का मतलब वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो सिर्फ वहीं की इंडस्ट्री में यूज हो जाए, हम उसे मेन ग्रिड से कनेक्ट भी ना करें। एंड दिस इज फीजिबल बिकॉज जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है दैट इज रिलेटिवली लेसर। ठीक, तो ये सेकंड एडवांटेज आ जाता है। थर्ड एडवांटेज ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर इज दिस दैट दे आर मोर सेफ, जो आपका थर्ड स्टेटमेंट था। दे आर मोर सेफ बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। फर्स्टली, रेडियो एक्टिव एमिशंस के चांसेस यहां पे कम है, फ्यूल कम है, छोटा रिएक्टर है। बट द बिगर पार्ट ऑफ दिस हायर सेफ्टी फीचर इज दे हैव अ पैसिव सेफ्टी सिस्टम। पैसिव सेफ्टी सिस्टम का क्या मतलब होता है? पैसिव वर्ड का मतलब यह है कि कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। मतलब अगर इस टाइप के रिएक्टर में कुछ भी एक्सीडेंट होता है, द ह्यूमंस डू नॉट हैव टू इंटरवीन, ऑटोमेटिकली वो शट डाउन हो जाएगा प्लांट। नॉर्मल ट्रेडिशनल कन्वेंशनल पावर प्लांट में ऐसा नहीं होता। ठीक, सो दे आर सपोज टू हैव हायर सेफ्टी फीचर्स। ठीक, लास्टली इसका रिफ्यूलिंग साइकिल जो होता है दैट इज रिलेटिवली लॉन्ग। आपको कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत फ्रीक्वेंटली रिफ्यूल करना पड़ता है, बट यहां वैसा नहीं होगा। ठीक, तो ये कुछ एडवांटेज है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के। प्लीज रिमेंबर ईच वन ऑफ देम, बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है। अब अगर इतना ही सब कुछ अच्छा है तो ये अभी हमारे पास है क्यों नहीं? आप डिस्कशन से इतना तो समझ गए हैं दैट वी डू नॉट हैव द स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, राइट? बिकॉज देयर आर सर्टेन चैलेंजेस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज इज दिस दैट द टेक्नोलॉजी टू मेक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर इज एक्चुअली इन द नेसेंट स्टेज। ठीक, आज की डेट में अगर आप वर्ल्ड पे बात करेंगे, there are only 2 countries and in fact there are only 2 nuclear power reactors which are small modular reactors and functioning। पहला है रशिया में, ये नाम आप जैसे प्रोनाउंस करना चाहें, एकादमिक लोमोनोसोव, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज रशियाज स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एंड in fact this is a floating nuclear reactor। ठीक है, दिस इज वन ऑफ देम। द सेकेंड वन इज चाइनाज HTRPM। ठीक, ये दोनों ही स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हैं अक्रॉस द वर्ल्ड जो कि अभी फंक्शनल है। इनफैक्ट चाइना वाला तो एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट है। नोवेयर इन एनी अदर कंट्री वी हैव स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। अब ये टेक्नोलॉजी नेसेंट इसका पहला चैलेंज है। सेकेंड चैलेंज इज दिस, देखिए इनिशियल कॉस्ट तो लो है बट वी आर स्टिल नॉट श्योर अबाउट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। जो आप पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे उसकी कॉस्ट क्या आएगी, वी आर नॉट येट श्योर, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दी नेसेंट टेक्नोलॉजी। तो दोनों एसोसिएटेड है। अच्छा,
इंडिया ने जो अनाउंस किए हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, उसके 3 टाइप के मॉड्यूलर रिएक्टर अभी तक अनाउंस किए हैं। पहले को हम कह रहे हैं भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, जो कि अराउंड 220 मेगावाट का है। सेकंड एक 55 मेगावाट का भी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हमने अनाउंस कर दिया है। बोथ ऑफ देम आर सपोज्ड टू बी इंस्टॉल्ड इन दी तारापुर एटॉमिक स्टेशन, जो कि आपका महाराष्ट्र में। इसके अलावा एक और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हमने अनाउंस किया है, वो ये है, ये 5 मेगावाट का एक हाई टेम्परेचर रिएक्टर है। अब ये हाई टेम्परेचर रिएक्टर पे एग्जैक्टली आपको जाने की जरूरत नहीं है, बट वन थिंग यू शुड नो, एक्चुअली दे आर मेंट टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑल्सो। मतलब वहां पे इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा दैट वाटर हैज टू बी ब्रोकन डाउन एंड वी विल ऑल्सो प्रोड्यूस हाइड्रोजन। ठीक, तो बस इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो ये 3 टाइप के स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हमने ऑलरेडी अनाउंस कर रखे हैं। ये हो गई बात इंडिया के प्लान की। अब ये सारी वो चीजें हो गई जो आपको स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में जानना है। अब हम आ जाते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, एक्सट्रीमली सॉरी, इसमें एक स्टेटमेंट था जिसको हमने डिस्कस नहीं किया, दैट इज दैट द इंडियाज 3rd स्टेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम हैज प्लान्ड फॉर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। नहीं, ये एब्सोल्युटली गलत है। आप सबको पता होगा कि इंडिया का जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है दैट इज इन 3 स्टेज। फर्स्ट स्टेज ऑलरेडी फंक्शनल है, जिसमें हम यूरेनियम बेस्ड आपके रिएक्टर्स यूज कर रहे हैं। सेकेंड स्टेज की ऑलरेडी जस्ट स्टार्ट हुई है, ठीक, जो हमारा कलपक्कम में है सेकेंड स्टेज न्यूक्लियर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, उसकी जस्ट स्टार्ट हुई है, कोर लोडिंग हैज स्टार्टेड। थर्ड स्टेज जो है दैट इज इन दी प्लानिंग स्टेज। थर्ड स्टेज में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बिल्कुल भी हम यूज नहीं कर रहे हैं। थर्ड स्टेज में हम जो रिएक्टर यूज कर रहे हैं दे आर कन्वेंशनल रिएक्टर, बट उसका जो फ्यूल है दैट इज डिफरेंट। तो थर्ड स्टेज में हम क्या करेंगे, हमारी जो फ्यूल रॉड होगी, अभी जो हमारी फ्यूल रॉड है फर्स्ट स्टेज में, दैट इज ये फर्स्ट स्टेज की फ्यूल रॉड है, इसमें या तो आप लो एनरिच्ड यूरेनियम यूज कर रहे हो या फिर नेचुरल यूरेनियम यूज कर रहे हो। सेकेंड स्टेज में जो आपकी फ्यूल रॉड होगी आप उसमें प्लूटोनियम यूज करने वाले हो, और इसके अराउंड पे आप एक ब्लैंकेट रखोगे यूरेनियम 238 का। थर्ड स्टेज में आपकी जो फ्यूल रॉड होने वाली है वो होने वाली है यूरेनियम 233 की, और इसके अराउंड पे एक ब्लैंकेट यूज करोगे आप थोरियम 232 का। ये कन्वेंशनल रिएक्टर होंगे, थोरियम बेस्ड रिएक्टर होंगे, फ्यूल रॉड यूरेनियम 233 की, और उसके अराउंड पे ब्लैंकेट होगा थोरियम 232 का। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स ब्लैंकेट और ये चीजें क्लियर नहीं है तो ये स्कोप तो नहीं है डिस्कशन में कि हम वो बातें कर पाए, बट व्हाट आई विल डू इज दिस कि दिस इज द समरी ऑफ इंडियाज 3 स्टेज पावर प्लांट। ये टेस्ट डिस्कशन, इसका स्कोप नहीं है कि मैं आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट समझा पाऊं, बट आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि इसका एक स्नैपशॉट ले लो एंड मेक श्योर कि आपको ये बातें समझ आती हैं। ठीक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर, क्योंकि मल्टीपल डेवलपमेंट्स हुई हैं विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर एनर्जी। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोर लोडिंग स्टार्ट हो गई है, शांति बिल आया है, और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर भी तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक, तो मेक श्योर कि आपको ये टेबल समझ आता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, चलो अब ये हमारा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यहां पे खत्म होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ ग्रुप ऑफ इंडियन साइंटिस्ट recently developed quantum techniques to generate truly random numbers. Why is this development considered a significant breakthrough? पहला ऑप्शन कहता है such numbers improve the storage capacity of digital devices. गलत है। Such numbers allow faster processing of data in quantum computer. ये भी गलत है। Such numbers help reduce the energy consumption. Such numbers can strengthen encryption systems by providing unpredictable keys. ये सही है, ऑप्शन डी। चलिए समझते हैं कि ये है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपेंड इज दिस दैट रिसेंटली देयर इज एन इंस्टीट्यूट, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड अ ग्रुप ऑफ इंडियन साइंटिस्ट, दे डेवलप्ड सर्टेन क्वांटम टेक्नोलॉजीज टू जनरेट एंड सर्टिफाई ट्रू रैंडम नंबर्स। अब ये एक बहुत सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है, नो मैटर इवन इफ इट साउंड्स वेरी टेक्निकल टू यू कि ये क्या चीज है, बट इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, और अक्रॉस न्यूज़पेपर्स में ये कवर किया गया है। सो बहुत बेसिक तो आपको पता होना चाहिए, बहुत डेप्थ में यूपीएससी नहीं पूछ सकती, बट बेसिक पता होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझो कि ये जो रैंडम नंबर है, ये रैंडम नंबर की जरूरत क्या है? दे आर द बेडरॉक ऑफ डिजिटल सिक्योरिटी। आप जब अपने फोन में एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बाद ओटीपी रिसीव करते हो, वहां पे रैंडम नंबर का यूज होता है।
व्हेन यू ओपन अ सेफ वेबसाइट, जो आप HTTPS करके वेबसाइट देखते हो स्टार्ट होते हुए, व्हेनेवर यू ओपन अ सिक्योर वेबसाइट देयर इज यूज ऑफ रैंडम नंबर देयर। जब आप व्हाट्सएप में मैसेज भेज रहे हो वहां पे भी रैंडम नंबर का यूज हो रहा है, इवन इफ यू आर नॉट अवेयर। अब होता यह है, देखो मान लो आपने एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया एंड यू रिसीव्ड एन OTP। वो जो OTP के रैंडम नंबर्स है ना, दे वर जनरेटेड बाय आफ्टर अ कंप्यूटर जनरेटेड सर्टेन रैंडम नंबर्स फॉर यू। दे वर सपोज टू बी रैंडम, उसका कोई पैटर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो पैटर्न होगा उसका, एंड इफ समवन अ हैकर डिकोड्स दैट पैटर्न, तो फिर तो आपका ट्रांजैक्शन ही हैक हो गया, राइट? सिमिलरली इमेजिन कि आप एक वेबसाइट खोल रहे हो, लेट्स से इंटरनेट बैंकिंग का पेज है या ई-कॉमर्स पे आप पेमेंट पेज पे हो, राइट? नाउ यू विल फीड सर्टेन इंफॉर्मेशन, अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल, डेबिट कार्ड की डिटेल, अपनी पर्सनल इन्फो, राइट? नाउ that data has to be transferred from your browser to the website server. ये जो डेटा ट्रांसफर होगा ये प्लेन फॉर्म में नहीं होगा, वो डेटा जो आपने फीड किया है पहले उसका इंक्रिप्शन होगा, और उस इंक्रिप्शन को करने के लिए, उसको कोड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इंक्रिप्शन कीज लगती है कि किस वर्ड को कैसे डिकोड करोगे, कैसे कोड करोगे। और वो इंक्रिप्शन कीज कुछ नहीं होती है, सेट ऑफ रैंडम नंबर होता है। अगेन वो रैंडम नंबर में कोई पैटर्न नहीं होना चाहिए। इफ देयर इज अ पैटर्न एंड इफ समवन डिकोड्स दैट पैटर्न, वो सारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी। सिमिलरली जब आप व्हाट्सएप में एक टेक्स्ट भेज रहे हो, आपसे आपके फ्रेंड के बीच जो टेक्स्ट जा रहा है दैट इज इन द इंक्रिप्टेड फॉर्म, वो फाइनली प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रहा है आपके फ्रेंड के फोन में, तो वहां पे भी इंक्रिप्शन हो रहा है। अगेन जहां जहां इंक्रिप्शन हो रहा है एट दैट टाइम इंक्रिप्शन कीज का यूज हो रहा है। इंक्रिप्शन कीज कुछ नहीं है, सेट ऑफ रैंडम नंबर है, ठीक? अब ये सोचो कि ये रैंडम नंबर अगर ट्रूली रैंडम नहीं हो तो, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रू रैंडम का क्या मतलब है? ट्रू रैंडम नंबर्स का मतलब ये है दे आर कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल, दे डू नॉट हैव एनी पैटर्न। कोई लॉजिक नहीं है कि वो नंबर ऐसे ही क्यों लिखे गए हैं, और क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है दैट इज व्हाई नो वन कैन प्रेडिक्ट देम, ठीक? क्योंकि अगर लॉजिक होगा तो कोई प्रेडिक्ट कर सकता है, और इसलिए हमें चाहिए होते हैं ट्रू रैंडम नंबर। क्या आज ट्रू रैंडम नंबर जनरेट होते हैं? वी आर डेवलपिंग द टेक्निक्स, बट नॉर्मल जो कंप्यूटर जनरेट कर रहे हैं ना ट्रू रैंडम नंबर्स, वो रैंडम नंबर्स ट्रू रैंडम नंबर्स नहीं है, वो स्यूडो रैंडम नंबर्स हैं। व्हाट डू आई मीन? देखो आपका जो भी कंप्यूटर आपके लिए रैंडम नंबर जनरेट करके दे रहा है, अब कंप्यूटर इज अ मशीन, मशीन नोज ओनली लॉजिक, मशीन वर्क्स ऑन द बेस्ड ऑफ एल्गोरिदम, कि भाई मुझे एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे दो, इफ यू गिव मी दिस कमांड व्हाट विल आई जनरेट। जो मशीन सिंपली वर्क करती है रूल्स पे, लॉजिक पे, इट कैन नेवर गिव यू समथिंग विच इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल। उसका एक लॉजिक है जो उसने रैंडम नंबर जनरेट किया, आपको वो रैंडम नंबर दिख रहा है, योर ब्रेन कैन नॉट अंडरस्टैंड कि इसका पैटर्न क्या है, बट व्हाट इफ एक सुपर कंप्यूटर उसको डिकोड करने की कोशिश करे, कैन इट नॉट अंडरस्टैंड द लॉजिक? वो कर सकता है, क्योंकि उसके पीछे एक लॉजिक है। तो दे आर नॉट एक्चुअली रैंडम, दे आर स्यूडो रैंडम नंबर्स, ठीक? क्योंकि वो एक एल्गोरिदम से बनाए हैं कंप्यूटर ने। अब ये जो स्यूडो रैंडम नंबर है, दे आर गुड इनफ टू बी सेफ फॉर नॉर्मल थिंग्स, नॉर्मल चीजों में काम चल जाता है, ठीक? बट वी आर मूविंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स। क्वांटम कंप्यूटर्स की कंप्यूटिंग पावर विल बी सो हाई दैट दे कैन डिकोड एनी कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम, they can decode any complicated random numbers अगर उसके पीछे कोई भी लॉजिक है तो इसलिए हमें यह चाहिए कि हम स्यूडो रैंडम से आगे बढ़े और ट्रूली रैंडम नंबर की तरफ जाए। अब ये ट्रूली रैंडम नंबर क्रिएट कैसे करोगे? क्योंकि कंप्यूटर तो नॉर्मली क्रिएट कर नहीं सकता, ठीक? तो आपको ट्रूली रैंडम नंबर क्रिएट करने के लिए करना क्या होता है? रैंडमनेस दिखती है नेचर में, देयर आर सर्टेन फिनोमेना इन द नेचर विच आर कंप्लीटली रैंडम। आप उस नेचुरल फिनोमेना को लो, उसमें सेंसर फिट करो, और वो जो डेटा आ रहा है रैंडमनेस का, उसको 0 और 1 के कोड में डिकोड करो। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे आसपास देयर इज लॉट ऑफ एटमॉस्फेरिक नॉइज बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेव्स, एंड दैट एटमॉस्फेरिक नॉइज इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल, कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे का। अगर हर एटमॉस्फेरिक नॉइज के फ्लक्चुएशन को आप 0-1-0-1 देते जाओ, यू विल गेट अ परफेक्टली रैंडम नंबर, देयर इज नो लॉजिक इन इट। और सोचो आपका जो कंप्यूटर यूज कर रहे हो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसके अंदर ना एक थर्मल नॉइज होती है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट। दैट थर्मल नॉइज इज ऑल्सो नॉट हैविंग एनी लॉजिक। आप
अगर हर एक फ्लक्चुएशन को 0101 दे दो तो यू विल गेट अ परफेक्टली रैंडम नंबर। तो जो ट्रू रैंडम जनरेटर होते हैं दे डू नॉट वर्क बेस्ड ऑन एल्गोरिदम, दे व्हाट दे डू इज दे जनरेट अ नंबर बेस्ड ऑन अनप्रेडिक्टेबल फिजिकल एनवायरनमेंट। अब इसी की एक कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर। अब क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर क्या करते हैं, ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इनके क्वांटम बिहेवियर के बेसिस पे एक सीरीज ऑफ नंबर जनरेट करते हैं। मतलब देखो ये जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे डू नॉट फॉलो क्लासिकल फिजिक्स, वो क्वांटम फिजिक्स फॉलो करते हैं। मतलब वो एक टाइम में मल्टीपल स्टेट्स में हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने कॉइन ऊपर उछाला, अब कॉइन जब उछाला, जब कॉइन गिर जाएगा इट विल ईदर बी हेड और टेल, बट व्हेन कॉइन इज इन द एयर इट कैन बी बोथ हेड और टेल्स। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी उसी तरीके से बिहेव करते हैं, ये एक समय में मल्टीपल स्टेट में हो सकते हैं एंड दे आर हाईली अनप्रेडिक्टेबल। तो इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को विच इज बिकॉज ऑफ द क्वांटम बिहेवियर, आप इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी को यूज कर सकते हो टू जनरेट रैंडम नंबर्स। और यही किया हमारे अभी ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने। इनफैक्ट दे वेंट अ स्टेप अहेड, बट उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की उन्होंने एग्जैक्टली कैसे जनरेट किया दैट इज नॉट रिलेवेंट फॉर द एग्जामिनेशन। अगर आप इतना भी समझ गए हैं दैट इज गुड टू गो। आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारी बातें जो मैंने बोली हैं दे आर हाईली टेक्निकल और विद इन 5 मिनट्स पूरी तरीके से बहुत स्लो पेस में बताना तो फिजिबल नहीं है इस टेस्ट डिस्कशन में, बट आई अज्यूम कि आपको जो ओवरऑल क्रक्स है यूपीएससी के लिए जितना चाहिए उतना समझ आ गया होगा। ठीक, तो रैंडम नंबर आपको पता होना चाहिए कि दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द डिजिटल सिक्योरिटी, और ट्रू रैंडम नंबर कभी भी एल्गोरिदम पे बेस्ड नहीं होंगे, वो होंगे अनप्रेडिक्टेबल फिजिकल एनवायरनमेंट के बेसिस पे। चलिए, तो ये हो गया आपका रैंडम नंबर का डिस्कशन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज रिलेटिवली इजी। अगर आपने सुना भी नहीं है तो भी गेस करना इसको फिजिबल है। बायो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज आर कॉमनली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? Vaccines, industrial enzymes, biofuel, biodegradable plastic, antibiotic, all of the above। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1 2 3 4 एंड 5। इस टाइप के क्वेश्चन आई एम अज्यूमिंग आपने टेस्ट ठीक ठाक दिए हैं तो आप समझते हैं कि ऑल ऑफ द अबव होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक, चलो देख लेते हैं क्या है बायो मैन्युफैक्चरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बायो मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज गवर्नमेंट ने एक बायो E3 पॉलिसी लाई है, ठीक, जिसका वन ऑफ द पिलर इज टू प्रमोट बायो मैन्युफैक्चरिंग। इनफैक्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग आप गूगल करोगे ना, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, यू विल फाइंड मेनी हेडलाइंस बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी फॉर बायो मैन्युफैक्चरिंग। अब होता क्या है बायो मैन्युफैक्चरिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल ये नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग, नॉर्मल जो इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर हो रहा है, दे आर लार्जली ड्रिवन बाय द केमिकल्स। ठीक, अब डिफरेंट टाइप के केमिकल्स यूज कर रहे हो एंड यू आर मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर योर यूजेज। बट बायो मैन्युफैक्चरिंग में क्या करते हो, यू आर यूजिंग द लिविंग सेल्स। अब ये लिविंग सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हो सकती है, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, राइट, या फिर प्लांट सेल, एनिमल सेल, कुछ भी हो सकती है। सो यू आर यूजिंग द लिविंग सेल्स, लिविंग सिस्टम टू मेक द प्रोडक्ट्स विच आर यूजफुल फॉर यू, दैट्स इट। अब आप अगर इतनी सी डेफिनेशन जानते हो तो आप इमेजिन कर पा रहे हो कि इन सब में यूज होना चाहिए। ठीक, बट एक एक करके यूज केस देख लेते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन ऑब्वियस ही बात है आपको कभी एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं मिलेगी कि कहां यूज होता है। ऑल यू हैव टू सी इज कि अच्छा ये वो मैन्युफैक्चरिंग है विच इज यूजिंग दी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट्स इट। अब देखते जाओ वैक्सीन में यूज होता है क्या? बिल्कुल, वैक्सीन का काम क्या है? टू ट्रेन द ह्यूमन बॉडी टू जनरेट इम्यूनिटी टुवर्ड्स एनी फ्यूचर पैथोजन। कोई फ्यूचर आपको डिसीज कॉजिंग पैथोजन आए तो उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी जनरेट करना। अब वैक्सीन में करते क्या हो आप? जिस पैथोजन के अगेंस्ट आपको इम्यूनिटी क्रिएट करनी है उसी पैथोजन को आप वैक्सीन में इंट्रोड्यूस कराते हो वीक फॉर्म में, या फिर उस पैथोजन का कोई पार्ट ले लेते हो, उसका जेनेटिक मटेरियल लेते हो, बट यू आर इंट्रोड्यूसिंग पैथोजन इन सम फॉर्म। ठीक, अब ये जो पैथोजन है, जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, उसको डेवलप भी तो करोगे ना। उसको डेवलप केमिकल फैक्ट्री में थोड़ी कर सकते हो, यू हैव टू डेवलप इट यूजिंग द लिविंग सेल्स। आपको वो सेल कल्चर करने पड़ते हैं। सो दिस इज पार्ट ऑफ बायो मैन्युफैक्चरिंग। इंडस्ट्रियल एंजाइम, एंजाइम क्या होते हैं? सो एंजाइम्स आर बेसिकली दी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, मतलब ये बायो मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं विच आर लाइक कैटलिस्ट विच कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रिएक्शंस। अब इंडस्ट्रियल एंजाइम का क्या मतलब है? बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं जो कि एंजाइम्स यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो नॉर्मल डिटर्जेंट पाउडर है, डू यू नो कि उसमें भी एंजाइम्स हैं?
वो एंजाइम क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली फैट और प्रोटीन के जो स्टेन्स होंगे, जो आपके कपड़ों में दाग होंगे, ठीक, उनको वो बेसिकली वीकन करने के, रिमूव करने के काम आएंगे, ठीक। और वो एंजाइम्स जो हैं दे आर बायोमोलिक्यूल्स एंड दे आर फॉर्म्ड बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगेन वो बायोमोलिक्यूल्स केमिकल फैक्ट्री में नहीं बन रहे हैं। सो इंडस्ट्रियल एंजाइम्स ऑल्सो इन्वॉल्व बायो मैन्युफैक्चरिंग। बायोफ्यूल, मान लो आप जो इथेनॉल देखते हो उसमें भी तो है। इथेनॉल बनता कैसे है, आप कोई भी शुगरी मटेरियल लेते हो, स्टार्च लेते हो, ग्रेन लेते हो, राइट, शुगर केन जूस लेते हो, उसमें ईस्ट इंट्रोड्यूस करते हो एंड दैट ईस्ट विल फर्मेंट दिस शुगर। तो उस शुगर का फर्मेंटेशन करेगा ये ईस्ट जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उस शुगर को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में, विच इज फ्यूल फॉर यू, ठीक। तो बायोफ्यूल भी तो आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनाया, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां से लाओगे आप? सो अगेन इट इज बायो मैन्युफैक्चरिंग। व्हाट अबाउट बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक? नॉर्मल प्लास्टिक जो आप यूज करते हो वो किससे बन रही है? वो बन रही है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, ठीक। अब बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो है, इसका मतलब विच कैन बी डिग्रेडेड थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये प्लास्टिक कैसे बनाते हो आप? सो देयर आर मेनी वेज। सम ऑफ द वेज आर दिस कि आप कुछ टाइप के बैक्टीरिया है उनको कुछ प्लांट प्रोडक्ट कंज्यूम कराते हो एंड देन दे जनरेट अ टाइप ऑफ पॉलीमर, और वो पॉलीमर प्लास्टिक के जैसी प्रॉपर्टी रखता है एंड यू कॉल इट बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। दिस इज वन ऑफ द वेज। तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक में भी बिकॉज यू आर यूजिंग दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगेन इट विल बिकम पार्ट ऑफ बायो मैन्युफैक्चरिंग। एंटीबायोटिक्स, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं। फॉर एग्जांपल आपने सबसे फेमस एंटीबायोटिक जो सुनी है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फंगस। By the way, penicillin is important because of another reason also. Government of India ने after a gap of 30 years दोबारा penicillin का manufacturing start किए, ठीक। So a simple thing कि वो किससे derived है, फंगस, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक। तो ये सारी केसेस हो गए बायो मैन्युफैक्चरिंग के। इस सवाल में कुछ भी नहीं था if you know the definition. Next question में आ जाओ। A very interesting thing that you may have seen in your phones. तो आप सबके फोन में देयर इज अ ब्लू लाइट फिल्टर। जब आप उसे ऑन करते हो तो आपका स्क्रीन जो है रेडिश हो जाती है। सो इट इज आस्किंग दैट इट इज इंटेंडेड टू रिड्यूस द डिसरप्शन ऑफ बॉडी सर्कैडियन रिदम बाय। तो ये करता क्या है एग्जैक्टली? आंसर एक्चुअली इसका ऑप्शन ए ही है, प्रिवेंटिंग द सप्रेशन ऑफ मेलाटोनिन सिक्रेशन। दिखते क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके फोन में ये जो मोड है वो मल्टीपल नाम से हो सकता है। मे बी इट इज नाइट मोड, मे बी इट इज कंफर्ट मोड, एनीथिंग लाइक दैट। जिस भी मोड को आप स्टार्ट कर रहे हो स्क्रीन आपकी रेडिश हो जा रही है, दैट इज योर ब्लू लाइट फिल्टर। अब ये कर क्या रहा है? देखो, ऑल ऑफ यू नो दैट आवर स्मार्टफोन्स आर डिसरप्टिंग आवर स्लीप साइकिल, राइट। अब ये जो स्लीप साइकिल डिसरप्ट हो रहा है ये सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा है दैट लेट्स से यू आर वाचिंग समथिंग विच इज वेरी एक्साइटिंग, तो आपकी नींद खुल जाती है, या यू आर वाचिंग समथिंग विच इज वेरी स्ट्रेसफुल, तो आपको टेंशन हो जाता है और आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। बट जस्ट बिकॉज ऑफ द मोबाइल लाइट योर स्लीप इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड, ठीक। उसी डिस्ट्रप्शन को रोकने के लिए ये ब्लू लाइट फिल्टर बनाया जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली यू विल नॉट लीव योर फोन। सो दी कंपनीज आर हेल्पिंग यू टू हैव ब्लू लाइट फिल्टर इन योर फोन, कि कम से कम फोन इसके साथ यूज करो। हाउ डज इट वर्क? सबसे पहले समझते हैं कि बॉडी की सर्कैडियन रिदम होती क्या है। सो सर्कैडियन रिदम एक तरीके से बॉडी की इंटरनल क्लॉक है, एक 24 आवर क्लॉक है बॉडी के अंदर। व्हाट डज इट मीन? सो बेसिकली बेस्ड ऑन द डार्कनेस और द लाइट ऑफ द डे आपकी बॉडी बहुत तरीके के प्रोसेसेस स्टार्ट करती है और स्टॉप करती है, कि अगर डे टाइम है सर्टेन प्रोसेसेस शुड स्टार्ट, नाइट टाइम है सर्टेन प्रोसेसेस शुड स्टॉप, ठीक। तो बॉडी खुद इंटरनली रेगुलेट कर रही है बेस्ड ऑन दी टाइम ऑफ द डे। इसे कहते हैं हम सर्कैडियन रिदम। अब ये जो सर्कैडियन रिदम है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका स्लीप साइकिल। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी हैज बीन इवॉल्व्ड in a manner where if it is darkness you should feel sleepy, when it is daytime you should feel awake. अब ये सर्कैडियन रिदम जो है ये रेगुलेट कैसी होती है बॉडी में? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है आपकी बॉडी में, मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट होता है ब्रेन के एक पार्ट से। ब्रेन में एक ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड। ग्लैंड क्या होते हैं? ग्लैंड्स आर सिंपली दोज ऑर्गन्स व्हिच सीक्रेट सर्टेन सब्सटेंस। तो एक पीनियल ग्लैंड है आपके ब्रेन में, वो एक सब्सटेंस सीक्रेट कर रहा है जो कि है मेलाटोनिन हार्मोन।
रिमेंबर ये मेलानिन नहीं है, मेलानिन इज कलर्ड पिगमेंट, मेलाटोनिन इज अ हार्मोन। हार्मोन क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं बॉडी में। आपकी बॉडी को जब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कोई भी सिग्नल भेजना होता है, उसके पास दो ही मैकेनिज्म है, वन इज नर्वस सिस्टम एंड अदर इज द सिस्टम ऑफ हार्मोन। नर्वस सिस्टम जो सिग्नल भेजता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, दैट इज थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, बट हार्मोन इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं है, ये है केमिकल्स जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाएंगे एंड दे विल कैरी सर्टेन मैसेज। तो ये जो मेलाटोनिन है ये क्या मैसेज कैरी करता है? तो होता ये है, व्हेनेवर देयर इज डार्कनेस, आपकी बॉडी का ये पीनियल ग्लैंड विल स्टार्ट इंक्रीजिंग द सीक्रेशन ऑफ मेलाटोनिन, मेलाटोनिन सीक्रेशन बढ़ जाएगा एंड योर बॉडी विल गेट अ सिग्नल कि अब बॉडी को स्लो डाउन होना है, सो दैट बॉडी कैन फील स्लीपी। डे टाइम आएगा, डे टाइम में बॉडी क्या करेगी? मेलाटोनिन को डिक्रीज कर देगी, सो दैट योर बॉडी गेट्स अ सिग्नल कि अब बॉडी को अलर्ट करना है। ठीक, ये नॉर्मल सर्कैडियन रिदम चलती रहती है विद द हेल्प ऑफ मेलाटोनिन। अब आपके फोन ने इस साइकिल को डिस्टर्ब कर दिया है, व्हाई? बिकॉज योर फोन हैज लॉट ऑफ ब्लू लाइट। अब ये ब्लू लाइट कहां से आ गई पिक्चर में? देखो बॉडी को पता कैसे चलता है, इट इज डे टाइम, बिकॉज डे टाइम में सन से जो रेडिएशन आ रही है उसमें ब्लू लाइट बहुत ज्यादा है, और नाइट टाइम में ये ब्लू लाइट का रेडिएशन डिक्रीज हो गया है। ये ब्लू लाइट इज द मेन रीजन योर बॉडी नोज दैट इट इज डे टाइम एंड इट इज नाइट टाइम। अब नॉर्मली सन से ही ब्लू लाइट आती थी, बट आपके फोन ने इट हैज जनरेटेड मैसिव अमाउंट ऑफ ब्लू लाइट, मच मोर देन द सन। ठीक, अब होता यह है नाइट टाइम है, नॉर्मली तो सनलाइट में सनलाइट है नहीं, सो देयर इज नो ब्लू लाइट, बट आपका फोन अभी भी ब्लू लाइट दे रहा है, दैट मीन्स बॉडी विल फील दैट इट इज स्टिल डे टाइम, और बॉडी क्या करेगी? मेलाटोनिन को सप्रेस करके रखेगी, बिकॉज बॉडी इज फीलिंग दैट इट इज डे टाइम। तो इस वजह से आप स्लीपी फील नहीं करते हो, आप अलर्ट रहते हो। तो इसी को टैकल करने के लिए हमने क्या किया? एक ब्लू लाइट फिल्टर फोन में डाल दिया, जिसकी वजह से अगर आप उस फिल्टर को ऑन करो, जो ब्लू लाइट आ रही है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाए, योर फोन बिकम्स रेडिश, जिसका मतलब बॉडी विल नॉट फील दैट इट इज डे टाइम, जिसका मतलब बॉडी विल नॉट डिसरप्ट, बॉडी विल नॉट सप्रेस द मेलाटोनिन, और बॉडी नेचुरली मेलाटोनिन रिलीज करेगी सो दैट यू फील स्लीपी। सो दिस इज द ऑल एवरी कॉन्सेप्ट विच इज रिलेटेड टू दिस थिंग। है तो ये एक रैंडम टॉपिक, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कोर थीम है, बट इफ यू ऑब्जर्व हर 2-4 साल में कुछ यूपीएससी कॉमन सेंसिकल ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछती है साइंस के। ठीक, अब ये ब्लू लाइट फिल्टर जो है बहुत कॉमन टर्म बनता जा रहा है अक्रॉस गैजेट्स, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए आपको। एंड अराउंड 2 to 3 years बैक का जो नोबेल प्राइज था वो सर्कैडियन रिदम पे ही था। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज विथ रिस्पेक्ट टू प्रीबायोटिक, अगेन अ बज़वर्ड। प्रीबायोटिक्स आर नॉन डाइजेस्टेबल फूड कंपोनेंट, ठीक है बात। प्रीबायोटिक्स कीप द बॉडी हेल्दी बाय किलिंग हार्मफुल गट बैक्टीरिया, ये गलत है। दे कीप द बॉडी हेल्दी बट नॉट बाय दिस मैकेनिज्म। द थर्ड स्टेटमेंट सेज Bacillus subtilis is the Bacillus subtilis is a commonly used prebiotic. ये गलत है, इट्स अ प्रोबायोटिक, ये प्री नहीं प्रो है, तो ये भी गलत हो गया। द सेकेंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट, इसका मतलब आपका आंसर हो गया A1 ओनली। चलो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये न्यूज में क्यों है ये समझ लो। आपका जो थर्ड स्टेटमेंट था दैट इज एक्चुअली अ स्टेट बैक्टीरिया डिक्लेयर्ड बाय केरला। केरला ने अभी उसे स्टेट बैक्टीरिया डिक्लेयर किया है। यू कैन एक्सपेक्ट दिस थिंग ओनली फ्रॉम अ स्टेट लाइक केरला, जहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में जो कॉन्शियसनेस है दैट इज वे हायर देन दी अदर स्टेट्स। अब प्रोबायोटिक पे यूपीएससी ने ऑलरेडी सवाल पूछ रखा है, ठीक 2024 में था आई थिंक, लास्ट के 3 years में ही है प्रोबायोटिक पे एक सवाल आया हुआ है। प्रोबायोटिक का काउंटर पार्ट है प्रीबायोटिक। इनफैक्ट बोथ दीज वर्ड्स हैव बिकम बज़वर्ड्स। आप कितने सारे प्रोडक्ट्स देखते होंगे जिसमें लिखा होता होगा कि इन्फ्यूज विद द प्रोबायोटिक्स, ठीक, तो ये बहुत कॉमन वर्ड है, दैट इज व्हाई यू शुड नो। अब प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक होते क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट देयर आर सर्टेन बैक्टीरियाज इन योर स्टमक which are harmful for you, but there are certain bacteria in your stomach which are good bacteria, they help your body. ये good क्यों है, किस तरीके से हेल्प करते हैं? in multiple ways। हो सकता है वो आपके डाइजेशन को हेल्प कर रहे हो, और some of them are also responsible for vitamin production। आपका विटामिन K एक होता है, उसका K2 टाइप है, that vitamin K2 is actually formed by the bacteria in your gut। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इम्यून सिस्टम का काम करते हैं, why? because they are killing the bad bacteria। तो there are certain good bacteria which can be helpful because of multiple reasons।
अब ये जो गुड बैक्टीरिया है उन्हीं को कहते हैं प्रोबायोटिक। सो प्रोबायोटिक दे आर लाइव ऑर्गेनिज्म। प्रो जो है लाइव ऑर्गेनिज्म है, प्री जो है वो ऑर्गेनिज्म है ही नहीं। प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरिया, प्रीबायोटिक क्या है? प्रीबायोटिक सिंपली फूड कंपोनेंट्स है, ऐसे फूड कंपोनेंट्स विच योर ह्यूमन बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट। मतलब जैसे कि मान लो कॉम्प्लेक्स टाइप के कार्बोहाइड्रेट जो फाइबर्स होते हैं, आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती उसको, बट वो आपकी बॉडी में बैठा गुड बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर लेता है एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इट्स ग्रोथ। तो प्रीबायोटिक आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है, यू नीड देम। व्हाई डू यू नीड देम? कैन यू डाइजेस्ट इट? नो, यू कैन नॉट डाइजेस्ट इट, वो इनडाइजेस्टेबल पार्ट ऑफ द फूड है। फिर क्यों चाहिए? बिकॉज इट विल हेल्प द ग्रोथ ऑफ द गुड बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया को वो चाहिए। तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है अगर आप देखो कि प्रीबायोटिक्स कीप द बॉडी हेल्दी बाय किलिंग द हार्मफुल बैक्टीरिया, नहीं, वो तो फूड कंपोनेंट है, वो कुछ नहीं कर सकते बैक्टीरिया को किल। वो करेंगे गुड बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे और गुड बैक्टीरिया किल करेगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। फर्स्ट हमने बात कर ली, सही है। बाकी ये जो थर्ड बैक्टीरिया है हमने देखा बैसिलस सेटिलस, ये दिस इज डिक्लेयर्ड स्टेट बैक्टीरिया बाय द केरला, ये भी एक तरीके का गुड बैक्टीरिया है, ठीक, जो कि बहुत तरीके से हेल्प करता है बॉडी को, डाइजेस्टिव इश्यूज से रिलेटेड चीजों में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल एसिडिटी, फ्लॉटुलेंस, दीज काइंड ऑफ थिंग्स इट हेल्प्स, ठीक। और ये काफी फेमस बैक्टीरिया है। बाय द वे एक और प्रोबायोटिक है जो आप सबको पता है, लैक्टोबैसिलस, जो कि आपकी कर्ड में प्रेजेंट होता है, ठीक, वो भी डाइजेस्टिव इश्यूज में हेल्प करता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आपके प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक से रिलेटेड है। याद रखना भी बहुत मुश्किल नहीं है, प्री जहां लग गया मतलब उसका प्रीवियस फॉर्म है, उसका प्रीकर्सर है, ठीक। तो ये बैक्टीरिया जो है उनको हेल्प करेगा, उनकी ग्रोथ में हेल्प करेगा, ठीक। तो इस तरीके से थोड़ा आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फैक्चुअल है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिकली कुछ एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं और कंट्री से उसको मैच करना है। आयरन बीम इजराइल का है, बिल्कुल ठीक। एरो 3 चाइना का, नहीं, ये गलत है। एरो 3 भी एक्चुअली इजराइल और यूएसए का मैन्युफैक्चर्ड है। थार जो है यूनाइटेड स्टेट्स का है। इनफैक्ट थार के बारे में वन लाइनर स्टेटमेंट यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड कि थार कॉमनली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। फोर्थ जो S-400 ट्रायम्फ्स है ये रशिया का है। ये सब आप लोगों ने सुना कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पे वी यूज्ड इट, राइट। अब देखो एयर डिफेंस सिस्टम वर इन न्यूज बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन। एक तो ऑपरेशन सिंदूर ही, जिसके बाद S-400 पे मल्टीपल आर्टिकल्स थे, ठीक। एंड सेकेंडली इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू डेवलप इट्स मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम। अब डिफेंस एक ऐसी थीम है जहां पे यूपीएससी बहुत कॉन्सेप्चुअल पूछती नहीं है, बहुत रेयरली कॉन्सेप्चुअल आया है। डिफेंस में यूपीएससी दो ही टाइप की चीजें एक्सपेक्ट करती है। फर्स्टली अगर कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट है यू शुड नो इट्स कैटेगरी। सेकेंडली अगर वो किसी और कंट्री का है तो आपको पता होना चाहिए किस कंट्री का है, ठीक। इंडिया से रिलेटेड रेयरली व्हाट हैज हैपेंड इज कि अगर कोई बहुत फ्लैगशिप इक्विपमेंट है, ठीक, तो उसके थोड़े फीचर्स पूछे गए। अब यहां पे जो है हमें बहुत कुछ डिटेल में नहीं देखना है, बेसिक बातें हम कर लेते हैं। ये जो थीम है ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट रेप्लिकेट होगा। आपको यहां से जो जानना है वो ये जानना है कि जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम न्यूज में है आपको उनकी कंट्री और बेसिक पता होना चाहिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एयर डिफेंस सिस्टम होते क्या है? सो एयर डिफेंस सिस्टम इज बेसिकली एन इंटीग्रेटेड सिस्टम विच इज मेंट टू ट्रैक एंड इंटरसेप्ट एन एरियल थ्रेट। तो वो उसे डिटेक्ट करेगा, कोई भी एरियल थ्रेट है उसको डिटेक्ट करेगा, ट्रैक करेगा और इंटरसेप्ट करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा, दैट एरियल थ्रेट। अब वो एरियल थ्रेट है वो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी सिंपली अ ड्रोन, एन एयरक्राफ्ट, रॉकेट और फॉर दैट मैटर मिसाइल, ठीक। तो ये होते हैं एयर डिफेंस सिस्टम। अब इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक आपका रडार होगा विच विल डिटेक्ट द एनिमी वेपन। फिर उसके बाद एक ट्रैकिंग और कमांडिंग सिस्टम होगा जो उसको पूरा उसकी ट्रैजेक्टरी को, एनिमी वेपन की ट्रैजेक्टरी को डिटेक्ट करेगा, देखेगा कि थ्रेट है कि नहीं है। फिर एक इंटरसेप्टर होगा। इंटरसेप्टर वो मिसाइल हो सकती है जो उसको जाके डिस्ट्रॉय करेगी। तो ये तीनों चीज मिला के आपका बनता है एयर डिफेंस सिस्टम। अब ये सारे एयर डिफेंस सिस्टम आपके न्यूज में थे। आयरन बीम इजराइल का है। इजराइल के एक्चुअली मल्टीपल डिफेंस सिस्टम न्यूज में रहे हैं। आयरन बीम
आयरन डोम, फिर आपका एरो 2, एरो 3, ठीक, ये सारे डिफेंस सिस्टम इजराइल के ही हैं। दे आर मेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एरियल थ्रेट्स, इनकी रेंज डिफरेंट है और ये जिस एरियल थ्रेट को टारगेट कर रहे हैं वो डिफरेंट है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ये जो एरो 3 आप यहां पे देख रहे हो, ये इनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ठीक, और ये यूएसए और इजराइल के कोऑपरेशन से बना है, इसका में चाइना का नहीं है। ये थार जो है और पेट्रियट, ये दोनों आपके यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, जो कि बहुत न्यूज में रहते हैं, ठीक। S-400 ट्रायम्फ रशिया का है, विच वी हैव बॉट फ्रॉम रशिया। तो इंडिया जो अपना लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम अभी जो यूज करता है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो यूज करता है, दैट इज S-400, ठीक। बाकी इंडिया के पास कुछ और भी डिफेंस सिस्टम है, जैसे फॉर एग्जांपल आकाश जो है, दैट इज कंप्लीटली इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम, वो शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज है। फिर हमारा जो बराक 8 है, इजराइल और इंडिया के कोलैबोरेशन से बना हुआ, दैट इज ऑल्सो आर एयर डिफेंस सिस्टम। और लॉन्ग रेंज के लिए जो हम अभी यूज कर रहे हैं, दैट इज S-400, ठीक। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जो आपको जानना है, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है, मतलब सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, मलेरिया पे। इजी ही सवाल है, एक्सेप्ट फॉर द ईयर, हो सकता है कि आपको ईयर नहीं पता हो, बाकी तो इजी है। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ पैरासाइट्स, ठीक है। नो मलेरिया वैक्सीन हैज बीन अप्रूव्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, गलत बात। देयर आर 2 वैक्सीन्स व्हिच हैव ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड। इनफैक्ट एक तो वैक्सीन हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ही बना रहा है, पुणे वाला। द थर्ड स्टेटमेंट सेज दैट इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू एलिमिनेट मलेरिया बाय ईयर 2030, ये ठीक है। तो 1 और 3 हो जाएगा आपका आंसर, जिसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा बी। चलो कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूज में क्यों है? बिकॉज देयर हैव बीन मल्टीपल आर्टिकल्स क्लेमिंग दैट इंडिया मे नॉट बी एबल टू एलिमिनेट मलेरिया बाय 2030, ठीक है। हालांकि 2030 में अभी बहुत टाइम है, बट देयर आर मेनी चैलेंजेस विच आर बीइंग डिस्कस कि इंडिया नहीं कर पाएगा, ठीक। तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंडली, मलेरिया के लिए हम एक इंडिजिनस वैक्सीन भी डेवलप कर रहे हैं, जो आपको यहां पे दिख रही है, ठीक। तो उसकी वजह से भी मलेरिया न्यूज में है। तो बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉजेटिव एजेंट क्या है इसका? मलेरिया कॉज कौन करता है? मॉस्किटो नहीं, ठीक है। मॉस्किटो तो सिर्फ ट्रांसमिट करते हैं। कॉज कौन करता है? एक तरीके का प्रोटोजोआ। कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम, ठीक। तो प्लाज्मोडियम इज टाइप ऑफ अ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक तरीके का यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टीपल टाइप के प्रोटोजोआ होते हैं, और जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया को कॉज करता है। अब ट्रांसमिशन कैसे होता है? आप सबको पता है दैट फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से, ठीक। सेकेंडली, मलेरिया की वैक्सीन न्यूज में थी लास्ट ईयर, ये वाली वैक्सीन R21 मैट्रिक्स। मलेरिया से रिलेटेड 2 वैक्सीन डेवलप्ड है। इसका तो नाम भी ऐसा वियर्ड है कि यूपीएससी नहीं पूछने वाली, RTS-S/AS01। ये पुरानी हो गई, 2021 में आई थी, बट 2024 में ये वैक्सीन आई थी R21 मैट्रिक्स। ये सीरम इंस्टीट्यूट डेवलप कर रहा है, दैट इज वाई यू शुड नो, ये न्यूज में रहती है। फिर ये वैक्सीन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ICMR इज डेवलपिंग इट, रिसर्च पार्ट। एड फेल्सीवैक्स बेसिकली एक तरीके का प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम मल्टीपल तरीके के हैं जो मलेरिया कॉज करते हैं, उसकी मल्टीपल स्पीशीज है। एक तरीके का प्लाज्मोडियम जो है, दैट इज प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम। ये सबसे डेडलीस्ट प्लाज्मोडियम माना जाता है मलेरिया के। तो मलेरिया के जितने भी फैटल केसेस होते हैं, उसमें ये प्लाज्मोडियम इन्वॉल्व होता है। उसी के नाम के बेसिस पे ये वैक्सीन का नाम पड़ा है। ऑब्वियस सी बात है कि आपको एग्जैक्ट नाम याद ना भी हो, इवन इफ यू रिमेंबर इट वेगली, यू विल बी एबल टू रिकॉल इट इन द एग्जामिनेशन। इसकी खासियत क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज इंडिजिनस। सेकेंडली, इट इज टारगेटिंग 2 थिंग्स। फर्स्टली, जिस भी पर्सन को आप वैक्सीन दोगे, obviously that person will get the immunity from the malaria, but at the same time it will also help in reducing the transmission of malaria between 2 person। वो कैसे? तो बेसिकली होगा ये कि जो भी लेट्स से किसी भी पर्सन ने ये वैक्सीन ली, अब मलेरिया के अगेंस्ट उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज आ जाएंगी। नाउ दिस हैज बीन डिजाइन्ड इन अ मैनर व्हेन द मॉस्किटो विल बाइट दिस पर्सन, these antibodies will be transferred into the body of mosquito, और मॉस्किटो वो जो प्लाज्मोडियम कैरी कर रहा होगा वो नलिफाई हो जाएगा बिकॉज ऑफ दीज एंटीबॉडीज। तो वो मॉस्किटो इस पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, ठीक। सो ये 2 चीजें टारगेट कर रहा है। फर्स्टली, उसको भी प्रिवेंट कर रहा है और ट्रांसमिशन को भी रोक रहा है, ठीक है। लास्ट बात,
हमारा एक नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेटिंग मलेरिया चल रहा है, जिसका टारगेट ये है कि बाय 2030 हम मलेरिया को एलिमिनेट कर लेंगे। इसमें दो टारगेट है बेसिकली, एक 2027 का टारगेट है टू अटेन जीरो इंडिजिनस केस, मतलब कोई ऐसा केस नहीं होगा जो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है बाय 2027, बट कंप्लीट एलिमिनेशन हम कब तक कर देंगे, 2030 तक। तो ये दोनों टारगेट आपको पता होने चाहिए। यूपीएससी हैज टॉक्ड अबाउट टारगेट्स ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट डिसीजेस अर्लियर ऑल्सो। ठीक, बाय द वे WHO का भी जो ग्लोबल एलिमिनेशन ऑफ मलेरिया का टारगेट है वो 2030 ही है। और मलेरिया के मैक्सिमम केसेस कहां हैं, क्या इंडिया में है, नहीं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, तो अफ्रीका की कुछ कंट्रीज है, ओवरऑल WHO कहता है कि अफ्रीका में है रादर देन सेइंग अ स्पेसिफिक कंट्री। बट याद रखिए कि जब भी मैक्सिमम केसेस की बात होती है तो ऐसा नहीं कि सीधा हमें इंडिया पे टिक करना है। ठीक, चलो ये हो गई आपकी मलेरिया से रिलेटेड बातें। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज विथ रिस्पेक्ट टू योर जीपीएस स्पूफिंग एंड जीपीएस जैमिंग। तो क्वेश्चन कहता है कि भाई विथ रेफरेंस टू इंटरफेरेंस विद ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। GNSS स्पूफिंग डिसरप्ट द सैटेलाइट सिग्नल प्रिवेंटिंग रिसीवर्स फ्रॉम एक्वायरिंग और मेंटेनिंग एक्यूरेट पोजिशनिंग। ये गलत है, ये एक्चुअली जैमिंग को डिफाइन कर रहा है। एंड द GNSS जैमिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसमिटिंग फॉल्स सिग्नल दैट कॉजेज रिसीवर टू कैलकुलेट इनकरेक्ट पोजीशन। ये भी गलत है, ये एक्चुअली स्पूफिंग है। तो दोनों का डिस्क्रिप्शन को स्वैप कर दिया गया है। होता क्या है बाय द वे ये, और क्यों ये सवाल आया है, बिकॉज दिल्ली एयरपोर्ट में there were news that multiple flights were delayed because of GPS spoofing. ठीक, और it was highlighted to a significant extent. हालांकि गवर्नमेंट ने ये कहा जीपीएस स्पूफिंग तो हुई है, बट जो फ्लाइट डिले हुआ है, फ्लाइट का कोई भी ऑपरेशन इसकी वजह से डिसरप्ट नहीं हुआ था, बट इट वाज ऑल ओवर द न्यूज। सो यू शुड नो, ये और भी डिफरेंट छोटे छोटे न्यूज की वजह से ये रहता है डिस्कशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम मतलब फॉर एग्जांपल नाविक आपका रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। ठीक, लेकिन ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो सबसे पॉपुलर आप यूज कर रहे हो दैट इज जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और भी है, ग्लोनास है, ठीक, वो आपका रशिया का है, फिर उसके बाद गैलीलियो है जो कि यूरोपियन यूनियन का है, राइट। बट जो आप यूज कर रहे हो ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम दैट इज जीपीएस। अब ये वर्क कैसे करता है, तो बेसिकली देयर आर अ ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स इन द स्पेस, दे आर सेंडिंग सिग्नल टू ऑल ओवर द प्लेसेस। ग्लोबल है तो सारी अर्थ में भेज रहे हैं। नाउ योर रिसीवर विल रिसीव दिस सिग्नल्स। अब इस सिग्नल में क्या आ रहा है, इस सिग्नल में आ रहे हैं उस सैटेलाइट के कोऑर्डिनेट। इन कोऑर्डिनेट को यूज करके आपका जो रिसीवर है, मतलब आपके फोन में लगी चिप, इट कैन डिटेक्ट इट्स ओन कोऑर्डिनेट। तो वो सैटेलाइट से सिग्नल आएंगे, उस सिग्नल में सैटेलाइट के कोऑर्डिनेट है। थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री अगर हम लगाएंगे, थोड़ी मैथ्स लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके हेल्प से रिसीवर के कोऑर्डिनेट्स भी पता चल जाते हैं। ठीक है बात। अब रिसीवर अपने कोऑर्डिनेट्स पता कब कर पा रहा है, जब इसको सिग्नल आ रहा है एक्चुअल सैटेलाइट से। अब देखो यहीं पे दो तरीके की इंटरफेरेंस की जा सकती है, स्पूफिंग और जैमिंग। बेसिकली होता यह है, जो ये जीपीएस से सिग्नल आ रहा है, इट इज अ वेरी वीक सिग्नल एंड देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ इंटरफेयरिंग विद दिस सिग्नल। दो टाइप के इंटरफेरेंस पॉसिबल है, फर्स्ट स्पूफिंग, सेकंड जैमिंग। स्पूफिंग, अगर जैमिंग को समझना है तो एक इमेजिन करो कि आप बहुत स्लोली यू आर ट्राइंग टू विस्पर इनटू द ईयर्स ऑफ योर फ्रेंड। ठीक, वो थोड़ी डिस्टेंस, आपका फ्रेंड आपके पास खड़ा हुआ है एंड यू आर ट्राइंग टू विस्पर इनटू द ईयर्स ऑफ योर फ्रेंड। अब वहीं से कोई एक दूसरा इंसान आए एंड दैट पर्सन ब्लोज अ वेरी लाउड सायरन। अब क्या होगा, वहां से इतना ज्यादा दूसरा सिग्नल आ गया है दैट योर फ्रेंड विल बी ओवरवेल्म्ड एंड योर फ्रेंड विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। उसको कुछ रिसीव ही नहीं हो पाएगा, राइट। दिस इज द केस ऑफ जैमिंग। तो जैमिंग में क्या करते हैं, जो भी हैकर्स हैं हु आर ट्राइंग टू इंटरफेयर, व्हाट दे विल डू इज एक अनवांटेड सिग्नल, बहुत लाउड सिग्नल सेंड करेंगे, एक वेव सेंड करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो, या तो रिसीवर पे वो एक्चुअल सिग्नल ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए या रिसीवर डिफरेंशिएट ही ना कर पाए कि एक्चुअल सिग्नल था क्या। ठीक, ये है जैमिंग। तो इसमें क्या होता है कि रिसीवर कोई सिग्नल ही रिसीव नहीं कर पा रहा है, ठीक, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जा रहा है। बट स्पूफिंग क्या है, स्पूफिंग थोड़ा डिफरेंट है। इसमें जो इंटरफेयर पर्सन है,
आप अपने फ्रेंड का एग्जाम्पल लीजिए, यू आर ट्राइंग टू विस्पर। अब क्या हो रहा है, कोई दूसरा इंसान है, वो कुछ इनकरेक्ट मैसेज इन एग्जैक्ट योर वॉइस, आप जिस वॉइस में बोल रहे थे सेम वॉइस में कोई इंसान आपको इमिटेट करते हुए कुछ रॉन्ग मैसेज दे दे, दैट इज स्पूफिंग। तो स्पूफिंग में क्या होगा, जो रिसीवर के पास सिग्नल आ रहे थे, जीपीएस जिस फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल भेज रहा है, इन दी एग्जैक्ट सेम फ्रीक्वेंसी गलत कोऑर्डिनेट भेजे जाएंगे, इनकरेक्ट कोऑर्डिनेट भेजे जाएंगे। सो स्पूफिंग इज द केस वेयर द रिसीवर विल रिसीव द सिग्नल बट विद द इनकरेक्ट कोऑर्डिनेट। और जैमिंग में क्या होगा, रिसीवर विल नॉट बी एबल टू रिसीव एनी इंफॉर्मेशन। ठीक, तो ये डिफरेंस है जैमिंग और स्पूफिंग में। चलो, तो यहां पे उल्टा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज विथ रिस्पेक्ट टू नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है तो बन जाना चाहिए, नहीं तो गेस थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हो। सो इट सेज दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज primary advantage of next generation sequencing? A, it enables simultaneous sequencing of millions of DNA fragment in single run. ये ठीक है, A ही आंसर है, बाकी फिर ऑब्वियस ही बात है गलत है। अब आपको थोड़ा सा गेस करना पॉसिबल था, सीक्वेंसिंग अगर लिख रहा है तो आप सबने डीएनए सीक्वेंसिंग पढ़ी है, तो आंसर बहुत हाई चांसेस है कि ए और बी में से होना चाहिए। और ए कह रहा है कि साहब सिंगल डीएनए फ्रैगमेंट का सीक्वेंसिंग कर रहे हो, और ऊपर वाला कह रहा है मिलियंस ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट का एक साथ कर रहे हो। तो नेक्स्ट जनरेशन से थोड़ा गेस करना चाहिए था कि ए होना चाहिए, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू मे हैव बीन फूल्ड बाय दिस टर्म। ये जो एक्सट्रीम हाई एक्यूरेसी है, हो सकता है कि इसकी वजह से यू मे हैव बीन फूल्ड, बट एनीवेज इसका आंसर ए है। देख लेते हैं क्या है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग इज अ टाइप ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग। अब डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होता है ये देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज योर डीएनए मॉलिक्यूल, राइट? व्हाट इज डीएनए? सी, योर बॉडीज एवरी सेल नीड्स सर्टेन इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। उसको जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है, इट नीड्स सर्टेन इंस्ट्रक्शंस, एंड दोज इंस्ट्रक्शंस आर लाइंग इनसाइड दिस डीएनए। और ये डीएनए 99% आपके न्यूक्लियस में जाके बैठा है हर सेल के, और थोड़ा सा डीएनए आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाके बैठा हुआ है। सो दिस डीएनए इज लाइक एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर द सेल। इट विल टेल द सेल व्हाट फंक्शन इट हैज टू परफॉर्म एंड व्हेन। ठीक, अब ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरीके से आपका डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो आप ये लैडर पार्ट देख रहे हो ना, ये बना होता है नाइट्रोजनस बेसिस से। एक ऐसा कंपाउंड विच हैज नाइट्रोजनस केमिकल्स, इट इज अ नाइट्रोजनस बेस। ये बेसिकली डीएनए की लैंग्वेज है। तो डीएनए जो इंस्ट्रक्शंस कैरी कर रहा है सेल के लिए, वो किस लैंग्वेज में कैरी कर रहा है? नाइट्रोजनस बेसिस की लैंग्वेज में। अब नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, और ये पेयर में रहते हैं। मतलब ए पेयर में रहता है थायमिन के साथ, गुआनिन रहता है साइटोसिन के साथ। अब ये कुछ इस तरीके से दिखता है। आप मान लो इफ आई टेल यू कि यहां पे ए है, एडेनिन है, यहां पे लेट्स से जी है, यहां पे सी है, अगेन इट्स ए, अगेन टी एंड सो ऑन। अगर मैं आपको एक साइड का सीक्वेंस दे दूं तो आप अपोजिट साइड का सीक्वेंस ऑटोमेटिकली गेस कर सकते हो, बिकॉज ए पेयर्स विद टी। तो अगर यहां एडेनिन होगा तो यू कैन गेस कि यहां थायमिन होगा, अगर यहां गुआनिन होगा तो यू कैन गेस कि यहां पे साइटोसिन होगा। ठीक, तो इस तरीके से ये पेयर्स में रहते हैं। अब डीएनए सीक्वेंस का मतलब ये होता है सीक्वेंस पता करना इस नाइट्रोजनस बेस का, बिकॉज दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। जब आप कहते हो कि किसी का डीएनए सीक्वेंस पता कर रहे हो, व्हाट यू एक्चुअली कंफर्म इज द सीक्वेंस ऑफ दीज नाइट्रोजनस बेसिस। और नाइट्रोजनस बेसिस हमेशा एक स्ट्रैंड का बोला जाता है, बिकॉज अगर आपको एक स्ट्रैंड का नाइट्रोजनस बेस पता चल गया तो दूसरे साइड का भी पता चल गया, राइट? अब इसी को कंप्लीट सीक्वेंस को पता करने को हम कहते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग। अगर ये पता कर लिया तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो सकती है, पर्सन की आइडेंटिटी पता चल जाएगी। अगर ये पता कर लिया तो पर्सन की डिसीजेस को गेस कर सकते हो। ये पता कर लिया तो अगर आप कोई डॉक्टर कोई मेडिसिन दे रहा है, उसका इंपैक्ट क्या होगा ये असेस करने में भी थोड़ी हेल्प मिल सकती है। सो देयर आर मेनी एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग। अब देखो, होता यह था 2003 में जब हम पहली बार किसी ह्यूमन का डीएनए सीक्वेंस डिटेक्ट किए थे, इट टुक अस मल्टीपल ईयर्स
to determine the DNA sequence of one person. It was so slow. क्यों ऐसा क्यों होता था? बिकॉज हम उस समय जब सीक्वेंसिंग करते थे ना, तो द टेक्नोलॉजी वाज सच दैट उसको सैंगर सीक्वेंसिंग कहते थे. ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग. ये क्या करता था, एक छोटे से डीएनए फ्रेगमेंट का सीक्वेंसिंग करता था एक बार में, और ऐसे मल्टीपल डीएनए फ्रेगमेंट्स है, ये पूरा कंप्लीट जो लैडर है, तो छोटे छोटे डीएनए फ्रेगमेंट का एक बार में सीक्वेंस करता था. एंड इट यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कंस्ट्रक्ट द जीनोम, द डीएनए सीक्वेंस ऑफ वन पर्सन. ठीक, जीनोम क्या होता है? जीनोम इज द कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट इन अ पर्सन, चाहे वो उसका न्यूक्लियस में प्रेजेंट डीएनए हो या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हो, पूरे सीक्वेंस को पता करना, दैट कंप्लीट सीक्वेंस इज जीनोम. ठीक, तो आज की डेट में वी कैन नॉट वेट फॉर दैट मच टाइम, हमें क्विकली जीनोम सीक्वेंसिंग करनी होती है. तो वो कैसे हम करते हैं? विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग. ये मल्टीपल बार न्यूज में रहता है, आप एक बार गूगल करके देखना, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, बट बहुत से आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहां पे लिखा हुआ है. अब ये नेक्स्ट जनरेशन जीनोम सीक्वेंसिंग कैसे, डीएनए सीक्वेंसिंग कैसे ऑपरेट करती है? सो व्हाट इट डज इज, ये मल्टीपल डीएनए फ्रेगमेंट्स को, मतलब मिलियंस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट को एक बार में एनालाइज करेगा, एक बार में सबका डीएनए सीक्वेंस बताएगा. सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इजी टू डू द डीएनए सीक्वेंसिंग ऑफ वन पर्सन और मल्टीपल पर्सन. आप सबने सुना होगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसमें हम इंडियन पॉपुलेशन का के एक सर्टेन सेट ऑफ पीपल का जीनोम सीक्वेंस करने की कोशिश कर रहे हैं. अब आप सोचो, हम तो पूरा डेटाबेस प्रिपेयर कर रहे हैं ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग. सो विल दैट बी पॉसिबल अगर हम सैंगर सीक्वेंसिंग करेंगे वन बाय वन? सो आज जितनी भी मॉडर्न प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हो, वहां पे नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. इसको होल जीनोम सीक्वेंसिंग भी कहते हैं, यही होल जीनोम सीक्वेंसिंग है, जहां पे आप डीएनए के मल्टीपल फ्रैगमेंट्स का एक साथ सीक्वेंसिंग कर रहे हो, सो दैट द होल जीनोम कैन बी सीक्वेंस्ड वेरी फास्टली. ये हो गया आपका नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग. अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज विथ रिस्पेक्ट टू एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरेटिव एआई. सुनने में सिमिलर टर्म लगते हैं, बट दे आर वेरी डिफरेंट. तो पहला स्टेटमेंट कहता है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कैन ट्रांसफर नॉलेज एंड स्किल लर्न इन वन डोमेन टू अनदर. बिल्कुल ठीक बात है, यही कोर कैरेक्टरिस्टिक है एजीआई का. जनरेटिव एआई सिस्टम्स आर डिजाइन टू क्रिएट न्यू कंटेंट बेस्ड ऑन पैटर्न लर्न फ्रॉम डेटा. ये भी ठीक है. सेकेंड, द थर्ड स्टेटमेंट कहता है, द जनरेटिव एआई सिस्टम्स आर ऑलरेडी अवेलेबल वेयर एज एजीआई रिमेन्स हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट. बिल्कुल ठीक है. ऑप्शन डी इज द आंसर 1, 2 एंड 3. चलो एक एक करके समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, what is AI? AI is the machine's ability to mimic the human intelligence. That is your artificial intelligence, right? But ये जो ability to mimic human intelligence है ना, ये actually अभी जो आप AI कर रहे हो उसके पास नहीं है, वो आएगी artificial general intelligence के पास. आप जो अभी AI यूज कर रहे हो, be it ChatGPT, Gemini or whatever you are using, all that AI is narrow AI, narrow artificial intelligence. ये नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आप इस एआई को जिस भी डेटा पे ट्रेन करोगे फॉर अ पर्टिकुलर टास्क, ये वही टास्क परफॉर्म कर पाएगा. ये उस लर्निंग को दूसरा टास्क परफॉर्म करने के लिए विच इज कंप्लीटली अनरिलेटेड नहीं कर पाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आपका जो चैट जीपीटी है, इट हैज बीन ट्रेन टू गिव यू आंसर्स, कॉन्टेंट्स, इमेजेस फॉर सर्टेन थिंग्स, बट कैन इट फुल्ली प्ले चेस? क्या ये ऑटोनोमस कार ड्राइविंग कर सकता है? कैन इट डायग्नोज डिसीजेस फुल्ली? जिसके लिए ट्रेन कर दिया वो तो कर लेगा, बट जिस डेटा के लिए ट्रेन नहीं किया, इट विल नॉट बी एबल टू डू. तो अगर आपको नैरो एआई को यूज करना है, तो उसे उसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो जो डेटा के लिए आपने ट्रेन किया है. बट क्या ह्यूमंस ऐसे वर्क करते हैं कि भाई ह्यूमंस को आपने मैथ्स में, लेट्स से यू ट्रेन दैट पर्सन, तो क्या वो उसी नॉलेज को रॉकेट बिल्ड करने के लिए यूज नहीं करेगा? वो उसी नॉलेज को कुछ और फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज नहीं करेगा? ऐसा तो नहीं है कि उसको एग्जैक्टली उसी डेटा पे ट्रेन करते हो. सो ह्यूमन माइंड हैज द एबिलिटी टू यूटिलाइज द नॉलेज ऑफ वन फील्ड टू नो समथिंग अबाउट अदर फील्ड विच इज कंप्लीटली अनरिलेटेड. यह है ह्यूमन इंटेलिजेंस. बट आज की डेट में जो एआई है, दैट इज नैरो, दैट इज टास्क स्पेसिफिक. अगर आप
ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस चाहते हो, देन यू हैव टू रीच द स्टेज ऑफ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस. A type of artificial intelligence which is not specific to a particular task, वो जनरल है. मतलब उसको अगर एक डेटा से ट्रेन करोगे एक फील्ड के लिए, इट विल बी एबल टू यूटिलाइज दैट नॉलेज फॉर समथिंग विच इज कंप्लीटली अनरिलेटेड, जस्ट लाइक ह्यूमंस. ठीक, तो वो AGI है. क्या आज AGI अचीव हो पाया है? नहीं, इट्स कंप्लीटली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट. देयर आर मेनी कंपनीज हु आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, बट आज कोई भी AI ऐसा नहीं है जो ये काम कर पाए. आपको ऐसा लगता होगा ChatGPT इज वेरी पावरफुल, बट स्टिल इट कैन ओनली परफॉर्म दैट टास्क फॉर विच इट हैज बीन ट्रेन्ड. आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस क्या है? देखो, AGI इज दैट स्टेज वेयर AI इज एक्चुअली मिमिकिंग द ह्यूमन्स एबिलिटी. Artificial super intelligence, again a hypothetical concept, is that stage where the machine has surpassed the human intelligence. So that is artificial super intelligence. ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चन में नहीं था. अब क्वेश्चन में एक और टर्म था आपका, जनरेटिव AI. जनरेटिव क्या है? जनरेटिव AI एक्चुअली आप अभी यूज कर रहे हो. आप जो चैट जीपीटी, जेमिनाई यूज करते हो वो जनरेटिव AI है. जनरेटिव AI को समझने से पहले समझ लेते हैं कि ट्रेडिशनल AI कैसे होते थे. सो ट्रेडिशनल AI जो होते थे वो सिंपली एनालिटिकल AI होते थे. मतलब आप उसको बहुत सारा डेटा दे दो, लेट्स से बहुत सारी इमेजेस दे दो, एंड यू आस्क इट कि भाई इसमें बताओ किस फोटो में डॉग है. इट विल बी एबल टू टेल यू. सो इट कैन एनालाइज द डेटा. इट वॉज ट्रेडिशनल AI. जो जनरेटिव AI है वो क्या करता है? बेस्ड ऑन द डेटा दैट यू हैव ऑलरेडी सप्लाइड टू इट, इट कैन जनरेट अ न्यू कंटेंट. ये न्यू आंसर्स आपको दे पाएगा, ये न्यू इमेजेस क्रिएट कर पाएगा. सो ये टेक्स्ट डेटा, वॉइस डेटा, ऑडियो डेटा, इमेजेस, ऑल ऑफ दैट इट कैन गिव यू, इट कैन जनरेट, विच इज न्यू. आपने जो डेटा दिया है उसको यूज करेगा, पैटर्न को पहचानेगा और न्यू आपको टेक्स्ट देगा. दिस इज जनरेटिव AI. जनरेटिव AI, yes, it is powerful than the traditional AI, बट क्या ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है? नहीं भाई. चैट जीपीटी आपको इमेजेस दे रहा है, टेक्स्ट दे रहा है, बट क्या सारे काम कर पा रहा है? नहीं, सिर्फ जो ट्रेन किया है वही करेगा. तो जनरेटिव AI इज नॉट AGI. जनरेटिव AI इज ऑल्सो टाइप ऑफ नैरो AI ओनली. ठीक है, और जनरेटिव AI इज वेरी मच प्रेजेंट. आप मल्टीपल प्लेसेस पे यूज कर रहे हो ऑलरेडी. ठीक, तो अब इस स्टेटमेंट को दोबारा देख लो. आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कैन ट्रांसफर द नॉलेज एंड द स्किल लर्न्ड इन वन डोमेन टू अनदर. बिल्कुल यही डेफिनेशन ही है. जनरेटिव AI सिस्टम्स आर डिजाइन टू क्रिएट न्यू कंटेंट बेस्ड ऑन पैटर्न लर्न फ्रॉम डेटा. ठीक है, ये भी बिल्कुल बात है. और थर्ड भी हमने देख लिया कि जनरेटिव AI ऑलरेडी अवेलेबल है, बट AGI अवेलेबल नहीं है, हाइपोथेटिकल है. फिर एक क्वेश्चन है आपका, कुछ पॉपुलर टर्म्स आपको दिखते रहते हैं न्यूज में, ब्लड मून, सुपर मून, ब्लू मून, उससे रिलेटेड मेसोपेयर है. अब ये बहुत हाईली साइंटिफिक टर्म्स नहीं है, ये पॉप एस्ट्रोफिजिक्स है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर वे में यूज किया जाता है. ये टर्म्स देख लेते हैं. तो पहला, ब्लड मून कहता है अकरेंस ऑफ अ टोटल लूनर एक्लिप्स है इसकी कंडीशन. बिल्कुल ठीक बात है. टोटल लूनर एक्लिप्स का एक्चुअली बहुत एक्चुअल साइंटिफिक नेम यही है, टोटल लूनर एक्लिप्स, बट उसमें जैसा मून दिखता है आप उसको ब्लड मून कह देते हो पॉपुलरली. ये ठीक है. सुपर मून, इसकी नेसेसरी कंडीशन लिखता है व्हेन अ फुल मून अकर्स व्हेन द मून इज नियर इट्स पेरिजी. ठीक है, ये भी बात. अकरेंस ऑफ 2 फुल मून्स इन सेम कैलेंडर मंथ इज ब्लू मून. ये भी ठीक है. तीनों करेक्ट है इसके. एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले बात करते हैं ब्लड मून की. तो ब्लड मून आपका बनता है टोटल लूनर एक्लिप्स में. टोटल लूनर एक्लिप्स कब बनता है? जब आपका सन और मून के बीच क्या आ जाए? अर्थ आ जाए. अब नेचुरली आपको ऐसा लगना चाहिए कि अगर अर्थ आ गया है तो मून तो ब्लैक दिखना चाहिए, बिकॉज ऑल द सनलाइट इज बीइंग ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द अर्थ. नहीं, ऐसा नहीं होगा. देखो, लाइट ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, बट स्टिल बिकॉज ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर ये ब्लैक दिखने की जगह रेड दिखेगा. क्यों? देखो, सन से जो भी लाइट आ रही है उसमें मल्टीपल कलर्स है. अब ये जो ब्लू वाला, वॉयलेट वाला, ये जो रेज है ना, ये जो कंपोनेंट है, ये रिलेटिवली शॉर्टर वेवलेंथ के हैं. तो जब सन की ब्लू वेव्स, ब्लू रेडिएशंस आ रही होंगी, सो अर्थ का जब एटमॉस्फेयर आएगा इट विल स्कैटर देम अवे. जो शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं वो स्कैटर कर जाती है. बट
जो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट है, मतलब रेड कलर वाली लाइट जो सन से आ रही है, वो क्या होंगी, वो अंदर की तरफ बेंड होंगी, और जब वो बेंड होंगी तो सम ऑफ देम विल बी एबल टू रीच टिल मून बिकॉज ऑफ दैट बेंडिंग, एंड दैट इज व्हाई योर मून विल अपीयर रेड, और उसी को आप बोल देते हो ब्लड मून। तो टोटल लूनर एक्लिप्स का सिंपल इंप्लीकेशन है आपका रेड कलर ऑफ मून। फिर देख लेते हैं सुपर मून क्या होता है। सो सुपर मून बेसिकली देखो, आपका एक लूनर साइकिल चल रहा है जिसमें आपके मून का आप शेप चेंज होता हुआ देखते हो, न्यू मून, फुल मून, राइट। अब फुल मून, जब आपको मून कंप्लीट साइज का दिख रहा है, इसको कंबाइन कर दो विद अनदर थिंग, दैट इज व्हेन मून इज एट इट्स पेरिजी। ये पेरिजी क्या है, देखो मून जो है अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है। अभी जो ऑर्बिट है दैट इज नॉट परफेक्टली सर्कुलर, इट इज इलिप्टिकल। तो कुछ पॉइंट में मून जो है अर्थ के पास आएगा और कुछ में दूर जाएगा। व्हेन इट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ वी कॉल दैट पॉइंट एज पेरिजी, ठीक। तो अगर मान लो मून अपनी पेरिजी में है एंड इट इज अ फुल मून फेज, तो कॉम्बिनेशन जो होता है वो सुपर मून होता है, बिकॉज अभी आपको बहुत बड़ा दिखता है और ब्राइट दिखता है, ठीक। वाई, बिकॉज इट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ एंड ऑल्सो इन इट्स फुल मून फेज, ठीक है बात। तो ये हो गया आपका सुपर मून। ब्लू मून क्या होता है, ब्लू मून और सिंपल एक्चुअली, नॉर्मली वन लूनर साइकिल इज इक्वल टू 29.7 डेज, मतलब ये जो आपको न्यू मून से फुल मून की जो जर्नी देख रहे हो आप, दैट टेक्स अराउंड 29.7 डेज, विच इज स्लाइटली लेसर देन अ मंथ। आपका जो एक कैलेंडर मंथ होता है, इट इज ईदर 30 डेज और 31 डेज, ठीक। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिंक है लूनर साइकिल का टाइम और आपका कैलेंडर मंथ। अब बिकॉज ये आउट ऑफ सिंक है, तो नॉर्मली तो आपके एक कैलेंडर मंथ में एक ही लूनर साइकिल होगा, एक ही फुल मून आएगा, बट ये आउट ऑफ सिंक वाला जो बिहेवियर है, ये कुछ टाइम ऐसा हो सकता है दैट इन योर वन कैलेंडर मंथ यू गॉट 2 फुल मून, क्योंकि थोड़ा तो आउट ऑफ सिंक है। और जो सेकेंड मून होगा ना कैलेंडर मंथ का, उसको ब्लू मून बोलोगे, मतलब पहले फुल मून को नॉर्मल मून बोलोगे एंड द सेकेंड फुल मून इन दैट कैलेंडर मंथ विल बी नोन एज ब्लू मून, ठीक। तो ये रेयरली ऐसा होता है बिकॉज देयर इज अ गैप बिटवीन अ कैलेंडर मंथ एंड द टाइम ऑफ लूनर साइकिल। तो ये हो गया आपका तीनों टर्म्स जो न्यूज़पेपर में दिखते रहते हैं, वो हमने देख लिए। चलो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ सोडियम आयन बैटरीज ओवर द लिथियम आयन बैटरी। आई थिंक आपके लास्ट अनुभव में भी एक लिथियम आयन बैटरी का क्वेश्चन था, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो एक हमने दोबारा रख दिया आपके लिए। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज सोडियम इज मोर एबंडेंट एंड वाइडली अवेलेबल देन लिथियम। ये एडवांटेज है बिल्कुल। The second statement says that sodium ion batteries are generally less expensive due to lower raw material cost. ये ठीक है। The third says sodium ion batteries have higher energy density than lithium ion battery. ये गलत है। Lithium ion battery का one of the advantages is higher density. Fourth says that sodium ion batteries are considered safer due to greater thermal stability. ये ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 1, 2 and 4, मतलब ऑप्शन बी। चलो देखते हैं। सबसे पहले ये बार बार क्यों न्यूज में रह रहा है इतना सारा, बिकॉज अ चैलेंज एसोसिएटेड विद अ रिन्यूएबल एनर्जी। देखो ये जो बैटरीज है ना, ये एक टाइप का एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्या होते हैं? एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स आर यूज्ड टू स्टोर सरप्लस एनर्जी जनरेटर। अब देखो होता ये है, रिन्यूएबल एनर्जी हम सबको चाहिए, वी नो बिकॉज ऑफ आवर क्लाइमेट कमिटमेंट्स। रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा चैलेंज ये है दैट दे हैव इंटरमिटेंट सप्लाई, मतलब कभी ज्यादा है कभी कम है। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, इट इज प्रेजेंट इन द डे टाइम एंड एब्सेंट इन द नाइट टाइम। विंड एनर्जी, कभी विंड की स्पीड ज्यादा, इट इज मोर, विंड की स्पीड कम, इट इज लेसर। बट डिमांड जरूरी नहीं है कि सप्लाई के साथ साथ चले, भाई नाइट टाइम में भी तो डिमांड है ना, राइट। सो दिस क्रिएट्स अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई रिन्यूएबल एनर्जी के केस में। अब इसको टैकल कैसे करोगे? तो जब भी सरप्लस एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको स्टोर कर लो, सो दैट यू आर एबल टू यूज दैट स्टोर्ड एनर्जी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हाई डिमांड। बट स्टोर करने की टेक्नोलॉजी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। देयर आर मल्टीपल स्टोरेज एनर्जी स्टोरेज सिस्टम दैट इंडिया इज इन्वेस्टिंग अपॉन। एक सबसे पॉपुलर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहलाता है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। बैटरी भी एक एनर्जी स्टोरेज का डिवाइस है,
अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में सबसे पॉपुलर बैटरी इज लिथियम आयन बैटरी, जो आप हर जगह यूज करते हो, ठीक। उसके ऑल्टरनेटिव, बिकॉज देयर आर सर्टेन चैलेंजेस एसोसिएटेड विद लिथियम आयन बैटरी, उसके मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स न्यूज में रहते हैं, एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑल्टरनेटिव इज सोडियम आयन बैटरी। आज कॉमर्शियली उतनी ज्यादा यूज नहीं होती है जैसे लिथियम आयन बैटरी यूज हो रही है, बट इट्स अ वेरी पोटेंशियल ऑल्टरनेटिव। सबसे पहले बैटरी का एज यूजुअल हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, तो बहुत ज्यादा टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक बात कर लेते हैं। तो बैटरी में बेसिकली देयर आर टू रॉड्स, टू मेटल रॉड्स, जिसको आप इलेक्ट्रोड बोलते हो, एक है कैथोड, दूसरा है एनोड, ठीक। अब इन कैथोड और एनोड दे आर डिप्ड इन अ मीडियम विच इज इलेक्ट्रोलाइट, इनको इलेक्ट्रोलाइट में डिप करके रखा है। अब ये दोनों एनोड और कैथोड के बीच में आयंस का फ्लो होता है, आयंस आर चार्ज पार्टिकल्स। अब आयंस कहां से कहां फ्लो करेंगे, दैट डिपेंड्स कि आप बैटरी को चार्ज कर रहे हो या यूज कर रहे हो, ठीक। तो इसलिए याद रखने की जरूरत नहीं है, आयंस इन दोनों कैथोड और एनोड के बीच मूव कर रहे हैं, ठीक। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैटरी के बाहर सर्किट से मूव करते हैं, एंड व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स मूव यू गेट द इलेक्ट्रिसिटी। इतना बस सुनो, बाकी ज्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है फॉर यूपीएससी, ठीक। इतने से काम चल जाएगा। अब देखो जो लिथियम आयन बैटरी है उसमें जो आयन मूव कर रहा है इलेक्ट्रोड और कैथोड के बीच, वो कौन सा आयन मूव कर रहा है, लिथियम आयन, ठीक। अब इसका एडवांटेज क्या है लिथियम आयन बैटरी का, बिकॉज लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल। आप अपना पीरियोडिक टेबल देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल। तो जो लिथियम आयन है ना वो बहुत लाइट होता है, दैट इज वाई द बैटरी दैट यू मेक फ्रॉम लिथियम आयन इज अ वेरी लाइट बैटरी, तो उसका लाइट वेट होता है। दैट इज वाई पोर्टेबल डिवाइसेस में जहां वेट बहुत मैटर करता है यू यूज द लिथियम आयन बैटरी। सेकेंडली, इसका एक एडवांटेज, रिलेटेड एडवांटेज है, लिथियम आयन बैटरी हैज अ वेरी हाई एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का क्या मतलब होता है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब ये होता है पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट वेट ऑफ द बैटरी आपको कितनी एनर्जी मिल सकती है, ठीक। अब ये अगर लिथियम बहुत लाइट है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आप एक पर यूनिट वेट में ज्यादा लिथियम आयन यू कैन पुट एंड यू कैन गेट हायर एनर्जी फ्रॉम दैट पर यूनिट वेट, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ इट्स लाइट वेट। तो ये हो गया रिलेटेड एडवांटेज। फिर क्या है, लिथियम आयन बैटरी इज हाईली रिचार्जेबल। कुछ बैटरीज ऐसी होती हैं जो ज्यादा टाइम तक रिचार्ज कर सकते हो, कुछ बैटरी ऐसी होती हैं जो कम टाइम तक रिचार्ज कर सकते हो। रिचार्जेबिलिटी किस बात पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स, सी व्हेनेवर यू आर यूजिंग बैटरी, ये जो आयंस का मूवमेंट हो रहा है ना कंटिन्यूअसली बिटवीन कैथोड एंड एनोड, इसके दौरान पे व्हाट हैपेंस इज देयर आर सर्टेन डिग्रेडेशंस इन द बैटरी पार्ट। मतलब ये जो एनोड कैथोड है ये एक्सपैंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ड्यूरिंग द मूवमेंट, एंड योर बैटरी गेट्स डिग्रेडेड। तो अगर बैटरी डिग्रेड जल्दी हो जाएगी यू विल हैव लेस रिचार्जेबिलिटी, इफ बैटरी गेट्स डिग्रेडेड later you will have higher rechargeability. अब देखो लिथियम आयन, because they are very small ions so they can move very freely, तो बैटरी मटेरियल बहुत स्लोली डिग्रेड करता है, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर हाई रिचार्जेबिलिटी ऑफ लिथियम आयन बैटरी। देयर आर अदर रीजंस आल्सो बट वो रिलेटिवली थोड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इतने से हमारा एग्जाम के लिए जो याद रखना है वो काम पूरा हो गया, ठीक। बट लिथियम आयन बैटरी के साथ कुछ चैलेंजेस है। चैलेंज क्या है, फर्स्टली ये क्रिटिकल मिनरल है, so its supply is very limited and that is why it is very costly. Secondly, इसकी जो माइनिंग है that creates lot of pollution. तो pollution आप बैटरी इसलिए यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल इसलिए यूज कर रहे हो so that you can reduce your pollution. But lithium यूज कर रहे हो उस बैटरी में और लिथियम की माइनिंग के समय पॉल्यूशन कर रहे हो, so the purpose gets defeated obviously. और सबसे बड़ा और एक और चैलेंज है लिथियम आयन बैटरी के साथ, विच वी आस्क्ड इन द प्रीवियस अनुभव, दैट इज दिस कि लिथियम आयन बैटरीज आर वेरी थर्मली अनस्टेबल। व्हाई? अच्छा, थर्मली अनस्टेबल का मतलब अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे यूज करोगे इट कैन कैच फायर, इट इज इनफ्लेमेबल। क्यों? बिकॉज ये जो इलेक्ट्रोलाइट लिथियम आयन बैटरी में यूज करते हो ना दैट इज इनफ्लेमेबल, तो अगर थोड़ा भी लीकेज होता है एंड देयर इज द हाई टेम्परेचर इट कैन कैच फायर, ठीक। बट सोडियम आयन बैटरी में आ जाओ, तो अब इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए वी आर मेकिंग सोडियम आयन बैटरी। अब सोडियम आयन बैटरी में चीजें रिवर्स करते जाओ, आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज मिल जाएंगे। सोडियम इज अ बिगर एटम, राइट। सोडियम का जो साइज है वो लिथियम से बड़ा है, अगर लिथियम से बड़ा है इट मींस योर बैटरी विल बी हैवी, तो ये तो चैलेंज हो गया सोडियम आयन का बैटरी का। फिर क्या चैलेंज होगा, फिर बिकॉज इट इज हैवी तो पर यूनिट वेट यू कैन गेट लेस एनर्जी, तो एनर्जी डेंसिटी भी लो होगी। फिर जब सोडियम आयन बड़े हैं, जब ये मूव करेंगे तो बैटरी डिग्रेड भी करेगी, तो रिचार्जेबिलिटी लेस होगी। ये तो हो गया चैलेंज, बट हम एक्सप्लोर क्यों कर रहे हैं सोडियम आयन बैटरी को? बिकॉज ऑब्वियसली ये वो एडवांटेज दे रहा है विच आर ओवरकमिंग द लिथियम आयन बैटरी। जैसे कि लिथियम आयन बैटरी का चैलेंज है
that it is critical mineral and sodium is very abundant. In fact, sodium is the 6th most abundant element. आप सी वाटर से लिटरली सोडियम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. सो दैट इज वाई योर रॉ कॉस्ट एंड द डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्री, बिकॉज इंडिया क्रिटिकल मिनरल में वी आर डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स. तो एक तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी रिड्यूस हो जाएगी इंडिया की, सेकेंडली रॉ मटेरियल की कॉस्ट लेस है तो बैटरी चीपर बनेगी. ठीक, फिर और क्या एडवांटेज है, इसकी जो माइनिंग है दैट इज नॉट एज पॉल्यूटिंग एज लीथियम, तो वो भी इसको आपको एडवांटेज मिल जाएगा. एंड लास्टली लीथियम आयन का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि उसका इलेक्ट्रोलाइट इज इनफ्लेमेबल, इट इज थर्मली इनस्टेबल. सोडियम आयन बैटरी में ऐसा नहीं होता, इट इज वेरी हाईली थर्मली स्टेबल इन कंपैरिजन टू लीथियम आयन बैटरी. ठीक, तो अब आप इस चीज को वापस देखो, सोडियम इज मोर अबंडेंट एंड वाइडली अवेलेबल देन लीथियम. बिल्कुल, इस वजह से एडवांटेज है. सोडियम आयन बैटरीज आर जनरली लेस एक्सपेंसिव ड्यू टू लोअर रॉ मटेरियल कॉस्ट, ऑब्वियस है. सोडियम आयन बैटरीज हैव हायर एनर्जी डेंसिटी, बिल्कुल भी नहीं, इसका वेट ज्यादा है सोडियम आयंस का, तो ये हायर एनर्जी डेंसिटी तो नहीं दे सकता. सोडियम आयन बैटरीज आर कंसिडर्ड सेफर, ये भी हमने देख लिया. चलो, दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रांस फैट. अब इसका हम देख लेते हैं ट्रांस फैट का डिस्कशन. असर्शन रीजन क्वेश्चन है. इट सेज कि योर ट्रांस फैट्स आर कंसिडर्ड हार्मफुल फॉर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ. ये स्टेटमेंट सही है. सेकेंड स्टेटमेंट सेज दीज ट्रांस फैट्स आर टाइप ऑफ सैचुरेटेड फैट. ये गलत है. दे आर अ टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड फैट बट मॉडिफाइड. Saturated fats generally increase the level of high density lipoprotein cholesterol. गलत है, ये low density lipoprotein cholesterol को बढ़ाते हैं. तो आपका both statements are correct, incorrect. तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी. चलो, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग केसेस ऑफ कार्डियोवास्कुलर हेल्थ. जल्दी से देख लेते हैं. सबसे पहले आपके जो भी डाइटरी फैट होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, अनसैचुरेटेड फैट एंड सैचुरेटेड फैट. ठीक, सबसे पहले ये समझो कि फैट एक ऐसा मॉलिक्यूल है विच इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. ठीक, ये है CHO. अब कुछ टाइप के डाइटरी फैट को आप सैचुरेटेड बोलते हो, कुछ को अनसैचुरेटेड बोलते हो. इसका डिफरेंस आपको याद रखना है. सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, सैचुरेटेड फैट को पहचानोगे कैसे, दे आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर. मतलब आप घी रखो, सॉलिड होता है ना रूम टेम्परेचर पे, राइट. बट अनसैचुरेटेड जो है दे आर लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर. जैसे कि आप मस्टर्ड ऑयल रखो, मस्टर्ड ऑयल तो लिक्विड है, आप कैसे याद रखो ये कौन सा सॉलिड है, सैचुरेटेड सॉलिड S. ठीक, अच्छा, अब सैचुरेटेड को सैचुरेटेड बोल क्यों रहे हो, अनसैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड, व्हाई आर यू कॉलिंग इट. सो उसका रीजन आप समझने से पहले ये हमें पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड फैट का अगर आप केमिकल स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना वो सारे सिंगल बॉन्ड है, और अनसैचुरेटेड में आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ, हम जब किसी को सैचुरेटेड फैट बोल रहे हैं तो व्हाट वी मीन इज दे आर ऑलरेडी सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन. जितनी हाइड्रोजन वो रख सकते थे इट इज फुल, और हाइड्रोजन उसमें ऐड नहीं कर सकते हो. इसका क्या मतलब, क्योंकि जो सैचुरेटेड है ना उसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं. अगर आप सिंगल बॉन्ड्स हैं तो जितना भी हाइड्रोजन आप इसमें अटैच कर सकते थे यू हैव ऑलरेडी अटैच्ड. बट अनसैचुरेटेड में यू हैव डबल डबल बॉन्ड्स. हो सकता है सारे बॉन्ड डबल नहीं है बट देयर आर डबल बॉन्ड्स. अब अगर डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब हाइड्रोजन अभी इसमें फुल नहीं है. यू कैन ब्रेक दिस डबल बॉन्ड एंड ऐड मोर हाइड्रोजन टू इट. दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट दे आर अनसैचुरेटेड. देयर इज स्टिल अ कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब हाइड्रोजन. ठीक, अब ये जो आपके सैचुरेटेड फैट है बिकॉज दे आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, इट इज इजियर फॉर यू टू इमेजिन कि वो एनिमल सोर्सेज से ज्यादा मिलते होंगे. क्योंकि जब आप जैसे सैचुरेटेड देखोगे यू शुड इमेजिन सॉलिड, सॉलिड मतलब घी, घी मतलब एनिमल सोर्स से ये फैट आएगा इन जनरल. Whereas unsaturated fat they are liquid at the room temperature. Liquid मतलब आप imagine करोगे mustard and you will say that in general they are plant products. But there are exceptions. For example, there are certain plant products which give you saturated fat. और उसको भी याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है. कोकोनट ऑयल रूम टेम्परेचर पे इमेजिन करते हो इट इज सॉलिड, तो इट इज प्लांट प्रोडक्ट बट इट इज सैचुरेटेड. एंड अनदर एक्सेप्शन इज पाम ऑयल. ऐसे ही एक्सेप्शन इस तरफ भी है.
जनरली अनसैचुरेटेड फैट किससे आ रहा है? प्लांट प्रोडक्ट से, बट देयर इज एन एक्सेप्शन जो आपका फिश ऑयल है, ऑल्दो एनिमल सोर्स का है बट वो अनसैचुरेटेड है। ठीक, अब अनसैचुरेटेड फैट को जनरली हम कहते हैं दे आर हेल्दी फॉर द हार्ट, और सैचुरेटेड फैट को कहते हैं दे आर अनहेल्दी फॉर द हार्ट। ऑल्दो देखो इंडियन मेडिसिनल सिस्टम में घी जो है वो उसके बेनिफिट हैं अपने, बट हम इन जनरल कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जो मॉडर्न साइंस मानता है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं कि अनसैचुरेटेड फैट को ये कहता है इट इज हेल्दी फॉर द हार्ट, सैचुरेटेड को कहता है अनहेल्दी। इसको हेल्दी क्यों कहता है? बिकॉज इट लीड्स टू जनरेशन ऑफ हेल्दी कोलेस्ट्रॉल इन योर बॉडी। कौन सा हेल्दी कोलेस्ट्रॉल? तो उसको कहते हैं एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इज हेल्दी फॉर योर बॉडी, और ये अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा रहा है विच इज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, तो इस वजह से ये अनहेल्दी बन जाता है। अब ये कोलेस्ट्रॉल को भी क्विकली रिवाइज कर लेते हैं बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में एक वैक्सी सब्सटेंस है जो ब्लड के अक्रॉस ट्रैवल कर रहा है। अब देखो कोलेस्ट्रॉल को दो टाइप का कहते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। अगर आप इसका फुल फॉर्म देखोगे, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एक्चुअली एलडीएल और एचडीएल को कोलेस्ट्रॉल कहते हैं बट दे आर कोलेस्ट्रॉल कैरियर। मतलब क्या है? देखो कोलेस्ट्रॉल मैंने बोला एक तरीके का वैक्सी सब्सटेंस है जो कि ब्लड में ट्रैवल कर रहा है। अब एक वैक्सी सब्सटेंस क्या ब्लड में डिसॉल्व हो सकता है? नहीं। तो फिर ब्लड में कैरी कैसे होगा? तो उसको एक मॉलिक्यूल में अटैच होकर कैरी होना है, और वो मॉलिक्यूल कौन से है? एलडीएल एंड एचडीएल। ये कोलेस्ट्रॉल इस पे अटैच होगा एंड कोलेस्ट्रॉल विल ट्रैवल अक्रॉस द ब्लड। अब दोनों कोलेस्ट्रॉल को मूव कराने में हेल्प कर रहे हैं बट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज डिफरेंट। जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है दैट इज बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों है? क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को कैरी करेगा आपकी ब्लड वेसल में, और आपकी ब्लड वेसल में ऐसा प्लेक डिपॉजिट हो जाएगा एंड योर ब्लड वेसल्स कैन बी ब्लॉक्ड। जबकि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों है? बिकॉज ये आपकी ब्लड वेसल से कैरी करके लेके जाएगा लिवर की तरफ कोलेस्ट्रॉल को, सो ब्लड वेसल्स को एम्प्टी करेगा, तो जो ब्लॉकिंग हुई है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। सो दैट इज व्हाई एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इज नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल। और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में ज्यादा कहां से आ रहा है? अनसैचुरेटेड फैट से, वेयर एज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल विच इज बैड वो कहां से आ रहा है? सैचुरेटेड से। ठीक, अच्छा ये हो गया बेसिकली अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड का। अब क्विकली ट्रांस फैट समझ लो। ट्रांस फैट बेसिकली एक तरीके का अनसैचुरेटेड फैट है बट वी आर मॉडिफाइंग इट। हम क्या करते हैं? देखो ट्रांस फैट प्राइमरली इंडस्ट्रियल फैट है, नेचर के कुछ प्रोडक्ट में मिलता है, फॉर एग्जांपल कुछ मीट है, कुछ डेयरी है, थोड़ा बहुत ट्रांस फैट होता है, बट ट्रांस फैट प्राइमरली किसने बनाया? इंडस्ट्रीज ने। इंडस्ट्रीज ने क्यों बनाया? बिकॉज इंडस्ट्रीज को चाहिए था एक ऐसा फैट का सोर्स which is buttery, which is having a very good taste profile and which is having a very high shelf life, तभी तो वो प्रोडक्ट बेच पाएंगे। अब ये कैटेगरी, ये क्राइटेरिया होता है सैचुरेटेड फैट के पास। जो सैचुरेटेड फैट होते हैं ना, बिकॉज दे आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, उसका टेक्सचर बटरी होता है और उसका शेल्फ लाइफ भी बहुत ज्यादा होता है। इमेजिन घी आपको क्या बोला जाता है कि जितना पुराना उतना अच्छा, राइट? तो वो सैचुरेटेड के पास है, बट सैचुरेटेड फैट नॉर्मली होता है कॉस्टली बिकॉज एनिमल सोर्स से आ रहा है। तो अब इंडस्ट्री ने क्या किया? अनसैचुरेटेड फैट को लिया एंड दे प्रोसेस्ड इट टू जनरेट अ प्रोफाइल, टेस्ट प्रोफाइल विच इज लाइक सैचुरेटेड, बटरी करने के लिए और उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि अनसैचुरेटेड फैट लिया, अनसैचुरेटेड फैट में देयर आर डबल बॉन्ड्स, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक किया और यहां पे क्या ऐड किया? हाइड्रोजन। तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन किया ऑफ अनसैचुरेटेड फैट। पार्शियल हाइड्रोजनेशन क्यों बोला? बिकॉज वी डिडंट ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स, कुछ डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और हाइड्रोजन ऐड कर दिया। वी कॉल इट पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट। और ये जो फैट बनता है ना, दिस इज द मोस्ट डेंजरस फैट। ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। दिस इज द मोस्ट डेंजरस वन। ठीक, तो ट्रांस फैट इतना डेंजरस है दैट इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज दे अलाउ 0% ट्रांस फैट, बट इन केस ऑफ इंडिया हमने 2% की लिमिट रखी है। अल्टीमेटली हमें भी उसे 0 पे लाना है, बट अभी 2% की लिमिट है। ठीक, अब जरा इस स्टेटमेंट को देखो वापस। ट्रांस फैट्स आर कंसिडर्ड हार्मफुल फॉर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, बिल्कुल ठीक है। ट्रांस फैट आर टाइप ऑफ सैचुरेटेड फैट, नहीं, वो अनसैचुरेटेड फैट है बट उसको मॉडिफाई किया हमने। सैचुरेटेड फैट जनरली इंक्रीज द लेवल ऑफ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड, नहीं, सैचुरेटेड फैट तो बैड फॉर हेल्थ है, हार्ट हेल्थ है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द डिस्कशन। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला। कुछ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स थे, थोड़ा सा जल्दी करना पड़ा, बट आई होप कि समझ में आया आपको। चलिए
So best of luck for the next Anubhav and the actual examination. So let us scan through question number 85. It says that with reference to the Abraham Accords, consider the following statements. So Abraham Accords, so it was very in news because we have a president of USA, Trump. So Trump tried to be peace broker in it's a Trump 1.0, and Trump 2.0 is trying to be a peace breaker. First he was broker, second is the breaker. Why it is so? Because Abraham Accord is a beautiful example. Why, what it is so? So he tried to basically pacify relation between the Israel, which is considered as the first state of the United States. It's a satire only for the Israel and the Arabian countries. Accordingly, Abraham Accord was signed between the Israel and the Arab states like Bahrain, UAE, Sudan, Morocco. These are the countries which signed the Abraham Accord, and not the Saudis. Saudi have not basically signed it. It's very important. It is the UAE that signed it, and it was basically brokered by the under the United States under the Trump 1.0. That was the context. Accordingly, we will have to go through the question that their agreement aimed at normalizing diplomatic relations between Israel and certain Arab countries. It is correct. Israel and Arab countries all have the common linkage, that is the Abraham. They are descendant of Abraham, and Israel is the they follow the Jewish religion and they follow the Islam religion. But there is a conflict between Israel and these countries, and they try to basically resolve it. So what are the countries we have discussed already. Second is the initial agreement was signed between Israel, United Arab Emirates and Saudi Arabia. This is incorrect. Saudi Arabia was never a part of it. They tried to cater, but they are not able to sign it. So what will the correct answer? So which of the following above are not correct? Very important. It is not correct. कौन सा सही नहीं है? तो B सही नहीं है. क्यों? A was never part of it. The answer will be the B. Very important. आपको दोनों statement पढ़ने पड़ेंगे. Question statement and the root statement. क्या पूछ रहे हैं आपसे? Very important. At times we don't care about this thing and गलती कर देते हैं. चलिए, that is all on this question. Now let us move to the next question. Question number 86. Consider the following statement about the CTBT, that is the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. So we will have to go to the background of this Comprehensive Ban Treaty. So during World War I only we had tried to have the basically partial nuclear test ban treaty, which was taking shape during the World War II as well. However, a comprehensive nuclear test ban treaty came into only in 90s only, and its headquarter is having in the Comprehensive Nuclear Ban Test Treaty organizations. ये उनको पूरा हैंडल करता है. Now let us try to see the statements क्या क्या है. तो it prohibits all nuclear test explosion whether the military or civilian purpose. Yes, ये सारे टाइप के बेसिकली न्यूक्लियर टेस्ट को प्रोहिबिट करता है. नथिंग लाइक दैट कि मिलिट्री हो या सिविलियन हो, कुछ भी नहीं है. सो इट इज मोर अबाउट द इनरिचमेंट. जैसे ईरान का है, मोर क्वेश्चन वाज द ऑन द इनरिचमेंट. ए सर्टेन डिग्री तक नहीं जाना चाहिए, तो इट इज करेक्ट ओनली. चलिए, सेकंड इज इट प्रोहिबिट्स कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट ban treaty organization. Yes, it is the basically organization which looks for these kind of the basically restrictions to oversee international verification compliances with the treaty. So कहीं पे भी यदि seismic activities होती है या कुछ ऐसा होता है which can be caused due to the nuclear test, so this organization looks for the basically if it is due to the nuclear test or otherwise not. So which is the organization? So Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization, CTBTO. India is not a signatory to the treaty. So very interesting. India उस टाइम क्या हुआ था when this treaty was being formulated 1960s के आसपास. So there used to be two annexer states, annexer 1, annexer 2. So annexer 2 states were ऐसे स्टेट जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो ना हो लेकिन उनके पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स होने चाहिए. तो उस टाइम इंडिया वाज हैविंग न्यूक्लियर बेसिकली रिएक्टर इन इट. So India was part of annexure 2 state. However, India never signed the treaty because it felt that it is discriminatory in nature. Why? First, there was no deadline when there will be implementation of or elimination of the nuclear bomb. India's position is we should be eliminating, not banning,
because if we are eliminating then everyone having equal status. If we are banning then those existing state having nuclear weapon will lead the world. So India was saying ki we should basically eliminate, which was not accepted. That's why India was not signed, as well as it was discriminatory because India was put in the Annexure 2, and since only few countries have basically signed it, that's why this treaty never came into the full force. Because if you go by data, around 180 countries still have not signed, 86 countries have not signed the treaty, 170 countries have signed the treaty. India was one of the party which have not signed the treaty. United States have signed but not ratified. There are other countries who have never signed. India is one of the part of the country. So this is also correct. State number 4, the treaty has recently completed 30 years since the entry into the force. Since it never came into the entry into force because the Annexure 2, which is quite basically disputable, India has also not signed the treaty. That's why it never came into the force. So state number 4 is incorrect. So if 4 is incorrect, can we eliminate option having 4? Yes, ये हो जाएगा eliminate. So which will be the right answer? So 1, 2 and 3 तीनों सही है, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1, 2 and 3 ओनली, ये इसका आंसर हो जाएगा. होप इट इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 87. इट टॉक्स अबाउट द प्लेसेस इन न्यूज एंड कंट्रीज. सो नातेज, तो अभी जो हुआ था यूएस व्हेन दे हैव स्टार्टेड ऑपरेशन फ्यूरी, फ्यूरी के पहले इन्होंने जो अटैक किया था, सो 2 जगह पे किया था, उसमें से एक प्लेस ये भी था, ये था वेरी फोर्डो एंड नांताज. ये बहुत इंपॉर्टेंट था. इट इज सिचुएटेड इन ईरान. So we know that it is one of the potential site of the nuclear bomb for the Iran. Bondi Beach firing was very in news. It was not in New Zealand, it is in Australia, and it was one of the standalone case in which Australia had this racial terrorism भी बोल सकते हैं इसको case in it. Donbas, we know it's a very famous place of the Ukraine, not the Israel. So only first option which is in Iran is correct. So only one pair is correct. Answer will be E. ए बहुत ही इजी क्वेश्चन है. सो मेनी ऑफ करेक्टली मैच, तो एक ही है तो एक हो जाएगा. ठीक है, होप इट इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 88. इट सेज दैट विथ रेफरेंस टू द केमिकल वेपन कन्वेंशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो ये बेसिकली स्टार्टेड 1992 एंड केम इनटू 1997. ये इनका था, तो बाकी के टाइम में नेगोशिएशन चल रहे थे अबाउट द केमिकल वेपन कन्वेंशंस. नाउ लेट अस ट्राई टू सी द स्टेटमेंट. इट प्रोहिबिट्स द डेवलपमेंट, production, acquisition, stockpiling and use of chemical weapon. It's yes correct. There is a comprehensive ban. यानी कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते, एक्वायर नहीं कर सकते, स्टॉक पाइल नहीं कर सकते और केमिकल वेपन को यूज भी नहीं कर सकते. तो इराक के ऊपर जो यूएसए ने किया था पैराशूटिंग ऑफ डेमोक्रेसी, बिकॉज ऑफ दिस एलिगेशन दे हैव द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन विद देम. तो इनके ऊपर यही था. सेकंड, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन. इट इज करेक्ट. OPCW डील्स विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस थिंग. एंड if a state party doubts that another state party is not complying with the convention, they may request a challenge inspection. For example, if India and Pakistan both are signatory and if India feels that Pakistan is developing nuclear weapons, then India can request the inspection, and the party which have signed the basically treaty, they are bound to basically do the inspection. ये हो जाता है. And India National Authority Chemical Weapon Convention located in the cabinet secretariat is responsible for implementing the convention. It is also correct that we have a national basically authority जो काम करती है cabinet secretariat में, and cabinet secretariat works under the PMO. तो what will the answer? The answer will be the D. That is the answer will be the D. That is 1, 2, 3 and 4 all are correct because ये सारे options आपको जो दिए हुए हैं everything is correct. चलिए next, the financial fraud risk indicator which aims to empower financial institution with advanced actionable intelligence by cyber fraud prevention has been launched by which of the following? So it was basically launched by the Ministry of Communication. आप लोगों ने यदि तुक्का मारा होगा तो शायद Ministry of Electronics and Information डाल दिया होगा, which is incorrect. So which basically launch it? It is the Ministry of Communication which have launched it. So if you know it, you will be able to solve it easily. नेक्स्ट इज द विथ रेफरेंस टू द भू आधार. सो जैसे हमारा आधार होता है आधार फॉर ह्यूमंस, ऐसे जमीन के लिए यानी कि भू आधार है, बिकॉज
ऐसा माना जाता है कि जमीन के इश्यूज सबसे ज्यादा लिटिगेंट वाले इश्यूज होते हैं एंड इट इज बेसिकली रोड ब्लॉक फॉर द डेवलपिंग इंडिया इन कमिंग टाइम. सो दैट्स व्हाई देयर इज अ भू आधार. इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव. So reference to भू आधार, that is the unique land parcel identification number, that is the UL pin. Consider the following statement. First is they assigns 14 digit unique identification number to each land parcel in India. Yes, like आधार 12 digit का आधार का होता है, तो भू आधार कितना होता है? It is for 14 digit. It is correct. It is an initiative launched by the Department of Land Resources. It is also correct. Land Resources करेगा और कौन करेगा? It does not contain information related to the property owner. यही तो सबसे बड़ा इशू है. It contain because litigation किस चीज का है? सो प्रॉपर्टी ऑनरशिप का ही लिटिगेशन है. यहाँ पे टैगिंग हो जाती है तो प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑटोमेटिकली आती है, सो दैट लिटिगेशन कैन बी बेसिकली रिड्यूस. तो यदि ऑप्शन 3 नहीं है सही तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा एंड वी कैन एलिमिनेट दिस एज वेल. तो ऑटोमेटिकली आंसर विल बी however we'll see question number statement number 4. It is generated based on the latitude and longitude coordinate of the land parcel. Yes, latitude as well as the longitude coordinates are considered. Obviously answer will be the B, that is 1, 2 and 4 only are correct. That is the correct answer for this question. Now question number 91. With reference to UPS, that is the Unified Pension Scheme, consider the following statement. It was quite in use, implemented in 2025, initiated in 2024, तो 2025 में जाके complete हो गया था. So it says that all employees of the government of India are covered under this scheme. So all जहां पे भी आएगा वहां पे कहीं ना कहीं red flag होगा, एक बार आप check कर लेना if it is correct or not. Second, both the employees and the government contribute pension account. Yes, employees का contribution around 10% होता है and government का contribution around 14% होता है. तो yes, it is correct. The scheme provides assured minimum pension on superannuation after a minimum 10 years of service. Yes, करीब 10,000 rupees are provided if you have completed the 10 year of the services. So assured minimum pension की बात होती है. It is also correct. Now question number statement 4 says the assured minimum pension under the scheme is indexed to inflation. Yes, it is also correct that dearness allowance is applied to it. Whenever you will have this pension, it will be linked with the inflation of that time. ऐसा नहीं हो कि आज के टाइम में 10,000 तो 10 साल के बाद 10,000 की वैल्यू कम हो जाएगी. It is but natural, but नहीं, ऐसा नहीं है. It will be inflation linked. So how many statement given are correct? So since 2, 3 and 4 statement are correct, answer will be only 3 because statement number A is incorrect. Not all employees of the government of India is covered under the scheme. ऐसा नहीं है कुछ. ऐसा कभी भी आगे all, every तो red flag होता है, जरूर ध्यान देना. That is all. Thank you. Hello friends, we are going to discuss IR and miscellaneous questions that were featured in the recently happened ANUBHAV test. So let's start with question number 36. I am going to discuss questions from question number 36 to 41 here. So let's start with question number 36. So question number 36 is easy question on recently announced rare earth corridor scheme in the budget. So question number 36 says here, the government of India has recently announced dedicated rare earth corridors in which of the following states. So this particular important scheme has been announced, or rather project has been announced by our finance minister in the budget of 26 in February of this year. So very important, and you know, in that particular scheme our finance minister highlighted 4 important states in which this rare earth corridor is going to be established. So let's say in this particular question, let's see in this particular question which of the states you know, essentially feature in this particular project. So number 1 Odisha, number 2 Kerala, number 3 Andhra, number 4 Maharashtra, and number 5 Tamil Nadu. So out of these 5 states, which of the states are being included in this dedicated rare earth corridor project? So let's see the explanation here. So India's rare earth strategy, manufacturing corridors and global integration. So this particular, you know, screenshot is from the PIB article that I have taken, and essentially our finance minister has launched this particular dedicated rare earth corridor scheme in her budget speech of 26-27 recently in Odisha, Kerala, Andhra and Tamil Nadu. So you can clearly see these 4 states being highlighted in that particular project in which this dedicated rare earth corridor is going to be established. So essentially for this particular question, Odisha is included in that particular project, Kerala is also included, Andhra is included and Tamil Nadu is included. There is no inclusion yet for Maharashtra, although Maharashtra also holds some reserves of rare earths as well. So 1, 2, 3 and 5, that is the correct answer, option
C is the correct answer for question number 36. So, let us move forward now from this very important, by the way, question from the possibility of prelims 2026. So, question number 37 here, with reference to the northern sea route, consider the following statements. So, northern sea route is important, you know, in 2024 our Prime Minister visited Russia, and also in the wake of Russia-Ukraine war and also in the wake of, say, global climate change, this northern sea route is opening up. Normally this northern sea route is, you know, essentially an Arctic route which is most of the time frozen, but due to thawing of the ice, due to climate change and you know, rising temperatures, the waterway is melting, and in a way it is creating a new corridor for transport. So, let us see the statements about these northern sea routes. So, number 1 statement, it runs along Arctic coast of Russia, connecting Atlantic Ocean and the Pacific Ocean. So, as I said, it does run along Arctic coast of Russia. So, this is correct. Only issue is whether it connects Atlantic Ocean with Pacific or not. So, this is also the correct statement. You can clearly see in the Arctic sea route, that is northern sea route, you can clearly see it is being, you know, it is connecting the Arctic and Pacific Oceans. So, number 1, the first statement is indeed correct. It significantly reduces the distance between East Asia and the Europe compared to the route through Suez Canal. So, that is the basic purpose of, you know, northern sea route itself. Most of the time the, you know, the ships have to take the route through Suez Canal. It essentially increases the distance that the ships have to cover from, say, the East Asian region to the European region. So, essentially you can clearly see the route through Strait of Malacca and Suez Canal that most of the ships do take to reach to the European shores. But this northern sea route will actually circumvent this route through Suez Canal. So, number 2 statement is also correct. So, indeed it does, you know, reduces the distance between East Asia and Europe. It will in a way, you know, be a big boon for, say, the trade relation between the two regions as well. So, both of these statements are correct from the perspective of, say, northern sea route NSR, and India has also huge interest in the development of this sea route, although with the Russia-Ukraine war and the US sanctions on the Russia, most of the times the developments in that regard have been scarce, but still both the statements are correct here. Very important route from the perspective of, say, India-Russia relations, India-Europe relations to certain extent as well, and particularly you know, East Asian, ASEAN and EU to certain extent as well. Although again the thing is Russian sort of Russia-Ukraine war in that regard. So, let us see question number 38 now. Question number 38, with reference to the United Nations Convention Against Cybercrime, consider the following statements. So, essentially this particular convention was recently, you know, signed and came into force rather. So, let us look at the statement. Number 1, it is the first international criminal justice treaty to be signed under the United Nations. See, if you look carefully to this carefully at this particular statement, what it says is it is the first international criminal justice treaty. So, to certain extent you must have seen in the news, even UN news, UNODC news covers the statement like this while describing this particular convention. In 20 years, this is the first treaty that essentially addresses the criminal justice at international level. So, in 20 years this is the first treaty, but what the statement here says, it is the first international criminal justice treaty to be signed under the United Nations. So, United Nations was, you know, established way back in 1940s and 50s. So, you must be knowing the history part, I am not going to go into that, but after that we have the Genocide Convention as well, that is also, you know, the International Criminal Justice Treaty. So, per se this statement is incorrect. So, number 1, the first statement is incorrect. See, in last 20 years indeed this is the first treaty to be signed, which is often called first International Criminal Justice Treaty under the United Nations in the latest 20-year period. But before that, from the start of the United Nations,
we have many treaties which have been signed and which can be called international criminal justice treaties like Genocide Convention as well. So, number 1 statement is indeed incorrect. It provides a framework for countries to share digital evidence and cooperate in investigations relating to cyber offences. See, cyber crime and cyber issues, cyber warfare issues are particularly dire nowadays. You must be seeing the news. That particular issue keep on arising in Russia, here Russia-Ukraine war, or even in US-Iran war in current times as well. So, to certain extent, you know, and also at the individual level, many times we are seeing the cross border, you know, implications of such cyber attacks, hai na? So, and on the critical infrastructure like cyber infrastructure, there needs to be global cooperation if you want to actually address the cyber crime issues. So, this particular treaty here, this particular convention here addresses exact the same point. It provides the framework for countries to share digital evidence and also to cooperate in the investigation parts, so that the cyber offences gets dealt with effectively and efficiently at the international level. So, number 2 is correct. Indeed, that is the purpose of having this particular treaty, International Criminal Justice Treaty, which addresses the cyber crimes. So, number 2 is correct. Countries that ratify the convention become legally bound by its provisions. This is also correct statement. It is indeed legally binding treaty. See, it is a criminal justice treaty which is legally binding treaty. So, number 3 is also correct statement. It replaces the Budapest Convention on cyber crime. So, this particular statement here is incorrect. There is a Budapest Convention, very famous convention on cyber crime, which India has also adopted. So, to certain extent, you know, there is always a confusion that whether this particular convention that has been recently signed and came into force, it replaces Budapest Convention or not. It does not replace, rather it complements Budapest Convention. So, number 4 statement is incorrect here. So, what can be the correct answer? Which of the statements given above are correct? Statements 2 and 3 are correct. Option B is the correct answer for question number 38. Let us look at question number 34 now. You can clearly see the 72 countries have signed a landmark UN treaty in Hanoi aimed at tackling cybercrime that, you know, UN Secretary General hailed as a historic step towards, you know, safe digital world. Okay. So, very important question. Let us look at question number 39. Consider the following pairs, match the pair type question here. So, there is AI initiative launched by Government of India and its corresponding objective. See, in recent times we have India AI Summit, very famous India AI Summit, and earlier we have India AI Mission as well. So, AI related schemes and AI related issues is important theme from the perspective of CSE 2026. So, let us look at the initiatives launched by the Government of India. See, essentially these initiatives have been launched in the India AI Summit, and also these initiatives were in development earlier as well, some of these initiatives. Okay. So, let us look at the first pair, AI Kosh, a repository of data sets and tools to support AI innovation and research. Indeed, this is the purpose of AI Kosh. So, AI Kosh, Kosh here means, see, in normal Hindi, what is the meaning of Kosh? Kosh is a depository. So, to certain extent, AI Kosh is also a depository of data sets and tools to support AI innovation and research. See, many times India having the multilingual diversity, you know, developing AI in our own means, you know, based on language diversity that we have is also very important. And many times what happens is there are many AI platforms which want to test, or rather which want to, you know, experiment in this particular field. AI Kosh will give them such depository, such data sets and tools to support their innovation and research in that regard. And this particular scheme is indeed launched in the India AI Summit for indigenous artificial intelligence model designed for Indian languages were launched in the India AI Impact Summit of 2026. Okay. For example, AI Kosh. AI Kosh is a platform that provides access to AI tools, data sets and development resources. AI Kosh functions as a shared library where developers, researchers and even businesses can pre-build AI components to create new applications without, you know, starting from a scratch. So, AI Kosh
the purpose is correctly mentioned in the pair, sort of in the objective is correctly mentioned. Let's look at Bharat-Gen, the AI initiative launched by the government of India, development of India-centric multilingual generative AI models. So that's the purpose of Bharat-Gen. Bharat-Gen indeed is means is an initiative launched by the government of India to develop India-centric multilingual generative AI model. So Bharat-Gen ka purpose is correctly mentioned. Let's look at Bharat-Vistar now. Bharat-Vistar, it is an expansion of digital payments infrastructure using AI-enabled systems. See, the purpose of Bharat-Vistar is to promote or integrate agri-stack and related issues, related missions. So Bharat-Vistar is related to the agricultural innovation and how we can actually innovate and experiment and actually revolutionize our agricultural sector with the help of, say, AI. So Bharat-Vistar is indeed associated with agriculture. So number 3 is incorrect pair. So how many of the pairs given above are correctly matched? Only 2 pairs. Option B is the correct answer here. So you can clearly see the Union Budget 26-27 unveiling Bharat-Vistar, a multilingual AI tool designed to merge agri-stack portals with ICAR's practices, offering farmers advanced advisories and decision support. So it is indeed, the initiative that has been launched in the budget of 26-27 from the perspective of revolutionizing our agricultural sector. We already have the AgriStack portal. It will actually integrate this particular portal. It will with ICR's practices and which offers farmers advanced advisories and decision support. So AI will revolutionize farming. So Bharat-Vistar is associated with agriculture. Remember that. So that is very, very important question. Question number 40, the term trade bazooka or anti-coercion instrument, ACI, sometimes seen in news, is primarily associated with which one of the following organizations. So obviously you must have seen in terms of, say, US, EU trade war, this particular term is often in news, trade bazooka. So what is this trade bazooka? It is an EU instrument, European Union instrument, which essentially addresses the trade war concerns essentially started by the Trump's America. But to a certain extent, European Union didn't use trade bazooka. Rather, they sort of came to a negotiated settlement between the two trading blocs. But there was indeed a threat of, say, invocation of this trade bazooka against the US. So essentially, you can clearly see, but it hasn't been applied. So trade bazooka is associated with European Union. It essentially is a response response when the EU's trade relation or EU's overall trade is threatened by the other countries. Okay, and it gives the EU the power to impose penalties, tariffs, reverse tariffs, etc., etc. So it is an extreme measure which hasn't been applied yet by the EU against US. Although there was news that they are considering it. The French president even advocated for it, but EU doesn't follow through on it. Question number 41, consider the following states of India: Gujarat, Maharashtra, Andhra, Tamil Nadu. As per the recent revision of India's coastline length, what is the correct order of these states in decreasing order of coastline length? We have actually revised our coastline lengths. So this particular question is important from the perspective of mapping. So you must know what are the revised sort of lengths, coastline lengths. So parliament question has been asked in this regard. The length of India's coastline, that we famously know that earlier it was around 7516.6 kilometer, has been reassessed to almost 11,098.81 kilometer. By whom? By National Hydrographic Office in coordination with Survey of India. So both these organizations have actually revised our coastline lengths. Why the revision is important? Because it is more accurate sort of measurement of our coastline. So what it includes is, while earlier method relied on straight line distances, new one factors in complex coastal formations such as bays, estuaries and inlets, etc. as well. So based on this particular new parameters, we have this particular new length of coastlines. See, the only important thing to understand here is, earlier it was estimated that Andhra Pradesh had lengthier coastline than Tamil Nadu, but with the recent revision, Tamil Nadu has emerged as a
as you know, has having more coastline compared to Andhra Pradesh, 1068.69 kilometer, and Andhra Pradesh 1053.07 kilometer according to the recent revisions. You can clearly see the Maharashtra with 877. Gujarat is number 1 obviously with 2340.62 kilometer of coastline length. So now let's look at the states here. So Gujarat is obviously number 1, Maharashtra is number 4, Andhra is number 3 and Tamil Nadu is number 2. So 1, 4, 3, 2. Option A is correct answer here. So that's the case. This is the correct sequence for say the revision of decreasing order of coastline lengths. That's it from my side. Thank you.